So this is the first ever freelancing masterclass on YouTube, and in this I'll cover everything that you need to know to start freelancing. And अगर ये masterclass 100k views hit नहीं करती है, I'll make it paid, and that is for sure. So what I need from you is like this video, comment on this video, and most of all hype and share this video to your friends जो कि freelancing start करना चाहते हैं, या तुम्हारे पास अगर कोई group है वहाँ share करो. I want this to be going to every freelancer that is out there, because I have tried to introduce every single thing related to freelancing in this particular masterclass. I've included my live sales call. I'm including all of the breakdown that I have. I'll include all of the previous data that I have of freelancing. And I don't even know कि अब मैं और क्या क्या बताऊंगा इसमें. But one promise is for sure that you'll learn everything that you need to know in order to start this freelancing game and have an unfair advantage from the start. So let's get this party started. As you guys know me, and जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, I am a practical guy. I try to cover up everything practically. तो इस वीडियो के लिए भी मैंने कम्युनिटी से क्वेश्चंस उठाए हैं, कमेंट से क्वेश्चंस उठाए हैं, अपने प्रीवियस वीडियोस पे गया हूँ एंड देखा हूँ कि कौन सा डेटा मैं इस पर्टिकुलर मास्टर क्लास में इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ. एंड एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल हियर, सो यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. मैं बहुत सारे प्रैक्टिकल चीजें भी इंट्रोड्यूस करूंगा इस मास्टर क्लास के बीच में, तो यू विल बी एबल टू सी एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो. नीड टू नो व्हाटएवर आई सेड, बट यू लर्न एवरीथिंग. तो मैंने कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी बिल्ड करके रखे हैं अपने नोशन में, एंड आई कवर एग्जैक्ट थिंग्स स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन सेट कर देता हूँ इस फ्रीलांसिंग कैरियर से. ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है. अगर तुम ये सोच के इस चीज को स्टार्ट करने जा रहे हो, लीव दिस वीडियो नाउ. टू दोज ऑफ यू हु आर स्टिल हियर एंड नोज दैट दिस गेम रिक्वायर्स सम काइंड ऑफ ambition and desire and drive, then you're on the right path. क्योंकि इसमें भी वही सारे स्किल सेट्स लगते हैं जो एक बिजनेस को स्केल करने में लगते हैं, बट ऑन अ स्मॉलर क्वांटिटी, और यू कैन से इंटेंसिटी. सो फ्रीलांसिंग इज अ सोलो बिजनेस दैट यू विल बी स्टार्टिंग, सो ट्रीट इट लाइक दैट. एंड फर्स्ट ईयर से ही तुम पैसा कमाना एकदम वैसा चालू नहीं कर दोगे जो तुम ऑनलाइन देखते हो लोगों को बनाते हुए $10,000 पर मंथ, 100K पर मंथ. नहीं, उसके लिए तुम्हें बहुत सारी चीजें इटरेट करने पड़ेंगी, और उसका बहुत बड़ा पार्ट है सेल्फ इंप्रूवमेंट का, जो कि इस मास्टर क्लास में कवर होगा एट द एंड ऑफ दिस मास्टर क्लास. तुम फ्रीलांसिंग की बात कर रहे हो और तुम वो $10,000 पर मंथ करना चाहते हो, उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो तुमको फॉलो करने होते हैं, जो कि पर्सनल कुछ स्टेप्स होते हैं और करियर से रिलेटेड कुछ स्टेप्स होते हैं. तो करियर से रिलेटेड स्टेप्स में तुमको एग्जैक्टली क्लियर करूंगा. मे बी तुम इन एग्जैक्ट स्टेप्स है, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, तो तुमको ओवरव्यू हो जाएगा, कुछ इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी, बट डीप इनटू द इंडस्ट्री की नॉलेज तब भी नहीं होगी. ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मैं सब कुछ सिखा दूंगा. मैं इतना सिखा दूंगा कि तुम 0 से 1 लाख रुपीज पर मंथ तक पहुंच सकते हो एज अ फ्रीलांसर, बट 1 लाख से 10 लाख रुपीज तक उसमें बहुत स्पेसिफिक हो जाती हैं चीजें. तो व्हाट यू विल लर्न इन दिस मास्टर क्लास इज द ओवरव्यू ऑफ एवरीथिंग and in-depth explanation of the things that can help you to go from 0 to a lakh per month. Simple. Okay. Now, first year में ये नहीं होगा, and if you're really dedicated, first year में हो भी सकता है. Second year में, yes, I can guarantee you कि अगर तुम stick कर रहे हो गेम से, you know your shit and you are doing the things that I'm talking about, you will be able to make upwards of 1 lakh rupees and even more than that. तुम 1 लाख रुपए एक क्लाइंट से भी ले सकते हो, अगर तुम मेरा बताया हुआ ऑफर स्टैक या पिचिंग, पोजिशनिंग, अथॉरिटी बिल्ड करना वो सब फॉलो करते हो. तो that is guaranteed, because I've done that and I know you can do it too if you are ambitious and you have that drive कि भाई अब तो मेरे को फोड़ना है. तो एक्सपेक्टेशंस सेट हो गई हैं. अब अपन चलते हैं मॉड्यूल 1 पे. सो लेट्स स्टार्ट विद मॉड्यूल 1. मॉड्यूल 1 में अपन क्या बात करेंगे भाई, सबको पता है. सबसे पहले अगर हमारे फाउंडेशंस क्लियर नहीं है तो अपन कुछ नहीं कर सकते, तो अपन फाउंडेशंस ले डाउन करेंगे. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय फाउंडेशंस? अपन को फाउंडेशंस इसमें क्या चाहिए? सो फाउंडेशंस में you'll have to decide what you'll have to choose in your niche. And by niche I mean, where do you want to go? Do you love graphic designing? Do you love coding? Do you love UI UX? Do you love video editing? Do you love copywriting? Whatever it is, you have to choose. For me, I'll take the example of video editing because I have been a video editor and I know ins and outs of it. So I'll take that example. The whole masterclass will be very generalized so that everyone, तुम चाहे copywriter हो, तुम चाहे graphic designer हो, UI UX designer, सबको समझ में आए, सबको benefit मिले इसका. But I'll take just वन एग्जाम्पल ताकि तुमको सारी चीजें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आए. सो फाउंडेशंस में अपन ने एक नीश चूज करी है विच इज वीडियो एडिटिंग. तो वीडियो एडिटिंग हम लोगों ने एक नीश चूज करी है. नाउ अंडरस्टैंड दिस कि इसमें भी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं बहुत लोगों को. वीडियो एडिटिंग में भी एक नीश चूज करो. वीडियो एडिटिंग में भी मुझे पता होना चाहिए कि मैं, ये बहुत पॉपुलर है इंटरनेट पे, कि मैं डॉक्टर्स के साथ काम करूं. ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए मैं कोचेस के साथ काम करूं, कंसल्टेंट्स के साथ काम करूं, या मैं फाउंडर्स के साथ काम करूं, एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करूं. भाई पैसा इसमें है, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स के पास पैसा नहीं है, दिस एंड दैट. ओके,
Listen to me. Yes. But do you have the experience to compare everything? Do you right now at the start? Absolutely not. So what do you have to do? You have to take the bet. So what is best for you? You can generalize yourself. You don't have to be really specific कि नहीं मेरे को डॉक्टर्स के साथ ही काम करना है या मेरे को इनके साथ ही काम करना है या मेरे को कंसल्टेंट्स के साथ ही काम करना है. नो, डू वन थिंग. सबके साथ काम करो जहां से भी तुमको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं. व्हाट डू यू वांट राइट नाउ? यू वांट एक्सपीरियंस. यू हैव टू गेन दिस थिंग, experience. Without it, you'll go nowhere. I'll tell you one example. Okay, अगर मैं तुमको ये बताऊं, तुम कितने भी प्रोजेक्ट्स ले सकते हो तो तुम्हारा सरफेस एरिया इतना बड़ा है, ठीक है. बट देन मैं तुमसे कह रहा हूँ कि नहीं, तुमको खाली डॉक्टर्स के साथ लेना है. तो डॉक्टर्स तो इतने हैं. इसमें तुम्हारे डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, इसमें तुम्हारे कोचेस भी आ रहे हैं, इसमें तुम्हारे फाउंडर्स भी आ रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट इसमें खाली डॉक्टर्स हैं. अपॉर्चुनिटी कहाँ पे तुम्हें ज्यादा मिलेंगी? ऑफ कोर्स यहाँ पे. यस, थोड़ा सा ये काउंटर इंटुइटिव है, आई नो, आई विल एक्सप्लेन दैट. बट ये चीज अभी तुमको करनी है. तुम्हें जितने भी प्रोजेक्ट्स मिले, तुम सारे प्रोजेक्ट्स को पकड़ो, तभी तुमको एक्सपीरियंस मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स का. देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यार एक चीज है, मैं डॉक्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ तो टाइम ज्यादा जा रहा है एंड इसके साथ साथ पैसा मेरे को कम मिल रहा है. तो नाउ यू हैव द एक्सपीरियंस कि मैं डॉक्टर्स के साथ काम नहीं करूंगा अब. दिस इज कट. तुमने फिगर आउट किया यार कोचेस के साथ काम कर रहा हूँ तो इनके बहुत झमेले होते हैं कि यार फनल के लिए सारे वीडियोस बनाने हैं, ये करना है, वो करना है, मेरे को मजा नहीं आ रहा है इतना मोनोटोनस एडिट करते हुए. देन यू कम अक्रॉस फाउंडर्स जो कि लाइफस्टाइल एडिट्स करवाते हैं एंड यू आर लाइक, ओ दिस इज इंटरेस्टिंग कि मेरे को सिनेमैटिक व्लॉग्स में मजा आ रहा है. एंड नाउ यू नो योर नीश. सो फर्स्टली 1 से 2 साल, फर्स्ट और सेकेंड ईयर, दिस इज योर अप्रोच. ठीक है, फर्स्ट ईयर में आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ द थिंग्स कि कौन सी नीश में क्या है. तुम फिगर आउट भी कर लोगे कि हाँ ये नीश में मुझे मजा भी आ रहा है, ये चीज करने में मुझे मजा आ रहा है. एंड देन यू विल बी एबल टू डायल डाउन योर नीश. बट इज इट रियली नेसेसरी? द क्वेश्चन इज दिस. ये थ्योरी में तो बहुत बढ़िया लगता है कि भाई चल ठीक है फाउंडर्स के साथ काम कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो करेंगे. बट इज इट नेसेसरी? No, absolutely not. My agency, I've not even dialed down my niche yet कि मैं इनके साथ काम करूंगा. मैं अपना surface area क्यों कम करूं? Like logically, why would I want to decrease my surface area? There are two approaches. First is niched. I will take one example of a guy named Subha. He is doing really good in his agency, and I know, and you guys also must be knowing. So basically, that guy has a service which is VC podcast service. We can say that. And it is very niche. By VCs को वो podcast देता है. But ये गेम खेलने के लिए you need to have a team. Understand this thing. तुम एक niche में जा रहे हो. तुम एक niche को पूरा capture करना चाहते हो. That is an unfair advantage for you. That is, I know. But this is the game that agency owners can play. This is the game that I, as an agency owner, can play. As a freelancer, if you try to capture just one niche, VCs की niche capture करने जा रहे हो तुम, bro, you don't know how many people are already in their niche who are just crushing it. By you're competing directly with Subha. Okay, if you're coming in my niche, let's say you're directly competing with me, can you compete as a freelancer with agency? Absolutely not. So एक niche में ये चीज करने के लिए तुमको एक टीम चाहिए. अब क्या other freelancers कर नहीं सकते? I would say मत करो. कर सकते हैं बट करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं. बट इज इट द राइट अप्रोच और ये तुमको ज्यादा ROI देगा? तुम क्या कर सकते हो? सेकेंड अप्रोच में यू जनरलाइज योरसेल्फ. ओके, दिस इज नॉट समथिंग दैट पीपल टेल यू ऑन द इंटरनेट. पीपल ऑलवेज से स्पेशलाइज इन वन स्किल, स्पेशलाइज दिस, स्पेशलाइज दैट. ये चीजें काम आती हैं एक स्टेप के बाद. इस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर मैं सेकंड ऑप्शन पे जाऊंगा. तो दिस इज द लेवल. Okay, let's take it as pyramid. You are here. This is where you have to try out everything. When I didn't know about this field, I tried almost everything. I tried filmmaking, I tried photography, I tried video editing, I tried cinematic films. अगर मैं बहुत specific हो जाऊँ, YouTube पे मैंने cinematic film start करनी, tutorials बनाए हैं, मैंने B-roll only videos बनाए हैं, मैंने informative videos बनाए हैं, मैं अब freelancing niche पे आया हूँ, all sorts of things. But how did I land on this? जो चीज़ मेरे लिए वर्क करी, by doing all of this. This is the things that I've tried. Here you try almost everything that you can. Like at the start, this is where you are right now. You don't really know where you will be headed. So you try this, you learn
that this is the better thing for me, and then you climb up the ladder. Here you specialize. This is where you specialize. This is where you specialize, not here. Understand this. You don't even know that you have this particular skill set right now. You might go and after a few years realize, oh fuck, I was really good at that other skill. I realize it now, but I never gave myself that opportunity to try that. So it's better you try it and then do that. अगर मैं YouTube पे all sorts of niches capture नहीं करता या tackle नहीं करता, तब तक मेरे को समझ में नहीं आता कि यार okay, freelancing niche is working for me, video editing is working for me, why not make content on that. Starting से मेरे को नहीं पता था कि भाई who would even care, who would even listen to me, but now people listen to me. So that's why this is very important at the start. So let's get on to the second approach that you as freelancers can take. So specialization is good for business owners, but what will be better for you is generalization. Let's get to the generalization part. Here I've almost explained you that you need to work with almost everyone, okay, but you don't have to specifically do everything. Not everything. What do I mean by this? Very simple. When I started freelance video editing, I just was not interested in doing cinematic editing for clients because वैसे clients मिलते ही नहीं थे. So I had to convince myself कि bro, motion graphics and talking head videos are the thing that clients want and you have to do that. What I did was, starting में जो मेरे को opportunity मिली work with everyone, वो मैंने grab करी, but I specified that कि मैं talking head video edits कर लूँगा, उसमें reels और long forms वो सब कर लूँगा. So talking head was my thing. अब उसमें भी धीरे धीरे मेरे को realize हो गया कि I'm not really good at motion graphics, but I really don't want to do this video editing because I was giving 12 hours of time every day and I was like, it's better. I'm better at doing business and I have that mental capacity, so let's just do that. So I eventually built an agency जहाँ पे मेरे specialized skill set use हो रहे हैं. समझे? ये मैं climb किया ladder, इसके बाद मेरे को पता चला कि मेरे skill sets ये हैं, and then I specialized that skill set and implemented those special skill sets in my agency. Got it? But यहाँ पर motion graphics and talking head पे wasn't clear if I am interested in that or not. But I still did it and I made good money with it even though I didn't know. तो इससे क्या तुमको पता चलता है कि you have to try, you have to do the thing that market demands and see. तुम्हारे दिमाग में absolutely clear नहीं होगा कि तुमको क्या अच्छा लगता है at the start. Of course you're a beginner. तो what you can do is, जो market में demand चल रही है तुम वो सीखो. तुम AI video editing सीखो, तुम AI films बनाना सीखो, तुम वो चीज़ pitch कर सकते हो, that is a skill set. Automation बनाना चाहते हो, automation agency बनाना चाहते हो, तुम वो चीज़ सीखो. तो वो market में demand है. अब market में demand का तुम काम करोगे, talking head बनाओगे, motion graphics बनाओगे, then you'll realize कि यार मेरा तो एक्चुअल में ये स्किल सेट ही नहीं है. तो जब तुम्हें स्किल सेट एक्चुअल में पता चलेगा, क्योंकि जब तुम कोई चीज करते हो और तुम्हें वो पसंद नहीं आती है, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें क्या चीज पसंद आएगी. तुम वो चीज करते हो तब भी तुम्हें वो चीज पसंद नहीं आती है, तो यू गो टू अदर थिंग. ठीक है? तब ऐसे करके मल्टीपल चीजें एक्सपीरियंस करके यू कम अक्रॉस फ्यू सेट ऑफ स्किल्स दैट यू आर रियली गुड एट, which I determined for myself. I'm really good at communication, hence I'm really good at sales, and I do all of my YouTube video content and I talk better on camera. I'm good at marketing, I'm good at convincing people. So that's what I use now. Similarly, talking head, motion graphics, you are a video editor, let's say you are graphic designer, you are whatever. ठीक है? ग्राफिक डिजाइनर का अगर एग्जांपल लूँ, you start with almost everything. You make carousels, you make posts, you make thumbnails, you make website designs, whatever it is in your niche, you do that. After that you realize, यार मैंने ये सारा करके देख लिया, but I realize कि यार मेरे को मज़ा जिसमें आ रहा है वो है only and only carousels and thumbnails. So I'll take only those people या those projects जिसमें मेरे को carousels और thumbnails मिल रहे हैं. Then you specialize in that and you specifically say, I have specialized skills that I can offer you and that is making carousels. And carousels में फिर तुम जब deep जाओगे तो तुम उसका ins and out समझ जाओगे. Deep जाने का मतलब ये होता है, पहले तुम ये inverted triangle की तरह अपन समझ सकते हैं, तो इसको inverted triangle की तरह समझ सकते हैं. तो जितना तुम deep जाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेयर है, यहाँ पे तुमको कराउजल डिजाइन करना आता है. फिर तुम इतना डीप जाओगे, तुम्हें समझ में आएगा, ओ ओके, कॉपी भी मैं दे सकता हूँ. कॉपी राइटिंग इज ऑल्सो अ थिंग इन डिजाइनिंग. फिर तुमको रियलाइज होगा, फक, एसईओ इज ऑल्सो अ थिंग, साइकोलॉजी इज ऑल्सो अ थिंग. साइकोलॉजी, हाउ सम वर्ड्स ट्रिगर सम इमोशंस इन द हेड ऑफ पीपल. एंड अगेन इट कैन बी मोर लाइक कि एस्थेटिक्स of the carousels are also a thing, like multiple things
you realize when you go deep into the niche. So that's why it's really important for you to initially work with almost everyone. If you are a freelancer, if you really want to make a lot of money, this is the exact step that you'll have to do or take. Work with everyone but not everything. It's pretty clear now. You don't have to like offer everything कि भाई मैं सिनेमैटिक भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा. You still have to have some idea कि मैं सारे क्लाइंट्स के साथ काम कर लूंगा बट मेरे को सिनेमैटिक के साथ काम नहीं करना है. ये मार्केट में डिमांड नहीं है, मुझे इतना तो पता है. अब तुम इसको ये कहोगे कि यार अभी तुम कह रहे हो कि यार ऐसा करो, फिर तुम उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो. आर यू इवन क्वालिफाइड टू से दिस? सी, इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ. तुम अगर कोई भी चीज़ परस्यू करना चाहते हो, लेट्स से यू आर गोइंग टू बाय अ बाइक एंड यू ट्राई टू नैरो इट डाउन. स्टार्टिंग में तुम जनरलाइज करोगे पहले कि ओके मैं बाइक बाय कर रहा हूँ, कौन सी बाइक लेनी चाहिए. अब तुम्हारे पास स्टिल थोड़ा तो आइडिया होगा ना कि भाई कौन सी बाइक लेनी चाहिए. तुम्हें एस्थेटिक्स चाहिए तो तुम्हें स्पोर्ट्स बाइक चाहिए होगी, तुम्हें फंक्शनैलिटी चाहिए तो तुमको एडवेंचर बाइक चाहिए होगी, तुम्हें रेगुलर कम्यूट करना है डेली का, तुमको नॉर्मल बाइक चाहिए होगी. तो फर्स्टली यू डिसाइड फ्रॉम दीज 3 क्राइटेरियाज कि रेगुलर कम्यूट करना है, मेरे को कंफर्ट चाहिए या मेरे को एस्थेटिक्स चाहिए. अब भाई मान लो तुम्हें एस्थेटिक्स चाहिए, ठीक है, तुम्हारे पास भर भर के पैसा है, ठीक है, अब कोई लिमिटेशन नहीं है. तो अब तुम्हें एस्थेटिक्स चाहिए. अब तुमने ये स्पेसिफाई कर लिया कि एस्थेटिक विच इज दिस, कि भाई टॉकिंग हेड मेरे को करना है, एस्थेटिक्स है ये. अब इसके बाद तुमको रियलाइज होता है कि यार मेरे पास बजट तो है मस्त बिंदास, अब मैं कौन सी बाइक ले सकता हूँ. फिर तुम रियलाइज करते हो कि यार 150 सीसी वाली R15 नहीं लेनी है. तुम रियलाइज करते हो यार 300 सीसी के सेगमेंट में भी कोई अच्छी बाइक्स नहीं है. अपाचे भी ठीक ठीक है और BMW 310 भी ठीक ठीक है. देन यू सी कि यार एक बहुत बढ़िया मिड सेगमेंट में, बहुत हाई भी नहीं बहुत लो भी नहीं, BMW S1000 RR लेने जाऊंगा तो यार बहुत पावर है उसके अंदर, आई विल क्रैश इट और उसकी मेंटेनेंस भी बहुत है, आई डोंट वांट टू टेक दैट. सो यू रियलाइज कि okay, Honda CBR 650R is really good, I can take that. So you'll go and niche down yourself. Now you are specialized here, but here you broke down slowly कि पहले मेरे को बड़े पर्सपेक्टिव में क्या चाहिए, उसके बाद और नैरो डाउन किया कि ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए. जैसा मैंने अभी बात किया तुमसे कि ये नीश में मेरे को काम नहीं करना है, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है, ये स्किल मेरे लिए अच्छी नहीं है. देन यू कम टू वन स्पेसिफिक थिंग एंड दैट इज स्पेशलाइजेशन वेयर द मनी इज. ओके, आई एम टेलिंग अबाउट फ्रीलांसिंग बट मैं एजेंसी के पास बार बार आ रहा हूँ बिकॉज दिस इज द थिंग दैट most of the freelancers aspire to do. This is like specialization. You can still as a freelancer make $10,000 a month if that's your goal, but this is where you scale up to 100,000, $1 million per month. That is exactly the route I'm on. I'm not talking about this. I am not specialized there, so I won't talk about it. I'm just talking about कि कैसे तुम और niche जाकर you'll be able to make more money and have an unfair advantage in the niche. मैं तुमको एक और एग्जाम्पल देता हूँ. एक और एग्जाम्पल ये हो सकता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, माई लाइफ से रिलेटेड, माई लाइफ से रिलेटेड. आई स्टार्टेड माई फ्रीलांस जर्नी with talking heads. After that, I was watching a lot of YouTube videos to make sure I earn a lot of money on YouTube. I realized कि यार talking heads में मैं coaches, consultants और ये founders वगैरह के साथ काम करूँगा तो पैसा ज़्यादा मिलेगा. I tried that but it didn't work. I had to work with everyone, and it paid me really really good. I got all of the opportunity. But then I realized कि there is few things that I need to still consider. What? I have to make sure कि मैं low paying clients ना लूँ. Starting में of course I started with just 7,500 rupees per month. But then after a point when I started to make good money, I got some really good clients. I was like, ये नहीं करना है. मेरे पास clients आए, मेरे पास personal brand था. People were trying to work with me. But I was like, no. क्यों? क्योंकि मेरे को अगर एक client भी मिलता है $1,000 का, it's better than having 3 clients paying me 25, 35,000. I don't know. I'm bad at maths. So 20 to 23,000 per month, similar to that. Okay, so it's better. So that's why I aimed for this. I said कि ये नहीं करना है. Then after that the cycle continues. I was like, मेरे को अब $2,000 से नीचे पिच नहीं करना है. That's what we did. That's what I did. Then I realized कि मेरे को अब hire करना होगा editors को to scale. That's what I did for 2-3 months. And after that, when I got so many clients that I couldn't handle, I was like, अब hire तो करना है scale के लिए, but ये freelancing में नहीं करना है, ये करना है agency में. So slowly I said no to a lot of things and then I came up with one thing, and इसमें भी there are a lot of things that I'm going deep into and saying no to, which I'm not qualified yet to talk about.
Once I'll reach a really good amount, I'll talk about that. Don't worry about that, guys. I hope everything is clear now. Another short example for you to understand. When I started my YouTube journey, I was trying to make everything. ठीक है, मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाता था, मैं सिनेमैटिक कंटेंट भी बनाया है थोड़ा बहुत, मैंने ग्रूमिंग के ऊपर भी वीडियोस बनाया है, मैंने दलिया रिव्यू भी किया है, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट रिव्यूज भी किए हैं, मैंने सेल्फ हेल्प पे कंटेंट भी बनाया है, मैंने व्लॉग्स भी बनाए हैं, एंड मैंने फिर अगेन सिनेमैटिक कंटेंट बनाया, टेकिंग अप क्रेजीली अप अ नॉच, और जो भी राइट टर्म होता है. आफ्टर दैट I did podcasts too. I made tutorials by sitting in front of the desk. But then जो चीज़ें वर्क नहीं करी वो मैं निगलेक्ट करता रहा. I'm making videos on freelancing. ये वर्क नहीं करेगी मेरे लिए, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा. I'll just leave it. Simple. The goal is to level up every time by saying no to the things that are not serving your goal. Okay, ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले सेक्शन में ज़्यादा तुमको समझ में आएगा जब मैं कुछ वीडियोस पुट करूंगा उधर. बट you'll have to understand कि जो तुम्हारा अल्टीमेट गोल है, थोड़ा सा मैं बस एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये फाउंडेशंस में काफ़ी हेल्प करेगा तुमको, कि तुम्हारा जो अल्टीमेट गोल है उससे चीज़ें resonate करनी चाहिए. Now that ultimate goal can be anything. For example, for me it's money related, it's becoming a millionaire, and for my life it's freedom. और ये बहुत general terms है, I know. Freedom as in like I don't have to constantly be available for my team. I have to do anything that I want to do, and I should be content with the money that I'm making. I want to do filmmaking. I love filmmaking. I love this, cinematic genre of things. But that's what I want to do for myself. That is really specified. I don't want to make any cinematic content for any client unless that's really, really moving, unless that's really, really inspiring or motivating. और मैं खुद desire कर रहा हूँ कि भाई I have to make this video as well. I have to have some skin in the game with the client to make sure the vision comes to life. But apart from that, I'm not really ready to do that for any other person. So I have some goals that I have defined, and that's what I'm working towards too. ये लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है कि भाई फ्रीलांसिंग से इसलिए मैं एजेंसी पे शिफ्ट हुआ हूँ, और एक 7,500 की जॉब से धीरे 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 आई वाज एबल टू चार्ज अपवर्ड्स ऑफ $2,500, $3,000, $4,000. दिस happened because I had a bigger goal. किसी लोगों का गोल होता है कि भाई 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना है. He would have been content making $1,200 a month. There's nothing wrong with that. If you want to do that, go on that route, well and good. Do that. And that's perfectly fine. But if you have bigger goals, achieve that. But you have to make sure the path looks a bit different there. If you want to just make 1 lakh per month, you probably might want to do a job that will give you security as well at the same time. But if you want to make a really, really, really high amount of money, you probably have to build an agency or a business in this niche that can pay you well as a founder. You must have some equity in the business, something to make sure that you achieve that goal. Again, I hope few of the foundations are clear. Now there are few questions that I'd like to address, which is people tend to not understand this thing कि मेरे से पूछते हैं वो कि मृदुल ये बताओ कि मुझे पीसी लेना चाहिए या नहीं, मोबाइल से काम चल जाएगा या नहीं. यार तुम ये चीज समझो कि यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ बिजनेस, ठीक है, बहुत लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से समझना इस चीज को. व्हेन यू ट्राई टू बिल्ड अ बिजनेस, यू आर ऑलमोस्ट प्लांटिंग अ सीड, एंड स्टार्टिंग में दैट सीड नीड्स नर्चरिंग, इट नीड्स अ लॉट ऑफ केयर. आफ्टर अ पॉइंट, लेट्स से अ ईयर और टू, इट हैज ग्रोन. उसके बाद उसको फर्क नहीं पड़ता है, उसको पानी मिले ना मिले, बड़ा पेड़ हो गया है, उसको कहीं ना कहीं से अपने रूट से वो इतने अंडरग्राउंड जा चुके हैं कि वो ग्राउंड वाटर ही निकाल लेता है, उसको पानी की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट. एंड प्रोबेबली अगर बारिश वगैरह हो रही है तो एवरीथिंग विल बी सेल्फ सस्टेन्ड. सिमिलर इज द बिजनेस. व्हेन यू आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग दैट नीड्स टू सस्टेन फॉर लॉन्गर अमाउंट ऑफ years, that will give you exponential returns in your life, you need to understand this, that you have to treat it like a business first of all, and secondly nurture it at the start. You'll have to give your time, effort, you have to provide money to it, you'll have to do everything possible to make sure it works. But most of the people are not ready to do this because they think that this is a get rich quick scheme. and इसीलिए मैंने पहले तुमसे कहा था कि अगर तुम इसको get rich quick scheme समझ के आए हो तो मत आओ. बहुत सारे freelancers ने इंडस्ट्री को गंदा करके रखा हुआ है. I'm sorry, this is not that. So yes, you need to invest in a good PC, save up funds, do whatever you can, but invest in a good PC. हाँ, लो एंड फोन से मैंने भी स्टार्ट किया था, but was I making money through that? No, I just refined my skills. If you want to refine your skills, well and good. You can edit videos on your phone, do whatever you can, refine your skills. If you want to make real money, get some real softwares, real hardwares to make sure that helps you become productive and gets you money.
1 साल में तुम उसका ROI निकाल लोगे। लाइक मेरा जो मैकबुक है, इसका मैं पता नहीं अब तक 1000 गुना ROI निकाल चुका हूँ। 1000 गुना, 3 लाख का 10 गुना कितना हुआ? 30 लाख। 30 लाख का 10 गुना 100x 30 lakhs 3 crores, नहीं 1000 नहीं, 100 गुना निकाल चुका हूँ मैं। वेरी गुड अमाउंट, नॉट बैड, राइट? सो 100x अगर निकल गया तो 2x तो तुम्हारा निकल ही जाएगा। 1 लाख का पीसी है, 2 लाख बना लो। नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर $2000 का एक क्लाइंट ले लो, डन। 2 महीने में तुम प्रॉफिट में हो, बट you'll have to make sure you treat it like a business. That's all. And there's another thing that I'd like to understand when I'm talking about stepping up the ladder. When you are a new freelancer, it's very easy to get into the trap of just getting clients. It's very easy to see the YouTubers like me or other freelancers and get inspired. That's well and good, get inspired. But you fall into that trap of going just after clients and just becoming a freelancer. But you have to realize this thing, that I also started from a job, which was a freelance job, by the way, and then I became a full-time freelancer. And that is what I'm trying to tell you. Most of the people who have some kind of experience, and if you want to grow exponentially, it's better if you join a startup or a business as a freelance editor or graphic designer or whatever, or just do a job. Why? This is like a ladder that you climb, and the journey becomes exponential for you here. Now, when you directly want to jump from there to here, which is freelancing, yes, you can do freelancing, but you have to understand, you'll have to have a lot of skill set. As a freelancer, as I said, it's a job. You'll have to have skills that are communication skills. I was able to go from job to freelancing really fast. Like it was really fast because I was making videos on my YouTube channel. I was really good at marketing already. I was really good at sales. I was not that good, but I was good at that. I was really good at communicating, and मेरे स्किल सेट भी अच्छे थे, क्योंकि इससे पहले भी मैंने, अगर मैं एक स्टेप बताऊं तो यहाँ पे मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी अपने फ़ोन पे। तो भाई प्रैक्टिस, अगर तुमको नहीं दिख रहा है तो दिस इज प्रैक्टिस। मैंने प्रैक्टिस करी हुई थी अपने फ़ोन पे, तो आई हैड अ लॉट ऑफ स्किल टू लैंड अ जॉब, एंड आई लैंडेड अ जॉब। पहले वो इंटर्नशिप थी 7.5K की, 7.5K की इंटर्नशिप थी, एंड उसके बाद वो फ्रीलांस जॉब में कन्वर्ट हुई। आई वॉज मेकिंग गुड मनी। देन इधर से मेरे को ये पता चला कि इंडस्ट्री ऑपरेट कैसे करती है, इंडस्ट्री के ऑपरेशंस पता चले मेरे को। जब ये मेरे को पता चल गया कि भाई क्लाइंट्स कैसे बात करते हैं, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, रियल वर्ल्ड में उनको क्या चाहिए, इट बिकेम वेरी ईजी फॉर मी कि यार मेरे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है इतना सारा कि यार क्लाइंट्स को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आई वॉज एबल टू गिव द एग्जैक्ट सेम थिंग्स टू my freelancing clients. I understood what timely delivery looks like. I understood some inside requirements of the client. I understood nitty-gritties of the business that I'm in, which is freelance video editing. I understood the softwares that are required to make sure that I'm not getting crashed. I mean Adobe. So I shifted to DaVinci. I experienced a lot of things. Initially मैंने तुमको बताया था, experience is what you are aiming for at the start. So job is a good approach. People come to me and say, bro, should I do a job, a freelancing? I've never done freelancing. I've never done job. I'm just starting as a freelancer. Do a job. It'll be worth it. Don't look down on jobs, guys. If you don't have the experience, accept this thing, that job will put you 3 to 4 steps ahead of the people who are just not willing to learn and looking down on things. Like if you're just consistent with everything and you are accepting the things that okay, you don't know any shit and you want to go to that level, take a job, learn about it. After that, go to that freelancing field. Who's saying to you that you'll have to do it for your entire life? Do it for a year or two, or maybe just do it for 6 months. I did it for, I think, from August to March, I don't know, 8 or 9 months somewhat. And then now I just said okay, bye bye, take care. And then I landed my first ever US client after 3 months of crazy depression and a lot of grind. So yeah, I mean, get some experience, then think of freelancing. People often ask me this question, and this is the answer. You can comment on the video that, bro, are you dumb? Freelancing कर सकते हैं. I know how to pitch clients. Well, try that. If you get the results, well and good for you. मेरे को क्या मिल रहा है? तुम कर सकते हो तो करो. But this is the exact thing that I have to tell you that can give you good and faster results. I hope you got some understanding of this. Now, I'll take on few more questions that I have written down that can help you, which I'll just write down. Life of a freelancer, and then job से freelancing में shift कैसे करें. पहले मैं ये कवर करता हूँ, full time से freelancing में shift कैसे करें. सिंपल है, कब करना है कैसे करना है वो बता देता हूँ. जब भी तुमको लगे कि यार I'm not able to learn on my own, that is exactly the point that I stopped doing the job for others. मेरे को लगा कि मेरी
जो ग्रोथ है वो स्टैग्नेट हो गई है. आई वॉज नॉट लर्निंग एनीथिंग इन दैट जॉब. आई वॉज मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, बट वो एक कैप्ड लिमिट तक था, उससे ऊपर मैं बना नहीं सकता था. आई यूज टू डू 8 hours 10 hours of work daily to make 40,000 rupees, and I saw potential कि probably I can go upwards of 80,000 or 1 lakh rupees a month through freelancing by getting clients or by getting a better job, let's say. So I like said, okay, bye bye, take care, I am not doing the job anymore. So that was my point, and it for me it comes as a gut feeling कि यार अब ये जच नहीं रहा है. सिमिलरली फ्रीलांसिंग में भी ऐसा हुआ था कि एक्सटर्नली ये फैक्टर्स थे दैट क्लाइंट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, बट गट फीलिंग भी थी कि यार अब करनी चाहिए स्टार्ट फ्रीलांसिंग. सो इट्स मोर ऑफ लाइक इमोशनल, इंटुइटिव प्लस लॉजिकल डिसीजन. दोनों अगर कह रहे हैं तो वो एक लीप ऑफ फेथ लेना इज रियली नेसेसरी टू गो ऑन दैट नेक्स्ट ग्रोथ फेज ऑफ योर लाइफ. ठीक है, आई नो इट्स हार्ड. यू विल बी लाइक ओ फक, अगर मैं एकदम से मना कर दूंगा उसको तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे. गुड कंसर्न. सो व्हाट यू कैन डू इज जॉब के साथ साथ कुछ फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स, 1 या 2 फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स लैंड कर सकते हो एंड देन जॉब छोड़ सकते हो. लाइक सेफेस्ट अप्रोच ये है जिसमें तुमको लॉजिकली एक आंसर मिलेगा. बट अगर तुम लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो, यू आर क्रेजी लाइक मी, जस्ट डायरेक्टली से टू देम कि भाई मैं काम नहीं करना चाहता हूँ. तो दिस इज हाउ यू कैन शिफ्ट फ्रॉम फुल टाइम टू फ्रीलांसिंग. It is more of a mental thing than a physical thing. If you just want to not do it, you should just say you are not wanting to do it unless it's really required for you to do that. Life of a freelancer, I've made I think 2 videos on that. I don't know. I've made videos on that. So the thing is, life of a freelancer is not that glamorous as people show you on the internet. It's pretty boring. You have to sit in front of the computer, and most of the freelancers who are watching this video, they'll agree that it's pretty boring. You'll have to sit in front of the computer and just do the work, and when you get the money, you enjoy that money. I was lucky that I was at one point able to do all of the clients work in 4 to 6 hours a day. मैं इतना ज़्यादा experienced हो गया था उनके content में कि I was just able to just get it done in 4 to 6 hours. After that, I used to make videos for my YouTube channel. The graph looks like this. Sometimes you have a lot of time. Sometimes you don't have at all a lot of time. You're working 12 hours a day. Sometimes it goes like this. Sometimes it goes like this, and then this, and then this. And similar is the graph of the income. It doesn't stay like this. You can't expect stability from freelancing. 1 month or 2 months will be like crazy for you. You'll be able to make $2,000, $3,000, $4,000. It's very important for you to understand finances and save up your money. Don't spend it like a maniac. Have 6 months to 12 months of emergency funds saved for yourself. Sometimes it'll be a lot. Sometimes it'll be nothing for you. Zero से नीचे तो नहीं जाना चाहिए, but it will be zero probably for you, but then again you will be able to make a lot of money again अगर तुम्हारे recurring clients नहीं है, one time projects हैं तुम्हारे तो. So even मेरे पास recurring projects थे तब भी कभी कभी पेमेंट साइकिल जो होती थी वो 45 डेज के बाद मेरे पास पेमेंट आता था, क्योंकि लाइक डिलीवरेबल्स ही कंप्लीट नहीं हुए हैं, क्लाइंट की तरफ से डिलीवरेबल्स नहीं आए या मैंने डिलीवरेबल्स नहीं करे हैं. सो दैट डिलेज समटाइम्स यूज्ड टू हैपन कि भाई क्लाइंट की तरफ से नहीं ही आया प्रोजेक्ट. तो आई वाज लाइक ठीक है अब क्या मैं पेमेंट लेंगे, ऐसे तो नहीं भेज सकता हूँ कि नहीं नहीं पैसे दो पैसे दो. आई वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल कि यार चल ठीक है 45 डेज बाद दे देना. तो फिर डिले हो गया 45 डेज तक. अब 15 दिन के लिए तो कुछ ना कुछ तो चलाना है ना, तो चल जाता था क्योंकि भाई पैसे सेव करके रखे हैं. सो दिस इज हाउ द लाइफ ऑफ अ फ्रीलांसर लुक्स लाइक, एंड दिस इज हाउ द होल फाउंडेशन ऑफ दिस फ्रीलांसिंग एक्चुअली लुक्स लाइक. यू ऑलमोस्ट हैव गॉट एवरीथिंग दैट you need to know in order to make sure you start freelancing in the right way. You know what niche to choose, how to choose, why to choose. You know a job or directly jump to freelancing. You know how to niche down. You know how to shift from a full-time job to freelancing. You know some nitty-gritties of why niching down works for few people. जो मैंने carousel का example दिया था, and then I gave you an example of agency, but that comes after a year or two ऑफ एक्सपीरियंस. एंड क्यों तुम्हें इन्वेस्ट करना चाहिए अपने ऊपर, नॉट अपने ऊपर, मोस्टली मैंने बात करी है, सेल्फ इंप्रूवमेंट वाला बाद में बताऊंगा. तो क्यों तुम्हें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि तुमको एक्सपोनेंशियल रिटर्न मिले. सो आई हैव कवर्ड अप दैट फाउंडेशन पार्ट ऑफ द वीडियो. आई होप यू गॉट सम रियल गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. आई ऑल्सो टोल्ड कि फोन अगर तुम्हारे पास है तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. यू कैन प्रैक्टिस ऑन दैट बट डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम इट. यू कैन probably make some money out of that in this day and age because CapCut is really good, some softwares are really good like VN, but उससे तुम बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते हो. तो थोड़ा बहुत जो भी पैसा मिलेगा you can save up that amount and get a PC for yourself and then
make even more money, and then invest again into the hardware and then even make more money until you reach your desired mark. Maybe it is 1 lakh per month or 2 lakh per month. So that's the thing. I hope you got some value out of this foundation module. Let's go to another module which will be very interesting for you. So this is module 2 और इस मॉड्यूल में सबसे ज्यादा जूसी स्टफ है। क्या है इसमें मैं तुमको बताऊंगा कि तुम क्लाइंट्स फ्रॉम जीरो कैसे लैंड कर सकते हो एंड व्हाट विल बी द बेस्ट अप्रोच फॉर यू टू स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग जर्नी। आई टेल यू, आई पुट अप सम सेल्स कॉल्स जो कि मैंने लिए हैं। आई टेल अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई यूज। आई टॉक अबाउट हाउ यू कैन गेट हाई टिकट क्लाइंट्स and what is the process that looks like to close high ticket clients and how you can be good at outreach. So this module is client machine. This is I. Okay guys, this is I. Client machine बना देंगे भाई। देखो, clients लाने के लिए मोटा मोटा तुमको 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला, उनको ढूंढे कैसे, which is leads. I hope you're able to see this. Or should I be writing it बड़ा बड़ा? चलो बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। Leads, outreach, offer, और अगर मैं इसको और थोड़ा सा एक्सपैंड करूं तो leads, outreach and offer के बाद we can write closing and then lastly retaining. So it will be looker. LOOCR. LOOCR. Leads, outreach, offer, closing, retaining. When you have these things sorted, then you can call yourself a client machine. Like, you literally know how to get leads, how to do outreach, what is your offer, and how you can close those clients through that offer, and how you can retain those clients that you have closed. So I'll give you one example. थोड़ा सा complicated होगा at the start to understand if you are not familiar with all of this stuff. So let's say तुम एक client को close करते हो 1x client and वो तुम्हारे साथ 3 महीने रहता है, and then another client तुम्हारे साथ same 3 महीने रहता है, तो तुम्हारा client retain 3 महीने तक ही तुम कर पा रहे हो। मैं कोशिश करूंगा मैं बिल्कुल easy शब्दों में समझाऊं। तो तुम client 3 महीने तक ही retain कर पा रहे हो on an average। तो तुमको हर 2 महीनों में आउटरीच करते रहने होगे। बेसिकली योर आउटरीच शुडंट बी स्टॉपिंग एट दिस एरिया, एट दिस रेट, बेसिकली नॉट एरिया, क्योंकि तुमको भाई क्लाइंट चाहिए ही चाहिए। और तुमको अगर 10 के MRR करना है, मोटा मोटा तुम ऐसा समझो, तुम डीप कैलकुलेशन में नहीं जाऊंगा, मोटा मोटा ऐसा समझो कि तुमको एक क्लाइंट की वैल्यू अगर $2500 है तो तुमको 4 क्लाइंट हर 3 महीने में लाते रहने होंगे, क्योंकि 3 महीने बाद वो 4 क्लाइंट चले जाएंगे जो तुम फर्स्ट टाइम क्लोज करोगे। देन फिर 3rd मंथ से तुमको आउटरीच स्टार्ट फिर से करनी पड़ेगी टू क्लोज another 4 set of clients or another 4 clients to retain them for another 3 months. But on the other hand, if you can close or retain clients for let's say 2 years, which is the case, you can do that. Like, I have one client who is almost with us for 2 years, जो कि अब by the April 2025 will be working with us for 2 years. And you can close those clients, you can retain those clients if you have good work. ठीक है? अब इसमें क्या होगा? You close one client and you're set for 2 years. Like, you know that client is going to stick with you. And how do you know about that? Is you have good work. You, when do the good work, you become confident in your skills, and the chances are when the client is sticking with you for 2 years, you'll develop a really good relationship with them, and at the same time you'll get a lot of referrals out of them. This is like the basic understanding that I had to give it to you. But this is not what we are talking about right now. Of course, we'll talk about few things, but this is more on the side of agency stuff. And pardon me if I'll be giving a lot of insights about the agency kind of things. Some things will be a little technical for you because I am running the agency. So it's all right if it will be technical for you. I don't say that I'm the expert at running the agency, but I still have some knowledge that probably will be great for freelancers, right? सबसे पहले अपन टैकल करेंगे लीड्स वाला पार्ट। लोगों को पता ही नहीं होता है कि भाई हम ढूंढे किसे, क्या करना है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, हम कहाँ से लेकर आए क्लाइंट। अंडरस्टैंडेबल, आई यूज्ड टू बी लाइक दैट गाय। तो देखो, मेरे पर्सपेक्टिव से सबसे बेस्ट अप्रोच एक बिगिनर के लिए हो सकती है लिंक्डइन। नाउ, why do I say LinkedIn? LinkedIn is the place where people come to do the business, and people are actively looking for a lot of stuff. You can go on X as well. X is also a good platform. Or you can go and follow agency owners like me. They constantly put up forms where you can apply and you can get selected, basically. So you can do that, and if you want to go 1 to 2 steps further, you can join their communities. There are a lot of agency owners who have their own communities. So usme you get higher chances. You understand first of all a lot about the market, and get a lot of knowledge when you're in the paid community somewhat. And at the same time, when you show your work to them, the chances of you getting selected increases by a lot because you're in their close community. Of course, you'll be selected first.
So that is the thing. And now you might be like, bro, ठीक है, तूने बता दिया LinkedIn X agency owners को follow कर लो. But I still don't have that clarity. What are you talking about? Make me understand. Okay, I'll make you understand. So when I was actually freelancing, I started it. So I used to apply everywhere. I used to see a job post or prospect hiring, and I used to just apply there. That is like me increasing my surface area to land the clients. As I said, I didn't have any niche कि मैं डॉक्टर्स के साथ काम करूंगा, और मैंने तुमको पहले भी बताया कि डॉक्टर्स, फाउंडर्स, और फाउंडर्स तो इट्स स्टिल अ गुड niche, और यू कैन से फिटनेस ट्रेनर्स, ये इतना स्पेसिफिक niche में मैं नहीं गया था. I was like, I just want to edit the videos for anyone. Similarly, what you can do is you don't have to think like a person who is running an agency right now, because you are not. अगर तुम उतना डीप में जाओगे तो तुम्हारा उतना अच्छा ऑफर भी होना चाहिए, ये वाला पार्ट भी अच्छा होना चाहिए, जो कि नहीं होगा. सो इफ़ यू डोंट हैव अ गुड ऑफर, तुम नहीं समझ पाओगे कि तुम्हें लीड्स कैसे चाहिए. और ये मैं बताता हूँ क्यों इंटरकनेक्टेड है. तुम्हारे पास एक ऑफर है जिसमें तुम कह सकते हो क्लाइंट से कि व्हाट आई डू इज, मैं तुम्हारे लिए लिंक्डइन का कॉपी राइटिंग करूंगा. आई विल बी योर घोस्ट राइटर. दैट विल गिव यू मोर impressions and hence more leads. So this is the offer that you know that you are going to offer. Now you know कि तुम किन leads को target करोगे. Now you know as a person, okay, I need to target the people who are actually looking for these kind of services. So these are the people that will be most likely available on LinkedIn, and the people who don't have good content on LinkedIn, उनको मैं target करूंगा and उनको मैं ये services provide करूंगा. So if you don't have the offer, you won't be able to understand कि किन लीड्स को मेरे को फाइंड करना है. एंड दैट इज वेयर मोस्ट ऑफ द न्यू फ्रीलांसर्स स्टे स्टक. वो सोचते हैं कि यार मैं किसको टारगेट करूँ, समझ में नहीं आ रहा है. बट द प्रॉब्लम इज नॉट कि तुम्हें किसको टारगेट करना. द प्रॉब्लम इज तुम्हारे पास एक अच्छा ऑफर नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है तुमको देना क्या है, तुम्हें वैल्यू क्या प्रोवाइड करनी है. एंड एट द स्टार्ट ऑनेस्टली यू डोंट हैव एनी गुड वैल्यू टू प्रोवाइड और एनी ग्रेट वैल्यू टू प्रोवाइड, बिकॉज यू आर जस्ट एंटरिंग इनटू द इंडस्ट्री एंड ओनली थिंग दैट यू कैन प्रोवाइड इज वीडियो एडिटिंग सर्विसेज, और on the other case, if you're a graphic designer or coder, just some basic stuff that you can do, right? You just have one skill set that you can provide. You can't really think of anything beyond that to help them get more leads, impressions, because let's be honest, you don't know how to get more leads or impressions if you haven't done that, and you don't have experience of that. And as I told you in the previous module, we have to gain experience first, then earn more. So right now what we'll do is we'll not फोकस ऑन गेटिंग द लीड्स सो मच कि हम सब दिमाग अपना लीड्स में लगा दें. स्टार्टिंग में एज आई सेड, लिंक्डइन पे जाओ, यू कैन अप्लाई ऑन जॉब्स. सिमिलर ये भी है, एजेंसी ओनर्स की जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हो. अब मैं जॉब्स बार बार इसलिए कह रहा हूँ, जैसे कि मैंने तुमको पहले बताया था कि इट्स बेटर फॉर यू टू गेन एक्सपीरियंस, स्टार्ट विद अ जॉब and then go to that freelancing step. But I'll tell you about the freelancing thing too, तो वरना तुम लोग कहोगे कि भाई freelancing की बात करके जॉब चिल्ला रहा है. बताता हूँ. तो ये सबसे बेसिक स्टेप है जो तुम कर सकते हो. इफ यू वांट टू गो ऑन दैट सेफर राउट, यू वांट कि हाँ भाई आई वांट टू गेन सम एक्सपीरियंस, देन आई जंप इनटू दिस लीड्स वाला पार्ट, जहाँ पर मैं एज अ फ्रीलांसर आई विल बी एबल टू माई क्लाइंट मोर वैल्यू एंड देन charge more money for that. That is the route that at the start you can take. After this, once let's say you got some job, you know have some good amount of experience, now either as a second step you can do this, or if you are really crazy and if you directly want to jump into this freelancing outreach wala part, I'll tell you how you can do that. Some things will be free, some things will be paid, so take whatever you want to take. Okay, so now leads कैसे निकालने. If you want to do, देखो 2 ही 3 अप्रोच होंगे मेरे हिसाब से. कोल्ड ईमेल्स कर सकते हो तुम, कोल्ड डीएम्स कर सकते हो, कोल्ड कॉल कर सकते हो. I'm not sure who is doing this, so I'll not talk about this thing. I'll talk about cold DMs and cold calls. सबसे पहले cold emails के लिए अपन को leads कहाँ से ढूंढने हैं. There's a tool called channel crawler. Subscription लो, ढूंढो. Done. After that, if you want to do it for free, do it manually. कैसे? तुम YouTube पे जाओगे, एक अपना नया अकाउंट बनाओगे. नया अकाउंट बनाने के बाद उस पे let's say तुम टारगेट करना चाहते हो यूट्यूबर्स को, क्रिएटर्स को, and you want to provide video editing services to them. And let's say तुम एक स्पेसिफिक नीश को समझ गए हो कि यार लाइफस्टाइल क्रिएटर्स या फाइनेंस क्रिएटर्स या SaaS क्रिएटर्स, इन तीनों में से कोई भी आ जाए, I'll be able to take up those projects. I'll be able to work with them. What you'll do is you'll go in that fresh account, कुछ फाइनेंस क्रिएटर्स को फॉलो करोगे, SaaS क्रिएटर्स को फॉलो करोगे, उनके कुछ बिंज वॉच करोगे वीडियोस. लेट्स से रियल एस्टेट भी हैं तो रियल एस्टेट क्रिएटर्स को तुम फॉलो करोगे, उनके बिंज वॉच करोगे वीडियोस. एंड देन व्हाट यूट्यूब विल डू इज इट विल स्टार्ट टू रिकमेंड यू द वीडियोस, एंड फिर देन उस रिकमेंडेशन से तुम उनके ईमेल्स फेच करोगे मैनुअली. ईमेल्स फेच करने के बाद यू विल यूज गूगल शीट टू राइट डाउन द नेम्स एंड ईमेल्स ऑफ दैट person, and then
आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट ईमेलिंग देम। अब ईमेलिंग कैसे करना है वो आउटरीच में मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए गूगल शीट में तुम सारा डेटा लिख लोगे। दैट इज अ मैनुअल प्रोसेस। ओके, नाउ कोल्ड डीएम्स में देयर इज अ टूल कॉल्ड ग्रोमैन। इंस्टा के लिए, लिंक्डइन के लिए आई डोंट यूज एनी टूल्स, आई डू इट मैनुअली। सो लिंक्डइन के लिए मैनुअल। ओके, नाउ फॉर दिस दिस ऑल्सो अनदर वे फॉर इंस्टाग्राम विच इज कि अगर तुम इंस्टाग्राम पे जाकर एक प्रोफाइल पे जा रहे हो, लेट्स से वो एग्जांपल लेते हैं सास फाइनेंस एंड रियल एस्टेट पीपल। तो फाइनेंस में जाकर एक क्रिएटर के अकाउंट पे गए, उसमें सजेस्टेड अकाउंट्स आते हैं काफी सारे, तो उन सजेस्टेड अकाउंट्स पे जाकर तुम मैनुअली सबका नाम लिख सकते हो, सबका ईमेल फेच कर सकते हो। दैट्स अप्रोच। एंड अगर वो नहीं करना चाहते हो तो उनके तुम फॉलोइंग लिस्ट में, जिनको वो लोग फॉलो करते हैं, उनकी फॉलोइंग लिस्ट में जाके उनके मैनुअल फेच कर सकते हो। ठीक है, लिंक्डइन का मैं मैनुअल करता हूँ। मैं यूजुअली कमेंट सेक्शन में जाके कीवर्ड सर्च करके, फॉर एग्जांपल सैस कीवर्ड सर्च करके या फाउंडर कीवर्ड सर्च करके मैं उनका एक शीट में लिख लेता हूँ। ये सब कैसे करते हैं, शीट में कैसे लिखना होता है, वो मैं तुमको अभी एक ट्यूटोरियल में बता दूंगा, जो कि आफ्टर दिस मैं लिंक कर दूंगा कि एक शीट कैसे मेंटेन करना है, एंड देन यू विल बी एबल टू मेंटेन अ शीट। सो गाइस, दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ वॉक थ्रू ऑन हाउ यू कैन स्क्रैप लीड्स एंड पुट इट इनटू द शीट थ्रू लिंक्डइन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो शीट है, इस शीट को तुमको ऐसे मेंटेन करना है। इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड एंड इफ़ यूल हैव अ लॉट ऑफ डेटा, ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए हम लोग एक नोशन पेज बिल्ड कर रहे हैं। I'm not sure how I'll go about that, but I'm building a Notion page right now to use this exact same thing inside Notion, जो कि और organized होगी. But for now, for beginners, this will work just fine. कैसे work करेगा वो मैं तुमको बताता हूँ। फर्स्टली लेट्स गो टू लिंक्डइन एंड तुम्हें लीड स्क्रैप करना बताता हूँ मैं। तो ये चीज़ मैंने अपने ई बुक में भी बताई थी एक सेक्शन के अंदर, एंड दैट इज एग्जैक्ट सेम थिंग दैट आई टेल यू। ओके, सो फॉर एग्जांपल लेट्स से यू वांट टू टारगेट द गाइज हु आर पॉडकास्टर्स and they are in the finance niche. Okay, so what I'll do is I'll just go and write podcasters, or I would say पहले मैं finance ही डाल देता हूँ, finance. So finance से मेरे को जितने भी लोगों का प्रोफाइल होगा उसमें फाइनेंस लिखा होगा या कहीं पे भी फाइनेंस मेंशन होगा, जिसके भी प्रोफाइल में मेंशन होगा दिस फाइनेंस वर्ड, वो तुम्हारे को प्रोफाइल दिख जाएंगी। अब ऑफ कोर्स यार, अगर तुमको इंडियन क्लाइंट्स को मैसेज करना है तो इंडियन क्लाइंट्स को कर सकते हो, बट इफ नॉट तुम ऑल फिल्टर्स में आके यहाँ पे डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आई डू, ओके यूनाइटेड स्टेट्स है ऑलरेडी, यूनाइटेड स्टेट्स डाल सकते हो। एंड यहाँ पे तुम टाइटल में एक मेन चीज लिख सकते हो विच इज पॉडकास्ट। सो जिसके भी टाइटल में पॉडकास्ट होगा वो सारे आ जाएंगे यहाँ पे। देखो ये जो है ये आ गया। ओके, एंड अगर मैं और जाऊँ, न्यूरो साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ, अब ऐसा नहीं है कि सारे प्रोफाइल्स तुमको पॉडकास्टर वाले मिलेंगे, जैसे इसमें नहीं है कोई पॉडकास्ट का मेंशन। इफ विल गो हियर, शी इज जस्ट एन इंटर्न राइट नाउ, शी इज स्टडिंग, तो डजंट मेक सेंस। पॉडकास्ट एडिटर एंड होस्ट, एडिटर को हम लोगों को नहीं करना मैसेज। सो व्हाट आई डू इज मैं और नीचे जाऊंगा, ऐसे क्वालिफाई कर लूंगा। ऐसे क्वालिफाई करना बहुत ईजी हो जाएगा मेरे को। इस बंदे को देखता हूँ जाके, द सस्टेनेबल फाइनेंस पॉडकास्ट। ओके, तो इसने मेंशन करके रखा हुआ। अब मैं जाऊंगा यूट्यूब पे एंड आई विल सी कि ये एक्चुअल में है भी या नहीं है। द सस्टेनेबल फाइनेंस, सस्टेनेबल finance podcast, the sustainable finance podcast, yeah, it is there. So what I'll do is I'll just quickly copy this username, sorry, link, एंड यहाँ पे मैं डाल दूंगा यूट्यूब सेक्शन में कि ये भाई इसका यूट्यूब है। यहाँ पे जाकर मैं इसका ईमेल नहीं मिल रहा है, ओके नो वरीज, पॉल एलिस, इसका लिंक्डइन प्रोफाइल में कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे बेसिकली नेम की जगह मैं डायरेक्टली लिंक्डइन प्रोफाइल डाल देता हूँ, क्योंकि नेम मेरे को पता ही है क्या है। ठीक है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल नहीं मिला मेरे को। अब कनेक्ट रिक्वेस्ट, इंस्टा भी नहीं मिला अभी तक, तो इंस्टा जाने के लिए इंस्टा सर्च करना पड़ेगा। लेट मी गो एंड व्हाट्स द नेम, द सस्टेनेबल फाइनेंस पॉडकास्ट, पॉडकास्ट। आजा यार, अब तो आजा। अच्छा चलो, नहीं मिला तो पॉल एलिस डाल के देख सकते हैं। पॉल एलिस नहीं आया, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर तुमको इंस्टाग्राम मिलता है तो तुम यहाँ पे लिंक इंस्टाग्राम पेस्ट कर दोगे, ईमेल मिलता है तो ईमेल पेस्ट कर दोगे। अब कनेक्ट रिक्वेस्ट का क्या फंडा है? कनेक्ट रिक्वेस्ट में बेसिकली तुमको ये करना है कि जब तुमने कनेक्ट रिक्वेस्ट भेज दी, फॉर एग्जांपल मैंने इस बंदे को कनेक्ट रिक्वेस्ट भेज दी, ठीक है, सेंड विदाउट अ नोट, एंड अब आज डेट कितनी है? आज डेट है 17 मार्च, तो मैंने कनेक्ट रिक्वेस्ट भेज दी, उस पर टिक कर दिया, एंड 17/03/2026 डन। 17th नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे 17 आना चाहिए, 17/03/2026 डेट हो गया। अब इसके बाद जब कनेक्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है तो मैं मैसेज कर दूंगा, तो ये मैसेज पे टिक कर दूंगा। फॉर एग्जांपल आज ही मैंने मैसेज कर दिया, आज ही एक्सेप्ट हो गई, कॉपी पेस्ट, ओके। और एट द सेम टाइम अगर कनेक्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होती और तुम्हारे पास प्रीमियम है
तो भी तुम इस बंदे को मैसेज करके यहाँ पे मैसेज टिक कर सकते हो। ठीक है, मैं यूजुअली 24 से 48 आवर्स वेट करता हूँ कि वो कनेक्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही है। इफ़ हो जाती है तो वेल एंड गुड, मेरे इन मेल क्रेडिट्स बच जाते हैं। और साथ ही साथ में जिस दिन उसको फर्स्ट मैसेज डालता हूँ ना, उसी दिन मैं ईमेल डाल देता हूँ। द रीज़न इज सिंपल, बिकॉज आई वांट टू डू मल्टी चैनल आउटरीच। क्योंकि ऐसा हुआ है मेरे साथ, एक क्लाइंट ने लिंक्डइन पे मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी है, सॉरी प्रॉस्पेक्ट ने लिंक्डइन पे कनेक्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी है, एंड वही सेम प्रॉस्पेक्ट ने मेरी जो कनेक्ट रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर ली है ऑन इंस्टाग्राम। एंड इंस्टाग्राम से फिर उसने मेरे को रीडायरेक्ट कर दिया ईमेल के थ्रू, ईमेल के थ्रू नहीं, ईमेल पे, कि भाई आप इन 3 लोगों को ये मैं ईमेल दे रही हूँ, इनको मैसेज कर दो। एंड आई डिड दैट, एंड उनसे कॉन्वर्जेशन चल रही है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। नोट्स फॉर फॉलो अप एंड एंगेजमेंट कह दो, नॉट अ हाई वैल्यू क्लाइंट, या लिख दो फॉर एग्जाम्पल नीड डजंट पोस्ट शॉर्ट फॉर्म। तो तुम्हें पता होगा कि चलो इसके लिए इसको स्पेसिफिकली शॉर्ट फॉर्म के लिए पिच करना है। एंड देन आफ्टर दिस फॉलोअप 1 कर दिया है, जिस दिन तुमने फॉलोअप 1 डाल दो, फॉलोअप 2, फॉलोअप 3। अब तुम्हें इसकी डेट्स मेंशन करनी है, यू कैन डू दैट। इफ यू डोंट वांट टू डू दैट, नो वरीज। और ऐसे करके जितने भी फॉलोअप्स तुम करना चाहते हो, आई प्रेफर 5, whatever you want to do, whatever number you are trying to achieve, you can do that. And same चीज़ तुम ये बस रिपीट करोगे। एज आई सेड, सिंपल ऑलवेज स्केल्स। यही चीज़ बस तुमको डेली 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 डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ करनी है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो टू वेंचर कैपिटल, ओके, let's go to people, and then we'll go to all filter, we'll go to, let's say, United States, and then here we'll just write podcast for the sake of easiness. And then okay, here we are. Search and venture, we record just okay, not our type. Representing entrepreneurs, acquiring, okay, not our type. Co-host of Money Tales podcast, yo, let's go. Co-host है ये, executive producer of San Francisco Experience podcast, let's go. These are our guys, we can go look deep into them, and then probably just paste their credentials and everything that we have, every information that we have into the lead sheet that we have built. So this is how you'll go about this LinkedIn maintenance. One crucial thing that I forgot to mention, which is, for example, इस client ने reply कर दिया, सॉरी इस client ने connect request accept कर ली, तो मैं usually इसको denote कर देता हूँ डार्क येलो से। एंड अगर मुझे इस client को फॉलो अप करना है तो मैं पूरा कॉलम को सेलेक्ट करूंगा, इसको छोड़ के मैं यहाँ पे कर दूंगा ब्लू। तो मेरे को पता होगा कि ब्लू इक्वल्स टू फॉलो अप करना है मेरे को। एंड ये क्लाइंट अगर इंटरेस्टेड है एंड कॉन्वर्जेशन चल रही है, तो मैं फर्स्ट कॉलम को छोड़ के, क्योंकि कनेक्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट है ये चीज़ पता रहनी चाहिए, इसलिए मैं फर्स्ट कॉलम छोड़ देता हूँ एंड इसको येलो कर दूंगा कि हाँ भाई इससे बात चल रही है। ही इज़ येलो लाइट काइंड ऑफ, यार रेड ग्रीन येलो वाला कॉन्सेप्ट ट्रैफिक लाइट का। और अगर ये कम्प्लीटली रिजेक्ट हो चुका है तो रेड रहेगा, मैं येलो स्टिल रखता हूँ। रीज़न इज़ मुझे पता है कि इसका कनेक्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड है। आई कैन एनी टाइम गो इन टू हिज DMs एंड मैसेज हिम अबाउट एनी थिंग दैट आई वॉन्ट इन फ्यूचर। एंड अगर इसने ऑफकोर्स एक्सेप्ट कर लिया डील एंड वी आर वर्किंग विद हिम, तो इसको ग्रीन कर दूंगा मैं। सिंपल, इससे ये ट्रैक रहेगा तुम्हारा कि कितने DMs ओपन होते हैं, कितना रिप्लाई रेट आता है, किस लोग किन को फॉलोअप करना है तुम्हें, और किनसे तुम्हारी डील बेसिकली कैंसिल हो गई है। तो दैट्स बेसिकली इट। और यहाँ पे तुम एक और कॉलम डाल सकते हो जो कि अभी तक मैंने नहीं डाला, मीटिंग बुक्ड। तो ये कर लोगे तो और इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। अगर मीटिंग वाले पॉइंट तक तुम्हारी बात पहुँच रही है तो तुम्हें पता रहेगा कि कितनी मीटिंग बुक हुई है कितने मैसेजेस करने के बाद। सो दैट्स द थिंग विद लिंक्डइन लीड्स, एंड आई होप यू गॉट क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ दिस वर्क्स। सो लीड्स निकालना एट द स्टार्ट इज नॉट रियली कॉम्प्लिकेटेड। यही कुछ प्रोसेसेस हैं जिनको तुम्हें करना होगा। अब तुम कहोगे कि यार तूने कुछ नई चीज़ नहीं बताई, या अगर तुमको लग रहा है कुछ नई चीज़ बताई तो वेल एंड गुड। दिस वन थिंग दैट विल हैव टू कीप इन माइंड थ्रू आउट दिस मास्टर क्लास, एंड दैट इज simple things scale. It's a very like popular term in the business world, which is simple always scales. So try to focus on the simple things. Keep doing those simple things again and again and again in volume to make sure that you get some results out of that. यही अगर तुम 1000 बार कर लोगे, you'll definitely get some clients, right? As Alex Hormozy says, volume negates luck. Do more volume, right? So do that. Now leads वाला part is sorted. Okay. For the start, you only need this much. इसके ज़्यादा अगर complications तुम देखना चाहते हो, complicated क्यों करना है? Like एक और चीज़ शायद तुमको help करे इसमें. People try to make things complicated for no reason when simple things actually work. And this is actually the thing that will work for you. But if you still will look for some complicated things, you can go and keep looking for that. You'll come back to this level. You must have seen one graph where, a guy is like this. The graph is like an inverted bell curve. So there's a guy here who is like, I need to do simple things. But here, it's all complex stuff. Complex, like Notion management, CRM, so on and so forth. But then again, here,
It's simple. And this is how it is. Like, you'll fall into that trap of complexity, but then you'll realize, okay, simple scales. And that is what I'm trying to tell you. That simple is what scales. You can like test your waters, you can do whatever you like, but simple things will scale for you if you'll just keep on doing those again and again. So outreach part is taken care of. I'll put a video to help you out with the management of that lead scraping part, and then you'll understand what I'm actually trying to tell you. So now the leads part is done. Let's come to the outreach part, and this is where all of the human psychology and everything comes into the picture. Comes into the picture, because when you're doing an outreach to the person, it's like you're going to a random stranger in a street and then you are asking them for money, and in exchange of that you're trying to give some services to them. This is more like that. And when you understand this analogy and you try to put yourself into that situation, you understand that selling to a person physically requires a lot of trust, requires you to not be shady, and you to show yourself as an authentic person. And all of these three sentences that I've told is almost the same, has the same meaning. Apart from that, you have to show your case studies. You have to make sure the prospect is really clear about what you are trying to convey, and you only have few chance of converting them. They won't have 3 to 4 hours to just talk to you. They might just have a minute or two, and in that 1 or 2 minutes you will have to convey your message. And similar is the game of the outreach. But once you convey the message to them and they are interested, they can give you further minutes, which can be 15 or 20 minutes. So first message should be treated like talking and approaching to a stranger. When you understand this analogy and imagine this thing, whenever you're writing a DM or a mail, you will inherently write the message in a way where it builds the trust. It gives out a genuine human vibe to the client or the prospect, and it makes sure that everything is clear in that message. Now, how to draft that, how to do that, I'll show you the practical stuff as well in my screen recording of all of the messages I've done. I'll show you one example of me closing a client through emails, which was a kind of a warm lead. It was not absolutely cold. I'll tell you what warm lead and cold lead means. Cold lead is something which is absolutely new. मतलब वो जानते ही नहीं है तुम्हारे बारे में, and then you are going to that lead and saying कि भाई ये हूँ मैं, ये services मैं provide करता हूँ, would you like to buy that? Warm lead is like they know something about you, that okay, you provide these kind of services. Now you go to them and you are like, would you like to buy those services? They are already warm, they know about you, so they are more likely to trust you. Before that, I'll explain everything to you about psychology of cold outreach. So today we are going to talk about the psychology of cold outreach. So this is very simple, but the only thing that people don't understand here is, despite this being simple, people are not able to utilize it fully. Even I couldn't utilize it fully for first 1.5 years, and after that I was able to understand a framework that helped me get some replies from the prospects. Psychology of cold outreach. ये लिखा रहने देते हैं क्योंकि यही तो सिखा रहे हैं तुमको अपन। ये मेरा गिटार रखा हुआ है इधर. I know you can't see that. Now let's talk about the psychology of cold outreach. See, your job as a person who is doing cold outreach is to build trust, clarity to prospects' mind, and this thing in turns result in booking a call or a sale. See, just think about it. If you can make another person trust on you, if you can make the other person have ultimate clarity about your offer and what you do, then that client is sold, that prospect is sold. Let me give you an example, a real world example. Basically, you're reaching out to a guy on a random street and you are able to tackle both of these things. तुमने उसको ट्रस्ट करवा दिया है कि तुम एक स्कैमर नहीं हो, एंड तुमने ये क्लैरिटी दे दी है उसको बेसिकली कि इट इज ऑफ बेनिफिट, इट इज ऑफ सम बेनिफिट टू हिम, कि उसको किसी ना किसी चीज में हेल्प होगी इस चीज से, देन इट इज ऑब्वियस ही विल बी एबल टू टॉक टू यू. लाइक इसका रिजल्ट होगा टॉकिंग, एंड देन द मोर यू विल टॉक टू देम, इसके बाद सेल्स को क्लोज करना इट्स वेरी इजी. सो हमारा कोल्ड आउटरीच में हम क्या करते हैं, हम लोगों ने इतना एडवाइस देख लिया ऑनलाइन, वी ट्राई टू डायरेक्टली गेट ऑन अ कॉल विद द क्लाइंट, एंड दैट्स नॉट समटाइम्स हाउ इट वर्क्स. एंड इन माय केस हाई टिकट क्लाइंट्स मैंने ओनली ऑन ईमेल क्लोज करे हैं, एंड उसका मैं एग्जांपल तुमको दूंगा इसी वीडियो के अंदर, और तुम उससे समझ जाओगे कि कैसे तुम खाली ट्रस्ट बिल्ड करके क्लैरिटी लाके क्लाइंट को क्लोज कर सकते हो. साइकोलॉजी इज pretty simple. Like इस बेस पे अगर तुम काम करना चालू करोगे, you will be able to make the other person trust you. Simple. Okay. Now, when you have this thing with you, now the other job for you is to understand कि अब psychology मैंने बेस समझ लिया है, but how do I make the other person trust?
How do I bring the clarity to the mind of the other person? In this scenario, basically comes few things. This is what I use as well. Trust me guys, there might be a lot of things that you can still do. Psychology of cold outreach में और सारी भी चीजें आ सकती हैं, but I'm talking about specifically the things that can help you go faster, reach faster to that level where you are clear on what you have to do at the start as a beginner. Okay, so जो भी एडवांस पीपल हैं इसको देख रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई यू आर वाचिंग दिस, बट इफ यू आर वाचिंग दिस एंड जजिंग मी कि अरे ये तो बेवकूफ है, यस आई एम नो आई एम नॉट, आई एम better than you. No, I'm not even better than you. I'm just doing what I know. So basically my point is, I know this works, it has been working for me, that's why this will work for you. Now psychology of cold outreach में मैंने तुमको 2 बेस बता दिए. Now after that you need to understand कि अपन कैसे कर सकते हैं ये. What is the how behind it? सबसे पहले ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, ट्रस्ट के लिए तुम करोगे क्या? प्रूफ ऑफ वर्क. दिस इज व्हाट वी डू. प्रूफ ऑफ वर्क. This is the best thing that you can do when you are reaching out a person. Like first outreach में you can give them a hint of your proof of work. It can be just a simple CTA जहाँ पे तुम्हारे वेबसाइट का नाम है, तुम्हारे पोर्टफोलियो का लिंक है, तुम्हारा एक रील लिंक्ड है. लिंक्ड एज इन कि तुमने लिंक डाल के रखा है, जो कि मैं प्रेफर नहीं करता हूँ फर्स्ट ईमेल में, वो स्पैम में चले जाते हैं. तो बेसिकली 2 ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो तुम्हारे वेबसाइट का नाम है या तो तुम्हारा पोर्टफोलियो उसमें लिंक्ड है. पोर्टफोलियो लिंक कर सकते हो, दैट इज अ बेटर थिंग टू डू. फिर भी एक लिंक होगा उसके अंदर, बट मेरे केस में तो कोई भी पोर्टफोलियो लिंक किसी भी स्पैम फोल्डर में नहीं गया है. हाँ, रील्स जरूर स्पैम फोल्डर में गया है. आई डोंट नो हाउ दैट जीमेल वर्क्स, बट दिस हैज हैपेंड. सो प्रूफ ऑफ वर्क, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए केस स्टडीज. बट यू विल बी लाइक ब्रो ये तो है ही नहीं, हम तो बिगिनर है. I'm just giving you an option. You might not have case studies, but if you have case studies कि like मैंने इस क्लाइंट को ये काम करके दिया है, ये क्लाइंट मेरे साथ इतने टाइम तक काम कर रहा है, उसको ये रिजल्ट्स मिले हैं, या उसके लिए मैंने ऐसे काम किया है, तो you can have case studies as well. वो केस स्टडी नहीं होगा कि तुमने उसके लिए काम किया है. केस स्टडी more will be like कि क्या रिजल्ट्स दिए हैं. जो तुमने काम किया वो प्रूफ ऑफ वर्क के अंडर आ जाएगा. तो केस स्टडीज अगर तुम्हारे पास है, अगर एक इंटरमीडिएट लेवल ऑफ एडिटर हो, तो तुम केस स्टडीज भी डाल सकते हो, नेम ड्रॉप कर सकते हो कुछ लोगों को. जैसे I've worked with some of the creators in the freelancing niche named TheMraadul, and he was sitting at 2,000 subscribers, and I was able to help him give quality edits. Hence, through that also he was able to get 20,000 subscribers. और फिर तुम टेस्टिमोनियल लिंक कर सकते हो. नाउ केस स्टडी के साथ थर्ड चीज बताई मैंने, टेस्टिमोनी. टेस्टिमोनियल लिंक कर सकते हो कि भाई मैं खाली कह नहीं रहा हूँ कि ये केस स्टडी है कि मृदुल को मैंने 2,000 से 20,000 तक पहुंचाया. सो केस स्टडी तो उस बंदे से रिकॉर्ड करवा लो कि दिस इज द केस स्टडी, दिस इज द टेस्टिमोनियल. मृदुल भाई आपको ये कहना है कि द एडिटिंग हैज हेल्प्ड योर चैनल ग्रो फास्टर. उस टेस्टिमोनियल में अगर तुम ये ऐड कर दोगे तो तुम्हारे केस स्टडी का एक प्रूफ भी होगा कि जिस बंदे के साथ काम किया उसका टेस्टिमोनियल भी है, एंड हेंस दिस इज अ लेजिट पर्सन. ट्रस्ट बिल्ड होगा. यू कैन, what else you can do that has worked for me? Let me think. That's pretty much it. Whatever other points I have that comes under the umbrella of clarity. So trust build करने के लिए proof of work तुम्हारे पास होना चाहिए, तुम्हारे पास case studies होने चाहिए, testimonials होने चाहिए. This will help you build trust. And of course other factors भी हैं जो emails में काम आते हैं, which is तुम्हारा एक signature हो, तुम्हारी profile picture हो, उसमें तुम एक company email sign up कर रखे हो, and अगर company email नहीं भी है तो तुम्हारा जीमेल अच्छा सेटअप है, प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए, उसमें एक अच्छा सा यूजर नेम होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए रैंडम टेस्टिकल 001 @gmail.com. What does that even mean, dude? You don't have to do that. Have a decent name like mradul freelancer @gmail.com. Somewhat like professional. You know what I mean. Okay, random testicle is not even a good Gmail. I don't know who does that. This was how you can build trust. Now how you can bring clarity. This is pretty simple. You need to tell them what benefits they'll get once they sign up for your services. Boom. What you can do is you can send a loom. Oh, now we are getting to the juicy stuff. So loom तुम रिकॉर्ड करके दे सकते हो. तुम उनको एक YouTube वीडियो प्री रिकॉर्डेड दे सकते हो कि दिस इज व्हाट आई डू, दिस इज माय प्रूफ ऑफ वर्क, दिस इज हाउ आई कैन हेल्प यू. राइट दीस क्वेश्चंस डाउन. ओके, दिस विल हेल्प यू फ्रेम योर स्क्रिप्ट बेटर. दिस इज व्हाट आई डू, दिस इज हु आई एम, दिस इज व्हाट आई हैव डन, दिस इज माय प्रूफ ऑफ वर्क, दिस इज हाउ इट कैन बेनिफिट यू, एंड इन दिस मच टाइम आई कैन प्रॉमिस यू दिस मच of the results, which you'll have to be completely honest about. If you can't promise any results, just say no. Promise हर कोई कर सकता है results, guarantee हर किसी के पास होती है. अगर तुम एक वीडियो एडिटर हो, you can guarantee कि भाई in just first month of working with me, you will be able to stay stress free from all of the changes, revisions and the quality, because I am a trustworthy person. मैं quality काम ही दूंगा तुमको हमेशा. तो तुमको बार बार चेक इन नहीं करना पड़ेगा कि मैं टाइमली काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, डेडलाइन पे काम कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ. That is a problem in the industry, and if you can tackle that, boom, your job's done. This is what you can offer. You can't offer views क्योंकि नहीं कर सकते. तुम अपने फील्ड के हिसाब से जो अपने फील्ड में प्रॉब्लम चल रही है, उन फील्ड के प्रॉब्लम्स को टैकल करने की कोशिश करो. वो तुमको ज्यादा ROI देगा, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग सम रैंडम थिंग्स. क्योंकि ऑनेस्टली
एज एन एजेंसी ओनर माई सेल्फ, आई डोंट ट्रस्ट देम। जो कहते हैं ईमेल पे आके कि भाई मैं तुम्हारे व्यूज बढ़ा दूंगा, कैसे बढ़ाओगे? मेरे को पता है यूट्यूब कैसे वर्क करता है, बिहाइंड द सीन्स वर्क। आई नो कि स्क्रिप्ट मैटर ज्यादा करती है, आइडिएशन मैटर ज्यादा करता है, तुम एडिटिंग से अपने व्यूज कैसे बढ़ा सकते हो? नॉट पॉसिबल। ओके, दैट इज जस्ट पार्ट, अ पीस ऑफ द पजल जो कि तुम सॉल्व कर रहे हो। तो बी ऑनेस्ट अबाउट इट कि आई विल सॉल्व दैट पीस ऑफ द पजल जहां पे तुमको टाइमली डिलीवरी मिलेगी, काम अच्छा मिलेगा एंड तुमको बार बार चेक इन नहीं करने पड़ेंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट यू कैन प्रॉमिस इन दिस यूट्यूब वीडियो। लूम वीडियो में कीप इट रियली रियली पर्सनलाइज्ड। गो ऑन हिज और हर यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, व्हाटएवर यू आर प्रॉमिसिंग, व्हाटएवर यू आर डूइंग आउटरीच अबाउट, और उसको बताओ कि भाई देखो तुम्हारे कंटेंट को मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया है, और ये मत सोचो कि दिन के 10 ईमेल्स कैसे करूं, दिन का एक एक्सट्रीमली क्वालिटी ईमेल मैं कैसे कर सकता हूँ, लाइक क्रेजीली क्वालिटी, और उसको मैं लूम में कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्लाइंट को कि सब कुछ उसे समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये एक्चुअली में इसने रिसर्च करी है। सो व्हाट आई मीन बाय दैट इज व्हाट यू हैव टू इंक्लूड इन द लूम इज सिंपल। You go to the content of your prospect, watch the videos, like really watch the videos, understand his or her perspective, see what you can offer to her. If you can't offer, just say no, I cannot offer, just skip this prospect. But if you can offer, if you know that this client can get benefit out of your editing and something, so you record the video and you say, see, I have seen that ये तुम email में लिखोगे या loom में लिखोगे अपने कुछ pointers कि यार मैंने देखा है तुम्हारे जो कंटेंट है, तुम्हारा कंटेंट बहुत अच्छा है, देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई थिंक यू कैन टेक लेवरेज ऑफ। फर्स्ट इज एडिटिंग एंड मैं एक प्रोटोटाइप बता रहा हूँ ईमेल तुमको। तो मैंने तुम्हारा कंटेंट देखा एंड आई सॉ दैट द विजुअल्स आर नॉट ऑफ हायर क्वालिटी, एंड व्हेन आई रिसर्च्ड योर कॉम्पिटिटर्स आई सॉ दैट द कॉम्पिटिटर्स क्वालिटी इज better than yours, and believe it or not, statistically you can pull up the stats from GPT. उसके रिसर्च टैब से तुम स्टैट्स निकाल सकते हो कि बिलीव इट और नॉट, विजुअल्स ऑफ द वीडियोज रियली मैटर एंड इट कैन बूस्ट द व्यूज अप टू 15%, 30%. Like, and this is not me stating that, this is GPT and the research papers saying that. So I figured out that with my expertise, which is video editing, you can really elevate the number of views that you're getting, and in turn you will be able to turn that viewers into your loyal audience. And when you launch, or if you have a digital product, you will be able to convert those customers, or you can say that loyal audience, into paying customers if your product has value. एंड इफ यू हैव डन डीप रिसर्च, अगर तुमने अच्छे से रिसर्च करी होगी, तुम उसके प्रोडक्ट को भी देख सकते हो, डिजिटल प्रोडक्ट को भी समझ सकते हो, एंड यू माइट बी लाइक, अगर तुम लाइक तुम्हारे डिजिटल प्रोडक्ट में बहुत सारा वैल्यू है, तुम्हारे व्यूज नहीं आ रहे इसलिए डिजिटल प्रोडक्ट भी नहीं बिक रहा है, तो अगर तुम व्यूज को एक वैल्यूड ऑडियंस में कन्वर्ट करते हो एंड देन वो वैल्यूड ऑडियंस तुम्हारे प्रोडक्ट को बाय करने चाहती है, तुम्हें भी फायदा होगा, तुम्हारे ऑडियंस को भी फायदा होगा, एंड इन टर्न मुझे भी फायदा होगा, क्योंकि मैं तुमको वीडियो एडिटिंग सर्विसेज दे रहा हूँ एंड आई विल चार्ज फॉर इट ऑफ कोर्स। सो यू विल हैव टू डू रिसर्च लाइक दिस। इट will take time, it will be not easy, but the framework is really simple, I've told you. Okay, so you can send loom, you can send pre-recorded YT videos, YouTube videos. What you can do other than this, you can bombard follow-ups. Okay, so this is what I do a lot. Follow-ups, first follow-up में तुम कह सकते हो कि hey, were you able to check this message? Thank you, done. Okay, that makes sense. First follow-up में, second follow-up में फिर से तुम आगे ये नहीं कह सकते हो hey, just circling back to know if you saw my previous message or not. I was curious to know if you're looking for video editing services. No, give some value. हमेशा ध्यान रखो, जब तुम आउटरीच कर रहे हो तो आउटरीच करने पे तुमको क्लैरिटी भी देनी है, क्लाइंट को ट्रस्ट बिल्ड करा रहे हो, बट उसके साथ साथ क्लैरिटी भी देनी है। अब तुम अपने आप से पूछो कि यार इस फॉलोअप में मैं क्या प्रॉस्पेक्ट को अपने कुछ क्लैरिटी दे रहा हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ अपने बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में। इफ दैट्स द केस देन वेल एंड गुड, डू दैट। इफ नॉट देन उसमें वैल्यू ऐड करो, केस स्टडी ऐड करो, टेस्टिमोनियल्स ऐड करो, यूट्यूब वीडियो प्री रिकॉर्डेड ऐड करो, लूम ऐड करो, सम रिसर्च ऐड कर सकते हो कि आप रिसर्च दिस। और अगर मैं साइड नोट दूं तो तुम ऐड कर सकते हो एडिटेड वीडियो सैम्पल प्रोजेक्ट्स, व्हिच आई कैन से सैम्पल्स ऐड कर सकते हो। लाइक फ्री वैल्यू ऐड करो, क्योंकि जितना तुम ये करोगे, फ्री वैल्यू ऐड करोगे, उससे क्लाइंट को ट्रस्ट भी होगा और उससे उनको क्लैरिटी भी आएगी कि अच्छा मैंने तो सैंपल देख ही लिया ऑलरेडी, ये कर सकता है, तो इट्स गुड। अगर उनको वो सर्विसेज चाहिए होंगे दे विल बी अल्टीमेटली क्लियर एंड विल बी एबल टू ट्रस्ट यू कि हाँ भाई ये बंदा इट्स नॉट ब्लफिंग, एक्चुअली ही नोज हिज शिट। एंड ट्रस्ट मी, नॉट मेनी पीपल इन द इंडस्ट्री आर डूइंग दिस फॉलोअप्स। एंड इसका मैं एग्जांपल तुमको दूंगा एक वीडियो में लिंक करके, उसमें तुमको 3 चीजों के आंसर मिलेंगे। व्हाई फॉलोअप्स आर नेसेसरी, लाइक यू हैव टू डू फॉलोअप्स, व्हाई इफ द लीड इज वार्म हाउ यू कैन डू मैसेजेस टू देम, एंड हाउ डज द ईमेल एंड हाउ डज द होल high ticket client process
of closing looks like through email. तो वो तीनों चीजें तुमको समझ में आएंगी, वो मैं लिंक करूंगा इस कॉन्वर्जेशन के बाद. बट माई पॉइंट इज कि ये बहुत अंडर लेवरेज चीज है. इस फॉलोअप में अगर तुम फ्री वैल्यू ऐड करते हो, क्लैरिटी ऐड करते हो, जो कि किसी भी तरीके से हो सकती है, जो जब तुम ये एक जो वीडियो लिंक करने वाला हूँ वो देखोगे, तुम समझ जाओगे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ. तो यू विल बी एबल टू मेक द clients or prospects, sorry, not clients, prospects ultimately clear ki okay, I understand what you're selling, what is your offer, what is your price, something of that sort. They'll ask, and if that resonates with them, good. If not, then they'll just go. But this thing is under leveraged. Most of the DMs that I get, actually most of the DMs, or I can say emails, first email किया, done. follow up एक दो किए, done. okay भाई, ज्यादा मैं follow up नहीं करूंगा. क्यों? करो ना follow up. ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सर्विसेज हैं, तुम कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, करो follow up. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को follow up करो, मेरे को जरूरत नहीं है अभी उसकी, बट तुम क्लाइंट्स को follow up करो, तुम विजिबल रहोगे. और ये तो कोई नहीं करता है भाई. 100 में से आई कैन इवन से 500 में से एक बंदा होगा जो ये चीज करता होगा कि भाई मृदुल, मैंने तुम्हारे ईमेल पे ऑलरेडी एक प्री एडिटेड वीडियो देके रखा हुआ है, इंट्रो मैंने री एडिट किया है, चेक इट, इफ यू लाइक इट वी कैन वर्क फॉर यू. 500 में से एक बंदा. आई कैन रिमेंबर 2 लोगों के मेरे पास एडिटेड वीडियोस आए थे, एंड एक बंदे ने उसमें से रॉ वीडियो उठाया था, जो मैंने एक कंपटीशन रखा था, कंपटीशन भी नहीं कह सकते, मैंने एक हायरिंग फॉर्म डाला था, उसमें से उठा के मेरे को भेजा था कि ब्रो, मैं हायरिंग फॉर्म के लिए तो नहीं क्वालिफाई हो पाया, बट दिस इज द सैम्पल दैट आई हैव एडिटेड बाय इम्प्रोवाइजिंग इट. भाई वो मेहनत है, उसके हिसाब से उसने इम्प्रोवाइज किया था. ही वाज स्टिल अ बिगिनर, तो क्वालिफाई नहीं हुआ, बट ही वाज डूइंग समथिंग राइट, वेल एंड गुड. लाइक यू शुड बी डूइंग दैट. सो दीज आर द थिंग्स दैट आर अंडर लेवरेज्ड दैट यू कैन यूज. अब क्लैरिटी और ट्रस्ट में मैं तुमको एक चीट कोड बताता हूँ, ठीक है, दैट आई यूज्ड एज वेल. और वो चीट कोड एक्चुअली चीट कोड की तरह काम नहीं करता है स्टार्टिंग में, वो एक पॉइंट के बाद चीट कोड की तरह काम करता है. एंड मोस्ट ऑफ यू माइट हैव गेस्ड इट टिल नाउ, बट मोस्ट ऑफ यू माइट नॉट. तो वो क्या है चीट कोड? पर्सनल ब्रांड. नाउ बी इट ऑन लिंक्डइन, बी इट ऑन एक्स, बी इट ऑन वाईटी, बी इट on Insta, doesn't really matter. If you're selling a service, showcase that. If you're not even showcasing that, don't worry, you just showcase yourself. When you show yourself to the people out there in the world, they trust you more. The chances, the likelihood of you closing that prospect increases, and I am the living proof of it. The first ever US client that I closed was a client that only saw my YouTube channel. I didn't even give him the portfolio, and that YouTube channel's videos were in Hindi. They didn't even understand the Hindi language, but still I closed them. How in the world is that even possible? But it happened to me. So personal brand is the cheat code, but it works after some point of time, or you have great quality content. Okay, so I closed that client when I had around 1200 or 1500 subscribers on my YouTube channel. I had crazy cinematic content. If you'll just go and look at some of my old videos, and you'll be like, bro, तू freelancing videos कैसे बनाने लगा? तू इतना अच्छा cinematic content बनाता था. I also feel like that. बट अगेन, तो वो कंटेंट देखकर इट्स मोर ऑफ लाइक, तुमने मीम सुने होंगे, लैंग्वेज 0 अंडरस्टैंडिंग 100%. सिमिलर वैसा ही केस था कि उनको समझ में नहीं आया, बट दे अंडरस्टूड कि हाँ, आई नो द बेसिक फंडामेंटल सो गुड कि मैं कैसे भी टाइप का वीडियोस एडिट कर सकता हूँ, एंड आई जस्ट क्लोज देम. सो पर्सनल ब्रांड में 1200 फॉलोअर्स होकर भी आई वाज एबल टू ग्रास्प a deal of almost, I wouldn't say like monthly number, but I will say the overall number, not till now. मैं पहले freelancing journey का तुमको एक नंबर बताता हूँ. Let me calculate. Okay, this is getting a little juicy. Around $4,000-5,000, $4 to 5K डॉलर्स का लाइफ टाइम डील था. लाइफ टाइम डील मतलब जितना भी मैंने उनके साथ एज अ फ्रीलांसर काम किया था, और प्रोबेबली इससे ज्यादा होगा, मैंने बहुत कम काउंट किया है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, उसको मैंने फिर से क्लोज किया, तो अब उसका लाइफ टाइम डील टिल नाउ कितना हुआ है, I'll tell you. So let me just calculate. Okay, hold up. Let me just calculate. Okay, around-ish 18-19K dollars. Close that client when I had 1200 followers. The cheat code is right in front of you. Not everyone will follow it, I know, and I don't expect everyone to follow it because it is hard. Like, I am great at communication, I believe that, I know that, I'm great at creating content, I'm great at talking in front of the camera, so it is really flawless for me. The camera is the second nature for me, so I can like day in and out create content, talk in front of the camera. तो ये personal brand वाला stuff हर कोई नहीं कर पाएगा, but जो genuinely इस चीज में
घुसना चाहते हैं and want to succeed in some way or the other, they will have to do it. Like no cap, simple. Founders are coming on the internet, creating content on YouTube. Cristiano Ronaldo made a YouTube channel. Why do you think that's the case? Distribution is the new thing. See, I was not able to understand this thing until I became an agency owner. I am hanging out with other founders. I understand that now. Okay, why distribution is important, why people hire media agencies. Reliance के पास Viacom 18 का control क्यों है, why he has so many media companies under that, why rich people control the media. There's a reason behind it. Media sets a narrative, and when you have distribution, you can set a narrative about yourself. The media that I'm putting out on right in front of you, the freelancing masterclass, it is creating a narrative of me in the industry that I am someone in freelancing field. बहुत सारे अच्छे freelancers हैं, but they are not creating content. उनके पास distribution नहीं है. So guess what? The one who has the distribution, and I might have lesser skills than them, I'll be able to surpass them in a lot of ways in the long run because I have distribution. Okay, so this is important. This is a cheat code if you want to build clarity and trust at scale in the long run. It won't be effective immediately. Long run में इसलिए क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं होता जो कि perfectly start करे YouTube पे. मेरे पास बहुत सारा experience था जब मैंने ये वाला channel start किया, तो I had a lot of video editing skills and all sorts of storytelling skills. तो मेरी starting से content बहुत अच्छा रहा है इस channel पे, but मैं 5 channel fail भी कर चुका हूँ. मैं ये film making, storytelling, video editing जब मैं 16 साल का था तब से कर रहा हूँ, फोन से कर रहा हूँ, तो I have good hold of it. So that's why इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुमको टाइम लगेगा. मेरे को 7 साल हो गए हैं करते हुए, तुमको probably 2-3 साल लगेगा, तुम अच्छे से ढंग से सीख रहे हो. I have made everything clear now कि basic fundamental चीज़ क्या होती है about cold outreach. Now अब मैं तुमको कुछ outreach tactics दिखाऊंगा कि तुम basically client को कैसे outreach कर सकते हो in the email, and उसी के साथ साथ उसी में मैं तुमको offer create करके सामने सामने दिखाऊंगा, क्योंकि offer और outreach जब हम लोग कर रहे होते हैं तो it's almost combined together, और वो मैं तुमको एक screen recording के थ्रू दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ practically समझाना is very difficult. I'll have some screenshots right in front of me about the cold outreach that I've done, and then उसमें मैं तुमको समझाऊंगा कि कैसे मैंने वो cold emails या cold DMs करे हैं and what offer have I created. Okay. So in this section, I'll help you understand how a message and the psychology behind it. So I won't waste your time and let's just get to the screen. So first message is, this is the connect request that I sent to the client, and that is, hey, great connecting with you. Was listening to your podcast just now. Some real great guest प्लस वैल्यू देयर, लव्ड इट. और उसके बाद मैंने फोटो भेज दिया. तो कनेक्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद बेसिकली मैंने फोटो भेजा है, जो कि तुमको दिख रहा होगा सेम टाइम पे. तो बेसिकली जब मैंने कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजी थी, इट गॉट एक्सेप्टेड, एंड फिर तुरंत ही मैंने उसको फोटो भेज दिया कि यस आई एम वाचिंग द पॉडकास्ट राइट नाउ. दिस इज समथिंग दैट आई यूज्ड एंड it helped me get higher open rates for my emails and messages, and people are like intrigued to see what is in the photos, and this is the thing that generally most of the people don't do. They are like, मैं मैसेज भेज देता हूँ and then I'll just be like this कि ठीक है, वो देखेगा तो देखेगा, नहीं देखेगा तो नहीं देखेगा. ट्रस्ट बिल्ड करो. इफ यू आर genuinely interested in someone, you'll try to go one step beyond and make sure you make them trust you. If you do something, for example, you are watching the podcast of that guy, you genuinely think that there is value there, you would want to show that, oh, I watched the podcast. You would be interested in talking to that person. This is how I collaborate with other creators. कि मैं उस तरीके से नहीं जाता हूँ कि यार मेरे को तुम्हारे से कुछ चाहिए या मुझे कुछ भेजना है तुमको. इट्स मोर ऑफ लाइक अ कोलैबोरेशन. आई एम कमिंग टू यू एंड आई जेन्युइनली लव योर वीडियोस. इट विल बी ग्रेट इफ वी कैन हॉप ऑन अ कॉल एंड आई वुड लव टू चैट विद यू. वर्क्स एवरी टाइम. जितने भी मेरे कनेक्शंस हुए हैं, मोस्ट ऑफ द कनेक्शंस ऐसे ही हुए हैं, एंड फॉर श्योर तुम्हारा जो ओपन रेट है वो बढ़ेगा. नाउ ये ओपन रेट बढ़ाने की ट्रिक थी, रिप्लाई रेट, मीटिंग बुक्स, ये भी तुमको बताऊंगा. ओके, तो फर्स्ट मैसेज, वेरी लॉन्ग मैसेज, कॉन्ट्ररी टू द बिलीफ दैट इज आउट देयर इन द मार्केट. दिस इज अ मैसेज दैट इज एब्सोल्युटली विल ट्रिगर द पीपल हु से कि भाई छोटा मैसेज रखो. लेट्स सी. ओके, हाय, I've been spending some time with the show. Loved the one with Arthur Brooks and Morgan Housel. What stood out is the depth of conversations. अब तुम ये देखो, मैंने ये नाम दो इसलिए चूज करे क्योंकि मैं Arthur Brooks और Morgan Housel का कंज्यूम करा हूँ कंटेंट. I have read the book of Morgan Housel, The Psychology of Money. So just in case अगर हमारी कॉन्वर्जेशन होती है किसी चीज़ के बारे में एंड दे गेट इंट्रीग्ड कि ओके तूने मॉर्गन हाउसल का पॉडकास्ट देखा है, ऑर्थर ब्रुक्स का देखा है, व्हाट डिड यू गेट आउट ऑफ दैट. अब प्रॉब्लली इफ यू नॉट वॉच दैट तो प्रॉब्लली तुमको नहीं पता होगा. तुमने अगर उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो या तुमने रैंडमली बस कोई भी नाम उठा के भेज दिया है, तो शायद तुम नहीं आंसर कर पाओगे, या फिर तुमको एक बार वो पॉडकास्ट देखना पड़ेगा जाके, तब तुम उसको मैसेज कर पाओगे.
But again, I chose these names because little things matter. Sometimes अगर conversation होती है, then I probably might be able to answer them with ease. Okay, और time नहीं लगेगा मुझे आंसर करने में. Now, another line. What stood out is the depth of conversations. Listening to the podcast for a while, तो मैंने ये जो ब्रैकेट है इसमें डाल दिया क्योंकि ये चीज़ चैट जीपीटी नहीं करता है. दिस थिंग, ये जो छोटी सी एक चीज़ है, छोटी छोटी सी चीज़ें जो तुम ऐड करते हो, लिटिल डिटेल्स इन एवरीथिंग, इट शोज दैट इट इज़ अ मैसेज दैट इज़ रिटन बाय ह्यूमन. अब ऐसा नहीं है कि ये मैंने मैसेज पूरा खुद ही लिखा हुआ है, मैंने जीपीटी की हेल्प ली है, मैंने रिफाइन करवाई है ग्रामर, बट इसमें मैंने मेक श्योर किया है कि मैं इसको प्रूफ रीड करके अपने तरीके से मैसेज को सेंड करूँ. तो इसके बाद ये वाली जो लाइन है, दिस इज जीपीटी जनरेटेड. यू लेट पीपल स्लो डाउन एंड एक्चुअली अनपैक हाउ दे थिंक, what shape them and why they operate the way they do. I love that. तो love that में मैंने basically लिख दिया है LOVEED that. तो simple है. I've done that simply because I didn't want him to know कि भाई मैंने ये GPT से उठा के copy paste कर दिया है. I've written it. A human has written it. And then offer. However, there's one opportunity which is heavily underutilized in its distribution. Most of those insights live inside the podcast itself, and a lot of people who would genuinely enjoy these conversations never find them because they are not able to discover you. That is, your podcast distribution needs to be on a much larger scale. You're putting in a lot of effort, so you must get similar or exponential ROI too from the content. That's where we help. We build a done for your content system for founders where you only need to record and we handle the rest, script if needed, editing, packaging, and distributing across LinkedIn, Instagram, and YouTube. For the podcast specifically, we pull short form clips in batches from each episode, shape them with viral yet simple curiosity driven hooks, use short form to consistently point people back to the long form conversations, and create multiple touch points for the audience so you are visible to them everywhere on social media. Additionally, we also make the intros of podcast episodes in a way where we generate curiosity in the minds of the audience, and if they want the question to be answered, they stick to the episode. The goal is volume and visibility so that people come to your YouTube, and we are 100% sure when they will start watching, they'll stick because the value is just so good in the podcast. You already have great guests and conversations. Our role is simply to help them travel further. If it's useful, I'm happy to walk you through how the distribution system can help you can work for you. Best, Mradul Sharma. So it is a very long message, but I've made him understand exact things that he should be knowing. I've hit his pain points. तो बेसिकली जब तुम डीप इनटू दिस गेम जाओगे तो तुमको समझ में आएगा कि कुछ पेन पॉइंट्स हैं जो कि हर किसी के होते हैं. एंड यही एग्जैक्ट चीज़ जब मैंने इसके साथ मीटिंग बुक करके इससे बात करी थी क्लाइंट प्रॉस्पेक्ट से, तो उसने बताई लाइक ही इज़ बिन वर्किंग विद हिज यूट्यूब गाय हु वाज मैनेजिंग हिज यूट्यूब फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड उसको वो रिजल्ट नहीं मिल रहे थे. एंड वो पॉडकास्ट पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है ऑडियो प्लेटफॉर्म पे, बट वीडियो प्लेटफॉर्म पे वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है. व्हाट इज़ द रीज़न? ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी, एंड वही चीज़ मैंने उसको मैसेज में बताई है. नाउ द थिंग इज दिस द बेस्ट वे टू डू द मैसेज? I don't know. Does this work? Yes. So it is working for me. It probably might work for you, probably might not, but this is something that I've experimented with. कभी बड़ा मैसेज, कभी छोटा मैसेज, मैंने 5 लाइन के भी मैसेजेस भेजे हुए हैं, वो भी वर्क करते हैं. बट कैसे वर्क करते हैं वो कोई नहीं बताता है. मैं तुमको बताता हूँ कैसे वर्क करते हैं. द मनी इज इन द फॉलो अप्स. दिस इज नॉट द सिंगल मैसेज दैट मेड मी टॉक टू दिस क्लाइंट, दैट मेड मी बुक अ मीटिंग. ये मैसेज तो उस क्लाइंट ने सही से पढ़ा भी नहीं था जब मैंने उससे मीटिंग में बात करी. ही सेड तुमने मेरे को एक लूम वीडियो भेजा था, वो देखा. आई गॉट द अंडरस्टैंडिंग दैट ओके he might know something about YouTube. Whatever he's saying is something that is resonating with me. उस टाइम पे भी वो कन्विंस नहीं हुआ था फुल्ली कि मैं उसको सोल्यूशन दे सकता हूँ, बट ही वॉज लाइक ओके इट्स वर्थ अ चैट. एटलीस्ट दैट वॉज द थिंग. देन इवेंचुअली व्हेन इट वॉज वर्थ अ चैट, वी बुक्ड अ कॉल and then we took the things further. We have not closed him yet, but we are in talks with that client, sorry, prospect. Okay, so this was the first message. The reason, the format is simple. I don't know if you were able to grasp it or not. The format is pretty much this, that a little bit of personalization at the start, that okay, I know you and I've heard the podcast, and while watching the podcast I have noticed few things that can help you. ओके, यू फोकस्ड मैसेजेस लिखो कि भाई ये तुम्हारी कुछ मिस्टेक्स हैं जो मैंने देखी हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि तुम यूटिलाइज अगर कर लोगे, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं अभी, वो सॉल्व हो जाएंगी. एवरीवन वांट्स ग्रोथ ऑन यूट्यूब, ठीक है? इफ़ यू कैन हेल्प देम डू दैट. Everyone wants reliable editors, reliable graphic designers. And if you see that they are not consistent, the quality is not good, and if something is happening, पता नहीं मेरे को इतनी आवाज़ क्यों आ रही है, if something is happening, you can just tell them that तुम्हारे पेन पॉइंट्स अगर ये हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे एजेंसी में पेन पॉइंट्स ये हैं कि यार एडिटर्स रिलायबल ही नहीं है, एडिटर्स जस्ट डोंट कम्युनिकेट, एंड
they cannot deliver the quality on time, ठीक है. And अगर तुम ये चीज़ के अराउंड एक मैसेज फ्रेम करके किसी को पिच कर रहे हो, you will get the clients. पहले मैसेज में नहीं मिलेगा, दूसरे मैसेज में नहीं मिलेगा, बट 100 मैसेज करोगे, उसमें से कुछ कन्वर्जन्स आएंगे, कुछ मीटिंग बुक होंगी, उसमें से तो एक क्लाइंट मिलेगा, उसमें से भी नहीं मिलेगा, तो भाई 200 मैसेज करोगे, उसमें से तो मिलेगा. बट ये एक सिंपल रिपीटेबल प्रोसेस है जो कि वर्क करेगा हमेशा. बट फर्स्ट एवर मैसेज तुमको कभी क्लाइंट लैंड करके नहीं देगा. इट्स ऑलवेज द फॉलो अप 1. हाई, आई नो दीज डेज इट्स हार्ड टू ट्रस्ट एनी कोल्ड मैसेज दैट कम्स थ्रू, एंड इट वुड बी रॉन्ग टू से यू ट्रस्ट अस through one convo only. I'm happy to send you a loom and explain how you could benefit this ecosystem. You watch that, and if it resonates and looks like something worth giving a shot, then we can talk. If not, then no worries. I know that will help you out, hence reaching out to let you know that there's a gold mine that you're sitting on. Just say the word and I'll explain everything in detail. I mean, this is not a rocket science. Everything is listed here. You have to address their pain points, and the pain point is simple: they are not getting the views. For me, that was the pain point. Basically, that is how I framed my message around it and did my first message and then did the follow up. So follow up के बाद of course मेरे को message का reply नहीं आया, तो I was like follow up 2. It's alright if that's not your priority right now. I completely understand. A verdict from your end will help us understand if I should follow up with you regarding that or not. तो ये मैंने जानबूझ के गलती करी थी, ये मुझे अभी भी याद है. With your regarding that or not, simply I didn't want it to feel like ये चैट जीपीटी का जनरेटेड मैसेज है. एक दो मिस्टेक्स मैं जानबूझ के कर देता हूँ, क्योंकि in this day and age there are a lot of people that confuse even normal message as chat gpt generated message. I don't go on that route कि perfect message हो. I just keep it flowing. अगर गलत है तो गलत है, ठीक है. I don't know grammar, I don't know perfect grammar, तो मैं लिख देता हूँ ऐसा. I also don't want to spam your inbox unnecessarily, but if this is something that you're looking for, I'm 100% sure that this will help you gain more views and distribution. Conviction, confidence. तुम अगर under confident रहकर pitch करोगे, you won't be able to pitch. This is the one thing that I missed with this client. इसमें नहीं, जब मैं meeting में था and I was sitting with one of the guys who has been running the agency, and he was like, bro, yaar, you fumbled this client. And I actually know I fumbled this client. I could have closed him way earlier if I would have done the meeting right. I did do the meeting right, even though I had the proof of work. The reason was simple: I was coming off as very submissive guy, you can say that. I was not confident. I was like, yeah, we can deliver the services, yeah, we can do that, but it's also on you that you need to do these kind of things, and that's why some people don't get this. Like, I was not able to build the authority in the calls. I unfortunately didn't record the call. I am not sure if I have done that or not, but if I would have recorded it, I'll check it, and if I would have recorded it, I'll show you that the meeting was not good. And अगर वो रिकॉर्ड हो चुकी है तो इस सेक्शन के बाद वो कॉल लगा दी जाएगी, तो तुमको पता चल जाएगा कि क्या मैंने फंबल किया. डिकोडिंग इज़ योर जॉब, डूड. यू हैव टू डिकोड इट एंड अंडरस्टैंड व्हाट वेंट रॉन्ग. मेरे हिसाब से, एंड from what I know, I'm better closing at deals when I've built my authority, and I was not able to build my authority in that call. That is like a drawback of cold outreach and lack of testimonials too. We although have done good work for some of the great clients, but we don't have testimonials for them from them yet. The reason is simple: NDAs हैं, कुछ complications हैं उसकी वजह से, but we have worked for them. So that is what happened, and this is something that is one of the biggest lessons that I have got. Have the conviction, have the confidence that you can give them the results if you know your services work, and our services work, and that's why I know that I can give them the results. It's just that don't doubt yourself. So that's the thing, and I'll just write that down that I'll have to send you guys that video too. So that's the thing. Follow up 2. Follow up 3, I was like, okay, hi, I didn't hear back from you, so I figured out send the loom anyway. Here it is. Just need 5 minutes of yours. 5 मिनट में ही मैंने ये loom complete कर दी थी. What's the loom? See the upside that it can unlock for your podcast. If you're not convinced in those 5 minutes, I would nudge you. The reason of follow-up is simple. The podcast has great upside that can be unlocked with the right system, and no, I'm not bluffing. I've been following your content and know this is a huge lever that you can pull. Then again, I did the follow-up. Hi, following up on the previous video sent you to get the time to watch it. By 5 minutes is all it will take to see where your podcast can be optimized to open up new growth on top of existing audience. Really, you're just 5 minutes away from getting a deeper understanding of next part of growth. Hope that helps. And then we got the reply. Now, what did I do right? What did I do wrong? There is no one size fits all. अगर
तुमको कोई बता रहा है ऑनलाइन आके कि भाई यही कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जो वर्क करते हैं, यही टेम्पलेट वर्क करती है, तुरंत उस चैनल को अनसब्सक्राइब करो एंड just get out of that. There is one thing, I'll relate it to one example, which is people in trading industry, like stock market trading industry. Usme 99% of the people that you see on the internet are fake, and I have the data. I have seen that. I don't have the data. I am lying if I'm saying I have the data. I have seen most of the people go wrong. I've seen that all, like mostly creators are exposed इन ट्रेडिंग वर्ल्ड एंड आई फील लाइक ये जो इंडस्ट्री है अब, जो फ्रीलांसिंग की इंडस्ट्री बन रही है एंड पीपल आर जस्ट मिल्किंग दिस, ओके, इंक्लूडिंग मी, आई कैन अश्योर यू द थिंग्स दैट आई एम टीचिंग actually work. And if they are not working, then the problem is you, because they have worked for me. I have the proof. And if someone is saying to you कि भाई ये चीज़ वर्क करती है बट उनके पास प्रूफ नहीं है, अब यू आर समझदार, ठीक है, तुमको पता है क्या करना है. सिमिलरली ट्रेडिंग वर्ल्ड में भी ऐसा होता है कि भाई अगर तुम प्रॉफिटेबल हो, लेट्स से, या तुम पैसे कमा रहे हो ट्रेडिंग से, पहली बात तुम कोर्स क्यों बेच रहे हो? ठीक है, कोर्स भी एक काइंड ऑफ गुड डीड होती है, मैं इस चीज़ को गुड डीड मानता हूँ. मेरा थोड़ा सा अलग ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर कि भाई तुम्हारे पास नॉलेज है. पीपल यूज टू डू दैट अर्लियर एज वेल. गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य, ठीक है. इन अर्लियर टाइम्स दिस यूज टू हैपन टू, द इंफॉर्मेशन वॉज पास डाउन to generations like that, and that was through a guru dakshina. Okay, and I completely believe in this thing. अगर कोई गुरु तुमको information दे रहा है, you should be from your good heart give him something. And in this day and age it's through money. पहले जब गुरु द्रोण ने अश्वत्थामा को दी थी और जो 5 पांडव थे उनको दी थी सारी नॉलेज, of course they gave something back to them. It happened. सो आई ट्रीट इट लाइक दिस. अगर कोई बंदा कोर्स बना रहा है, भाई बना यार, तू हेल्प कर रहा है लोगों की, अगर वो जेन्युइन बंदा है. बट आजकल सब कोर्स बना के बैठे हुए हैं. ठीक है, अगर ट्रेड कर रहा है, तू पैसे कमा रहा है, कोर्स क्यों बेच रहा है? कुछ लोग बेचते हैं और वो चीज़ अच्छी भी है एंड वो हेल्प भी करती है लोगों को, गुड थिंग. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, why are you not showing? This is something that stays in the gray area, course वाला. Second thing is, why are you not showing that you have made money? Proof दिखाओ ना. Proof नहीं दिखाते हैं वो लोग. Simple is this. तुम किसी भी क्रिएटर को फॉलो कर रहे हो, कभी भी फॉलो मत करो. एंड आई एम श्योर लाइक आज जो जेनजी ऑडियंस है दैट इज़ वेरी मेच्योर. आई सी दिस इन माई कमेंट सेक्शन एज वेल. तुम क्वेश्चन करो कि भाई तू ये चीज़ बता रहा है, वेयर इज़ द प्रूफ? इवन मी, अगर तुम्हें मेरे इस मास्टर क्लास में कहीं पे भी लगता है कि भाई तूने ये चीज़ बताई है, वेयर इज़ द प्रूफ? कन्फ्रंट मी, मेरे को मैसेज डालो. अगर मेरे पास प्रूफ नहीं होगा तो आई विल बी लाइक ब्रो सॉरी, प्रॉबेबली मैंने फ्लो में आके बोला. एंड इफ़ आई हैव प्रूफ, आई हैव ट्राइड टू मेक श्योर मेरे पास जितनी भी चीज़ें हैं मैं तुमको दिखा रहा हूँ. ये जो मैसेज दिखा रहा हूँ ये रियल वर्ल्ड मैसेज है जो मैंने किए हैं, एंड इट हैज़ वर्कड. पीपल हु से कि इतना लंबा चौड़ा मैसेज मत भेजो, नहीं काम करता है, कर रहा है ना. बट वो एक चीज़ नहीं बताते कि खाली एक मैसेज काम नहीं करता है, सीरीज ऑफ मैसेजेस विच इज़ फॉलो अप, एंड हाउ यू गो अबाउट दैट राउट, वो मैटर करता है. और टाइमिंग में बहुत ज़्यादा मैटर करती है. वन एक चीज़ अभी जो मेरे दिमाग में आई, जो कि मैं बताना भूल गया, इस क्लाइंट ने ये भी बताया था कि मेरी ये बिगेस्ट प्रॉब्लम है अभी, एंड पार्ट ऑफ इट वॉज टाइमिंग कि मैं तुम्हारे साथ मीटिंग में आया. लक इज द फैक्टर, डोंट डिनाई इट. ठीक है, देयर इज समथिंग लाइक हायर पावर दैट वर्क्स इन योर फेवर. वो भी कभी कभी बहुत काम आती है, कभी कभी नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इट हैज हैपेंड टू मी. सो द थिंग इज दिस, आई वेंट ऑन द लिटिल रैंट हियर, बट दीज थिंग्स वर्क, एंड ओनली थिंग इज यू हैव टू कीप ऑप्टिमाइजिंग इट. मैं तुम्हें घोल के नहीं पिला सकता, तुम्हें खुद ये सारी चीज़ें समझ के खुद ही अपने लाइफ के हिसाब से, अपने सिस्टम के हिसाब से अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज़ कर रहा होगा. अगर नहीं कर रहे हो तो फिर छोड़ दो फ्रीलांसिंग. ओके, that is a little bit of reality. And okay, now what's another thing that is left? So this is the whole thing about the messages. जैसे तुमको मैसेज करने हैं, ऑफर कैसे बिल्ड करना है. ऑफर को कॉम्प्लिकेट मत करो, ऑफर बहुत सिंपल होता है. ऑफर इज समथिंग जो मैंने तुमको पहले भी बताया है, या अभी हो सकता है मैं बताऊँ इस मास्टर क्लास में. ऑफर इज समथिंग दैट यू ऑफर टू द क्लाइंट इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड गेट द मनी इन रिटर्न. अब तुम ये सोचो, किसी भी क्लाइंट को तुम कोई चीज़ ऑफर कर रहे हो तो क्या तुम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो. इस मैसेज को ऐसा रेफरेंस लो एंड आस्क योर सेल्फ कि मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ क्लाइंट की. तुम एक वीडियो एडिटर हो, तुम क्लाइंट की प्रॉब्लम ये सॉल्व कर सकते हो कि तुम टाइमली काम दोगे, कम्युनिकेट प्रॉपरली करोगे, क्वालिटी वर्क दोगे, एंड यू हैव स्किल्स. दैट इज जस्ट लाइक अ प्री रिक्विजिट दैट यू मस्ट ऑलवेज हैव. बट this is something that if you'll do, you will be able to land clients. Apart from that, additionally, if you know how to do YouTube, if you know how to grow their channel, additional things like ads and everything, well and good, that's a plus one.
But if you're just a video editor, people are looking for really really good editors. It's just that उनकी supply नहीं है इतनी, ठीक है, demand still है video editors की. Good editors will always get job and they will always have opportunities. Yes, I said it. And if I will be able to find the sales call जो कि prospect की होगी, I'll show you that what went wrong and how I was not able to close him faster. I might close him. I am in talks with him, but probably I might not be able to close him. So this is the transparency that I'm talking about. This is the honesty that I'm talking about. कि अगर तुम किसी creator को follow कर रहे हो तो please see if they even have done those things or not. मेरे को पता है, I can name drop those creators जो कि are just misguiding people. And because I won't be making more content on freelancing on this channel now, I am just going on that route of punching the people in the face who are misguiding the new people who are coming in this industry, beginner video editors or freelancer, whoever they are. But I won't name drop them, of course. Okay, I'll find that and I'll see if I'll be able to show you that. And after this, if I have that, you'll be able to see that. Bye bye. Take care, guys. Hello. Hi. How are you? How's it going? Everything's great. Good. How do you pronounce your name? Mradul. Say that again. Mradul. Mradul. Okay. Where are you from? I'm from India and I just came back from Dubai. So yesterday it was the day. Nice. So Okay. yeah, nice to connect with you, by the way. And just for the context, like I love your podcast. I was watching your podcast from like it's been a year. I like didn't watch it in the middle, of course, and then I randomly stumbled upon your podcast again. I remember I sent you a photo with me watching, like you were the guest in that one particular podcast. Nice. Yeah. Very cool. Oh, that's awesome. I appreciate that. That's The conversations are that's a good immaculate. thing. I love that. Phenomenal. Well, so I am very curious about YouTube. I have tried. I feel like many different people to help with this. The current person I think is very good at making trailers, but outside of that, it's not growing. I know we're not using shorts. I'm not really sure what to do. I really want to put my focus and continue to have my focus on finding the guests and conducting the interviews. I don't want to have to think about YouTube. I want it to grow. I want to be able to give the videos to whoever I'm choosing to work with, and then they figure out a way for it to grow. I know long form Zoom interviews are tough on YouTube. And so I am doing more in person, but I'm also still going to continue to do Zooms because that's how it has to go sometimes for the guest. So really, I'm all ears. I'm curious to see what your ideas are to help grow this thing to be 100K subscribers and then keep growing from there. Because right now I'm kind of at a loss. I don't know. Okay. So for that, I'd like to understand a little bit about your process. How does your content production process currently is looking like, so that I can give you an idea on that. Okay. So I pick the guest. I record the episodes. We're doing a little bit more in person, but still a lot of Zooms. I just then send over the video assets to the person who I have one guy who does my audio YouTube or on my audio podcast, which I like him. He's been great. He's going to continue to do the audio for the podcast. And a complete separate person who does YouTube, and he does the thumbnails, he does the titling, the packaging, all of it. I'm pretty hands off. I just, he has access to the YouTube channel and just does it all. And, most of the time they get no views on YouTube. 99.9% of my audience is just the podcast, the audio podcast. And I want YouTube to become closer in numbers to the audio. And I feel like some people have figured that out. I haven't. And so now if you go look at YouTube, you'd be like, oh, it's not a really big show. But you look at Apple Podcasts and it's a top 10 business podcast pretty much all the time, every week if you look at the rankings. So that's the part that's frustrating. And again, I'm open to ideas because what we've tried for the past few years, it hasn't really worked. We got 20-some thousand subscribers. That's not bad, but it should be a lot more. Yeah, definitely should be a lot more. And I'm just currently watching your channel here.
You've had a really good track record of big hits on your YouTube channel, definitely. And from what I can see, it's it's definitely not about the content that you're posting because the conversations are really great because I also love the podcast. So that's not about that. First thing is ICP and the people that we are targeting. So we have to understand if we are even communicating with them. So I'll tell you honestly, the recent podcast that is uploaded, PJ Fleck explains how to build championship culture. So if you take two guests in contrast, one is Alex Hormozy and second is PJ Fleck. So most of the people know about this public figure who is Alex Hormozy. They are more likely to click on this video compared to this video. So we probably have to write this title in a way where it resonates with the mass audience. For example, a normal person would want to make more money, don't want to live in poverty, or let's say want to become 10%, improvise their life, for example. And if you see a niche that was not it was not before COVID. It was not very prominent. If you go on the channel of Brian Johnson, Andrew Huberman, so these guys have really nailed down whom they are targeting. So that's what firstly should be the primary focus on. If we are even communicating with our audience. So, for example, you are communicating with people who are CEOs, the conversations and the topics will be completely different from the people who just want to like level up their life or maybe just want to focus on their health for now. So that's the main pillar that is missing uh, from what I see. Another thing is, uh, I think you have a brand identity. Correct me if I'm wrong. You have black, white and yellow as your brand identity. Is it a solid Mm. one or are you experimenting with these colors? No, that's pretty much it. Okay, so do you have a formal brand identity for your Yeah. podcast? Yeah, I have like all of the marketing team put all that stuff together. Yeah. Okay, so this is all that is it. So we can improvise the visual aesthetics of it. Definitely. This can be done. And apart from that, when it comes to the content, the initial minute, and that's one thing that you saw when we created the intros too. Initial 1 minute needs to be the minute that hooks the audience when it comes to videos. Of course, the audio podcast is the one where you're already ranking and you already have the authority. But when people are discovering you on a completely different platform, and guys like me who a year before didn't know who was, and I came to the video because I saw some guest like I don't know I don't remember the name of the guest. I'll have to look, but I saw the guest and then I came to the podcast. I listened to it because of the guest. So I want to make sure if uh, that person, that audience is coming because of the guest, we are over delivering in the first minute itself. And full like transparency there, I don't mean to look down on anyone. Like whoever is editing your intros is really doing a good job, but it can be improvised. The trailers, you mean like the trailer part of the Trailers, yeah, intro? trailers. Yeah. Of course, that can be improvised. Another thing is, if you see, you're not A/B testing the native feature of YouTube, which YouTube has given. A/B testing YouTube and titles and thumbnails. I think they That are A/B testing. no, I cannot see the thumbnails that are changed here. I'm I pretty sure when I look into it, it says it's A/B testing. but I don't see it here in my vidIQ extension if the thumbnails are changed regularly. Check it in your dashboard if it's the case. I might be wrong here. Uh, I feel like I see it when I go in there that they are A/B testing titles. Um, yeah, between titles and thumbnails.
Okay. I'll just share the screen how that particular thing looks like. Can you see my screen? Yeah. Okay, so I'll just go to Alex Hormozzi's channel, for example, and if we go here and we see, let's say, this particular video, They're on. we see all of the thumbnail changes that has happened in the past and all of the title changes that have happened. But in your Oh wow. videos, I cannot see. That's why I asked if that is happening on a channel or not. And if that's not happening, we suggest you do that. So uh, the whole YouTube thing, it definitely takes time, but it shouldn't take like 2 years to reach, let's say, 50,000 subscribers only when you already have 20,000 subscribers. So there are a lot of missing pieces that can be aligned and like ask, shoot me with any questions that you have in your mind. You might be having some So questions, of course. what would you do? Would you make the trailers like we make, but you'll make them your version so that the first minute hooks the audience, and then you play the interview part of it? Yeah, I guess I'm just curious what you would do Yeah. differently that would then get to that 100,000 subscriber mark and beyond. That's really the goal, is by Mhm. the end of this year to be at 100,000 subscribers and then like get the momentum rolling so it keeps growing. Got it. So first thing is absolutely like understanding the foundations, whom you're targeting, why we are targeting that, understanding all of the things related to our target audience. Once we have that data, we can easily craft a few keywords on which we can build our titles upon. And once we'll be building the titles and creating the thumbnails around those, let's say ICP, and we know that, let's say, these 10 words are performing really good on your channel, we'll double down on these and we'll research all of your competitors that are doing well in your niche and what are they doing right. Because if you see like any of the podcasts of, on the contrary of all this, he doesn't do any intros, he just starts the podcast. So On the audio or for the video? video. So he just Okay. starts the podcast, and the thumbnails are pretty lean as well. But what he plays with is the title psychology and what he writes in the thumbnails. So if you go to his channel, you'll realize that, oh, this might attract mass audience. This might be something that more people will like apart from CEOs. So that is the thing that we'll tap into. We'll consistently test, A/B test all of the titles and thumbnails of what's working, what's not, and we'll. This is the exact strategy. This is like once everything is set up in first month. After that, everything is just a repeatable process. We know these 10 keywords work. We double down on that. We research all other competitors. We see what's working on their channel. We try to replicate it. If that works good, if that doesn't, we understand why it doesn't work, and then we iterate on that. So that's the thing. And to do that, we have to have full control of what is going out on a channel. So we have to make sure if, for example, let's say if your long form is doing great, but your short form is not helping the long form grow, everything will just fall apart. It's like some missing piece of the puzzle which is not coming together, and the puzzle is not coming together. So that's the thing that we'll focus on. We'll try to build an ecosystem that is feeding into each other. We'll post short forms that will feed into long form. Short form will be the distribution channel. Long form will be the authority channel. And then after that, we'll create titles and thumbnails that matches your ICP. So Would you make trailers and clips? yeah, There would be, because like I use the trailers and clips, I could use those on social media to then point people to the podcast, point people to YouTube too. we'll do that. That's exactly what I'm suggesting. Like we'll do the trailer. We'll have full control of everything. We know what is going out on the trailers, what is most resonating with the ICP that we have set, and that way there's not a disconnect in anything. There's a cohesiveness in our brand, and whenever the brand is well put, people attract get attracted to that brand. So that is the thing that we'll focus on
on a very, very foundation level. It gets technical when we post regularly on YouTube. There's 30 shorts going out on YouTube channel, but that is like a gist of it. Okay. Okay. All right. Who are you working with now, or what are some examples of your work I can look up online? So we are working with for some of our short forms and most of our like ads, and we are working with currently. We have worked with multiple like regional channels, which is How did you get to work with? so basically that's a very really interesting story. I worked as a freelancer for her short form content and podcast trailers and all of that. And then after that, I like quit because I started my video agency. After that, I was like, probably I can reach out to her again to work with our agency. And then I reached out to her, and she was like, okay, we'd like to work with you because you did a great job previously, and we'd like to get these ads done. You can be our marketing wing for editing ads and all sorts of things. So, like, I just started working like that. So, okay, cool. Where are you based out of? India. Oh, okay. So you said you were in Dubai, so you're just traveling? Yeah, correct. So what is the time change then? It's I'm in currently Eastern 2 time a.m. zone. IST, it's 2 a.m. here. What? It is. I'm When a do you night. sleep? I'm a night owl, so don't mind that. Yeah, what are your sleeping hours and working hours? I'm like awake till 3 or 4, and then I'll sleep till 10, and then I'm awake again. Wow. So is doing video and editing your full-time thing? Like yeah, this content marketing agency is my full-time thing. Apart from that, I also create content. You can look up my channel as well. It's TheMraadul, TheMraadul. So say it again. So youtube.com/what? I'll just type out that link name for Oh, you. The, so I create a lot of cinematic content. This is where everything just started for me. I loved creating videos, and that's why I do that for other people as well. wait, hold on a second. Is it youtube.com/that with the Yep, you can do it on slash, or you can just search on YouTube, TheMraadul. It'll be just first channel. Oh, okay, okay. With two A's? Yes, 2 ways. Oh, okay, okay. Hmm. Yeah. So I've not been posting consistently yet because I'm more focused on agency right now. But I'll start again with more cinematic films. Okay. Cool. Okay. Is there a way you could kind of lay this out in an email to me of like this is kind of the scope of the work of what we get every month, the cost, all Sure. that stuff of this because I usually I do 1 episode a week, so four Yeah, episodes a month typically. When I go in person, the person who films it usually will edit that as well, but I would still then if it's an in-person one, I'd still want you to make clips and the trailer and clips, Mm-hmm. because my video guy doesn't do that. He just edits the episode to get the video together. So Okay. that would be kind of the expectation there. When it's on Zoom, you just get like the files from Zoom, Got it. and then I try to give a good leadway. So like I try not to make it a quick turnaround. Every once in a while I need to, Mm-hmm. but I try to give a few weeks of lag so that you have plenty of time to do it all. With Got it. with the occasional exception of hey, we have a quick turnaround here. So that's really how it works. Got it. Just one thing. I want to understand, do you have any numbers of short forms that you want to put out on YouTube, or do we decide it according to our strategy? Uh, I'm as far as clips, I think at least a few clips per episode, at least a few that you put on Instagram, LinkedIn, Twitter. Mm-hmm. I think that would be smart. Got it. Yeah. So we'll create a system around it, and then I'll shoot you an email. Cool. Yeah. Perfect. So just let me know if you have anything else that you'd like to clarify, anything that you might have in your head. Okay. No, I think this is good. I'm gonna watch some of your videos, but and some of Cody's stuff, or if you want to send me specific ones of Cody's you've done, that would be great too. And then Yeah. send me an email of just kind of like scope of work of how it all works, and then so we can kind of see get it all out there and figure it out. Got it. Just last thing, for my personal, what is that kind of feedback? What made you like jump on this call to
work this out together. And even after we had a lot of hiccups in setting up this meeting. Let me go back. Hold on. Let me look through. I get pitched for this type of thing, uh, multiple times a day. Mm-hmm. So I'm trying to scan and see the difference in what made me. I mean, there was probably a part of it that the timing worked, and a little bit of it is my current frustration with. I really like the person who does my YouTube. He's a good guy, but it feels like the communication has dropped off as the quality, as like the channel is not. Like I used to get reports every week on this is what we're doing, this is how we're doing all this stuff, and I don't get those anymore. The communication has fallen off as far as what's going on. I still think the trailers he makes are great. I think you had sent something around. You sent a Loom. I actually watched the Loom. I normally do not, but I did watch your Loom, and it felt to me like the Loom video that you had an understanding of what we were missing on YouTube. Now that I'm seeing it here, and so after I watched that Loom, I felt like, well, maybe there's a chance. Maybe there's a chance that you could figure this thing out. Nobody has figured it out yet. And yeah, that's why I responded. And then you said multiple things you do, their titles, thumbnails, punchlines, CTR, heavily repurpose the podcast into short form, A/B testing. Yeah. I thought I was doing most of that, and I think we're doing some of that, but it's obviously not working. So I'm open to trying things. I also do appreciate somebody who hustles and works hard. It feels like that's like you're like this now. One of the things that has upset me in the past at times, because I've been trying this for years, is when someone hustles really, really, really hard to earn the business, and then after they earn the business, they stop hustling and they just kind of do mediocre work. If that were to happen here, that would be a huge bummer for me. And it's obviously not going to be good for business for you, because what you want is you want your clients and customers to rave about you and to tell their friends, and that's how your business is going to grow, right? And that's how my business grows. So that's how everybody's business grows. So if you hustle like crazy to earn the business, and then you kind of like just chill out and like work medium effort and don't get results afterwards, well, then you may have won in the short term and got a little bit of business, but it's not going to work long term. And for sure. So hopefully it doesn't seem like that's how you are, but that my hope would be that you would work just as hard or even harder after earning this than you get the business. Absolutely best, and my team will absolutely do my best to make sure that we do what we say. Cool. Yeah. Okay. All right. Yeah. Send me an email. We'll keep talking from there. Sure. Yeah. Perfect. Thank you for coming on the call. Yeah. Sounds good. Thanks, man. Bye-bye. Take care. Good night. Bye. So now let's come to the closing part. अब closing part is extremely practical. इसमें बहुत सारे variables आते हैं, तो मैं उसको इस चार्ट पे तो बिल्कुल नहीं समझा सकता, वो बिल्कुल भी थ्योरी नहीं है. तो what I'll do is मैं अपने कुछ sales calls list करूंगा. तुम उन sales calls को देख सकते हो, मैंने कैसे उनको close किया उसको समझ सकते हो, उसको तुमको खुद decode करना होगा. And after that I'll put one or two more sales calls जो कि तुम देख सकते हो. You will be able to grasp कि मैं कैसे communicate करता हूँ clients से. And that's the service, actually. Yeah. Okay, so you are doing content creation right now, or how No, did you it's find my this information? my partner is he owns like video and photography company. Okay. So he is the one who will take care of the course, and I Uh-huh. will handle everything else. Understood. So, like, this is for one-time project for the course only, or you'll be, getting other work done as well, like ads, Yeah. other VSLs. Yeah. So at the moment, first Yeah. we're gonna create
free platform, like a lead magnet. Yeah. It will have like five, six videos, Mm-hmm. like between 3 to 7 minutes. Okay. And then when they want to, with a VSL at the end, and if they want to like get to know more about the course, we will have the actual course. So Okay. at first, it's a short-term project in form of creating these videos, editing these videos, Mm-hmm. and just test out to see how many people that are interested in the course. And if Yeah. we see that a lot of people wants to join and want to learn more, then we will create A the whole rest. full-fledged course. Yeah, exactly. And then it will be a long-term project. Gotcha. Understood. So, like, it'll be just the basic videos of the course with to warm up the leads basically and to get the data from the industry or the market if Mm. your course will perform or not. That's the thing. Yeah, exactly. So we don't want to create everything before and then it's Yeah, not yeah, that popular. makes sense, of course. Yeah, Yeah. so you want to do basically lead gen right now. Yeah, Excellent. exactly. Okay. Have you worked with an agency before or an editor before? With an agency or an editor, Yeah, like for these kind of services for video production I services. have a short form editor. It's Okay. not the same. Yeah, Okay. so little bit difference. Got it. Got it. Understood. So do you have the content ready right now, or you'll be preparing it after we, conclude everything, No, it's he has filmed it and everything. or just It needs to just build? yeah, Okay. So like any style that you have right now in mind, anything that you I want, like like, okay, yeah, got I it, got like it. that. That one. I'll just write that down. Yeah, And we like a lot of animations, like okay, you do. The animations that so people can picture what they hear, yeah, yeah. and in combination with a lot of B-rolls. Okay, so if I assume it right, you don't have a brand identity for that course right now. Like some logo, Sorry, some fonts, some colors that we'll have to pick from. You don't have it right now. Got it. no, we So we'll don't have to have that. build it essentially. Yeah, exactly. Got it. So when are you planning to launch this thing? When you want this to be done? But as soon as possible. Still, like something, some deadline that you have in your head In a month. in a month. And how many videos or raw files do we have in GBs or runtime? So it's 5 videos, Okay. and my partner has already put in the right sequences and everything. So Mm-hmm. you don't need to find the right, raw. You don't need to mix with the raw footage. He has fixed everything with the. I think also with the color grading. If I'm not wrong, you just need the animations and the B-rolls. Got it. So is it in Premiere Pro if you know about it or DaVinci Resolve? Yeah, Premiere Pro. Premiere Pro. Okay. We'll have a look there. So do you have any budget allotted right now for this project or are you flexible? I'm a little bit flexible, but also in a budget. I checked with another guy, but it was a little bit over our budget. So I was gonna check out like like what do you normally take, or does your like compensation structure work Okay, so if I assume it right, thing is we need to do 5 videos at the moment? Yes, at the moment. And length, I forgot to ask you about the length of the videos. it's between I think like 3 to 5, 6, 7 minutes at most. I'll just take it at 3 to 6 minutes. Yeah, Got it. Okay. And as you said, like we have already done color grading part yeah, and and cuts part, yeah, exactly. and you want it done in a month. Yeah. Okay, to kickstart this, we can start off with these 5 videos, Mm-hmm. $1,000, Mm-hmm. and then once this is done and how we are working with you, then we can work on the recurring basis about your course and whatever you take the input from the market. Yeah. Yeah. Do you normally do monthly or do you always do per video? Monthly. It's like a retainer. Right now, it is a one-time project, so we want to Exactly. mitigate risk from your end as well. So it'll be Yeah. like, for now, it's a one-time project. So of course,
50% upfront and 50% after the project is done. And Yeah, after that is done, we'll have to restructure everything according to the next project that we'll have, exactly. and then So we'll so get if the it's return. going well with the course, then we will need, I think, monthly. Yeah, of course. Yeah. So let's say these 5 videos are 1,000. Let's say we need maybe 3 videos short form with for the ads, you know? Okay. Um, Under a minute, right? yeah, exactly. Under a minute. Three short forms. You can take it as $100 per short form for now. Okay. Yeah. And just one thing Okay. I forgot to ask you, how do you define success in this campaign that you will be running? What is the KPI? What is the metric that you're chasing for? In what? In launching this 5 videos, and then you will be, of course, gaining some data. What is the main KPI that you'll be looking for to launch the course afterwards? Yeah. So listen. We will do Facebook ads Mm-hmm. to. Do you know what school is? Yeah, The I've seen. platform school. Yeah. Yeah, I've seen. So we will have the course inside of school. So it's not exactly like. Uh-huh. So we will have a VSL Okay. where we welcome them to join the community, and then this free school community Mm-hmm. with these 5 videos. The last video is a VSL to schedule a meeting so they can join the paid Course. course. Yeah. Okay. So the purpose of these videos is to make it so good that I think, okay, if this is what I'm getting from the free version, imagine what I will get from the Yeah, the paid course. version. Yeah. Exactly. Exactly. And then, for example, if you're also doing a great job and like a We'll really do good it. job We and assure you. want to, yeah, Yeah. because we also want to have a module in the course that's about animations. Okay. Yeah, so then like we can have a like future project also with where you can be a coach, for example, Okay. inside of the course where you teach other people as well. Mm-hmm. Uh, Makes sense. that's an also like a future alternative we can talk about. Yeah. That's But great. yeah, yeah, but the first videos is like make them so good that people think, "Damn, I need to join this course so I can Yeah. see." So every content is planned. We just have to dial in the editing part, the animations part. Yeah. So for the free version, everything is done. We will start planning for the paid version, and we will have like let's say 7 modules with 1 to 7 videos in each module as well. And length. The same. I don't know. I'm not sure because we will teach them. I don't know how long the video will be. Yeah. Uh, so this is something I need to discuss with my partner because he's the one who will film himself and create everything. Mm-hmm. Uh, I can show you. I can send like his Instagram is. Um, yeah, I wrote here in the chat. Yeah. Okay. I'll check it just now. So he's the one who will create like film himself and do all the content. Um, he will be the face of the course. I will Mm-hmm. work in the back. Got it. So it depends on how long it takes for him to film, like to teach them do different kind of things. Mm-hmm. This Because is this is the profile, right? yeah, exactly, exactly. Okay. Got it. Got Yeah. it. Great, man. Yeah. So yeah, so it depends how long it takes for him to because Yeah. you're gonna teach him photography, like filming, editing, VFX, Mm. everything. Yeah, it takes time. I mean, I'm also building a course in the back end with one of my Oh, partners, and it takes okay. a lot of time Yeah, planning. That's yeah, that's exactly. for sure. And You editing, do and just taking down everything from planning to execution takes a lot of time. exactly. We planned initially that it will take us 3 months, but it has already took us. We are in fourth month and we are just 50% there. Yeah, it's always like that. You're Yeah. doing the same type of course?
We are doing it for freelancing. So I've been doing freelancing for like 3 to 4 years, and now I'm running an agency. So it's like Okay. he's really good at the technical parts of a software that is DaVinci Resolve, and I'm really good at sales, marketing, and all of that part. So Mm. we'll be combining our skill set and making a course in India because there are very less courses to Okay. target this Indian market, and most of them are shit. So we really want to make a really good course. Okay, that's awesome. We will start in Scandinavia and then see how the market is. So that'll be in And local language, right? no, no, we will do it in English English. Okay, got it. because it's easier to scale. That's great. Like, Okay, I was thinking you'll do in your regional no, language. no, we'll do it in English. Okay, okay, got it, got it. So, are you ready to, start it right away and I'll just prepare the contract right now, or you want to, take time, think about it? I think I'm 100% sure. I just need to talk with my partner. Okay. Uh, I will give you the answer today, but it looks good. How can I come in contact with you with the best? Is it through mail or? Yes. Once we sign the contract, we'll onboard you into a Slack and we'll talk about everything there, and we'll, send the invoice, and you'll Yeah, essentially have to pay 50% upfront. Send us the raw files and everything that you have. If possible, you can send us the project file as well because everything will be there. So we'll just yeah, start exactly. from this that base. So we'll let you Mhm, know everything that you mhm. need to know before starting the project. Okay, good. Just once confirm me through the mail, and we'll send you the essential things. Let me talk to my partner because he will be the one having the meeting with you because he has filmed himself and know Yeah. exactly. Yeah. So and he's coming home today from Japan. So Mhm. let me just come in contact with him and we can start right away after that. Sure. When can I expect the reply? Anytime? Today, what time is it for you today? At the It's moment, 2:45 right now in India. two p.m. PM. or Yeah, a.m. PM. Let me just check so I can see. So at the moment, let's say around maybe 10, 11 p.m. Got it. I'll ping you at 11 p.m. through the mail. I'm And gonna if write you it need down. my WhatsApp number, you can take it as well if you just want to have quick conversations there. Contact. Okay, awesome. I've sent you my WhatsApp number as well. Yeah, okay, really good. Okay, perfect. Yeah, awesome. Yeah, perfect. Yeah, Let's get started with this project. yeah. Let make it fire. Yeah, it'll be Awesome. fire. I can assure you that. Yeah, when I've seen, I know that you can do it. Yep, yep. Okay, it was Awesome. nice talking to you. And Thank you. yep. I write to you later today. Okay, Okay, yep, sure. Bye bye. Take care. perfect. Yep. Thank you. Bye. I think it will be very easy to actually break through in Sweden. Hmm. Um, because there's no one that's like sharing the insights of how it is as an entrepreneur. And like a lot of people thinks like working online, making money online is a scam in Yeah. Sweden. They just think it's bullshit basically. Okay. Um, so that's what I want to do like first of all. And I also want to play a bit in the part like that I don't have anything to sell the people. But my long-term goal with the personal brand Hmm. is to basically have a B2C offer where I teach people sales. That's what I do myself. Oh. Uh, and then also have my B2B offer. So my B2C offer is basically I take in people, teach them sales, Hmm. and then from that I hire them to my sales agency and we go out to companies and put up sales systems. So that's like my Oh, whole like okay. end goal with the personal brand and like just build a fucking community around it as well. Makes sense. And do you want to do it like this year itself, or do you have a number in your head? Suppose after 10K, I'll start doing this B2C thing, and once probably I'll hit 20K, I'll start to do this B2B thing. Do you have Hmm. any number in your head, or it's just like uh, this normal thing?
Not a number in terms of like subscribers and stuff, just Mm. like I want to start launching it like at the end of the year. So like let's say in December. Okay. That's where I want to start like actually launch the product. Yeah. Okay, so you have a deadline, but you don't have any number goal as such of subscribers and all, right? Yeah. Yeah, correct. Okay, and you told me about sales that you're working in sales right now. Do you have your own Mm. company in which you're working, or another company? Good question. So I have my own company and I work inside of other companies. So you know Okay. Maxim and and Yep, Oliver? yep, I do. Yeah. Yeah, I run the sales team for Maxim and Oliver Mm-hmm. and do some sales there as well. And then I run a sales team in America as well. So I like come in as a consultant basically. Okay, and that is under the umbrella of your company. Yeah, yeah, Okay, that's perfect. So that is your B2B offer that is currently running. pretty much. Yeah, exactly. Okay, okay. And for the documentation, as you told me, it's like one video a month or two video a month. Exactly what that is. I really like value high quality over quantity. Okay, So I want one YouTube video a month and then push out short form as well. okay. Um, just one thing. Do you have a number goal in your head? Again, I'm asking the same question because Mm, if you'll be focusing on quality, uh, that makes sense. But you want to do like high value stuff. But at the start, as far as I have seen, I've been in the game. In the initial phases, a creator has to do a lot of reps to make sure the algorithm knows what the content is all about. There are, of I'm course, down, bro. yeah, man. I mean, there are, of course, creators like I forgot the name of him. He has posted one video a month and has got a million subs under a year. But that's just, Mm, you know, kind of very lucky thing. And he has been doing on other YouTube channels as well. It's not like he mm, just started and went all boom, like boomed his channel. It was like he was working on yeah, other channels, but it didn't work out the way he wanted. So he shifted to a new channel and strategized everything. yeah. So of course, if we'll be working together, I will be internally strategizing everything for your YouTube. But again, if the Mm, volume won't be there, the chances of you gaining visibility in the short term will mm, be a little less compared to if you'll okay, just push quality plus quantity. Because quality, of course, you can shoot great videos with the camera with all of the great pre-production. We'll take care of the post-production part. The quality will be there in the post-production. And if you yeah. can do like bump up preferably a video a week, Hmm. then it'll be really great. But if not, if you're comfortable, if you're not comfortable doing that, if you're comfortable with one video a month, we can test it out. We can test out in a month four videos as well and compare Mm, both of the things. yeah, yeah. Makes sense. No, like as you are the specialist here as well, like you have a pretty big YouTube as well. So obviously I'll listen to you. And yeah, the reason why I say like one a month is because to be honest, like I sit most at my desk like every single day. That's your content, dude. That's your content. You sit. That's the reality that you're telling to the audience. Online make Yeah, money making is not a scam. You can do it, yeah, but you'll have to sit whole day. yeah, yeah. No, but two a month is 100% doable for sure. Um, 100%. Like two YouTube videos a month is 100% doable. And I also really want to play into like short form Mhm. style because what I've seen like clipping is the thing that like helps you actually gain audience like really fast You're basically. right, yeah, that does. So you can be more visible to a lot of people in the shortest amount of time. That we'll Yeah. make sure of. We do that because we do it for every client. So what we do is, as like ideally, we prefer that the client gives one video a week, and then we clip out Mm-hmm. 4 to 6 short forms out of that. So 6 days Mm-hmm. of content, 4 to 6 days of content is ready for short form content, and in one day, like that long form content goes out. So 7 weeks, Yeah. 7 days of content is almost ready. Every day something is being posted. Yeah. Yeah.
why I'm smiling is because, bro, like I've been waiting for this for so long, and finally, like things are starting to pick up. So yeah, That's that's the great, reason. man. I mean, I would love to, work with the personal brand. And I also am really fond of that cinematic stuff and all of those things. I would really look Yeah, onto this thing personally as well, because I also do yeah, that on my YouTube channel yeah, as well. Yeah. yeah. I really fuck with your content. That's the reason I reached out as well. Yeah, I'm glad you love the content. Yeah, yeah, man. Yeah. I think that was pretty much it that I wanted to know. Just one thing, what is the number of short forms that you ideally want to take out from a long form content, and then again, ideally what you will be shooting in terms of short form content? Good question. So, um, ideally, like as much as possible. But there as well, like I don't just want quantity out there, like because it's tied to my brand, you know. Uh, And I want like high quality stuff because just that's just who I am as a person. And the reason why I reach out to you in the first place because I try to do everything, learn editing myself, and I was sitting like 20-hour days behind my desk while trying to, do the stuff I run as well. yeah, And like it doesn't work with the scalability, you know? exactly. Um, so like just as much as possible, like a number as I wrote to you as well, like between 15 to 30 short forms a month, basically. Yeah. And that's I just like prioritize high quality over quantity if it's like not good. But I believe in you guys and I believe that you'll fix the quality stuff and then just the more the better, in my opinion. Okay, so And ideally it's 30, but we can start with 50 to see how that works yeah, out, right? yeah, yeah, for sure. Okay. Uh, and what I would shoot is like if you guys do you help with like short form ideas as well or What we do right now is like I'll tell you a little behind the scenes about a process. Uh, mm, w- what our USP is basically we tell the client to just shoot a long form content, and it's majorly for talking heads, right? So you mm-hmm, are coming and talking about stuff, and we are getting one video a week, and then what we do is we take everything out of the hands of the client. We do the post production, we distribute it, we manage the YouTube, and we take out short forms from that particular long form video as much as we can, so that the long form is not getting affected. I mean, we can take out yeah, every minute of it, but still we don't do that. That's not ideal. yeah, So we do that, and if the client is opting for X and LinkedIn repurposing as well, we do that through AI. mm-hmm, So that is the okay, whole repurposing game that we are playing. But if you're talking about the new shorts that you'll be giving, mm, so in that scripting, for the scripting part, we'll have to sit together and jot down ideas together, because in the yeah, scripting part, we'll have to understand you first. What are mm-hmm, you as a person? What do you want with your brand? Then only we'll yeah, be able to, script those videos out better. Then you, exactly, and you can be completely free. You just have yeah, to shoot, and everything will be done by us. But scripting is 100%. a little hectic, and that's why we jot down pointers for the clients, not the whole script. Yeah. Yeah, makes sense. Makes sense. Yeah, man. Like to be honest, you guys are the experts. Like I literally do whatever it takes to like just my goal right now is to build a personal brand. Like that's everything I want to focus on and grow a big audience. That's great. I mean, I love people who are, going all in into this thing. I love the clients Yeah. that are, ready to do the efforts that it takes to, build a personal brand, because building personal brand is definitely not easy. Uh, No. this is just a little side thing. Clients come in the meeting and they expect like everything will be done by us and they won't have to put in efforts. But they forget that Yeah. a personal brand has personal in it. So you 100%. have to put in No, I efforts. agree. Exactly. And I like that. That's what I like. I like because it's my brand and it just reflects like I am the guy that puts in the effort. So I like that. Yep, I mean, we are down for it. I love the whole idea. I'm excited for it. So basically, the content deliverables, I'll just wrap it up. Two long forms a month, Hmm. and ideally Yeah. for the first month, if we start, it's 15 short forms. Let's just take it at 16.
so it'll be easier to Okay. divide per week. 4 short forms Yeah. a week. So, if you have a budget allotted for these things, please let me know. And if you're open Mhm. with the budget, if you want to discuss it right now, we can do that as well. If you want to, give it a thought and think about these things, we can do that as well. Yeah. Um, no, for sure. I just want to hear as well, like, because obviously there's a lot of, good editors and a lot of good people to work with out there. So, like, obviously the money part plays a big role in Exactly. itself. So, like, for too long form a week, or too long form a month, and then 16 short form to start off with, like, what would you guys basically like charge for that? The videos will be all cinematic in a sense, Yeah. with some animations that will reflect your brand. Ideally, it will range from 10 to 15 minutes or 15 to 30 minutes. What will be the ideal range? I just want to know from you. Mhm. What do you think is best? I mean, if you're vlogging stuff, if you really want to show the authentic side of it, 20 minutes will be good. Sometimes, if you want to put quantity, the ideal length is Mm. 7 to 12 minutes. But if you're doing Hmm. quality, people are coming after a long time. Like, you are publishing after a long time. So ideally, I'd suggest 15 to 20 minutes because the watch time will be more. Yeah, yeah, yeah. Let's say 15 to 20 minutes. That's good. Yeah, Okay, so 15 to 20 minutes, 2 videos, and then 16 short forms. I'd say $2,000 for that a month. a month. Okay, gotcha. Yeah, yeah. I mean, it's a lot of money, for sure. Um, and I spoke with Maxim as well. And how much do you charge Maxim like a month? Do you know that? For short forms, ads, Yeah, for ads right now we are doing 1700 for 15 ads 15 ads a month. a month. Yeah. Yeah, gotcha. Yeah. Like what I like as well, I don't only like to, because for example, myself, I work on a performance basis. So I like to throw in like some sort of performance basis where I can like, give Ticket better price. bonuses. Yeah. Exactly, because it minimizes the risks, Yeah. and it's also like performance based because then you guys get what you're giving. Makes And sense. that's what I like. Like, okay, let's say when I get 10K subscribers, you can get like we can come up with like like finances where you can get like a bonus when I get like 10K YouTube subscribers, if that makes That sense. makes sense. Yeah. So tell me, like, if you have something in your mind about the budget, we'll figure it out together. Hmm. Yeah. Um, my budget, to be honest, like what I'm thinking is basically like around 1K per month, so $1,000. Um, Yeah. that'll be hard for us, because the long form videos are longer, and Hmm. short form videos will not be repurposed from those long form videos. It will be repurposed, but not all of those will be, and yeah, just to be clear, this price is for, YouTube management plus YouTube, like editing and all. We usually Hmm. charge 4 grand for it. Mm-hmm. We are working with the clients and they are, happy to pay that. But right now, I've just cut 50% off of that because you're starting and you really don't know where Yeah. you're going with all of that stuff. And Hmm. I can come down to maybe 1800 a month for the same deliverables. And then once you hit 4,000 hours watch time and 1,000 subscribers, where you essentially monetize your brand, we can come up with a rev share model, reduce the retainer, and do a rev share of whatever YouTube is making or some other model that we can think of. Hmm. Gotcha. Yeah, I mean it's a little over my budget, from what I've been thinking about before, but I mean like I can give it a thought and basically
I have some other options to go with as well. Obviously, I just pick and choose the right one. Um, I just want to hear, like, do you guys offer like a guarantee in terms of, I don't know, like, I know it's hard for you to say like, yeah, you can get this many subscribers or this amount, this amount, this amount, but do you offer like some sort of guarantee in terms of that or no? Yeah, I can see like you are a salesperson because you often give guarantees to, get the risk, like mitigate the risk. I mean, Yeah, I ideally would say if your channel is above 10K subscribers, we offer guarantees for those people because we really know that they've been putting efforts and the algorithm knows them. Right now, yeah, what happens is, like when I started my YouTube, I was putting out great content from the start. But then what happened was, mm, even though I was putting out great content, the channel didn't pick up. yeah, After 12 months, it started picking up, and that just one video went viral, and I just, hit 20K subscribers with just one video. So that happens. yeah, Everything, like nothing happens for a year, and then everything happens at once. So it's like yeah, everything is just compounding slowly behind the scenes, and then all of a sudden, boom, one video mm, goes viral, and you're like sitting on 10K, 20K subscribers all of a sudden. yeah, So initially, I would say no guarantee as such, but that's for a fact that we will really try to make this channel work because that's all of a job. That's like a whole job to make things work for you on YouTube. yeah, So what I can assure you is that we'll put in the efforts to make sure the things that you're doing, the efforts that you're putting, is not going to waste. You are getting the ROI mm, out of that. And apart from that, we would really like you to be patient with the result and at the same time impatient with the action. So if we're saying that this is going to work, maybe this is not going to work instantly, but in the long of term, course. some of the videos Yeah, after a year blows up because that yeah, thing is 100%. trending in maybe 2026 or 2027. Yeah, So things work, but some takes a lot of time, some instantly blows up. yeah, And 100%. yeah, so the whole gist of it is no guarantees as such, but we'll try our best to make sure this thing works in your favor. Yeah, gotcha. 100%, man. And like just a realistic number, what would you think, like, let's say followers over just let's say Instagram, TikTok, and YouTube, Mhm. like on a whole, how many followers, like let's say we start with this and start posting a week from now. Uh-huh. How many followers do you think it's possible to get before like the end of the year? Like realistically. Okay. Realistically, we are specially doing YouTube, so I can tell you a number for YouTube. Um, Yeah. I would say if you're posting content regularly, everything is just dialed in, and we are constantly pushing ourselves to create more content every month. The channel will be monetized, and you can expect anywhere the least subscribers of 5 to 10,000 in that range, and the max can be like maybe 100,000 if everything just works out in our favor. Yeah, of course. Yeah. Um, so yeah, that's the thing. I don't want to set unrealistic expectations. Sometimes things don't work out, but I would say if you're being consistent on YouTube, YouTube is really rewarding. It's not like like Instagram, one reel booms and then other just drops off. If Mm, one video goes viral, second will go to, third will go to. yeah. Like it happens with YouTube way more often. So you can expect if one video goes viral and viral in terms of above 50,000 subscribers, sorry, views, Mm, your channel is like sorted. You'll be yeah. able to gain traction to that. Yeah. Yeah, man. Yeah. But I think it's good. I'll give the thought around like the budget side of things as well because obviously, I'm just starting out and I'm new to Yeah. this and I want to minimize the risk like as much as possible. Um, and like if we can basically come up with something that works for the both of us, that would be great because I like the performance-based models. That's just what that's what I'm I'm confident with, and
I just like that way more because I've been, with stuff as well. Like before, I'm paying for a service, and then it's not what I expect. Obviously, I'm not saying it will happen with you guys, but Yeah, it's just like exactly. for instance. But all right, I mean, it's good to know. What I would like as well, I almost had like a finished video where I edited myself. Mhm. Um, because I want to see your guys' work as well, before jumping into stuff like how it basically would look like. Um, how much would you charge? Like, it's almost I can share my screen here. My DaVinci Yes, is gonna lag, but no worries. let's Oh, you see. edit in DaVinci. Yeah, That's great. yeah, man. But it's gonna lag a lot because I'm on my stationary computer and it's pretty slow. My MacBook is here, but yeah, the file is in DaVinci. So I basically sat down like my first time editing, trying to fix it myself, but it just ended up being taking too much of my time and focus. So Mm, let's see here. Might take a while to open. I'll just wait with this share. no worries. But yeah, is that something you guys would be? Yeah, let's say like how much it's almost finished. It's just like obviously you guys like would make it 100 times better probably, and tweak the color grading and everything. So like just for a test video, like how much would you guys charge for like a test video so I can like The see whole and try it video out basically? or just a minute of Yeah, it? the whole video. It's like around 10 minutes. It's like around 10 minutes. Mm. I'd say if you're not really comfortable with if you just want to risk really low, you can just go with $100. And there's a dog here. Sorry for not saying it. So yeah, we can go Yeah. with $100 for a video. This video, Okay. just for the Yeah. trial edit, we can do that. Mm. Yeah. No, but that's good. I'm really down for that. Would I like? Can I just export the finished what I have done and export that to you, or how do we do that? If if possible, give me the project file of DaVinci. I also work in DaVinci. So what I'll do is I'll Yeah. just see the project myself, how that looks like. If anything needs to be changed, I'll sit down with the editor and see what we can what we can do better in the cuts and all of those things and in the storyline. Hmm. And just one thing that I need to talk about that, which is really important, and that is even if we don't work together, I just want you to know that with whomever you are working, just make sure the YouTube strategy is dialed in. That's all Yeah. you'll have to think about at the start. Of course, you'll make good content. Of course, you'll dial in everything in terms of post production and pre production. Your editor will take care of it. But if you have time, you study the YouTube strategy game, because Hmm. in at the start, if you just keep posting, it's like shooting arrows in the void and you won't hit anything. So Exactly. you'll have to And that's understand why I the want game of to. YouTube. Yeah, Yeah. understand the game of YouTube and then post strategically. So how we craft certain titles is like it caters to the mass audience. It caters to Hmm. certain. You're in sales, so you must have an ICP that you're talking to. Yeah. So Yeah. we like firstly sit down together with the client and then we dial down the ICP, whom you're actually targeting, and then build a Hmm. content around that. It's very easy. Stick to one niche and grow faster. Yeah. Even though you're documenting your journey, but you can craft the titles in a way where it actually sells to a particular ICP. Yeah. So Yeah. 100%. that's what you just have to keep in mind, even if we don't work together. Yeah, man. Yeah, no, that's really good to know as well. Let's see here. My DaVinci don't want to open. I don't know. Like this computer is pretty slow. Let's see here. Yeah, essentially, when it opens, I can send it over to you. If that's fine, I'll just send it over to. Do I just? I've never done like exporting, and do I just send it over on email or how do I do that? You can upload it on a drive and send over the project file, or maybe the drive link. Okay. Okay, I upload it to Drive and then okay, gotcha. And if you need Then help I'll with do it, we that. can just we can just hop on a quick call, and I'll just walk you through Hmm. that's exporting all the stuff. Yep.
No, that's really good. I appreciate that. Mhm. But yeah, I'll fix that as well and then send that over to you. There's some, can I write like what I want as well? Because there's some stuff I want within the video as well that is missing. If that's like, I want, I don't know if you have seen like the YouTube videos where you can like have like drone footage, like cinematic drone footage. Mhm. You can get like stock cinematic drone footage from places. Yeah. Yeah, and I want that in the video in itself as well because I was in Bali and in Vietnam where I filmed this. So I just want to add that within the video as well if that's possible. Yeah, that's possible. I mean, you just give us, you can mark it in the DaVinci timeline itself. Oh yeah, Put the marker there and then, I trust you guys. Like you can just put it in wherever. Like I have no idea. I have no clue what I'm doing with DaVinci and everything. for So, sure, man. I mean, but just send it over. We'll send you the file. yeah, fire. That's good. Just send me like yeah, Stripe link essentially or whatever where I can pay the $100 So for the video. we usually use Payoneer if you know about that. No, I've never heard about it. So we send the Payoneer link because Stripe is not working in India anymore. Oh, it's not sure. And if you've heard about Wise, we can use that as well. We can send over the contact, sorry, bank account details to you, Hmm. and you can pay through Yeah, Wise. yeah, whatever works best for you guys. Okay, we'll send I'll over do. our so bank details, and you can pay through Yeah, Wise itself. perfect, perfect. Is it possible for you guys to throw in like a short form as well, just so I can see like how a short form, like just the examples I sent to you, if you saw them on the IG. I saw that. Okay, let's just do that. Perfect, man. Let's take that Appreciate for a it. trial edit, Uh, and then let's see how that comes out to be. let's see, man. Perfect. All right, I'll give the budget a thought as well. See what I can work around, and then I'll just hit you up in IG because I want speed, man. Like I want to get this out there, you know. Yeah, man, just So think about it, and it's like the break-even amount of whatever you'll be investing will probably come after a year of constantly putting in the efforts. It's like yeah. if I give you the rough number, maybe you'll be investing roughly 20 grand a year into this whole Hmm. post-production part, and then that 20 grand will be maybe 40 or 50 grand in the next year. Yeah. So usually the CPM is higher in Norway, in Scandinavian countries, so you'll be able to get the Hmm. ROI, but that'll be Yeah. next year. You'll have to Yeah. invest in it. Yeah. For sure. What's the difference between post production and pre production? Pre-production is like you're shooting the video, scripting it, and you know basically having a storyboard. That this is what I Okay. want to shoot. This is what the video will look like. This is the scripting part of it. And post-production is like editing, publishing, Mm-hmm. making sure the color grading is good, sound design is really good, and the editing and publishing is being taken care of basically. Yeah. Yeah. Gotcha. And pre-production, you only sort of like post-production type of things, right? Yep, we do. And in the pre-production, we just help with scripting if client is willing to invest his time and effort. Yeah. Then only we'll be able to do that, because if we just agree to it and client is like, "But I won't be able to come on a call," then how will we be able to understand him and his thought process about Exactly. the scripts? Yeah. That makes sense. For sure. All right. Is there anything I need except for like, would there be anything I need except for you guys like actually growing the audience here? I didn't get the question. Like, would I need to hire someone for pre-production or everything or like anything else, or do I only need you guys to be able to help me like grow my personal brand? The possibilities are endless again. I mean, but I don't want to complicate it. If you're good at pre-production, the lighting and stuff, then I Mm, don't think so you need to hire a guy. But there's a big but, which is, if you want to scale and be fast at the game, you need to hire a guy at that point of time. yeah, So yeah, in the initial phases, if you know your stuff, and we can help you with pre-production as well, in terms of like, I can tell you we have SOPs, so we can send over yeah. that to you. You can dial in the camera settings and everything,
You can take some shots, certain things, or like we have everything there. You can essentially watch Okay. that and dial in everything, but you'll have to shoot. And Mm-hmm. once you are maybe making money with which you are having a break even amount for the services that you are getting for your personal Yeah. brand, then you can maybe invest in a videographer as well, pre-production part as well. Yeah. But yeah, Yeah. we For sure. as like apart from all of the things that you know we are essentially pitching you, will really help you, build this up from scratch with post production and pre-production. Mm. We'll be like, okay, Okay. this is where you are going wrong, because at the start Yeah. maybe you don't have enough feedback loop from the audience itself, that this is where Yeah. you're wrong, this is where you can do it right. So we'll help you with Yeah. that as well, that okay, Noel, this can be optimized, the hook can be optimized in terms of verbal delivery, and then the Mm. audience will hook better, they'll watch Yeah. more of the video. Yeah. That's really good. Gotcha. All right. And the guys I sent over like what I would like to basically like a bit like take inspiration from, but obviously like tweak it to my own stuff. Like, do you like their guys' content, and do you think it would be achievable to basically make that type of content here as well? Yeah, it is. I mean, Yeah. just dial in the post pre-production, we'll do the post-production part. Just Fine. shoot as Okay, much man. b-rolls and a-rolls possible. We'll take care of the post-production part. That's Yeah. it. Let's go. Yep. Let's go. Let's go. All right, man. Then I'll fix the drive link, send it over to you. For sure. Just shoot me with the Wise or Pioneer, Mhm. and then I'll give the thought about the budget and everything in general, and then I'll just get back to you like at the latest tomorrow about it. Okay, and you can. So what I would suggest is, if you can, finalize everything by tomorrow itself, it'll be better if you can Mhm. just start off with the projects altogether and not do a Mhm. trial at it. Because if you are just, finalizing everything by tomorrow night, maybe, then there's no Mhm. point of doing a trial at it. Just straight up start with the project, because in just a day we won't be able to do the trial at it as well, right? Yeah. So if you need time, and if you can just complete it by, like, finalize everything by tomorrow, I would personally Mhm. suggest, you know Okay. don't do the trial edit, just start with the project altogether. That's my take Okay. on it. If you really So want it, then we can do that as well. yeah, I was just thinking I'll get back to you tomorrow about like the decision of either doing this or not. That's what I Yeah. meant. Yeah. Yeah, but that's what I'm saying. I think I didn't clear that part. If you'll be working with us or not with that 1800 rating, Mhm. right? So yeah, I mean, Yeah. that is what I want to, clarify, that if you'll be working with us, then it'll be better we just straight up start with the project, not do the trial edit. Because if you trust us, Okay. we trust you, like you trust me, we trust you. That's a mutual relationship, and we'll make sure that everything goes as planned. Yeah. And if you're like, you'll take a little more time to decide it. In the meanwhile, we'll Mhm. do the trial edit, and then Okay. we can start, because that would make sense actually. Yeah. You know, Yeah. do the trial edit, and then you have just finalized everything by tomorrow, and then we are Yeah. stuck on the trial edit, and that just doesn't make sense. That's what I'm saying. Yeah. Makes sense. Yeah. Yeah. 100% makes sense. Okay, but let's do that. Let's do the trial edit, and then once that's done, let's make a decision, Yep. and then I also have some more time to like, finalize things in my head as well. And Sure, sure. um, yeah, when would you think the trial edit would be done, basically? I'll have to look through the file, but ideally it takes 4 to 6 days if it's a long form. Okay. Yeah. Gotcha. But yeah, that sounds good. And then, yeah, I guess we'll take it from there. I'll finish it and send it over to you, and then Sure. just shoot me over with whatever you need to shoot over to me, and then we'll take it from there. Yep. Works, Akima. I'll just send you the mail where you can send everything. You can send over the drive link here essentially, and no, we'll start with the trial edit, and we'll keep you informed. We'll keep you in the loop. Perfect. 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 Perfect, Noel. All right, man. Yep. It Good was nice talking to talking you. to you. Same, man. All right. Have a nice day, and I'll see you in a few days. Yep. You do. Bye bye. All Take right, care. man. Ciao. Take care. Take care.
Yo, bro. Just 1 second. Let me find my camera here. Yep, How's it going, bro? You all good? it's going good. Yep. How are you? Yeah, all good. All good. I was a bit down last week with the food poisoning, so I'm just recovering a bit. That's why I look a bit cooked. Yeah, I can see Um, that you're looking a little cooked. yeah, yeah. So I'm a bit tired still. But apart from that, everything is good. Yep. Keeping up with content as of now, so just trying to get that like rolling. But yeah. Yeah, I was watching videos of yours on YouTube. Those are really great. Yeah. Yeah, I think it's pretty sick. He wanted to send over Harsh, so he's doing a good job. So that's pretty nice. Yep. So yeah. So yeah, So, I received a message about, the past things, the quality drops and the retainer payment issues. yeah. So Yeah. uh, Go ahead. Sorry. uh, what do you have in your mind? Like, what are the things that I should be knowing so that we can structure everything properly and make sure that the things that have the mistakes basically and the hiccups Yeah. that have been in the past can be probably properly done with professionalism, because the thing that happened was like I messaged after the break in December. I followed up with him to see where the things went wrong, and essentially he said that he'll be continuing the services in January. I, confirmed with him, but the problem was that he didn't reply, and the communication, went off, Yeah. and it was not professional from his end to, drop off and then don't inform what actually is happening, what actually is the problem. Mm. If we Yeah. could have understood the problem, that this is the problem that we're facing right now, we would have sorted it out, because we Yeah. do it for like there. I understand this is a service-based business and hiccups happens, and Yeah. I completely acknowledge that part, that it has happened Yeah. from our end, but there Yeah. was communication gap, a big one, and then like a complete ghosting. So that was a Yeah. bit Yeah. unprofessional. Yeah. 100%. I agree. That's unprofessional on our end, and I think just a bit of like background story, so like kind of what went down like our end. Pretty much like December. Yeah, I think it was December. December we were just dead. Like we just died completely. Like 1 year of work, just like relentlessly on the same project every Uh-huh. single day, day in and day out, and then we launched it, and then that was it. Like that, that was the only thing we've literally just like been preparing for like for so long, Mhm. and then we just died like completely. So we basically just like took a good period where we were just like reflecting and not doing any new shit. Like we Uh-huh. didn't talk to anyone pretty much. It was just like, yeah, just like I would almost call it like a vacation without actually it being a vacation. It was just like just Wizard not mode, like. talking. Yeah, exactly. So like I think, yeah, we just went MIA pretty much for everyone. Mhm. He went back to Norway. I went back to Denmark, and then we kind of just like planned the next steps from there. And then we actually came to a point when the boot camp has been running for quite some time now, and we kind of just like let it run a bit. And then we saw that the metrics and everything wasn't going 100% according to plan, like the metrics that we wanted to reach with it. Because it was too much value. Like people got everything that they needed pretty much, and we saw that there was just a big gap between us actually like giving them that value and then pitching them the service that we had Uh-huh. for them to them good. So that was a huge issue, and we've learned from that, and now we've seen that it's not a good funnel for converting people. It's a really good funnel for like educating people and sharing a bunch of value. But for the amount of like hours and work and money and everything that has been put into it, it was just not like it was not giving like an immediate like outcome of it. We were Yeah. profitable, but it's not like as quick as we expected. So what we basically did now is that we went back into like the yeah, I mean like to the drawing board pretty much and trying to figure out like what we can do instead. And then we came up with this new offer. I'm not sure if you saw the recent video that I made about like Jörn, No, the not so yet. student that we had. Yeah. Yeah, but it's like a software deployment offer that we made. So it's like we teach people how to sell a low ticket offer, and then we have wrapped like an entire service around that. It's the same thing that we're teaching people. It's just a different frame to it and a different packaging.
but we pretty much made like a new paid program, a one-on-one mentorship program Yeah. that is all wrapped around that. So like that is the whole core product essentially. So it's one-on-one coaching, and then we just run the similar funnel that we have done in the past. So now we're literally just like running ads directly to a video sales letter that are then selling people on booking a call with us, and then that's it. So we just need ads, good editor for like resell, and that's it. And then we just sell people immediately. So we actually decided to scratch the bootcamp completely, pretty Okay. much, and just go with this funnel instead, the new one. And already now, like we've been running for like literally a week, Mm-hmm. and I think for the first week we've almost made like $100,000 in revenue. I think That's great. in like a week. So it's like it's pretty fucking good. And yeah, we just need to like scale that up now. But the problem is that we don't have good editors, Yep. and the editors that we're using right now are horrific. Like they're really bad. They're so bad, I and that's a understand. I huge get it. problem because they're not delivering on time. Expectations are set wrong. They are, yeah, it's just like not a good partnership, to be honest. We have one ad running, and that's problematic because we're not testing as much as we could. And how And many that's, ads do you need? Just sorry to cut you off. I mean, ideally, like honestly, like As as many. many as possible. Yeah, exactly. Like we just want to be testing so many different things. I'm not sure if you've seen what he's doing right now, but he's running so many different like creatives. He's running these like you should almost check it for yourself. He has like 290 different ads running on Facebook right now. Yeah. Just so many different formats. And that's kind of what we want to do. Like we want to have like the professional style, but we also want to have that like cheap style where it's just like it's almost as like the shitty short form content reel framework where it's just like the ugly fonts and everything just cut up like b-roll and like a podcast interview cut up into different like ads, and that's also something we want to try out, see how that works. So yeah, I mean, like to be honest, as many as possible, but I think, yeah, I mean, like main bottleneck is just like the quality. Like we're ready to pay for like quality, but it has to be there, and it's just the only thing that we've struggled to find with like anyone. Pretty much, you guys did a great job. Like when you started out, like big props to you as well for like the stuff that you did because that was really really good. And then, as mentioned, like I think there was this transition between you starting to Yeah. do the content and you got your team on, and then it kind of dropped from there. And that's natural. I know that's a big bottleneck, and it makes sense. Like you obviously need to scale in some way as well, and I know that's a big issue for like editors that are running agencies, and that's how they scale as well. But anyways, I was just thinking if there's any way that we can essentially look into getting this started somehow again. I mean, that would make sense, where we still reach like quality levels that we're looking for. Mm-hmm. And if not to the extent of what we previously did with the ads, maybe something more simple where you guys are doing the, again, as mentioned, the more like shitty format videos where we can just like redistribute a whole bunch of like ads, Yeah. because then Max will go maniac mode recording a whole bunch of shit, and you guys will just like, yeah, put Just all that shit crazily together. editing all of those ads. Yeah, yeah, exactly. I'm really down for like anything, to be honest. I think it's just expectations. I think that has to be on point. Mm-hmm. Yeah. So I don't know what your thoughts are with that. Yeah. So they were like majorly the quality issues. I went back into all of the data that we had for the things that we were working on. So essentially, Yeah. you shifted to the agency, and I essentially, scaled up my agency in June or July. Before that, I was working with you, and we were majorly working on the ads and the course, and the course Yeah. was on a very slow pace at that time. But then when we shifted to the agency, what happened was the editor was doing all of the work for the course part, and then there used to be bursts of work that used to come in terms of ads, and the ads quality used to suffer because the deadlines were very close, and we needed to get the cuts of the days done, day one, day two, and day Yeah. three courses done, and then at Yeah. the same time you needed ads as soon as Yeah. possible, yours, Dennis's ads. So that Yeah. used to create hiccups in the processes because we didn't have clear deliverables. If we know that these are the things that are coming our way,
we'll plan everything accordingly. Even if Yeah. we want to hire multiple editors for the same thing, for the same client, we can do that. But the thing is, we need Yeah. to have a clear set of expectation that this is coming our way. We know next month these 20 ads are coming. We need to keep our workforce ready. So, Yeah. when we are working together, I can assure you of the quality. We have the systems are refined. You'll get the quality that you want. We have one of the best editors, but is that the changes, of course. I understand the changes part because that was where I was lacking and I take full accountability of it. The Yeah. editor was doing a great job, but what happened was he uh, didn't look in the nits and bits of the processes that I used to take care of. And Yeah. sometimes what I did was because I was managing the course part closely, I didn't used to look into those ads so closely that I Yeah. used to be like, okay, these are ads, these are yours now. I didn't check them very deeply. So there used to be a Mm. lot of changes there. So yeah, Yeah. I take full accountability of that. Yeah, but it's fine. Yeah, it's fine. It's fine. It makes sense because like I think honestly like it's probably one of the hardest thing of running like I mean like content agencies like managing people. And Yeah. it's hard. It's like it's really hard because it is the small things and it's like it's the same thing that I see when we manage people. Like I see things very differently than like Simon, my success manager, are seeing things. Yeah. Um, so he might not see all the nitty-gritty things that I see when it Mhm. comes to like the process systems. Whereas probably the same thing with you, like you see something different because you actually did it. You're the Exactly. fucking first person that started the agency, are seeing things a bit differently than your editors might be seeing it. So I get it. Yep. There's I fully understand it. Yep. So yeah, I'll assure you that even if you start working with the agency, even if I'm not working, I'll make sure that every deliverable that is coming to your end is on Yeah, par, yeah, non-negotiable thing. So you'll get that. That is my promise to you. nice. And if like major pillar was this, major problem was this, the quality issue. Apart from that, I mean the timely deliverables, everything was going on there. Everything was on time. There used to be little to no delays, and sometimes used to be delays. The raw files were not there Yeah. for the projects. Uh, so I just want to know what are the clear amount of deliverables that we can come up with so that we can have a retainer pricing, not pay as we go, because that is not predictable, first of all. And secondly, if we are saying, okay, you'll be giving 10 ads per month, we'll Yeah. assign the workforce according to that. And at the same time, you'll be a little accountable that, okay, we need to get these 10 ads done because we are paying for it. Yeah. Yeah. Yeah, for sure. I mean, it's hard to say because, like, obviously, like if you compare the ads that we had last time, they were a bit more advanced than compared to. I actually want to show you right now, like what I Yeah, was please. meaning with. Um, so this is what he's basically running right now. Like you can see, You think AI is going to replace jobs? I The answer see is the yes. screen right now. Yeah, now I can. like, you can see it. Yeah, it's just like I mean, this is a bit more like edited, but like you see, like this is most of it. It's just so shit. Like it's so, but it works. Like it's a whole bunch of like redistributed Excuse me. Oh yeah, I've content. seen that. Yeah, exactly. So I mean, it looks so shit, but it's like you just have so much of this. So I think like you can see, Excuse me. yeah. So like these things, I think without being an editor, I could probably tell for a fact is more simple to edit than some of the stuff that we used to do back when we ran it, like the more advanced stuff. Um, so I think what my point is really is just like it comes down to like the expectations that we're setting, like what type of like ads are we creating. I can't tell you exactly right now. Yeah. Look, here's This is probably a bit more like advanced to make, I think. I don't know. I have no idea actually. Yes. Yeah, I I guess. understand what you're saying. I understand where you're going Yeah. with that. Yeah. So, So so yeah, go on. so what I mean is like, I think from like the previous amount that we paid, we don't have like we don't have cash to actually be able to put retainer payments on like $2,500 a month. As of now, we can't do that because we have just been having like rising costs with like the software over the past couple of months, Yeah. and we're spending like right now. I think we have like we have so many payrolls, and it's just adding up and adding up and adding up.
So right now we're spending nearly like $150,000, $125,000 a month, pretty much. So Okay. it's a lot of expenses that we have right now, Yeah. and that's just being like fully honest with you. I would love to get on a retainer basis payment if it makes sense for the amount of like stuff that we get for it. So if it's something that could outweigh like the yeah, I mean either like the quality or like the volume, I think we could figure something out like on a retainer. Yep. I mean, I Uh, completely agree. The ROI should be there if you're paying for the services. That is the I whole get it. point of, Yeah, getting the services. And yeah, I'll tell you about the pricing that we previously agreed on the $2,700 pricing. It was for, yeah, Maxim firstly came to me and it was 4 long form and 16 short form. And the yeah, deliverables kept on changing and changing and changing. So it all yeah, went down to course and only ads. So that was the yeah. pricing for 4 long forms and 16 Mm, short forms mm. essentially. Yeah, I mean, we can work on the retainer part. We'll talk about that. So I'll tell you, do you have scripts ready for the ads? Or are you Yeah, planning yeah. to, No, we're making scripts. We're okay, making everything. So like the only thing, like we already have like scripts and the raw footage. Everything is like ready. We just need editors to start get it done? So editing, it's like, and then psychologically everything is done. Like I've done ads, so I'll tell you one thing, which is there are few things that click with people a lot. The certain hooks. So certain generic hooks, like on Instagram especially, it's sub, very cringy hooks where a yeah, guy is throwing a rock into the ice, yeah, and then yeah, there's a snap comes after a second or two, and then the information continues. yeah, yeah, These type of ads are working there as well. So if I'll be having ideas, I'll be sharing that with you, and I just want yeah. to know if you want those ideas as well when we are doing the ads. Yeah, I mean, always down for like inputs, of course. Okay, That's got it. um, but I agree. Like we have, I mean, yeah, I mean, like I would say we're pretty good with like hooks. So like Hmm. I think brainstorming is, I mean, always cool. Like you just give you inputs. That's Yeah. always good. Sure, Yeah. sure, sure. So I just want to know, we can come down to the retainer part. What are the exact amount of deliverables? Not exact, a range of the deliverables that you want as an ads. Like we need to have a set number of deliverables so that we have consistency there. For ads only, like if we're just looking at that, or I think you were saying only for ads when you messaged me. yeah, yeah. So I don't know exactly how you like how you refer to it, but like what I would think is reasonable is between like 15 and like 20 to 30 ads per month, like separate videos probably. Okay. That is like dream outcome, 100%. Uh, s- 15 probably a good start, 15. but Okay. yeah, something like that. I think that's a pretty good start. But ideally, I mean, like again, you see here, like I don't want to share my screen, but like it has like 6,700 different ad creators on his Facebook ad library. Okay. Like I want to get that like, eventually. Okay. We want to have a lot, bro. Um, but I know we start somewhere, and we need to be able to keep up with like ad creation as well. Hmm. I know that's the majority of the place where like Maxim is going to spend his time right now, just like shooting ads. He just did that the other day, Okay. and I told him just continue to do that. We are going to the UK now, so we have UK ads, then we have Norwegian Sure. ads. I assume we're gonna have like Swedish ads as well, and then we're gonna have like Danish ads with me. Okay. But right now it's like Danish Norwegian and language and Swedish language and Norwegian language, right? Norwegian and then English. Yeah, that's pretty much what we have right now. Gotcha. So starting point is 50, and then you want to work all the way up to 30 ads per month, ideally. Ideally, yeah. Gotcha. Understood. And right now it's purely Norwegian and English ads. I don't know exactly what the scope for me are because I'm working on like. Did you see the video that Jamie Robbins made? His short movie. Nope, not yet. You need to check that because that is a really good video. That's basically what we're gonna recreate. I'm making like a VSL format, like in a or like short movie style thing. So it's like storytelling video, but turning it into like a VSL. I'll just send it to you on LinkedIn, and then you can check it out. Oh, So that's where majority of my time is going, like doing this month and next month.
Okay. And after that, I think I'm gonna get started with Danish ads. So right now it's just Maxim, so Norwegian and English, pretty much. Understood. Understood. Yep. So essentially, you want quality, things on time, accountability with ROI, of course. 100%. Yeah, for sure. So I Yeah. think, I mean, ideally, like, because I know it reflects the price point when it comes like I just call them shitty ad creatives compared to the good ones. Um, so I think it would be good for us to get a scope, a price range for like how to look like purely just like the shitty creatives, purely just with the quality, and then a split between like the shitty and the good. Okay, that'll be a little hard because just shitty and just that like that pricing won't actually work. Uh, you know, that's not feasible. We can, do shitty and or creative ads both at the same Yeah. time at the same price. There'll be no issues with that, but making things complex will not be feasible on both ends. So sometimes Okay. it's like for a month, you're planning to do just normal ads, and then we are Yeah. changing the pricing, and then we are just doing crazily heavily edited, and the pricing is getting changed. Mm, No, I mean, more so like it's not gonna change over time. I mean, more so like how would it look if we do like a setup where we only do like the shitty creatives, or how would it look if we only do the high quality, or how would it look if we do like a split between like the shitty and the high quality? So let's say if we have 20 creatives per month, mhm. then we do like 10 of the shitty, 10 of the good ones. And then I know obviously like because like if I go on Upwork and I find some shitty editor that could just like put some ads together and do the same thing that Iman is doing, it's gonna cost me like, I mean, we're paying this shitty agency right now like 20 to $30 per ad. So it's like that in itself would be like that would cost us $300-400 a month. Hmm. So it's more about like making a package and then comparing the different ones to each other so we can see how that would look. That's what I mean with it. It's not like it's gonna be like, okay, this month we're gonna like send you $200 because it's shitty ads, and then next month we're gonna send you like 2.5K because it's better quality. It's Okay. not that. It's just a combination between both, and then what it would cost us. Hmm. So ideally Does that make 50 sense? ads. Okay, yeah, I understood your concerns, of course. So you're essentially not comfortable with that $2,700 pricing. That's not justified for you right now. Do you what? $2,700 price. No, we can't afford that. No, we cannot. That's not like possible for us by any means because like we have way too much cost right now. We'll be able to afford it at some point, but like right now it's not possible. Okay. So that's what I mean. Like that's why I texted you in regards to like the pay as we go basis because I don't know like exactly how much it's gonna like how much work it's gonna require from us, like how much like we get out of it right now, obviously, compared to like the expenses that we have right now. So for us, it would be good to just like yeah, like not having to be like set in stone that we have to pay like 10 grand the next like 6 months or whatever. So like a pay as you go basis pretty much. Because things are changing for us like drastically over time. Like again, last year we had no cost for the software. Now we have like $150,000 a month in Yeah. cost, which is like it's just insane how much that has changed. Um, so right now it's just really hard for us to do that, even though I wanted to do it. Mm-hmm. I get it. Ideally, like your problem is of quality, and we would really want to deliver the ROI and quality that you want. The Yeah, results will, as I said, the ad funnel is working really great in a favor. yeah, If you're putting out more ads, you'll essentially get the ROI that you wanted. And I understand the budget concerns there, but this is the base that you will be building your essentially funnel on, the high quality funnel. I completely agree with the shitty ads. I mean, that can be done with normal editors as well. But the yeah, quality ones, we want to focus on that. yeah, And if you're building the creatives, the library of it, which will eventually give the ROI, yeah. I think we should take the bet on it
I mean, of course, $2,700 is a lot of amount for you to pay. You are essentially, one paying $150,000 a month to run the software, which is a lot, and I agree on that part. And these ads will essentially, give you the ROI that you're looking for. And I just want to, align the expectations right, that this is not Hmm. like another expense that you're making. And I'm not, doing any salesy kind of thing here. I just really want to tell you that this is the ROI that you're expecting. This is from where you will get the ROI. Hmm. Because yes, we want to deliver the services, but for the quality, and quality comes with the price. We Yeah. can do the shitty ads, we can change the pricing a little bit, negotiate down a little bit, but not a lot. Yeah. Yeah, No, I so get it. I get it. I get it. But I mean, like 2,700 is like, I mean, I know I'm not sitting with like the decision, by the way. I need to talk to him regardless. I told him that we're having this call. yeah, yeah. Um, but I know 2,700 is probably for 110% fact not gonna happen. Unless there is a like unless we are gonna be able to get like volume from that. Because at What that is the point volume it's that you're expecting? I mean like upwards like the 30-ish I think would make more sense. Okay, so to make it, to make it a win-win, because you're starting with 15 creatives right now. Yeah, yeah, We can revamp the pricing later on, but that's like, as we are increasing the creatives, we'll have to revamp the price when we obviously. are increasing the creatives. For 15 creatives a month for this month, what we can do is we can essentially just a straight, $1,700 for 15 creatives. How much is that? 1,700. 1,700? 15 creatives. If you want to get it done, high quality creatives, that's all. And then for as we move on, 30 creatives, like it's straight $100 per creative, $3,000 for them. $3,000? Yeah. Yeah, So this is like low risk for you at the start. You'll get 15 yeah, I think creatives. that's way better. Yeah, it's more reasonable. It's more reasonable. So what does this entail? Like we could just like tell you like this is like the quality craze or Quality creatives, yeah. I mean, we would yeah, really want to work on the quality part. See, we can, create volume of those shitty ads, of course, but if yeah, they are performing, then we'll be able to do that as well. yeah, yeah, We'll have obviously. to, Yeah, check with the hooks and all. You're also experimenting on the back end about the ads and all. yeah, So you'll have a better data of it. yeah, So got I it. don't know what you want to, experiment with first, but I would essentially say Um, 15 creatives, high quality, that'll yeah, really yeah, work in the sure. ads. Yeah. We have some really good ones that we want to test with right now. Um, I don't know like how like are you guys like ready like ASAP? Or like what is your workload When looking do like? you want it? Like just tomorrow when we onboard you? Like what's Yeah, the 3 months ago, bro. thing? 3 months ago, that's when we wanted it. Nah, but like I mean, like if you guys are ready, like we could move pretty quickly on it. I'll call Maxim up like right after this. Okay. I don't want to let you hanging too long. So I'll call him up and then I'll just let you know. But I think that's more reasonable to be honest. I think it sounds pretty good. And then with the scale up again, like as I said, like we have paid you money before. We're down to do it. It's just like again for us, it's just like either volume. It's okay, yeah. So it's volume, expectation setting, and quality. That's what we want, Yep. and And that I don't that's want to really give you what that ROI. I don't want yeah, to, give you yeah, nothing and just expect money. That's not our yeah, yeah, yeah. relationships in this service No, no, business no, I work. get it. I get it because I want to like. I mean, yeah. I mean, I want us all to ball. Like I want us all to be riding Porsches and shit, bro. So that's what we need. Yeah. You included. You included. So And I'm so pretty yeah. sure I mean, you'll I'll get the talk. ROI from the ads because we'll be running so many ads. Yeah, 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 for sure, for sure.
Okay, sounds good. Sounds good. Okay, cool. But no, what I said before was pretty much just like I'll call him up now. I need to meet up with an old childhood friend in about 45, Okay. so I'll do that, and then yeah, I'll just call him now, and then I'll just like hit you up later today and let you know. But Sure. yeah, I mean we need to get this rolling ASAP. But I think it sounds reasonable. Like that's a good setup, I think. Got it. So Understood. yeah. And I hope we you get the ROI out of it, and we really want to do that. So yeah. 100%. I mean, me too. Me too. I hope so. That Because would be this ideal funnel at is least. working, and I'm So pretty sure that more ads we'll put out, yeah, the more return you'll get. Okay, yeah, yeah. that was Okay, all. sick, bro. Yep, sounds good. I appreciate you, bro. And yeah, I'll let you know soon. And then just let me know if you need anything from me in the meantime, and then we can take it from there. Sure. Yep. Bye bye. Take care. Nice talking to Right. you. Take care, bro. Bye Bye. bye. They're based in Indore. Oh, nice. My one of my co-founders is in Indore. Oh, nice. Yeah. So do you have like a team over here also? Yep. We have a team. So it's like a Oh, full production marketing agency that we have, okay. and we handle all of the organic marketing part right now. So I love your videos Hmm. और जिस तरह से आपने शूट किया था स्पेशली Yep. क्योंकि एडिटिंग के लिए जो शॉट्स हैं वो भी तो जरूरी है ना Correct. जस्ट कांट डू डायरेक्ट एडिटिंग मिरर कर लिया मैंने Mhm. उल्टा ठीक है Yeah. अभी पता है डीएसएलआर से सेटअप है एक्चुअली वी सोनी A7 III तो वो भी सेटअप नहीं हुआ है ये वेबकैम से आप देख रहे हो No, no, तो it's इट्स all right. It's fine. It's fine. नॉट रियली आवर सेटअप राइट नाउ Best right कोई नहीं, now. नहीं चलता है. अभी चीजें कुछ इक्विपमेंट्स बाकी हैं Yep. तो Loved how your video was कि उसमें there were a storytelling format which so storytelling सिर्फ words में ही नहीं visual storytelling जो थी Mhm. that we loved and that's what we were looking for also. Mhm. लेकिन इसमें challenge मुझे लगा कि उसको शॉर्ट भी किया है उस तरह से कि वो आउटपुट आ पाए Correct. तो Yeah. तो हाउ डू यू प्लान I'll tell you the exact process that I do firstly for my videos and then for the clients. So usually if I am shooting my own videos, so usme what I do is I plan the script properly and I can show you right now so that you can have a clear idea about it. ठीक है Just give me a second. यस 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 एब्सोल्युटली Okay, so this is how I actually plan my videos. I firstly research the titles. I don't write the scripts, I don't do anything. पहले सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि अगर हम लोग टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं एक आइडिया को परस्यू करने में जो कि हफ्ते में एक वीडियो जा रहा है तो इट मस्ट बी रियली परस्यूएबल और उसमें पोटेंशियल होना चाहिए इवन 100K तक का भी. So that's why I choose the title. I do the research with ChatGPT and some manual research on YouTube. Then I plan some thumbnails. So the thumbnail planning part, why do we do it before making the script is purely because अगर हम लोग thumbnails में लिख रहे हैं कि we have to write 3 months left or let's say beat 99% of the freelancers, don't be in the rat race or step by step blueprint, so we'll have to craft the hook and the conclusion of the video in a way where we are using these terms so that वो clickbaity ना लगे. So that's why I write thumbnail and everything. Then comes the part of these scripts, which is like the pointers and everything. And then I properly write the script. So basically, whatever you're seeing in green, I mark it as the top-down view shots. And I write every single thing possible in the script. So the yellow color is angle 1. Green color is top-down shot of my iPad. Blue color is a different angle. Blue color is a different angle. And this is red is a different angle, angle 4. Kyung is a close-up shot. So this is how like I plan the whole script, and that's why the production quality looks good. It's less burden when I'm shooting the videos, but more when I'm writing the scripts. And majority of the part, when we want to produce really high quality videos, we'll have to make sure the script is actually to the point. We're not talking fluff in the videos. So that is like the go-to thing that I do in my videos, but it is not necessarily possible to do it for every client. Because usually what happens is अगर हम लोग कोई एक B-roll ideate कर रहे हैं या कोई एक angle बता रहे हैं client को, possibility ये है he doesn't have that filmmaking skills or a team to pull that. So what we do is we try to write the script, we give them the framework, and if they have the bandwidth to add something creative of their own, they can do that.
So that's how we do it for the clients. But if you're willing to invest your time, and if a guy or a client has filmmaking skills, तो we go to the edge कि हम उसका content और quality में produce करें. So that's the thing with the whole scripting part. And सो आप शूट नहीं करते, आप बस स्क्रिप्ट देते हो ऐसा? because we work with foreign clients, so it's not feasible कि हम कर सकें वो shoot. For Indian clients, yes, we have done that. Okay. So yeah, we have produced a documentary. Actually, it is on my channel itself, and I'll show you the link on the LinkedIn. You can have a look at it. So it is purely shot by my team. Okay. So yeah, we do shoot, but that is for just Indian clients. Okay. So I'm the Indian, unfortunately. Yeah. So we can come and shoot as well. So the point of I'll tell you a little brief about this meeting, and it is basically to understand your vision with YouTube, because as far as I've seen your YouTube videos, they're scattered a little. Some are case studies, some are informative videos, some are solving the problems. I love the video where you went to a business, solved a problem for them. It was a cloud kitchen. So that kind of videos really work on the internet, considering we have a good production quality. मेरे लिए सबसे easiest है वो बनाना, पता है? But that Because is a that's good content. Like कम time में अच्छे से produce हो सकता है. You just have to go there and get it done in just one day. I don't need any script. I can उसमें जो मैंने share किया, it is not even 0.5% of what I can do. So ये बहुत naturally हो सकता है, होता है, आता है, and students also love it. Plus even we can charge for it because उनको बहुत बड़ी help मिल जाएगी. Because I don't do phone calls also, so I'm not even available on phone calls. और वहां मैं जाकर उनसे मिलकर उनको बता रहा हूँ, तो इट बिकम्स लाइक ओह माय गॉड, उस लेवल पे चली जाती है. तो हाँ, कर सकते हैं इस टाइप का, और मेरे लिए बहुत नेचुरल है, आसान भी है. तो या तो बताओ यार, कैसा आप बता रहे हो? और सी यू देखो, स्टार्टेड का रीजन बता देता हूँ. बिकॉज वी आर नॉट यूट्यूबर फर्स्ट, वी आर कोचेस फर्स्ट. सो यूट्यूब हमारे लिए एक साइड हसल टाइप का रहा है, जिसमें जो डाल दिया, जो बन गया बन गया, और जितना डाला है उससे 1000 टाइम्स और बन के रखा है जो एडिट ही नहीं हुआ है. ठीक है. टीम भी रखी है हमने, तो जो हम आउटपुट चाह रहे थे वो मिला, तो हमने डाला. फिर कुछ कुछ हो गया उनके साथ, उनको छुट्टी चाहिए थी, उनको जाना पड़ा, फिर वो कंटिन्यूटी टूटी, और सो एंड सो फोर्थ, यू नो हाउ थिंग्स आर. सो इस चक्कर में बहुत सारा कंटेंट है. जैसे आपको मैं बताऊं, बिगीज बर्गर 300 करोड़ का ब्रांड है, उसके फाउंडर मेरे दोस्त हैं. उनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया 1.5 घंटे का, डला ही नहीं क्योंकि एडिट ही नहीं हुआ. ठीक है. सो ऐसे ऐसे कई अपॉर्चुनिटीज और चीजें हैं अभी हमारे पास कंटेंट. हम बहुत बड़ा इवेंट करते हैं दिल्ली में. मतलब दिल्ली में नहीं करते, पैन इंडिया करते हैं अलग अलग जगह. दिल्ली में अभी हुआ था इसी साल जनवरी में, तो उसके फुटेज बहुत सारे हैं हमारे पास. 2 दिन का इवेंट था. देयर वर 200 प्लस food business owner from pan India who came. We distributed like 200 awards also for different people who qualified different level. So all those content are there. So I was thinking ki maybe something, if we can use that existing content in a nicer way. That was one area. Plus मैं हर हफ्ते, और हम जैसे अभी आपसे बात कर रहे हैं, तो वैसे हम सेशंस करते हैं, और वो सेशन बहुत पावरफुल होता है. एंड उसमें बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट कई बार डिस्कस होता है. वो सेशन 1.5-2 घंटे के होते हैं. अब 1.5-2 घंटे तो नहीं है काम का, लेकिन हाँ, उसमें 5 मिनट का कंटेंट बहुत बढ़िया मिल सकता है, जो कि बहुत ही पावरफुल, इंपैक्टफुल हो, एंड दैट आल्सो कैन ग्रो. सो ये एक दूसरा एरिया था जिसपे हम सोच रहे थे. एंड देन फिर एड्स वगैरह के एंगल से भी कई बार हमको वीडियो की रिक्वायरमेंट होती है कि एड के तौर पे हम चला पाए. तो ये 2-3 चीजें होती हैं. एक सेकंड. सो 2-3 चीजें हैं जो मेरे दिमाग में है ना. इट हैज नथिंग टू डू विद यूट्यूब ग्रोथ, क्योंकि अगेन दिमाग मेरा पहले एज अ कोच चलता है. I agree, yeah. सो मैं उसी तरह से सोच रहा हूँ. अब डेडिकेटेड अगर वीडियोस की बात है, तो जो आपने स्क्रिप्ट दिखाई, आई लव्ड इट. तो अगर आप टॉपिक सर्च करके स्क्रिप्ट देते हो और उसको रिकॉर्ड भी करते हो, लेकिन देन इट विल बी समथिंग जो कि हमारे काम का हो पाए, क्योंकि और फिर पोस्ट भी है ना. Yeah, of course. अकॉर्डिंग टू एसईओ एंड एवरीथिंग, एडिटिंग एंड पोस्टिंग अकॉर्डिंग टू दैट, तो फिर हमारे यूज का ये आ पाएगा. और मतलब गोल तो यही है कि यार यूट्यूब ग्रो किया जाए, और थोड़ा कम से कम एफर्ट से, क्योंकि
अपने आप में एक बड़ी कंपनी है जो हम ऑलरेडी रन कर रहे हैं। So और basically, you don't want to invest much time into this, but still get the हाँ ROI that you are looking for. हाँ, क्योंकि मतलब ऐसा है कि कैसे बताऊं, चाह पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, I क्योंकि ये understand. कंपनी I get चलाने it. में ही देयर इज सो मच फोकस रिक्वायर्ड हाँ कि हाँ अगर हम यूट्यूब पे फोकस करेंगे देन दिस कंपनी विल सफर, सो वी हैव yeah. टू चूज आवर यू नो We can फाइट्स। dedicate मतलब like 2 days in a month to record a video. वैसा कुछ कर हम सकते ऐसा हैं कर सकते हैं. No, कि we दो we actually plan the content calendar beforehand. If you guys want to save time, so what we do is we'll prepare the scripts. Let's say you want to post one video per month, sorry, per week. So we'll have 4 videos in our arsenals. उसके बाद if you guys want to shoot two, तो 2-3 दिन में हम लोग shoot एक ही बार में बैच में ख़त्म कर सकते हैं. Even if it's for ads, Instagram or YouTube. So we'll shoot everything and then editing wala part hamara. You don't have to do anything. So we'll do it. We'll keep on posting, and then again in the next month we can do it for 2-3 days, and the cycle can repeat. So this way you can save the time. Only thing that you'll have to invest time in is the approval of the videos. Of course, we'll be editing it, but you have to have your taste in the videos as well. So we'll give you the links after editing the videos. You'll see if the video is according to you or not. And then once it is, कोई छोटे मोटे changes हुए, बी रोल्स चेंज करना है या विजुअल्स चेंज करना है, we'll do that and we'll post it. सो ये शुरुआत के कुछ वीडियोस के लिए हम कर सकते हैं, एंड देन लेट्स क्रिएट अ चेकलिस्ट सो दैट वही सारी चीजें अगर हर वीडियो में ध्यान देकर हम कर रहे हैं देन इट इज प्रीटी मच ओके। क्योंकि क्या है ना, इन पास्ट व्हाट हैज हैपेंड दैट रिव्यू पे ही अटक जाती है चीजें। अब पोस्ट क्यों नहीं हुआ, अच्छा क्योंकि रिव्यू हुआ, रिव्यू क्यों नहीं हुआ, क्योंकि टाइम नहीं था। अब वो ओके एक एक महीना डिले चल रही है, और नो मैटर आप कोई भी डील कर लो, हमारी तरफ से अप्रूव नहीं हुआ तो हम बॉटल नेक नहीं बनना चाह रहे प्रोसेस के। सो डे ओके वन से मेक हम सेंस ऐसे डिफाइन करना चाह रहे हैं कि इट कीप्स हैपनिंग। अब जैसे कॉमन मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई एडिटिंग में, या फिर रेलेवेंट बी रोल नहीं यूज हुआ। जैसे मैंने बोला ज्यादा पानी पीना जहर के बराबर है, अब उसमें पानी दिखा दिया, जहर दिखा दिया। अरे बात समझो, बात यहाँ पे ये कर रहे थे कि किसी भी चीज की अति नुकसान हाँ करती है, तो करेक्ट उसमें कोई भी चीज ओवरफ्लो करते हुए दिखा सकते हो, समथिंग लाइक दैट। जरूरी नहीं है कि वर्ड पकड़े जाए, मीनिंग पकड़ो। तो इस टाइप के कई बार मिस्टेक्स नॉर्मली जो एडिटर्स के साथ चले जाते हैं। समझदारी एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेसिकली. हाँ, लेकिन वो सब्जेक्टिव हो जाते हैं ना, तो इसलिए आई एम गिविंग एग्जांपल्स कि किस टाइप के चैलेंजेस आते हैं। जैसे टेक्स्ट है तो टेक्स्ट में भी कभी बार स्पेलिंग गलत हो गई, या बोला कुछ सुना कुछ और हाँ लिखा कुछ और हाँ हाँ है हाँ ना। वो मिलते जुलते वर्ड्स हैं लेकिन समझा नहीं कि यहाँ पे ये वर्ड कैसे आएगा, हाँ है हाँ ना, आई गॉट इट. लेकिन वही वर्ड सो डाल दिया यू टाइप डोंट ऑफ। हैव टू वरी अबाउट दैट, वी विल डू दैट, उसमें कोई इशू नहीं है. तो यही मेजर फीडबैक्स होते हैं क्यों अपनी तरफ से। अच्छा इंट्रो हो जिसमें काम की बात जो आगे बोली गई है उसी को हम कर दें, या लेकिन इट डजंट डिस्ट्रैक्ट। बैकग्राउंड म्यूजिक जैसे बहुत लाउड हो जाता है तो वो डिस्ट्रैक्ट। आपकी एडिटिंग देखिए मैंने, जो आपकी एडिटिंग है इट्स लाइक परफेक्ट। That's why we're हमें talking. Yes. हमें कोई फीडबैक देने की I'm जरूरत हाँ. नहीं glad. है I'm उसमें। glad to hear that. यस, Honestly. तो वी आर गुड इनफ, और वी कैन गो अहेड विद मतलब जो भी कंटेंट होता है। अगर लगेगा तो शुरू के 2-4 वीडियो देखेंगे, उसके Yep. बाद फिर एक चेकलिस्ट बना लेंगे आपके बेसिस पे, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड अभी इतना लो सेट हो चुका है हाँ हाँ इतनी प्रॉब्लम्स देख देख के कि भाई स्पेलिंग सही कर लो यार बस, ठीक है। okay. सो आई हैव लॉट ऑफ इनपुट्स फ्रॉम माय साइड जिससे हम और क्रेजी बना सकते हैं। माय कपल ऑफ वीडियोस हैव रीच्ड 6 लाख सब्सक्राइबर्स सॉरी Views also. व्यूज Views, आल्सो, yeah. एंड प्लस जैसे अंकुर वारिकू से लेकर राजीव तलरेजा से लेकर रश शमानी के लिए जो एजेंसी काम करती है वो हमारे लिए काम करती है। तो वी आर वर्किंग विद टॉप लीग्स, सो वी अंडरस्टैंड, एंड दीज आर इन द सेम सर्कल, वी आर अमंग द टॉप कोचेस ऑफ इंडिया। जितना रीच है, और विद ऑल हम्बलनेस, नॉट टू Uh-huh. ब्रैग, No, 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 it's all right. जो You should be जो proud about it. या जो हमारा ऑलरेडी सर्कल है उससे द इनसाइट्स, काइंड ऑफ इनसाइट्स वी गेट, मैं Yeah. फिर उस लेवल पे धीरे धीरे पुश करूंगा कि यार इसको ऐसे नहीं ऐसे और करके देखते हैं, तो वहां पे हमको जाना है। बट अभी Okay. बेयर मिनिमम ही सेट है बार, कि यार बेसिक भी हो ये गया बेसिक तो तो चलो। कंप्लीट हो जाए एटलीस्ट. हाँ, But no, कंसिस्टेंसी we'll आ do it. जाए। We'll do it. You'll love the first video itself. So no worries Let's there. I let's have go. few questions that I've written down. I'll just rapid Sure. fire it. So पूछो। firstly, we talked a lot about YouTube. So I want to understand if you are coming to YouTube, you already have a successful business that you are talking about. Yeah. What is your primary goal with YouTube? Some just wants awareness To about their open brand. doors.
I'm very clear about these things. So you just ask me, I will, no Yeah. options required. I will tell you directly answer. So what is the primary open objective with doors, YouTube? to Open doors. open doors, About? meaning Yeah. when we have certain level of subscribers, Okay. then the credibility is higher. Hmm. Then we can invite certain guests and we can go to certain guests, and all Okay. that becomes accessible. So our main YouTube goal is number one, to open doors, open access, set that credibility. Number two goal is, yes, generate some leads related to our business also, Okay. and make money so that we can sustain this. That is Okay. number two goal. These are two primary goal, nothing else. Got it. And what is the exact time frame or a rough time frame that you want a certain time, a certain transformation to happen? Let's say hitting 100K, or let's say 200K, 500K, or a view metric भाई we that are you at, have in that. पता नहीं, 190K, हाँ. we are at 190K 190K. already. Yeah. So next 500K का गोल है, जो कि अगर रियलिस्टिकली स्पीकिंग ढंग से अगर शॉर्ट्स एंड वीडियोस डाल के करते हैं, मुझे पता है 2-3 महीने बहुत है हिट करने के लिए, क्योंकि सर्टेन मोमेंटम ऑलरेडी है, हाँ. एंड जस्ट वी हैव टू लेवरेज दैट. हमारी कम्युनिटी भी है, हमारे पास लीड्स 10 लाख हैं, है ना. 10 लाख लोग ही सब्सक्राइबर नहीं है हमारे, जबकि हमारे पास लीड है, ईमेल आईडी है उनकी, है ना, फोन नंबर्स हैं उनके. तो आई नो अगर हम कुछ बहुत ही तड़ाके भड़ाके दार, कुछ ऐसा जो उनके लिए ओ माय गॉड दिस इज सो मच रेलेवेंट टू मी, ऐसा कुछ लॉन्च करते हैं, तो मोर रिव्यूज विल पंप इन ऑर्गेनिकली एंड लाइक सजेस्टिवली आल्सो. अभी तक हमने ज्यादातर सर्चेबल कंटेंट पे काम किया है, Okay. क्योंकि वहां से लीड सॉलिड आती है, और हमने सजेस्टिव कंटेंट पे कम काम किया है, और सजेस्टिव कंटेंट से ही ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है. हमने पास में किया है यार. मैं थोड़ा सा असमंजस में हूं, आई विल ओपनली शेयर वेयर आई एम स्टक विद. मैं ऑलरेडी, मतलब कहूंगा नॉट फुल्ली बट पार्शियली, आई हैव already in past cracked the code. If you see these videos, so what I did here, I targeted a particular community, Yeah. which was like that state उड़ीसा. तो उड़ीसा के लोग बहुत कनेक्ट किए इस वीडियो से. इस वीडियो के रीशेयरिंग हुई है कम से कम 500 बार, है ना. तो 500 लोगों ने रिक्रिएट किया ये वीडियोस, ऑल्दो उनको उतने व्यूज नहीं आए, तो मैंने उन पे कोई वो नहीं लगाया है स्ट्राइक वगैरह, लेकिन बता रहा हूँ जस्ट कि इतना रीशेयर किया गया ये कंटेंट. Okay. रिएक्शन वीडियोस बनाए इसके ऊपर, पाकिस्तान के लोगों ने रिएक्शन वीडियोस बनाए, ऐसा वाला क्रेज हुआ है ना? अच्छा. Okay. और ये था सजेस्टिव कंटेंट, ये सर्चेबल नहीं था, ये सजेस्टिव था. उड़ीसा के अगर तुम हो और वीडियो आया, तुम देखोगे जरूर. Correct. तो आई नो द कोड. इसी तरह हमने रेस्टोरेंट के ऊपर ये बनाया था, ये सजेस्टिव प्लस लीड जनरेटिव भी था, सर्चेबल भी था. तो अगर 90% कैफे फेल हुए आया है, तो मैं क्लिक भी करूंगा, और प्लस अगर मेरा इंटरेस्ट है और मैं सर्च कर रहा हूं कि रेस्टोरेंट कैसे खोलूं या प्रॉफिटेबल कैफे कैसे बनाऊं, तो भी मैं ये क्लिक करूंगा. और इट वेंट टू 643. Okay. Yeah, makes sense. ठीक है. सो 10 tips to launch cloud kitchen, ये मोस्टली सर्चेबल वाला टाइप ही था, ये सजेस्टिव नहीं था, है ना. तो 4 lakhs समथिंग आए. तो जहां हम सर्चेबल पे जाते हैं वहां व्यूज गिर रहे हैं. जैसे ये 183 है, ये शुरुआत में सबसे ज्यादा यही वीडियो फटा था, क्लाउड किचन कैसे स्टार्ट करें ना. ये सर्च ही कोई करेगा. तो मैं सजेस्टिव में जाना तो चाहता हूं, लेकिन मेरे सारे वीडियोस अगर आप देखो, स्टाइल वाज लाइक आई मॉडल विवेक बिंद्रा. तो स्टाइल भी वही था, कमेंट्स भी फिर वही आए, विवेक बिंद्रा है ये वो, और विवेक बिंद्रा की कंट्रोवर्सी भी हुई, और जब नहीं भी हुई थी तब भी आई डिडंट लाइक दैट. मैं एसोसिएट नहीं करना चाहता था, बट ठीक है, वो बड़े लेवल पे हैं. उनके ऑफ कोर्स चैनल के ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, व्यूज का नहीं कह सकते अब, काफी कम हो गए, लेकिन सब्सक्राइबर ज्यादा है. तो नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम, इट्स जस्ट दैट मैं कॉपी कैट नहीं कहलाना चाहता हूँ ऑफ एनीबॉडी, और मैं इसी फॉर्मेट पे वापस नहीं जाना चाहता हूँ. ओके. या नो वरीज. लाइक वो तो शूट करने पे हम लोग नहीं, फॉर्मेट से मतलब सिर्फ मेरा कहना रिकॉर्डिंग स्टाइल का नहीं है. फॉर्मेट से मतलब केस स्टडी वीडियोस से है. सो फॉर एग्जांपल दिस वाज अ केस स्टडी, दिस वाज सिटीज स्टेट्स केस स्टडी ओनली. सो केस स्टडी टाइप के वीडियोस जो है सर्चिंग में बहुत आते हैं, लेकिन केस स्टडी वीडियोस इज समथिंग आई हैव डन इट, आई नो हाउ टू डू इट, एंड इट डजंट फील लाइक मी. मतलब वो पढ़ रहा हूं बस मैं. जबकि मेरा what do you want to create? What type of content do you resonate with the most? वो फिगर आउट करना है. वो फिगर आउट करना है. क्योंकि हाँ, क्योंकि मैं आपको सजेस्ट करता हूँ मेरी साइड से. सो आई हैव लॉट ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू बिजनेस, related to food business or any business. I've worked with 30+ industry.
क्योंकि फूड बिजनेस के वीडियोस अच्छे चले थे और हमने फिर कोर्सेज लॉन्च कर दिए फूड बिजनेस के, तो हमने फूड बिजनेस की ज्यादा बात की, बट इवेंचुअली हम 30 इंडस्ट्रीज को सिखा चुके हैं, तो आई हैव लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट ऑल द इंडस्ट्री एंड वी कैन गो लिटिल ब्रॉड आल्सो. देन लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट इज समथिंग दैट आई लव. Management is something like from team management to self management to business management, all those kind of area I can touch upon. I can go very deep. मतलब इंटरनेट पे कंटेंट नहीं है ऐसा ऐसा यार, और मैंने खुद अपनी एजुकेशन पे बहुत सारा इन्वेस्टमेट किया है. मतलब सुसाइडल केसेस से मैं डील करता हूँ एंड आई हैव ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ. 5 मिनट मिलकर लोगों की जिंदगी बदली है. दैट काइंड ऑफ लेवल आई हैव. आई एम नॉट अ यूट्यूबर. यूट्यूबर इज लाइक, मतलब समझ रहे हो जिस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें नो डिसरिस्पेक्ट टू यूट्यूबर्स, इट्स जस्ट दैट हम इतने लेवल पे हैं कि ये इतना इतना बेसिक लेवल है कि अगर इसमें हम थोड़ा सा झलक भी दिखा दे जो हम एक्चुअल लाइफ में कर रहे हैं, यूट्यूब ब्लो हो जाएगा कि ओ माय गॉड ये हो भी सकता है. एंड आई हैव सो मेनी टूल्स, सो मेनी नॉलेज दैट आई कैन शेयर रिलेटेड टू लाइफ आल्सो. लाइफ इन द सेंस रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो गया, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, या आप कोई सुसाइड ही करने वाला है, वीडियो देख ले कभी नहीं करेगा, या फिर उसका माइंड ही चेंज हो जाएगा, या फिर एज अ पर्सनालिटी आप कैसे बदलो, अंदर से सोच क्या डेवलप करो कि आप वो काम कर पाओ. इवन इन आवर फूड बिजनेस मैं मोस्टली उनके ऊपर काम कर रहा होता हूँ, क्योंकि मोस्टली लोग क्या स्ट्रैटेजी, स्टेप्स, ट्रिक्स पे काम करते हैं. ये एक ढूंढोगे 10 मिलेंगे, 100 मिलेंगे. प्रॉब्लम है कि पता है करना है, आता भी है कैसे करना है, बट नहीं कर रहा, मन नहीं है. वो मन कैसे कराए, मैं उसके ऊपर काम करता हूँ कि अगर मैं तुमको ही एज ए इंसान बदल दूंगा तो तुम फिर अनस्टॉपेबल हो जाओगे. एंड दैट्स व्हाट वेयर आई एम वेरी कंफर्टेबल विद. मतलब मेरे लिए बहुत इजी है. प्लस फीडबैक देना हो, ऑडिट करना हो, जाकर किसी को लाइव बेचना हो, बेचने का वीडियो डालना हो, ऑल थिंग्स आई एम कंफर्टेबल विद. सो लाइफ, बिजनेस, सेलिंग, ऑल थ्री. लीडरशिप भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, बिजनेस में ही आ गया. सो ये मैं जस्ट बता रहा हूँ कि दीज आर थिंग्स आई एम वेरी कंफर्टेबल विद. तो मैं बस समराइज कर रहा हूँ सारी बात. केस स्टडी वीडियोस अच्छे काम करते हैं, ओके, बट मैं फिर से विवेक बिंद्रा स्टाइल रिकॉर्डिंग या स्क्रिप्टिंग में भी, मतलब वही बात कि ठीक है अब इसको डिकोड करके क्या कैमरा एंगल अलग लगाएंगे, लेकिन बात तो वही डिकोड की करेंगे. उसकी जगह मुझे क्या पसंद है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने थियो ब्रोमा पे वीडियो बनाया था, इट वेंट वायरल. हालांकि वो रील्स थी तो आई विल नॉट काउंट इट एज वीडियो. केस स्टडी हमने किसी का बनाया है, उसका बनाया था एक जो लंबा वीडियो नहीं बनाया. तो हमने छोटे वीडियोस में एक्सपेरिमेंट किया है. इट वेंट, सम ऑफ देम वेंट वायरल. इंस्टाग्राम पे वो गया था जो गए थे ना हम. हाँ, हल्दीराम. नहीं साउथ का हाँ. कुछ रेस्टोरेंट था, आई एम फॉरगेटिंग. सो ये मैं शॉर्ट में दिखा दे रहा हूँ. हियर वी गो. रील्स, एक तो इसमें सॉर्ट करने का ऑप्शन नहीं है. अभी तो हमने इंस्टाग्राम पूरा लाइफस्टाइल ही कर रखा है. सो लेकिन जस्ट आई एम शेयरिंग कि व्हाट आर द कंटेंट दैट आई रियली लव एंड इट्स वेरी इजी टू क्रिएट. फॉर एग्जांपल ये वीडियो 20,000 व्यूज गया था, कुछ नहीं, अच्छा वायरल वीडियो था, एंड मैंने उस पर टेक्स्ट लिखकर बस पॉइंट कर दिया, ये 2 सेकंड में बना था वीडियो. इट वेंट 20,000 व्यूज. ठीक है, और इस टाइप के मैंने कई वीडियोस बनाए एंड मोस्ट ऑफ देम वेंट वायरल. लॉट ऑफ वीडियो वेंट वायरल. तो दिस इज हल्दीराम. सो इसको हमने अलग फॉर्मेट में किया था कि 5 रीजन व्हाई हल्दीराम हैज बीन यू नो डू गुड मार्केटिंग. फिर बोलने वाला इस तरह से हमने कर दिया था. एंड इसको अपने पुराने वीडियो का रिव्यू किया था. एंड these video also got little bit good views. तो just to give you idea, hope you understood, ये मुझे naturally बहुत अच्छे से आता है and I'm very pretty much comfortable कि decoding anything which is existing in the market. okay. और उसको डिकोड करने में like I can give pointers also, और उसकी हम स्क्रिप्ट बनाकर अच्छे से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं. बट जो सवाल था कि नेचुरली क्या अच्छे से आता है, that you know, और people who already suggestive और उनको सर्च कर रहे हैं या देख रहे हैं, उसका हमें अमलगमेशन देखना है. राइट. बोलो. यही मैं बोल रही हूँ. Good. Okay. Yes. So that you have created, that's good and I'm proud of you. All I'm saying कि जो आपका already content है, that's okay. लेकिन जो हम न्यू कंटेंट अपना चाह रहे हैं कि जिससे हमारे सब्सक्राइबर्स हिट हों, okay, और जो आपको आता है, उन दोनों का हम मिक्सचर देखते हैं. ठीक है. I understand. Why you are not understanding? I understand that. मैं ये बता रहा हूँ कि किसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, किसमें मैं नहीं कंफर्टेबल हूँ. तो पुराना कंटेंट जिसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, आई एम नॉट कंफर्टेबल एट क्रिएटिंग अगेन विवेक बिंद्रा स्टाइल वीडियोस. वही मैं बता रहा हूँ.
और जो हमारा लास्ट डिस्कशन हुआ ना, पर्सन वो जो YouTube पे क्रिएट करती है, द लेडी जो AI का वीडियो बनाता है, ये जो जिसने भी हल्दीराम पे बनाया था, हाँ। दैट्स ओके, बट मुझे वो स्टाइल ही नहीं पसंद। अच्छा, मुझे वो वो स्टाइल नहीं डिकोड करना। करना ही नहीं पसंद। मुझे डिकोड करना पसंद है मेरे दिमाग से, नंबर वन। रील टाइप का कंटेंट या फिर लिखित में है तो वो पॉइंटर्स या तो थोड़े से रेलेवेंट हो। कई बार क्या डिकोडिंग में ऐसे पॉइंटर्स आते हैं जो अच्छे लगेंगे सुनने में, बट मैं जानता हूँ उसका कोई मतलब नहीं है, बट बोलना पड़ रहा है क्योंकि स्क्रिप्ट में दोस काइंड ऑफ वे इट गोस। ओके। सो इसलिए आई एम जस्ट सजेस्टिंग। Mm-hmm. या बिल्कुल। So सो क्या आपका कहना है I आपका got the point? understanding of what you are trying to target. I'll sum it up. I watch business content, and what I have in my head is, if you know Alex Hormozy, Yes, love he it, he has a business channel kind of. He does acquisitions and everything, but वो love business it, के tips देता है. So love that it. is what you can do as well. You Hmm. have worked with 30 different industries. So of course Yes, you are targeting food industry, but हम लोग yes. TAM बढ़ाने के लिए Hmm. business content बना सकते हैं. Hmm. But that is what we'll have to sit down and, or let's say, we'll have to research the industry first and understand you better. Then only we'll be able to dial down the content calendar. And Hmm. ideally, how many videos do you want in a month, long form and short form? So I'll tell you just a little bit about the process. What we do is, if you have given us 4 videos, we take out short forms from those videos as well. Let's say we have one video of 10 minutes और उसमें से हम लोग 4 रील्स निकाल लेते हैं जो कि यूट्यूब पे हम लोग शॉर्ट्स के फॉर्म में डालते हैं. इंस्टाग्राम पे वो इतना अच्छा वर्क नहीं करता है, बट शॉर्ट से कन्वर्जन बढ़ जाता है हम लोगों का, क्योंकि हम उसमें लॉन्ग फॉर्म वीडियो भी लिंक कर देते हैं. Hmm. सो हाउ मेनी वीडियोज डू यू प्रिफर per week or per month, long form plus short form? देखो यार, जैसा मैंने कहा, नेक्स्ट 3 months में लेट्स एम फॉर 5 lakhs. Hmm. Already we are at close to 2 lakhs. Hmm. So you suggest what should be the frequency, and accordingly See, plan करते I'll हैं. be honest. I have just opened your channel, Hmm. and I'll have to look into the statistics, analytics of your YouTube channel. So even though Hmm. you have 2 lakh subscribers, and many big creators have even 1 million subscribers, but the audience dies after some time if you're not posting content for them. So it doesn't necessarily mean that if we post content, the content will perform better. If we'll bump up the quality of the content, even if we shoot like crazy content, Hmm. it doesn't guarantee us कि हम लोगों को वो 500,000 का मार्क, इवन इफ हम डेली भी पोस्ट करेंगे, वो हिट हो जाएगा. हम लोगों को पहले ये डायरेक्शन डिसाइड करनी होगी कि वील हैव टू रिवाइव द ऑडियंस फर्स्ट, और एटलीस्ट रीच द राइट ऑडियंस. क्योंकि इफ़ वी आर शिफ्टिंग नीशेस, लेट्स से हम बिजनेस नीश में जा रहे हैं, तो ये काफ़ी वाइडर टर्म हो गया. जो फूड बिजनेस के आपके वीडियोस देख कर आए हैं ऑडियंस, दे माइट नॉट रेजोनेट विद इट. कुछ वीडियोस जो जनरल वीडियोस होंगे उनसे रेजोनेट कर लेंगे, बट दे वांट टू स्टार्ट देयर फूड बिजनेस, दे आर इन द फूड बिजनेस. सो प्रॉबेबली हमको नया ऑडियंस टारगेट करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ द राइट वे टू डू इट. सो एनालिटिक्स हम लोगों को देखना होगा, देन ओनली वील बी एबल टू डिसाइड कि हम 3 महीने में 500,000 अचीव कर सकते हैं या नहीं. बिकॉज आई डोंट वांट टू सेट रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस हियर. It is good to have a goal in the head, but we'll have to understand the analytics first as well. But I'll suggest, with the quality that you are talking about, and like the videos that I produce, it takes a week to create one video. So we can, if we are shooting, we can come there, we can shoot the videos in 2-3 days, and then it will take us at least 4 to 5 days ठीक है, to edit the videos. ठीक है. And charges क्या रहेंगे इसके? So have you allocated anything to it, or like? आप बताओ. Okay, I'll tell you. I just have few more questions, rapid fire. Once I'll have everything, then we can talk about this. Sure. And if we are, let's say, posting a video. Just 1 second देना यार, एक urgent call है. 1 second Sure, देना. sure. Just 1 second, huh? All right, back. Yes, Yeah. let's go. So just the last question, which is, do you have some brand guidelines, assets that you have for your brand, YouTube, basically? Yeah, so थोड़ा स्टैंडर्डाइज करने की अभी जरूरत है. आई डू गेट दैट. इट्स जस्ट दैट अभी कुछ भी नहीं हो रहा था, तो वी एक्सपेरिमेंटेड लिटिल बिट कि उसमें से क्या काम करता है. ठीक है, बट प्रीटी मच ये जो हमारा बैकग्राउंड है, दिस इज आवर ब्रांड गाइडलाइन. सो मिक्स ऑफ ब्लू एंड रेड, पिंकिश काइंड ऑफ, दिस इज आवर
बैकग्राउंड थ्रू आउट, और पुराने अगर थंबनेल्स देखेंगे तो काइंड ऑफ ये यूज कर रहे थे। और पहले जरूर रहा है, पहले वी वर यूजिंग ब्लैक पे गोल्ड काइंड ऑफ थिंग, और फिर वी स्विच टू दिस पर्टिकुलर थिंग। तो हमारे जो इवेंट्स होते हैं उसमें भी यही थीम कंटिन्यूस है एवरीवेयर। यूट्यूब पे जरूर अभी रिसेंटली वी हैव एक्सपेरिमेंटेड रिसेंटली, एंड वी जस्ट गॉट मैरिड फ्यू मंथ्स बैक, सो Congratulations. थैंक यू। सो उसमें थोड़ा सा हम बिजी थे, जिसकी वजह से यूट्यूब पे ध्यान नहीं दिया गया, एंड यूट्यूब भी ऑल टाइम डाउन है। या Okay. So are you open to changing some colors, fonts on YouTube? आई एम ओपन टू चेंज। हाँ, मैं भी इस चीज में एग्री करूंगा कि लेट्स स्टैंडर्डाइज, वी कैन चेंज और एक्सपेरिमेंट, लेकिन आफ्टर दैट वी हैव टू स्टैंडर्डाइज। Yeah, of ठीक course. है। Like we'll have a कृतिका, set यू हैड brand सम पॉइंट। guideline. Go on. राइट, राइट। So I hope this rapid fire is done. Yeah, it's done. I Any have other, got everything that I any? should have to give you the Okay, exact got it. quote. Uh, Now I wanted to share a couple of things. yeah, go on. अरे वो शेयरिंग ना कि किस डायरेक्शन में यूट्यूब को ले जाना सही रहेगा। सी, मैंने अपने थॉट्स रखे हैं, इसका मतलब ये नहीं हम यही कर रहे हैं। मैंने सिर्फ okay. बताया कि मुझे किस टाइप का पसंद है, किस टाइप का नहीं पसंद आता है, और क्या मुझे नेचुरली जब बना लूंगा एंड वी विल बी एक्साइटेड टू क्रिएट, क्या आई विल बी बनाओ भाई चलो पढ़ देता हूँ नाउ। हम किस अप्रोच में चलें? आई वॉन्ट यू टू सिंप्लीफाई। सो यस, वी विल डू व्हाट वर्क्स। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी निश सर्च करके अगर हम देखते हैं और उसके जो मोस्ट वायरल वीडियोस हैं और उसी टॉपिक्स और उसी पे रिप्लिकेट करते हैं, वेरी हाई चांसेस ऑफ गेटिंग डन। तो हम वी कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर, एंड देन वी कैन उसी में कौन सी चीजें काम की, और दैट वे हम जा सकते हैं। नंबर वन। नंबर टू इज व्हाट डू यू कॉल, क्या बोलने वाला था, दिमाग से निकल गया। हाँ, फूड बिजनेस के, क्योंकि हम बहुत सारे वीडियोस कर ही रहे थे और हमारा पूरा निश अभी फूड बिजनेस अराउंड ही है, तो एकदम से फ्लिप भी नहीं मारना चाह रहा हूं मैं। सो हम ग्रेजुअली उसको फेज आउट करें rather देन गोइंग डायरेक्टली इनटू इट, और टॉपिक्स ऐसे चूज करें, फॉर एग्जांपल बिजनेस हो गया, या फिर लीडरशिप हो गई, या फिर टीम हो गई, या फिर सेल्फ मैनेजमेंट हो गया, या फिर इमोशन मैनेजमेंट हो गया, कि वो फूड बिजनेस पे भी एप्लीकेबल। सो दैट वे इट कैन बी अ वेरी नाइस सेगवे, कि अगर आप फूड बिजनेस कर रहे हो या कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आपको ये चीज बहुत रेलिवेंट होगी, समथिंग ऑन दोस लाइंस। Okay. सो दैट वे सेगवे होगा, वरना अचानक से शॉक लगता है कि अरे ये अभी तक इस पे बात कर रहे थे, अभी ये क्या हो गया। सो वो मैं नहीं चाह रहा हूँ, तो सेगवे करके हम थोड़ा सा इसको मूव ऑन करना चाह रहे हैं। Okay, tell me one thing. Let's say what I do is, my camera is stopped for some reason. Sorry for that. No problem. So No problem. I want to ask one thing. जैसे मैं अपना introduction YouTube video में देता हूँ, although I'm a freelancer and running a business, I love filmmaking. But what I do is I tell the audience that I'm a freelancer who has been doing it for 3 years and I've been into filmmaking for 6 years. What will be your intro for the audience? This has been intro since like 6-7 years of mine. Okay. So it has always been, I'm a serial entrepreneur, mentor, and an investor. Okay. And I'm co-founder of the company called, which is the largest platform where all food business owners learn and grow their food businesses. And this has been the intro. So mainly जो tagline अगर आप बोलोगे तो it is mentor, serial entrepreneur, and investor. That's how I Yeah, so identify like myself. we can create a lot of content around it. Yeah. A lot of content around it. You have a lot of और मैं experience business under your में belt. 15 साल एक्सपीरियंस भी है बिजनेस में। आई लाइक प्रॉपर 8 कंपनियां लगभग बना चुका हूँ, तो उस तरीके से है। ऑल्दो मेजरली फील्ड, एंड नाउ आई एम ऑन द सक्सेस रूट। सो या, सो दैट हैज बीन। अब मैं इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ। वी आर डूइंग लाइक शार्क टैंक काइंड ऑफ थिंग फॉर आवर स्टूडेंट्स, एंड वी आर आल्सो इन्वेस्टिंग इन आवर स्टूडेंट ब्रांड्स एंड बिकमिंग पार्टनर विद देम। सो बहुत सारी चीजें हैं जो वी कैन एक्सप्लोर दैट वेज। Yeah, I mean, this will be fire. The videos will come out good. We'll have to dial down few things, but I'm pretty sure the videos will come out good. For the ballpark figure, I'll give you a range for just the post-production right now. I'll have to talk about everything in depth with my team first, then give you the exact figure. I'll give you a ballpark so that you can also plan accordingly on the back end. For 4 videos and 16 short form plus YouTube management and scripting. Okay. Right?
This will cost you Hmm. anywhere around 1 lakh to 1.5 lakhs to you. Hmm. And shoots are excluded ठीक because है. it will depend on how many days are we coming to the shoots. अच्छा. Yeah. Okay. Hmm. But जो for इंदौर में टीम है वो शूट नहीं करती है. uh no. We don't have Okay. team there, we just have one co-founder there. Okay. Yeah. Hmm. But we have some connections over Indore, so they'll come to shoot for you guys. Hmm. ठीक है. Yeah. तो एक बार ओवरऑल बताना, हाँ. है ना? हाँ, for sure, क्योंकि I'll do. क्योंकि वही मैटर करेगा. क्या है ना कि आप स्क्रिप्ट दे दोगे, वो पड़ी रहेगी, फिर क्या ही पॉइंट होगा. No, absolutely. है ना? I'll make sure I'm talking to the team about this pre-production part as well, and we'll include in the standard package. We won't let it vary, so that it is feasible for both of us. राइट. क्योंकि हम लॉन्ग टर्म करना चाह रहे हैं. 1 महीने में ना आपको प्रॉफिट होगा ना हमें रिजल्ट होगा. Absolutely. और Yeah. एक बार थोड़ा सा व्यूज, और मुझे नहीं पता आपने कुछ चैनल्स को मिलियंस तक पहुंचाया है या ऐसा कुछ किया है So yeah, ग्राउंड I अप. can actually show you 3 channels that we have worked with, so Okay. that you can also gain some confidence. Sure. Yeah. So this is the channel of we have been working with him for past 1 year, and Okay. इनका channel was pretty all over the place previously. तो हमने पूरा channel revamp किया था, like every thumbnail from the start. यहाँ से इनका channel हम लोगों ने take over किया था. Actually यहाँ से किया था हम लोगों ने, but we changed few thumbnails here. And इनका brand identity हम लोगों ने dial down किया था because he didn't have any brand identity as such. So we dialed down few brand identities and then worked on his videos. So this is the thing. This is a very, very niche down content. So not a lot of people watch this, but we have worked with this client as well. So in the initial phases of this podcast, we produced a lot of videos. के साथ काम कर रहे हो आप अभी? Yeah, we are doing it right now as well. But सॉरी, अभी आप. बट Okay. हम लोगों ने इनिशियली पॉडकास्ट पे काम किया था. अभी हम लोग उनके एड्स पे वर्क करते हैं. एंड Okay. I have grown my channel. These are the 3 channels that I can show you. Of course, I have few others, but those are not directly tied to us. Actually look forward and want to create content, something like कंटेंट टाइप भी मुझको सूट करता है. That will be so good for your channel as well. yes. और वैसा इंडिया में है नहीं यार. Yeah, I agree. नहीं मतलब है. मुझे अंकुर वारिक को नहीं बनना. And राहुल मलोडिया भी नहीं. राहुल मंडोडिया में नहीं बनना है ना? वो बैठ के वो एकदम अंकल टाइप वैसा नहीं करना है. आई वांट टू बी लाइक मोर यंग, Yes. so more connecting to my We like your video. youth audience also. और वहां से लेकर लाइक थोड़ा एल्डर जनरेशन तक अपील करे. थोड़ा फास्ट पेस हो, कट 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 कट, एंड देन थोड़ा सा जो ग्राफिक्स हैं दैट शुड बी लाइक पॉपी इंस्टेड ऑफ लिटिल सटल एंड बोरिंग. हाँ, नियॉन कलर्स एंड ऑल आर गुड. इट्स जस्ट दैट वो क्रिंज कलर बहुत नहीं, वो सही. No, we'll make So sure we are dialing down the brand identity जो sophisticated लगे, brand के साथ जाए. Right. It's not something random, so we'll make sure of that. Rest assured, I'll talk to the team and give you like send you the message on LinkedIn itself. Is that fine? I'm नहीं, नहीं, getting a WhatsApp. WhatsApp message क्योंकि LinkedIn में actually literally YouTube growth के लिए search करी थी, that's why I log in. Oh, Everything okay, is on WhatsApp. Okay, I'll send you over the WhatsApp. यहाँ I'll पे talk मैं to the chat team. में WhatsApp नंबर डाला है मैंने, और इस India code. मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी मैं आपको शेयर कर दूंगी. Sure. I actually have recorded it myself as well. So yeah, please do send to. ठीक है, चलो मृदुल स्टार्ट तो करते हैं समवेयर. फिगर आउट वे दैट वी कैन एटलीस्ट गेट स्टार्टेड समवेयर. Sure. और मतलब और भी मतलब देखो ऐसा है ना कि लेट्स स्टार्ट समवेयर एंड इवेंचुअली लेट्स फिगर आउट क्या और ऐड कर सकते हैं. हमारे पास और भी थॉट्स हैं, जैसे शोज का है, पॉडकास्ट शो टाइप का है, और इंस्टेड ऑफ लाइक पॉडकास्ट बट पॉडकास्ट शो लाइक एपिसोड वाइज, है ना, सीजन वाइज, दैट वेज वी वर थिंकिंग. क्योंकि थोड़ा कॉम्बिनेशन ऑफ आप कह सकते हो नितिन, क्या नाम है? नितिन कामत. हाँ. नितिन कामत, निखिल कामत. हाँ, some कामत. Nikhil Kamath, founder of Yeah. Zerodha, right? Yeah, right. Yeah. So kind of थोड़ा सा combination of that, but more of more interesting. Yes. Not very much techy, but more of fun. Also having some games also.
तो ऐसा समझ लो उसका थगेश शो आता है, हाँ 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 सो हाँ हाँ थगेश शो कंबाइंड विद नितिन कामत, ऐसा कुछ अगर करके करें विद लीडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, विद सम जेनजी क्रिएटर्स, कभी इन्फ्लुएंसर्स, तो उस टाइप का थोड़ा सा भी हम सोच रहे थे। मतलब ओवरऑल जब तक हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम्म, और इवन लाइफ की बात कर रहे हैं, तो वी आर इन आवर ओन निश। हमारी कम्युनिटी में भी जो फोकस इज लाइफ, बिजनेस, मनी, तो इससे रेलिवेंट जब तक हम रहेंगे तो वी आर इन द निश, ओके एंड वी कैन एक्सप्लोर लिटिल बिट मोर दैट वेज। uh, तो ये क्या है ना कि जैसे व्यूज आ जाएंगे, ब्रांड डील्स भी आ जाएंगी, फंड्स भी फ्लो होने लग जाएंगे, तो फिर एक्सपेंशन और पॉसिबल भी हो पाता है। exactly बट exactly yeah अभी इट्स ऑल विल बी ऑन अ रिस्क, एक बैट ही है कि करके देखते absolutely हैं। but I'll तो make sure that it वैसे goes with you not against you या yeah ठीक है, तो सो वही ग्राउंड अप से इस पे काम करते हैं, हाँ हाँ for और sure इट विल बी अमेजिंग केस स्टडी फॉर यू आल्सो। definitely तो करते हैं, sure इट्स अ sure बेट। yep okay I'll revert back on the WhatsApp itself ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप बता दो, कब करोगे, व्हाट्स द टाइमलाइन एंड व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? tonight. By tonight I'll give you the quote and exact things that we can move forward with, and you just tell me what is is it a comfortable range for you, 1.5 lakh range for you to start with the posting and continue this for, let's say, next 6 months. यार आई वाज लुकिंग फॉर क्लोज टू 1 लाख रुपीस रेंज, ठीक है, Okay. सो थोड़ा सा आप इस पे देख लो। एंड शॉर्ट्स तो डेडिकेटेड हम बना नहीं रहे, उसमें फोकस मार के हैं जहाँ से कट के निकल जाएंगे। सो वीडियो 25,000 के अराउंड कॉस्ट पड़ेगी फिर वीडियोस की बात करें तो 1 लाख इज आई थिंक डिसेंट रेंज टू स्टार्ट विद। और व्यूज और परफॉर्मेंस बेस भी कर सकते हैं, अगर व्यूज एंड परफॉर्मेंस ग्रोज then we maybe increase the budget also, I don't mind, ऐसा है। Yeah, we'll do that. We actually do the performance thing, but we have a whole package around it. I'll talk to the team. Don't worry about it, and we'll get back to you over the Done. WhatsApp. Yeah. Okay, Okay. thank you. Bye bye. Thank you. Nice talking to you, Bye. Abhinav. So firstly I reach out to this client on 13 January with the offer, and उसमें मैंने जो भी उनके चैनल में कमियां देखी थी या उनके कंटेंट में कमियां जो मैंने उनके कंटेंट में कमियां देखी थी वो उनको इम्प्रोवाइज करने के लिए बताया। Whatever we could offer, we offered them. And then after that on 16th of January I followed up with them with the similar offer in hopes of कि उनको ये email मेरा दिखेगा अगर उन्होंने पहला वाला मिस कर दिया। And then after that I got the reply, "Hi Mradul, I'm connecting you with someone in the team who can help you out here. I've recently transitioned out of content, but I'm glad you still had my contact for us to reconnect." So again I messaged them on the same day, "Hey, thanks a lot." And then मैंने फिर से वही ऑफर एक्सप्लेन किया टैग करके उनके अदर टीम मेंबर्स को। एंड देन द कन्वर्सेशन गोज ऑन फॉर फ्यू डेज एंड दे आस्क्ड मी फॉर फ्यू रेट्स, जिसमें 6 मिनट से नीचे 1 मिनट से ऊपर के वीडियोस के कितने चार्जेस रहेंगे आइडियली, एंड अवेलेबिलिटी एंड एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। देन मैंने उनको बताया कि हम लोग रिटेनर बेसिस पे काम करते हैं, दिस इज हाउ वी यूजुअली रोल, एंड द होल थिंग दैट वाज हैपनिंग इन दीज ईमेल्स वर वी वर नॉट एबल टू ग्रास्प कि उनको क्या चाहिए और हम जो ऑफर कर रहे हैं वो उनके लिए वैल्यूएबल इनफ है भी या नहीं है। एंड दैट इज एक्जैक्टली व्हाट हैपेंड। जो हम ऑफर कर रहे थे दैट वाज नॉट रियली वैल्यूएबल फॉर देम, दे डिडंट वांट दैट एंड वी वर सेलिंग दैट। सो बहुत बड़ा एक कम्युनिकेशन गैप आ गया था कि वो जो चाह रहे हैं वो डिफरेंट है और जो मैं देना चाह रहा हूँ वो चीज डिफरेंट है। एंड दैट्स व्हाई हम लोगों को बहुत सारे ईमेल्स लगे थे टू कम ऑन सम गुड टर्म्स एंड गेट अ रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे एक्चुअली वांट। सो अगेन आई गॉट द रिप्लाई फ्रॉम द टीम, कांग्रेट्स ऑन स्टार्टिंग योर ओन एजेंसी। एग्जांपल्स मांगे उन्होंने एंड मैंने ऑल्दो अपना अकीमा फिल्म्स का वेबसाइट दे दिया था, बट स्टिल इफ द क्लाइंट इज आस्किंग फॉर इट, डोंट जस्ट से ब्रो मैंने वेबसाइट देके रखा हुआ है, फिर से भेज दो तुम टॉप 3 वीडियोस एंड समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट जो उनके आइडियल रिक्वायरमेंट्स के साथ रेजोनेट कर रहा है। इन दिस केस उनको मैंने वही पॉडकास्ट के इंट्रोस दिए थे जो वो चाहते थे। लाइक इस पॉइंट ऑफ टाइम तक हम लोग पॉडकास्ट एंड उनका पूरा चैनल मैनेजमेंट पिच कर रहे थे। सो आई टोल्ड देम कि भाई ये हमने पॉडकास्ट के इंट्रोस करे हुए हैं, ये एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो है वो करके रखा हुआ है, दिस इज हाउ इट इज। एंड देन ये ईमेल देखकर मेरे को थोड़ा सा धक्का लगा था कि भाई ओ फक नो
immediate need on my end, but I appreciate the willingness. I'll let you and the teammate connect on the podcast stuff though. I was like, okay, sure thing, looking forward to it. 22 जनवरी को मैसेज किया मैंने, 30 जनवरी को फिर मैंने फॉलो किया. दिस वाज द बिगेस्ट मिस्टेक फॉर मी, जो कि नहीं करना है तुम लोगों को. 22 जनवरी के बाद मैंने 30 जनवरी को मैसेज किया, ऑलमोस्ट 1 week later, which hurt a lot in terms of communication. And then after that, if you see, 15 अप्रैल को मैंने मैसेज किया है, तो कितना लंबा टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 45 डेज के बाद मैंने मैसेज किया है. एंड द रीजन फॉर इट वाज कि हम उनको एक इंट्रो बना के देना चाहते थे पॉडकास्ट का ऑलरेडी, ताकि एक अपफ्रंट वैल्यू ऑफर कर सके. बट जो हमारा टीममेट था जो इंट्रो बना रहा था, वो डिले करता रहा, उसके पता नहीं क्या इश्यूज आने लगे, एंड वी डिडंट फोर्स हिम इनफ कि वो जल्दी बना के दे. सो दिस हैपेंड, एंड 15 अप्रैल तक कुछ नहीं गया उनको. 15 अप्रैल को मैसेज भेजा एंड उनको मैंने एक इंट्रो एडिट करके दिया कि ब्रो, मैंने ये इंट्रो, लाइक हमारी टीम ने ये इंट्रो बनाया है एंड यू कैन हैव अ लुक एट इट. और हम लोगों ने कुछ आइडियाज शॉर्ट फॉर्म के तुमको बताए हैं कि जो एग्जिस्टिंग पॉडकास्ट है उससे तुम्हारे जो कुछ शॉर्ट्स हैं जो कि पोटेंशियली वायरल जा सकते हैं, वो ये हैं टाइम स्टैम्प्स के साथ, तुम इनको यूज कर सकते हो. नाउ द थिंग वाज कि जब मैंने ये मेल भेजा तो व्हाट हैपेंड वाज, इनका जो टीममेट था वो छोड़ गया था इनकी कंपनी, जिससे मेरी कम्युनिकेशन हो रही थी अराउंड द पॉडकास्ट सब्जेक्ट. ऑफ कोर्स आई वाज लाइक नाउ व्हाट. बट लकीली जो फर्स्ट एवर मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था इस ईमेल में, उसने ही रिप्लाई किया कि ही इज नो लॉन्गर विद द कंपनी एंड हम लोग इंटरनली इस चीज को डिस्कस कर लेंगे. सो 16 अप्रैल को फिर मैंने उसको रिप्लाई किया सेम डे पे कि भाई थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो. एंड मैंने पूछा कि भाई एग्जैक्ट क्या चीज तुमको चाहिए, मेरे को समझ में नहीं आ रही अभी तक कि तुमको ये चाहिए ये चाहिए. हम लोग जो हेल्प करना चाहते हैं वो यूट्यूब मैनेजमेंट है एंड पोस्ट प्रोडक्शन है तुम्हारे पॉडकास्ट की, बट क्या यही तुमको चाहिए या कुछ और चाहिए? क्योंकि अगर मैं क्लियर नहीं होऊंगा कि उनको क्या चाहिए तो फिर मैं वो चीज ऑफर कैसे कर पाऊंगा, या मैं ये कैसे क्वालिफाई कर पाऊंगा कि वो मेरा आइडियल क्लाइंट है भी या नहीं है. ओके, सो 17 अप्रैल मैंने फिर से फॉलो अप किया नेक्स्ट डे कि कहीं मिस ना हो जाए मैसेज. उसने फिर से रिप्लाई किया कि मेरा अदर टीममेट है उससे तुम बात कर लो, एंड देन जो हमारा पॉडकास्ट है उसको पूरा रिवैम्प कर रहे हैं हम काइंड ऑफ, एंड शी विल बी अ गुड पर्सन टू टॉक टू अबाउट दिस. आई वाज लाइक ओके. उसी दिन पे मैं रिप्लाई करता हूँ एंड आई वाज लाइक ओके, आई एम रेडली अवेलेबल. मैंने बस यही कहा, आई जस्ट वांटेड टू कीप द कन्वर्सेशन गोइंग. देन उसके टीममेट से रिप्लाई आया कि भाई प्राइसेस क्या है. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को रिक्वायरमेंट्स नहीं पता थी, ठीक है. दिस वाज अ वेरी कंफ्यूजिंग पॉइंट फॉर मी कि मैं यार इनको प्राइसेस पिच करूँ तो किसके पिच करूँ, मेरे को ये नहीं पता इनको चाहिए क्या. अगर इनको पॉडकास्ट चाहिए तो इनको पॉडकास्ट में रिक्वायरमेंट किस किस चीज की है. सो आई केम अप विद स्ट्रक्चर्ड मॉडल, जो कि तुम कह सकते हो प्रोडक्टाइज सर्विस जैसा, विच वाज कि भाई एक पोस्ट प्रोडक्शन प्राइस दे दिया एंड देन एक ऑप्शन भी दे दिया जिसमें हम सब कुछ करेंगे, यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट, थंबनेल का A/B टेस्टिंग एंड एवरीथिंग. एंड आई वाज लाइक अकॉर्डिंग टू द वर्क दैट we'll be doing, this price seems good, and I sent it in a productized manner. And I've seen this with most of the high ticket clients and companies कि उनको ये नहीं चाहिए कि तुम हमेशा उनको कस्टमाइज ऑफर दो. तुम्हारे पास अगर कोई एक प्रोडक्टाइज्ड ऑफर है जिसमें तुम $25,000 में $2500 में तुम कुछ सेट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, एंड दैट इज एग्जैक्टली कम्युनिकेटेड क्लियरली टू देम, वो उनको ज्यादा रेजोनेट करेगा कंपेयर टू जस्ट आस्किंग कि भाई तुम्हारे रिक्वायरमेंट्स क्या. वो बहुत ज्यादा बैक एंड फोर्थ होता है. तुम डायरेक्टली बता दो कि ये हम ऑफर करते हैं. अगर उनको कुछ कस्टमाइज सोल्यूशन चाहिए होगा तो वो तुमको मैसेज कर देंगे अगर उनको ऐसा कुछ चाहिए होगा. बट वील ट्राई फ्रॉम नाउ ऑन कि हम एक प्रोडक्टाइज सर्विस बनाए एंड वी लिस्टेड ऑन आवर वेबसाइट को पूरा रिवैम्प करें. बट दिस इज व्हाट आई हैव गॉट द इनपुट अबाउट एंड यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ एज वेल. सो मैंने उनको ये बताया एंड देन उसके बाद मैंने जो पॉडकास्ट का इंट्रो री-एडिट किया था हमारे टीम ने वो भेजा. एंड फिर मैंने 24 अप्रैल को उनको मैसेज डाला कि भाई क्या है, अभी तक रिप्लाई नहीं आया. फिर 5 मई को मैंने मैसेज डाला, वेरी लेट आई नो, बट फिर से मैंने पिंग किया कि मैंने भाई ये PDF तुमको भेजा था और ये इंट्रो भेजा था, हैव यू सीन इट. फिर मैंने 5 मई से 10 दिन बाद 15 मई को भेजा, ये है, डिड यू गिव इट, आई नो यू हैव अ बिजी शेड्यूल, यू गेट bombarded with a lot of emails, but this is not just another email written with ChatGPT. We really think that the Big Deal podcast has immense potential to scale and we would like to help you with that. I talked to over your email, she directed me to you. Let me know if I need to talk to someone else in your team regarding this. अब इस पॉइंट ऑफ टाइम तक जब तुम्हारा एक टीममेट, उनका एक टीममेट रिप्लाई नहीं कर रहा है तो तुमको ये पूछना नेसेसरी हो जाता है कि यार आर यू द राइट पर्सन दैट आई एम टॉकिंग टू, या किसी और से बात करूं. क्योंकि बड़े कंपनीज में यूजुअली ऐसा होता है कि यार CMO अलग होगा, COO अलग होगा, और जो कंटेंट ऑपरेशंस मैनेज कर रहा होगा वो अलग होगा, कंटेंट का हेड अलग होगा. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपन और वो डिसीजंस जो होते हैं वो वही बंदा लेता है जो कि उसका हेड है. सो ऑफ कोर्स आई वाज लाइक यार आर यू द राइट पर्सन, लाइक द अदर टीममेट ऑफ योर्स सेड कि हां ये राइट पर्सन है बात करने के लिए. देन मैंने 15 मई को ही फिर से फॉलो अप डाला टैगिंग अनदर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो कि फर्स्ट एवर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था. एंड उसको मैंने कहा आई सेंट फ्यू फॉलो अप्स टू योर अदर टीममेट एंड गॉट टू नो शी इज नॉट वर्किंग विद योर कंपनी राइट नाउ. एंड आई वाज लाइक
लाइक अब मैं क्या करूं? तो फिर आई थॉट ये जो मेल भेजा था उससे पहले जब मेल नहीं गया था तो मैंने सोचा था कि यार अब मैं क्या करूं। फिर से मैंने फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मेल किया कि भाई हम जो है तुम्हारा पॉडकास्ट कर सकते हैं अच्छे से ओवरऑल, और ये पॉडकास्ट ओवरऑल अगर तुम्हारा इंटरनली तुमने कर लिया है और अगर प्रोग्रेस में है तो आई थिंक हम तुमको ग्रोथ में, मैनेजमेंट में, पोस्ट प्रोडक्शन में हेल्प कर सकते हैं। अगेन मैंने फिर से इंट्रो अटैच करके दिया एंड फिर से उसका रिप्लाई आया 20 मई को, आई थिंक 5 दिन बाद। करेक्ट, थैंक्स फॉर चेकिंग इन, you're correct, the teammate is no longer with the company, we do have a video one of our businesses is trying to create, it's more of a graphic demo reel, is this something your agency is able to help with? If so, then what does the rate look like? And I was like, definitely we can do that. What is the length of the video we're looking at, and is there something else that I should be knowing about the project? Same day पर apply किया, उसने भी same day पर apply किया। Hey Mradul, so we have an editor on the video right now and the whole team hates it, and immediately I got the insight कि उनके टीम में जो editor है, जो motion graphic का main editor है, probably he's not working on the right note with them. So it could be helpful to see what we're not going for. You can view that here. If you want to keep it around 60 seconds, it's a demo reel for a new product that is launching on the website. Let me see if I can get a brief, but based on the example video and the length, what would you estimate the cost would be for this edit? So on the same day, I reply because I was fucking excited. I was like, भाई 1 मिनट का भी डिले नहीं होना चाहिए, मेरे को तुरंत मैसेज करना है। And I was like, मैंने टीममेट से तुरंत बात करी रात में and मैंने कहा कि क्या हो सकता है भाई, ग्राफिक रील है, टीम बना सकती है, नहीं बना सकती है, अपने पास एडिटर्स हैं वैसे, रीइंफोर्समेंट है वैसी, सब कुछ स्ट्रेटेजिकली सोचकर I pitched them $1,000 for a 60-second reel, like $600 to $1,000 depending on कि कितने कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस होंगे। और उसके साथ साथ मैंने कुछ फीडबैक्स भी दिए थे कि वीडियो क्यों नहीं अच्छी लगी पोटेंशियली उनके टीम को, एंड दे वर लाइक, दिस इज अ ग्रेट फीडबैक, लव दैट यू आर ऑलरेडी स्टार्टिंग टू अटैक द एडिट इन योर हेड, डू यू हैव एन एग्जांपल ऑफ डेमोज यू हैव डन इन द पास्ट टू पास ऑफ टू माय टीम। उसी दिन उनको मैसेज करा एंड भेजा ये डेमो रील है, एंड फिर सेम डे पे उनका रिप्लाई आया, थैंक यू फॉर सेंडिंग द सैंपल, आई हैव सेंट इट ओवर टू द टीम। अभी जो है इस एडिटर के साथ हम लोगों ने बहुत इन्वेस्ट कर दिया है, तो वी वोंट बी मूविंग फॉरवर्ड विद यू राइट नाउ, बट फॉर नेक्स्ट प्रोजेक्ट वी विल बी रीचिंग आउट टू यू। सो वी had gates open for new further projects, but then again मैं अभी तक clearly समझ नहीं पाया था कि यार इनको क्या चाहिए। तो मैंने कहा जब तक ये ना या ये नहीं कह देते हैं clearly कि इनको क्या चाहिए, तब तक मैं इनको मेल भेजता रहूंगा उसी चीज से related. I might come out as squid kind of, but let's do this. उसी दिन पे मैं reply करता हूँ, hey, no issues, I understand. One thing, I saw recent podcast and noticed that the intro is not like what we initially had. Punchy sound bites, clean visuals, brand consistency and so on and so forth. मैंने सब कुछ बता दिया। फिर से वही जो फर्स्ट एवर मैसेज था मेरा, उसको ही रिवैम करके डिफरेंट वर्ड्स में आई मैसेज देम सो दैट दे सी इट एंड टेल मी दैट ओके आई एक्नॉलेज इट, एंड देन दे रिप्लाई, एंड देन आई फाइनली अंडरस्टूड ओके दे डोंट नीड दिस। हे मृदुल, आई टेक दिस, थैंक्स फॉर सेंडिंग, एंड देन दे एसेंशियली सेड तुम अपने रेट्स बता दो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। I was like, done, why not? And then I said, I hear you, and even if this one, you can let me know what can potentially be done to elevate brand's perceived value. It doesn't matter if we execute it or your team, those tips will help level up the brand for sure. And if you need any help here and there, just ping me. And no, I won't charge for it. So I wanted to add some human element, and that is what it is. You ask for it, below are the retainers we offer. तो मैंने वो मैसेज डाल दिया था retainer का, and then here you go. Hey Madhul, what if we're just looking for short form? We're needing an event reel edited, and I know you helped us out with the last one. Is that something you all are able to do? I was like, damn, history is repeating itself. Those who know know. So मैंने फिर उनसे कुछ questions पूछे कि भाई प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट क्या है, वो मेरे को बताओ, then I'll be able to make you understand. Then उन्होंने मेरे को पूरा चिट्ठा दिया, and then फिर उन्होंने examples दिए कुछ उसी दिन पे। मैंने उनको cost बताया, this will cost you around $400. I have a better offer if you're looking for more content, 4 similar videos for $1,100. We'll need to go through 8 hours of footage since we'll already have a good understanding of the raw files from working on the first edit. Creating additional reels will be easier to ideate and edit along similar lines. A single edit will cost $400, but if you need more marketing material from the same footage, you can deliver 4 reels for $1,100. Expected deadline for version 1 is 1 week from the day we start. Let me know your thoughts. उसी दिन मैसेज आता है, hey Mradul, definitely love that idea, but let's get this one done for $400 right now. And there you go. We closed a client for 30 to 60 seconds edit for $400. इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाने जा रहा था मैं, बट आई थिंक इसमें कवर हो चुकी हैं बातें, बट एल्गोरिदम के लिए बना दूंगा यार, क्या ही फर्क पड़ता है, मिंटिंग व्यूज। सो वी क्लोज्ड अ क्लाइंट फॉर अ वन टाइम प्रोजेक्ट फॉर $400 30 to 60 सेकंड्स के रील के लिए। यू हैव द प्रूफ राइट नाउ, ओके? और ये मैंने पहले भी बताया हुआ था, पीपल डिडंट बिलीव मी, आई मीन गुड फॉर यू, आई हैव डन इट, यू डिडंट। Sorry, that was a little egocentric statement. No, you should have good ego. Now again, the conversation goes on and on and on.
प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैं बहुत सारी चीज़ें पूछता हूँ. वी सेंड द कॉन्ट्रैक्ट, दे साइन द कॉन्ट्रैक्ट, एवरीथिंग हैपन्स, वी डिलीवर द वीडियो एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं. और जो फाइनल वीडियो डिलीवर होती है वो होती है 31 मई को. एंड देन फाइनली 3 जून को ये रिवाइज्ड वीडियो अप्रूव हो जाती है. एंड 6 जून तक वी गेट द पेमेंट फ्रॉम द क्लाइंट. एंड 9 जून को मैं फॉलो अप करता हूँ कि जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स हैं, व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम यू. एंड हमारी बात हो गई थी बीच में कि दिस वाज ग्रेट एंड वील बी कमिंग अप विद न्यू प्रोजेक्ट्स टू यू एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू ऑन दोस प्रोजेक्ट्स. सो आई वाज लाइक ओके, मैं पूछ ही लेता हूँ. फिर उन्होंने मैसेज किया था, फिर उनके एक और टीममेट से मेरी बात हुई थी एंड देन आई मैसेज देम. फिर से उन्होंने एक मोशन ग्राफिक्स के वर्क के लिए क्वेरी करी थी 17 जून को, राइट. एंड वी हैव कम इन जून राइट नाउ. एंड देन आइडियली जो हमको इस क्लाइंट ने काम एक्चुअली में स्टार्ट करना चालू किया है, दैट वाज 21 जुलाई. 21 जुलाई पे उन्होंने एक पैकेज मांगा कि 12 से 16 वीडियोस का क्या रेट रहेगा. एंड देन उन्होंने कहा कि ओके ग्रीन लाइट है, लेट्स डू इट. $1,500 में 16 डिलीवरेबल्स हो सकते हैं. वी डिड इट. 50% डिपॉजिट मांगा एंड देन बूम 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 एंड वी गॉट इट डन बाय 29th जुलाई. एंड बूम, 29th जुलाई वाज द चेंजिंग डे फॉर अस. क्या चेंजिंग डे क्या होता है यार, लाइफ चेंजिंग होता है. और भी कुछ शब्द होते हैं, चेंजिंग तो कुछ नहीं होता अकेले. 29th July was a really good day for us. I wanted to close this client and it has been 6 months since I've been constantly in chats with these clients. 2 one time projects कर चुके हैं हम लोग and we were like we need to close this. हमको कुछ ऑफर क्रिएट करके देना होगा इनको. तो हम लोग एक ऑफर क्रिएट करने वाले थे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद, बट उसी सेम डे पे जैसे प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं दे मैसेज अस विद दिस कि थैंक यू सो मच फॉर कैचिंग दिस, वी रियली अप्रिशिएट यू. राइट नाउ वी हैव डन 1500 for 16 videos. We want to up that to 25 videos for $200 and $250. We have a lot of content that we would love your viral eye on. Some longer content like the scaling workshop you all have scrubbed and some other content. What do you think about that? We'd also love to get back you into our Notion, how you worked together in the past to get your content more effectively or efficiently, and so on and so forth. We send the contract, we sign the deal, and boom, they become our client. And on the 5th of August, we get this rolling. So now that you have watched all of the closing process of mine and how I convince them, how I tackle all of the questions, now comes the part of retaining. So retaining the clients is pretty simple. Like कुछ basic principles होते हैं जो तुमको ध्यान रखना है. Timely delivery हो, communication intact रहे, regular check-ins रखो, weekly meetings रख सकते हो, monthly meetings रख सकते हो, and एक personal relation build करना चालू कर दो client के साथ. उसका life में कुछ events हो रहे हैं, उसको Instagram पे follow करो, X पे follow करो, LinkedIn पे follow करो, जहाँ पर भी active है, and उसके post पे comments करना चालू करो, stories पे reply करना चालू करो. Basically treat it like a partnership and try to make it fruitful to retain that client. He'll also start to feel like okay, this person is connecting with me on a personal level and he's also delivering good quality work and he's communicating well, so he's a good person that I wouldn't want to leave. See, ओनली एंड ओनली टेक्निकल स्किल्स नहीं काम आते हैं, सॉफ्ट स्किल्स भी बहुत सारे काम आते हैं व्हेन यू आर क्लोजिंग एंड रिटेनिंग क्लाइंट्स. ठीक है, क्लोजिंग और रिटेनिंग क्लाइंट्स में एक पार्ट और बता देता हूँ तुमको सॉफ्ट स्किल्स का भी. देखो सॉफ्ट स्किल्स में how you are communicating, the way I'm communicating, the way you're framing the sentence. इसको मैं हर बार एग्जांपल देता हूँ. तो एक अकबर बीरबल की कहानी है and this is how it goes. तो अकबर को एक सपना आया था and he was like कि मेरे 32 में से 31 दांत गिर गए हैं, अब एक दांत मेरा बचा हुआ है, इसका मुझे मतलब समझना है. तो उसने सारे ऋषियों मुनियों को, जितने भी ज्ञानी लोग थे उनको बुलाया एंड सब ने डिस्कशन करके, थोड़ा डीप डिस्कशन करके बताया. वो बताना नहीं चाहते थे बट स्टिल अकबर को बताया कि आपके आसपास के लव्ड वंस जितने भी हैं वो सारे मर जाएंगे आपसे पहले. अब उनको ये सुन के बहुत गुस्सा आया एंड दे फायर्ड इनकी पनिशमेंट मिला. ठीक है, तो जो टिपिकल कहानियों में होता है. आफ्टर दैट उन्होंने बीरबल को बुलाया. बीरबल से पूछा कि क्या मतलब था इनका, क्या तुम्हें भी यही लगता है. तो उसने इस एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में बोला एंड ही वाज लाइक आप ज़्यादा जिएंगे अपने सारे आसपास के लोगों से. सेम मीनिंग, different framing, same analogy when it comes to talking about pricing, handling objections, doing all sorts of things. और वो तुमने बहुत अच्छे से देखा होगा जब मैं सेल्स कॉल्स कर रहा था. बहुत सारी चीज़ों को एक एक्टिव वॉइस में कहा जा सकता था बट मैंने उसको पैसिव वॉइस में कहा ताकि वो मैं अच्छे से फ्रेम कर सकूं एक सेंटेंस को, ताकि वो उनके ब्रेन में एकदम अटैकिंग जैसा फील ना हो. दे मस्ट बी एबल टू एक्सेप्ट इट विदाउट थिंकिंग कि ये तो मेरे पे अटैक कर रहा है या ये मेरे को
नीचा दिखाना चाहता है। नो, हम डायरेक्टली ये कह देते हैं ईमेल्स में जाके कि योर वीडियोस डजंट लुक गुड। व्हाई वुड यू से दैट? क्यों किसी का ईगो हर्ट करना है? बटर देयर ईगो ना। तो तुम बेसिकली जाकर उनसे ये नहीं कहोगे कि योर वीडियोस डोंट लुक गुड, यू विल बी सेइंग लाइक कि तुम्हारा कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट आई हैव सीन कि तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स विजुअल क्वालिटी बहुत अच्छी बना रहे हैं एंड हेंस दे आर गेटिंग मोर व्यूज एंड यू आर नॉट गेटिंग व्यूज बिकॉज योर विजुअल आइडेंटिटी और विजुअल क्वालिटी इज नॉट गुड। एंड एज पर द रिसर्च दैट आई हैव डन, दिस इज द स्टार्ट्स कि हाँ, विजुअल क्वालिटी रियली मैटर्स एंड आई कैन हेल्प यू विद दैट। सिंपल, लाइक this is how you can frame the whole thing कि हाँ, now that you have the data, you are not attacking, this is a very generalized perspective and it applies to almost everyone, खाली उस बंदे के लिए नहीं है ये, ठीक है? तो वो थोड़ा सा लाइट हार्टेड कॉन्वर्जेशन हो जाता है एंड तुम एक कोलैबोरेशन की तरह जाते हो उसके पास। थिंक ऑफ इट इज लाइक डेटिंग। तुम कहीं पे डेट करने जा रहे हो तो तुम ये नहीं कहोगे डायरेक्टली जाके कि योर आउटफिट डजंट लुक गुड, बट यू कैन से दिस कैन आल्सो बी अ लिटिल कंट्रोवर्शियल बट आई एम जस्ट not coming up with a good example. You can probably say you look good, but I've seen that according to the body type that you have, the bodycon dress, if you'll wear that, that'll look way much better on you and you'll look even better in that. So you're not directly attacking her, you're just saying ki I know that your body type is this shape and I've seen in general that bodycon looks really better, and you're not essentially saying that your dress looks off. You have complimented, but at the same time you have given a constructive criticism as well. So that's what I'm trying to convey here, that soft skills matter in that. So in retaining part, what I'll do is I'll attach a video that I've already recorded and you can look into that. उसमें मैंने closing के बारे में भी और deeply बात करी है और retaining के बारे में भी और deeply बात करी है. If you'll get the hold of it, you'll be able to understand it perfectly कि कैसे तुम clients को retain कर सकते हो. So go and watch that. So this topic is for those people who struggle to close clients and most of all retain them. देखो, ये कोई lead generation process नहीं है, ये कोई मैं तुमको outreach process नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ closing का process, which means तुम sales calls पे हो और तुम client से बात कर रहे हो and how you can close the client inside the sales call ताकि तुम उसके साथ काम करना स्टार्ट कर दो और तुमको वो गोस्ट ना कर दे कॉल के बाद कि भाई मेरे को तो ऑफर ही नहीं समझ में आया इस बंदे का, ये कहना क्या चाह रहा है. सो दैट इज व्हाट विल कवर इन दिस वीडियो विच इज नॉट आउट देयर ऑन द इंटरनेट. कुछ चीजें हैं भी इंटरनेट पे बट वो स्कैटर्ड है, तो आई विल मेक श्योर कि मैं कंडेंस करके तुमको बता दूं. हो सकता है मैं भी कुछ पॉइंट्स मिस कर दूं बट आई विल मेक श्योर कि जितने पॉइंट्स हो सकेंगे मैं तुमको बताऊंगा. फर्स्ट थिंग इज योर ऑफर इटसेल्फ. व्हेनेवर यू आर टॉकिंग टू अ क्लाइंट यू हैव टू मेक श्योर कि तुम किस ऑफर के साथ जा रहे हो. एंड अगर तुम्हें पता नहीं है कि क्लाइंट को क्या पिच करना है, मेरे साथ भी हुआ है ऐसा कि क्लाइंट बहुत कंफ्यूज था, मैं भी कंफ्यूज था, तो मेरे को समझ में नहीं आया था मेरे को क्लाइंट को पिच क्या करना है. सो तुम सेकंड पॉइंट यूज करो विच इज लिसन टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्लाइंट, लिसन टू द पेन प्रॉब्लम्स, लिसन टू वट एवर दे आर सेइंग. लाइक 70% ऑफ द टाइम्स the client should be talking and 30% of the times you should be talking. इससे तुमको इंटेल मिलेगा कि क्लाइंट को एक्चुअली क्या चाहिए एंड देन इन द रियल टाइम यू कैन क्राफ्ट एन ऑफर फॉर द क्लाइंट एंड पिच देम. लेट्स से क्लाइंट ने कहा कि यार आई एक्चुअली डोंट नीड दोज 4 लॉन्ग फॉर्म्स 16 शॉर्ट फॉर्म्स फ्रॉम यू. आई probably want to scale my SaaS and want to get some ads done from you. I don't know how many ads can be done in the budget range of $2,000, but I would really want to get my paid channel up and running instead of the organic channel. So you are going to pitch organic content to him, but वो sales call पे आके तुमसे कह रहा है कि भाई मेरे को चाहिए paid ads. तो तुम उस टाइम पे रियल टाइम में ऑफर ये पिच करो कि भाई तुम्हारा $2,000 का बजट है, what I can do is I can give you 20 ads and it will cost you $100 per ad, and because ये recurring रहेगा I can also offer you 22 ads in that $2,000 budget. So this is a little discount or additional from my end. So it will be a little enticing offer for him कि पहले तुमने कह दिया, एक बेस बिल्ड कर दिया कि भाई $2,000 में 20 ऐड दे देगा, $100 पर ऐड. फिर तुमने कहा चलो ठीक है मैं अपने एंड से 2 एड्स और बढ़ा देता हूँ. तो he'll be like okay, he is generous, he cares about me. 2 एड्स भी बहुत हैं उसके लिए, और वो 2 एड्स अगर उसको let's say $100,000 दे रहे हैं ईयरली के, तो that will be great for him. He'll be happy with you. So this is what you can do. Craft the offer in a way where it resonates with the client and it resonates with the services too. Don't just go and pitch random things. उसका कुछ ROI भी हो, कुछ actual में उसकी need भी हो क्लाइंट को, वही चीज पिच करो. अब ऑफर कैसे बनाना है, पिच कैसे करना है उसको, वो सारी चीजें it's very different. I'm talking about closing right now, so I'll firstly purely focus on that. So तुमने उसका ऑफर समझ लिया कि
उसको क्या चाहिए, तुमने उसको समझा दिया, कम्युनिकेट कर लिया, अच्छे से समझ लिया, लिसन कर लिया, जो कि सेकंड पॉइंट था, देन योर पॉइंट is to position yourself as the go-to authority. Now if you're a beginner this will be difficult for you, क्योंकि position अपने आप को करने के लिए you need to have some proof of work which एज अ बिगिनर यू डोंट हैव, और अगर तुम्हारे पास होगा भी तो वो स्पेक एडिट होगी. तो तुम क्या कर सकते हो एज अ बिगिनर टू मेक हिम ट्रस्ट यू, यू कैन मेक श्योर कि तुम एक फ्री सैम्पल प्रोवाइड कर दो कि ओके आई प्रोबेबली डोंट हैव एज मच प्रूफ ऑफ वर्क एज अदर पीपल in my industry have, but I can assure you I'll give you the guaranteed results that you want. I need you to trust me and give me one project. I'll prove it to you and that will be a free sample for you. You can use it on your YouTube channel or on ads wherever you want to use and see the results yourself. अगर वो वीडियो तुमको अच्छा लगे, we can start working on a retainer project. If not, no strings attached, I won't nudge you. So it will be a little eased off offer for him कि यार चल ठीक है, बंदा $2000 तो नहीं मांग रहा है, सीधा सीधा कह रहा है कि फ्री में एक बार अपनी वर्थ प्रूफ करने के लिए वो एज अ बिगिनर तुम ऑफर क्रिएट कर रहे हो, और हिल बी लाइक चलो ठीक है, बंदा समझता है इस चीज़ को कि ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, और वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए तुम्हारे टोन में कि यार आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू डू इट बट आई थिंक आई कैन डू इट एज फ्री, आई डोंट नो इफ यू विल बी एबल टू गेट रिजल्ट्स. You can give results in terms of a highly edited video. That's all. That's the result that client wants, and if you can give that, well and good. So that is the other thing which is कि तुम अपनी positioning strong करो थोड़ी सी, तुम अपने आप को दिखाओ as a go to authority कि यार I know my shit, I know how to do that and I'll be able to get it done for you. Offer के लिए तुम इसमें attach कर सकते हो offer जो मैंने तुमको बताया as a free trial, and after that you can come on a regular retainer with me. अगर तुम बिगिनर हो, अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी प्रूफ ऑफ वर्क है, जस्ट बॉम्बार्ड हिम विद प्रूफ ऑफ वर्क कि भाई देख मैंने इस क्लाइंट के साथ काम किया हुआ है, ये क्लाइंट था, इसने टेस्टिमोनियल ये दिया हुआ है, ये ऐसे मैंने एडिट करे थे उसके लिए, या ये मैंने रिजल्ट्स दिए हैं, सिमिलर लाइक वट एवर यू वांट टू डू. ठीक है, तुम ये जितना प्रूफ ऑफ वर्क दिखाओगे उसको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई ये बंदा गो टू अथॉरिटी है, इसने काम किया हुआ इंडस्ट्री में लोगों के साथ, ही नोज हिज शिट, सो ही विल बी एबल टू ट्रस्ट यू. एंड देन व्हेन द पर्सन कैन ट्रस्ट यू, द चांसेस ऑफ यू क्लोजिंग दैट क्लाइंट इंक्रीजेस, क्योंकि आजकल AI ने सब कुछ खराब कर दिया है एंड पीपल आर जस्ट बॉम्बार्डिंग क्लाइंट्स एंड प्रोस्पेक्ट्स विद AI जनरेटेड ईमेल्स, एंड इट्स वेरी हार्ड टू ट्रस्ट समवन कि भाई वो एक्चुअली में रियल बंदा भी है या स्कैम करने आ गया है, AI से ही सब कुछ करवा देगा. तो एक बार ट्रस्ट तुमने करा दिया, द क्लाइंट इज गोइंग टू स्टिक विद यू. अब वो रिटेन कैसे करना है क्लाइंट, उस पर अपन आएंगे, बट लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट क्लोजिंग देम इन द कॉल इटसेल्फ. लास्ट पॉइंट इन क्लोजिंग द क्लाइंट सेक्शन विल बी हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस. हमेशा ये चीज़ रखो कि जब भी तुमको कोई ऑब्जेक्शन मिले इनसाइड अ सेल्स कॉल और ऑनलाइन ऑन द इंटरनेट, कोई रैंडम सेल्स कॉल किसी की देख रहे हो, मेरे को सेल्स कॉल्स पड़े हुए हैं, उसमें तुमको अगर कोई ऑब्जेक्शन दिखे कि हाँ ये तो मेरे को भी ऑब्जेक्शन मिल सकता है सेल्स कॉल में, तुरंत नोट डाउन कर लो. एक मैंने नोशन बना के रखा हुआ है शीट पूरा जिसमें ऑब्जेक्शंस हैं, तो उसके आंसर्स रहते हैं मेरे पास. तो अगर क्लाइंट कहता है मे बी आई नीड टू थिंक अबाउट इट, आई एम लाइक ओके आई अंडरस्टैंड यू नीड टू थिंक अबाउट इट, बट let's just go through it together. I want to understand what you're not clear about right now here, so that I can give you the clarity that you need to have, and I can assure that I have given you all of the information that you should be knowing about our offer and how it can help you. Simple. And he'll be like, okay, yeah, I was confused in this thing. Then I'll be like, okay, this is the solution for that. This is how we offer those things. देन बूम यू गिवन हिम द सॉल्यूशन. ऐसे करके जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं वो लिख लो, उसके आंसर भी लिख लो वेग टर्म्स में या पॉइंटर्स में, जैसे भी लिखना चाहो. एंड देन व्हेन एवर दैट ऑब्जेक्शन कम्स, तुम्हारे पास इंस्टेंटली सोल्यूशन है उसका. सो द सेल्स कॉल बिकम्स वेरी स्मूथ. लास्ट एंड बोनस स्टेप इज कम्युनिकेट. सी जो फर्स्ट वाले में मैंने बताया था लिसन, उसका ये वन स्टेप अप पॉइंट है ऑन अ ब्रॉडर स्केल. तुम क्लाइंट कॉल पे जा रहे हो, ये सोचकर मत जाओ कि बस तुमको क्लाइंट से क्वेश्चन एंड आंसर्स करने हैं, उससे पूछना है, वो क्लाइंट है, वो भगवान है, वो पैसे देगा, वो कुछ भी कर सकता है. नहीं यार, जस्ट treat the other person like a human. Ask the real questions. If something feels off to you, एक red flag तुमको दिख रहा है, ask him कि why don't you do that? People love that, especially clients जो कि high ticket होते हैं, they love that. There was one video of Alex Hormozy I was watching and he was hiring an HR for his team, and उसके HR ने कुछ cross questions पूछे उससे, and Alex Hormozy didn't have the answer for that, and Alex Hormozy was like impressed with her कि okay, she knows
her thing. She is asking the right questions which I don't have the answers for. And he was not like कि मेरे पास answers नहीं है इसलिए वो smart है. He was like she's asking the right questions that I don't have the answers for. Similarly, you go in the call, and if you feel something is off and you can help them, ask them that this is off. I think you can improvise this thing by a lot, and you can do these kind of things. Treat it like a communication, treat it like a conversation where you genuinely want to help the other person, and in return you get the money for the help that you provide in the form of services. Got it? So this was the thing that I had to cover in very brief manner in order to tell you कि अगर तुम एक बिगिनर हो तो तुम क्लाइंट को क्लोज कैसे कर सकते हो ऑन अ वेरी वेरी बेसिक लेवल. इसको अगर हम लोग डीप में डीप करते रहेंगे तो भाई 10 15 घंटे के मैं मास्टर क्लासेस बना दूंगा तुम लोगों के लिए. बट वो अभी के लिए तो यार मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. आई एम रियली सॉरी. ऑल्दो आई एम प्लानिंग अ मास्टर क्लास जो कि पेड नहीं होगी, यूट्यूब पे ही होगी ऑन फ्रीलांसिंग. बट राइट नाउ फॉर दैट, ओ माई गॉड, 15 आवर्स ऑफ मास्टर क्लास इज अ लॉट फॉर मी. बट आई विल मेक श्योर कि मैं जितना तुमको एक स्ट्रक्चर्ड वे में इन्फॉर्मेशन दे सकूं जिसको तुम अपने हिसाब से मोल्ड करके अपने सेल्स कॉल में यूज़ करो. आई ट्राई टू डू दैट. सो योर क्लोजिंग थिंग इज़ डन. तुम इन फ्रेमवर्क्स को यूज़ करके क्लाइंट को क्लोज कर लोगे. नाउ हाउ टू रिटेन देम. यार देखो, रिटेन करने में ना मेरे को लगता है कुछ बेसिक चीज़ें ही हैं जो डायल डाउन करनी पड़ती हैं. बाकी सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं. फिर वो इंटरनल सिस्टम्स पे डिपेंड करता है. एज एन एजेंसी, एज अ फ्रीलांसर, यू ओनली नीड टू हैव आई थिंक 3 to 4 थिंग्स. फर्स्ट इज सर्विस डिलीवरी. टाइम पे सर्विस डिलीवर करो, कोई डेडलाइन में इशू मत करो. क्वालिटी सर्विस दो. जो तुमने प्रोवाइड करने की डील रखी है या तुमने क्वालिटी प्रॉमिस करी है वैसी ही क्वालिटी या उससे बेटर हर टाइम प्रोवाइड करो क्वालिटी. सेकेंड इज कम्युनिकेशन. एक्टिवली कम्युनिकेट विद द क्लाइंट. एज आई सेड कि क्लाइंट जब क्लोज करोगे तुम उस पॉइंट पे भी तुम कम्युनिकेट करो, बट क्लाइंट क्लोज करने के बाद भी एक्टिव कम्युनिकेशंस रखो ताकि तुम क्लाइंट का पर्सपेक्टिव समझ पाओ. डेली या मंथली वीकली जो भी चेक इन्स करने चाहते हो वो कर सकते हो, सो दैट यू कैन हैव सम कॉन्वर्जेशंस गोइंग ऑन विद द क्लाइंट. एंड जस्ट इन केस अगर कोई चीज़ डिले हो रही है तो उसको बिफोर हैंड बता दो उसके अपडेट मांगने से पहले कि भाई ये डिले हो जाएगा, वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स, एंड दे विल रिस्पेक्ट दैट कि चलो ठीक है, बंदे ने बता दिया पहले ही. और अगर तुमको वो प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो बीच में डिसअपियर मत हो जाओ. अपडेट देते रहो उनको कि यार ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट ड्राफ्ट दैट आई एम डूइंग, फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट हो चुका है, वीडियो इतना बचा हुआ है. एक सिंगल मैसेज तुमको करना है, वो अगर कर दोगे क्लाइंट विल बी हैप्पी. एंड बस तुम्हारा क्या है, 5 मिनट गए मैक्सिमम एक मैसेज ड्राफ्ट करने में. सो सर्विस डिलीवरी, कम्युनिकेशन, एंड लास्ट third I think is reliability. Freelancers these days are not reliable and I've seen it a lot. If I say कि भाई ये काम करना है, they are like कि हाँ मैं कर दूंगा, but वो कर नहीं पाते हैं. तो तुम अगर कर सकते हो वो चीज़ तभी हाँ करो, नहीं कर सकते हो तो ना कर दो. बट अगर नहीं कर सकते हो एंड यू कैन फिगर इट आउट एंड डू दैट विद इन द डेडलाइन, देन ओनली से यस. I chose the last option when I closed my first ever US client क्योंकि मेरे को पता था मैं फिगर आउट कर लूँगा उस चीज़ को. एंड आई डिड फिगर इट आउट एंड आई डिलीवर्ड द क्वालिटी दैट दे वांटेड. एंड ट्रस्ट मी, ये रिलायबिलिटी वाला फैक्टर इज़ अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दैट you'll have amongst other freelancers, because as I said, people are not reliable. Like freelancers are not reliable. So if you can do that, you are better than a lot of other freelancers. And a bonus tip, try to make the process for the client सीमलेस और स्मूथ. उनके लिए तुम नोशन में प्रोजेक्ट मैनेज कर लो ताकि उनको दिख जाए कि हाँ भाई ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं. कम्युनिकेशन स्लैक में रखो ताकि भाई सारा प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एक जगह पे हो. कॉन्ट्रैक्ट्स, इनवॉइसेस सब ईमेल पे भेजो ताकि पूरा डेटा ईमेल पे स्टोर रहे. स्लैक का अगर तुमने सब्सक्रिप्शन लेकर नहीं रखा है तो 3 महीने से पहले के जितने भी मैसेजेस होते हैं वो तुम नहीं एक्सेस कर सकते हो, तो ईमेल पे तुम एक्सेस कर पाओगे सारी चीज़ें. एंड इफ सम मिसकम्युनिकेशन हैपन्स तो तुम ईमेल में ही देख सकते हो कि भाई देख कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा था, तुमने साइन भी किया, कॉन्ट्रैक्ट मेल के ऊपर ही भेजा तुमने, एंड मैंने इनवॉइसेस इतने इतने मेल के ऊपर ही भेजे हैं सारे. सो दिस विल बी वेरी गुड फॉर यू. एंड ट्राई टू गिव द वर्जन्स टू द क्लाइंट एज रिफाइंड एज पॉसिबल. उसको ऐसा मत सोचो कि अरे चलो क्लाइंट को अभी दिखा देता हूँ, ये मैं बाद में कर दूंगा. नहीं, क्लाइंट को रिफाइंड वर्जन ही भेजो ताकि कम से कम चेंजेस क्लाइंट को देने पड़े और उसको इवेंचुअली कोई चेंजेस ना देने पड़े. ये चीज़ इस स्टेज तक अगर तुम पहुँच जाते हो जहाँ पे क्लाइंट को चेंजेस नहीं देने पड़ रहे हैं, टेक्स्ट वेक्स्ट में थोड़ा बहुत चेंज है जो भी है, तो क्लाइंट बहुत खुश रहेगा. ही विल बी लाइक यार, I trust him with my eyes closed. He knows his shit. He'll be able to do that. बस मेरे को थोड़े बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स एक बार देखने होंगे, एक बार फ्लो देखना होगा, अगर वो सब ठीक है डन है. तो ये ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है. फिर क्लाइंट को तुम्हें छोड़ना मुश्किल हो जाता है क्योंकि
ना एक वर्कफ्लो बन चुका है, एक अनसीन अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है कि यार ये बंदा कर लेता है, ही इज़ रिलायबल, आई ट्रस्ट हिम। ये चीज़ इस स्टेज तक अगर पहुंच गए भाई, तुम तो निर्वाणा पहुंच गए वैसे समझो, तुम स्पिरिचुअलिटी में मोक्ष अटेन कर लिया तुमने। बोनस पॉइंट ऑलवेज मेरे अच्छे निकलते हैं भाई, ये चीज़ तुम फॉलो कर लोगे, तुम्हें मज़ा आ जाएगा, तुम्हारे क्लाइंट को भी मज़ा आ जाएगा, तुम दोनों एक रिलेशनशिप में आ जाओगे। नहीं, तुम दोनों एक अच्छे क्लाइंट फ्रीलांसर रिलेशनशिप में रहोगे। ही वॉन्ट लीव यू और शी वोंट लीव यू। एंड हाँ, एक और चीज़, अगर तुम कहीं पे वीडियोस अपलोड कर रहे हो फ्रेम पे या ड्राइव पे, तो सब चीज़ ऑर्गेनाइज रखो कि दिसंबर का फोल्डर ये है, जनवरी का ये है, फेब का ये है, मार्च का ये है, ताकि सब कुछ ऑर्गेनाइज रहे और तुमको कहीं पे अगर कोई चीज़ एक्सेस करनी हो तो तुम भी कर सको और क्लाइंट भी कर सके। जस्ट अ लिटिल टिप। और कुछ नॉट टू डू थिंग्स भी मैं बता देता हूँ जिसकी वजह से क्लाइंट रिटेन नहीं कर पाते हो तुम। पहली चीज़ ये, तुम गोस्ट कर देते हो क्लाइंट को कि भाई प्रोजेक्ट मिला, 7 दिन की डेडलाइन है, तो 6 दिन बात नहीं करोगे, 7वें दिन कहोगे लो वीडियो। नहीं, क्लाइंट छोड़ के चला जाएगा। सेकंड है, फ्रीलांसर्स अपने आप को बस समझते हैं कि भाई पैसा मिलेगा मैं काम करूंगा एंड टास्क डन। नहीं यार, दिस इज अ सर्विस बेस्ड बिजनेस एंड यू विल हैव टू बिल्ड रिलेशंस, यू हैव टू ट्रीट अदर पर्सन लाइक अ ह्यूमन। सो अगर तुम वो नहीं करोगे तो फिर चला जाएगा क्लाइंट, बिगेस्ट मिस्टेक। जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ वो नहीं करोगे तो क्लाइंट चला जाएगा, ठीक है। और हो सकता है वो खुश ना रहे और बैड टेस्टिमोनियल भी दे दे तुमको। थर्ड थिंग इज यू स्टॉप इम्प्रूविंग। बेसिक पॉइंट, अगर तुम अपनी स्किल्स ही इंप्रूव नहीं कर रहे हो जिसके लिए उसने तुमको हायर किया है, तो फिर भाई क्लाइंट छोड़ के चला जाएगा, है ना भाई। फोर्थ थिंग, अगर तुम क्लाइंट के बिजनेस गोल्स नहीं समझ रहे हो, उसका विजन नहीं समझ रहे हो, और तुम अपने मन मर्जी जो भी एडिट कर रहे हो करते चले जा रहे हो, तो फिर क्लाइंट छोड़ के चला जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। जो क्लाइंट का गोल है, क्लाइंट का विजन है, क्लाइंट को सिंपल एडिट चाहिए, भाई सिंपल कर। तू मोशन डिजाइनर है, क्या फर्क पड़ता है, उसको तो सिंपल चाहिए ना, सिंपल एडिट करके दो। अगर तुम अपनी मन मर्जी चलाओगे तो भाई वही है ना जो भी पहले बताया, क्लाइंट छोड़ के चला जाएगा। और लास्टली, टेकिंग फीडबैक्स पर्सनली। क्यों लेना पर्सनली? वो तुम्हारे को अगर क्रिटिकल फीडबैक्स दे रहा है, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, लर्न दोज थिंग्स, implement those things and you'll learn as a person, you'll grow as a person. तो it's a win-win. politely उसको समझा दो कि भाई ऐसा ऐसा सीन था, I'll improvise it and then go on. हाँ, अगर वो ज़्यादा ही रूड होके वो कह रहा है, that is a different story, call that client out. but अगर तुमको क्रिटिकल क्रिटिसिज्म दे रहा है, वो पॉजिटिव है वो, तो टेक इट, you'll learn, you'll grow. और अगर ये नहीं करोगे तो अगेन क्लाइंट छोड़ के चला जाएगा, है ना भाई। So yeah, I mean, I covered majority of the points that I have in my head and that I wrote down to make sure I give you few action steps that you can follow immediately after this video if you're going to a sales call, to make sure you close the client, and if you have closed the client, to retain the client. So yeah, this was a pretty short and crisp video. I don't think so it is short. 22 मिनट हो गए अभी मेरे को रिकॉर्ड करते हुए, तो yeah, good enough long video to make you guys understand some juicy stuff related to closing client and retaining client. And if you want to join the community of freelancers and learn more about freelancing, कि international clients को close कैसे करते हैं, cold outreach कैसे करते हैं, personal brand अपना बनाना चाहिए as a freelancer या नहीं, and a lot more problems, so you can go and check out my ebook. उसमें video modules भी हैं, तो टेक्स्ट नहीं है, सब बोरिंग नहीं है, तुमको सारे इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मिलेगी. द लिंक विल बी इन द पिन कमेंट्स और हियर समवॉट, एंड आई एम प्रीटी श्योर you'll love it. So yeah, check it out, and this is me signing off. Bye-bye. Take care. Now that we have covered psychology of cold outreach, how to write cold outreach, how to do cold outreach, and closing and retaining clients, we'll now talk about how you can make more money as a freelancer, how much pricing that you should be pitching. Next module is pretty simple. It is very straightforward. The math is really, really simple. You will be able to understand it pretty fast and in a very, very simple way. मैंने बहुत simplify कर दिया उस math को. So see you in there. See you in that particular module. I hope you got some real value out of it. So the next module is about pricing. So pricing is very subjective. Oh, why am I making Z? Pricing. So this thing is very subjective. एक edit का मैं probably $200-300 charge कर सकता हूँ, बट तुम उस एडिट का probably $50 या $60 चार्ज करते हो. सिंपल रीज़न ये है कि तुमने टेस्ट नहीं किया अपने वॉटर्स को, एंड एट द सेम टाइम द प्रॉस्पेक्ट्स मैटर, उनकी कितनी पेइंग पावर है. सेकेंडली, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम. थर्डली, तुम्हारे खुद के साइकोलॉजिकल बिलीफ्स, PELIEFS, कि भाई तुम चार्ज ही नहीं कर सकते इससे ज़्यादा. उसके बाद आता है लेट्स से प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ
of work, which by this I mean experience in layman terms. And after this, and pricing is also affected by the country. अब इंडिया में तुम मे बी $300-400 उसी चीज का चार्ज नहीं कर पाओगे ऑन एन एवरेज, बट यूएस में ऑन एन एवरेज चार्ज कर सकते हो. सॉफ्ट स्किल्स ऑल्सो अफेक्ट्स द प्राइसिंग, लाइक हाउ यू कम्युनिकेट योर ऑफर, हाउ यू टेल द क्लाइंट्स कि तुम क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए. सो दीज आर द थिंग दैट अफेक्ट्स द क्लाइंट, अफेक्ट्स द प्राइसिंग. And as you can see, all of these things when controlled can give you great pricing. What do I mean by that? अगर तुम्हारे soft skills check है, country US है, let's say, proof of work तुम्हारे पास है, experience भरा भरा है एकदम, prospects तुम्हारे एकदम sophisticated है. By prospects I mean जिनको तुम reach out कर रहे हो उनको पता है कि इन services का charge ideally इतना रहता है. They have paying power, they know the importance of video editing, graphic designing, marketing, so on and so forth. So they'll be able to pay if you're solving a good problem for them and you know yourself कि भाई हाँ I deserve this money. So pricing will be very very easy for you. बट इसका बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है. अब ये सारी चीज़ें तुमको एकदम से टैकल नहीं करनी है, तुम कर भी नहीं पाओगे सारी चीज़ें टैकल. तो प्रूफ ऑफ वर्क तुम्हारा टाइम के साथ आएगा, कंट्री तुम इमीडिएटली टैकल कर सकते हो, प्रॉस्पेक्ट्स कैसे फाइंड करना सोफिस्टिकेटेड वो तुम्हारा टाइम के साथ आएगा, क्योंकि तुम कैसे ढूंढ पाओगे कि वो, या कैसे समझ पाओगे कि वो सोफिस्टिकेटेड है क्लाइंट्स या नहीं है और प्रॉस्पेक्ट्स है या नहीं है. सॉफ्ट स्किल्स तुम्हारे इतनी जल्दी नहीं होने वाले हैं डेवलप, टाइम लगेगा, बिलीव्स को चेंज होने में भी टाइम लगता है, राइट. सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम इमीडिएटली नहीं कर सकते हो, बट what you can do is you can use this math as a beginner and slowly climb the ladder and get to a price point where you will be satisfied and the client will be satisfied. And that's exactly what I did, and that's exactly what I've taught inside my freelance shortcut ebook and the modules there. So what do I mean by pricing? How does that affect? So in the beginning you start with a base price, then you climb up, then you climb up, then you climb up, then you climb up. So base price, let's say तुमने determine किया यार 800 से 1K पर रील मैं चार्ज कर सकता हूँ. लेट्स से ये बेस प्राइस है, तुमने इससे स्टार्ट किया. मैंने तो भाई 300 रुपए से किया था, तुम अगर 800 और 1000 से कर रहे हो तो तब भी बेटर है. मेरा स्टार्टिंग पॉइंट तो इससे भी नीचे था और 300 रुपए में मैं पूरी लॉन्ग फॉर्म वीडियो एडिट करता था. सो जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ ग्राइंड और यू कैन से गधा मजदूरी दैट आई हैव डन. ओके, तो ये कर लिया. एंड आफ्टर 20 प्रोजेक्ट्स यू इंक्रीज द प्राइस बाय 20%. तो 1000 का 20% कितना हुआ? 1200. एंड इफ यू आर गेटिंग 20 प्रोजेक्ट्स हियर एज वेल, उसके बाद तुम फिर से प्राइस इंक्रीज कर दो इसका 20%. तो 1200 का 20% हुआ आई थिंक 1440, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरी मैथ इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है. 120 Mamma mia, 240. Yeah, I mean this is good. मेरी मैथ अच्छी है, स्लो हूँ मैं बट अच्छी. सॉरी. सो 440 पर रील तुम चार्ज करने लगे. फिर तुमने 20 प्रोजेक्ट्स के बाद प्राइस इंक्रीज कर दिया 20%. देन, और ज़रूरी नहीं है तुम 20 प्रोजेक्ट्स करो. इफ़ यू फीलिंग लाइक कि भाई तुम्हें 30 करने हैं, तुम 30 करो. इफ़ यू फील लाइक कि तुम्हारे स्किल्स अच्छे नहीं है तो फिर तुम कर सकते हो अपने प्राइस इंक्रीज. एंड हाँ, एक मैं प्री रिक्विजिट नहीं बताया था तुमको प्राइसिंग में कि स्किल्स आर इंपॉर्टेंट. अब ये मैं इसलिए नहीं बताया था और तुम मेरे को कमेंट करके मत कहना कि भाई स्किल्स तो तूने काउंट ही नहीं करे, कि स्किल्स जिसके ज़्यादा है वो प्राइसिंग ज़्यादा कर सकता है. भाई ये तो तुम्हारा प्री रिक्विजिट होना चाहिए कि यार स्किल्स तुम्हारे पास है, बट अगर तुम इसको काउंट करना चाहते हो तो ठीक है, स्किल्स जितने तुम्हारे ज़्यादा होंगे उतना तुम ज़्यादा चार्ज कर पाओगे. इसको भी इक्वेशन में लेते हैं अपन. बट स्टार्टिंग में अपन एक बेस लेके चल रहे हैं कि 800-1000 अगर तुम चार्ज कर रहे हो तो तुम्हारे पास कुछ स्किल सेट है जो तुम मार्केट को ऑफर कर सकते हो. इट्स नॉट लाइक कि स्किल सेट है ही नहीं, राइट. तो वो स्किल सेट से तुम स्टार्ट कर रहे हो एंड आफ्टर दैट ऐसे ही 20 प्रोजेक्ट्स इधर करे, फिर 20% इंक्रीज करा, 20 प्रोजेक्ट इंक्रीज करे, फिर 20% इंक्रीज करा. ऐसे करते करते यू विल रीच एट वन पॉइंट जहां पे तुम्हारा क्लाइंट तुमसे कहेगा कि यार अब 2500 पर रील मैं नहीं कर सकता. ओके, एक क्लाइंट ने कह दिया, बट ये रिपीटेड अगर तुम्हारे साथ होगा लेट्स से 5 से 8 क्लाइंट के साथ, जो कि प्रॉबेबली तुम इस चीज़ को नहीं झेल पाओगे कि 5 से 8 क्लाइंट हो अगर तुम एक बिगनिंग फेज में हो. तो लेट्स से 2 से 3 क्लाइंट अगर तुमको मना करते हैं इस प्राइस पे, तो यू स्टिक विद प्रीवियस रेंज. कि अगर क्लाइंट ने कहा कि 2000 में कर दूंगा मैं, तो 2000 तुमको एक बेंचमार्क मिल गया है कि इंडस्ट्री में 2000 में पर रील का काम हो रहा है. ठीक है, इतना मैं कर सकता हूँ. अब यहाँ से लेवल अप करने के लिए ये तुम्हारे करंट स्किल सेट के हिसाब से प्राइस सेट हुआ है. अब इसके बाद तुम अपने स्किल्स अप कर सकते हो, तुम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स अप कर सकते हो, तुम अपने
ब्रीफ्स अप कर सकते हो, तुम अपनी कंट्री अप कर सकते हो, तुम जितनी भी वो मैंने 6 चीजें बताई थी उन सबको अपग्रेड करोगे, देन फिर अपना 20% प्राइस इंक्रीज करोगे फॉर नेक्स्ट 5 to 6 प्रोजेक्ट्स एंड सी हाउ दैट इज परफॉर्मिंग, एंड देन अगर वो सब लोग एग्री कर जाते तुम्हारे करंट स्किल सेट से, देन यू इंक्रीज द प्राइस अगेन, और ये फॉर्मूला तुम फिर से फॉलो कर सकते हो. दिस इज व्हाट आई डिड, एंड एवरी टाइम इट वाज नॉट 20% इंक्रीज, कभी कभी मैंने 40% इंक्रीज भी करा, कभी कभी मैंने 50 प्रोजेक्ट्स कर लिए, जो कि नहीं हुआ है, 50 नहीं हुआ, सॉरी, आई एम नॉट गिविंग यू द प्रैक्टिकल थिंग है. 50 नहीं, मैंने प्रॉबेबली 30-40 वीडियोस करे होंगे, ठीक है. उसके बाद मैंने डायरेक्टली 30-40 वीडियोस करे, उसके बाद डायरेक्टली मैंने अराउंड 50% का हाइक लिया था फॉर द वीडियो, एंड दिस इज फाइन, लाइक इफ यू हैव गुड स्किल्स, क्योंकि स्टार्टिंग में कैसा कर्व होगा ना तुम्हारा, स्टार्टिंग में योर कर्व विल बी लाइक दिस, प्राइसिंग का कर्व ऐसे जाएगा तुम्हारा. तो यहाँ पे तुम जो है लाइक स्लोली स्लोली ग्रो कर रहे हो, 800, 1200, 1400, बट देन इमिडिएटली आफ्टर सम पॉइंट तुम्हारे स्किल्स बहुत अच्छे से एक्सपोनेंशियली बिगिनर्स लग होगा, और आई वुड से कि ये और जल्दी ग्रो होगा तुम्हारा, इतना देर में भी नहीं जाएगा तुम्हारा, ऐसे ग्रो हो जाएगा, बहुत स्टीप करवाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तुम्हारे को यहाँ पे स्किल्स बहुत जल्दी इंप्रूव हो रहे हैं बिगिनर लेवल पे, एंड व्हेन यू आर अ बिगिनर, जैसे जिम में होता है कि बिगिनर्स गेन होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी गेन कर लेते हो मसल्स, सिमिलरली तुम ज्यादा प्राइस इंक्रीज कर सकते हो, 500,000 रुपए में 2,000, 2,500, 5,000 रुपए तक, आई डोंट थिंक सो किसी भी क्लाइंट को फर्क पड़ेगा, बट अगेन फिर तुम इंक्रीज कर रहे हो 8,000 पर रील, 10,000 पर रील, तो उधर हाँ फर्क पड़ेगा, एंड देन द ग्राफ इवेंचुअली स्टार्ट्स टू गो स्लो. जैसे तुमने यहाँ पे $1,000 एक रील का चार्ज करना चालू कर दिया, तो वो बहुत स्लो होगा, बहुत कम क्लाइंट्स होंगे इस लेवल पे जो तुमको $1,000 पे कर पाए. स्टार्टिंग में स्टीप होगा, देन स्लो हो जाएगा ग्राफ तुम्हारा, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन, दैट्स कंप्लीटली ओके, एंड इट वर्क्स लाइक दिस. तो स्टार्टिंग में तुम 50%, 100% हाइक भी ले सकते हो, बट इवेंचुअली जाके तुम 20% का फॉर्मूला यूज करके हर क्लाइंट से, जो भी नए नए क्लाइंट्स ऐड कर रहे हो, उनसे तुम लाइक ऐसे प्राइस डिमांड कर सकते हो. एंड नाउ एवरीथिंग इज सिंपल फॉर यू. प्राइसिंग में और कुछ नहीं है, प्राइसिंग इज साइकोलॉजिकल. तुम अगर सोचते हो कि तुम इतना चार्ज कर सकते हो, तुम करो, सिंपल. अगर तुमको रिजेक्शन हो रहा है लॉजिकली, 5 टाइम तुम रिजेक्ट हो रहे हो, तो ठीक है भाई, जो प्रीवियस प्राइस था उस पे रहो, या तुम अपने स्किल्स लेवल करो, ठीक है. तुम्हें प्राइस ज्यादा चाहिए तो तुमको मार्केट को वैल्यू भी ज्यादा देनी पड़ेगी, either do that or work at the same price that you were working at. So both of the things are viable, it's just you who have to decide कि अब मेरे को क्या करना है. So ये pricing का I think I've made you understand. I'll see if I'll be able to tackle some other problems. I'll see if I have any questions. So एक चीज और मैं कवर करना चाहूँगा, and that is कि लोग ये कहते हैं कि मैं कब से पेड प्रोजेक्ट्स लेना स्टार्ट कर दूँ, या कब तक मैं फ्री काम करूँ. तो ऐसा समझो कि फर्स्ट 6 months तुम बिल्कुल बिगिनर होगे, तुम उस टाइम पे फ्री काम करो. तुम्हें अगर प्रोजेक्ट काम मिल रहा है पेड का, तो प्लीज एक्सेप्ट इट एंड यूज इट इन योर पोर्टफोलियो. एंड मेजरली स्टार्टिंग में मैंने तुमको जैसे बताया था, एक्सपीरियंस अपन को गेन करना है, तो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए एंड पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए डू फ्री वर्क टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो. वंस यू हैव अ पोर्टफोलियो सेट एंड you know that you can demand some money from the market after probably 6 months to 12 months of grinding, you'll be able to do that. Then start doing this, like start charging 800, 1200, and even if you're learning के साथ साथ भी तुम earn कर सकते हो. only thing is तुमको कम पैसा मिलेगा, but you should be okay with it, क्योंकि तुमको experience gain करना है. after a point जब तुम्हारा experience हो जाए, you know how to charge, you know that your skill sets are good, you can increase your pricing and leave your existing clients and go with हायर टिकट क्लाइंट्स फॉर योरसेल्फ. एंड एक और क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोग प्रॉबेबली कंफ्यूज्ड होंगे. उन्होंने काफ़ी सारे वेबसाइट्स पे देखा होगा कि लोग पैकेजेस बना के रखते हैं कि भाई $1,000 का ये पैकेज है, $1,200 का ये है, $1,500 का ये पैकेज है, बट उस चीज़ के लिए अभी तुम रेडी नहीं हो. वो बिगिनर्स के लिए काम नहीं आती है बिल्कुल भी. दैट विल बी अनदर लूप दैट विल बी इन. इवन इंटरमीडिएट लेवल पे भी तुम जाके उन पैकेजेस को मत बनाओ. इवन वी डोंट हैव एनी पैकेजेस, वी जस्ट डू कस्टम प्राइसिंग फॉर एवरीवन. सो you can do the packages once you are standardizing or productizing the services. productizing का मतलब ये है कि हाँ भाई इतने ही standard deliverables हम लोग देते हैं और ये हमारा quality set है, somewhat that, ठीक है. एक तुमने थ्रेशोल्ड सेट करके रख दिया, तब तुम ये चीज़ें कर सकते हो, बट अभी के लिए नहीं, बिकॉज यू आर एक्सपेरिमेंटिंग. तुम्हें अपने आप को एक बबल के अंदर बाइंड नहीं करना अपने आप को. सो दैट इज द थिंग. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज वन थिंग दैट all of you must know about, and that is positioning and upselling. Now after this video what I'll do is I'll लिंक 2 वीडियोस जिसको तुम देखना. पोजीशनिंग पे एक वीडियो होगी, पोजीशनिंग, जिससे तुम्हारी अथॉरिटी बिल्ड होगी, एंड इसमें तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करता है, एंड इससे तुम ज़्यादा चार्ज कर पाओगे अपने क्लाइंट से. एंड अपसेलिंग की एक वीडियो है जो कि बहुत सारे फ्रीलांसर्स ओवरलुक करते हैं. एजेंसी ओनर्स ये करते हैं बट फ्रीलांसर्स नहीं करते हैं ये. तो ये चीज़ करो एंड यू विल बी एबल टू चार्ज इवन 10x ऑफ व्हाट यू आर चार्जिंग फ्रॉम द सेम क्लाइंट.
ओके तो लाइक दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव डन। तो तुम ये भी देखना अभी वीडियो जाके, ये भी देखना, दोनों वीडियोस लिंक कर रहा हूँ बैक टू बैक, गो एंड वॉच दैट। तुमने कई बार ये नोटिस किया होगा कि पीपल हु आर नो बेटर देन यू इन योर फील्ड आर चार्जिंग मोर देन you and you are not able to figure out why is that happening. I'll tell you straight up. The reason is positioning and clear communication. You can be really good at editing, coding, graphic designing, UI, UX. But if you can't clearly communicate, then you'll just keep on chasing low ticket clients and you'll just keep begging for attention. So now what do I mean by positioning and clear communication? Let me explain it. This is what most freelancers do. I'm a video editor. I'm a graphic designer. I do UI, UX. Hire me. This thing is like कि तुम एक hospital में जा रहे हो and you are saying I'm a doctor. Yes, I get it. You are a doctor. But तुम किसको treat करते हो? And why should I trust you with my problem? जैसे ही तुम अपने क्लाइंट से ये कहते हो कि मैं एक वीडियो एडिटर हूं, मुझे हायर कर लो, क्लाइंट के दिमाग में ऑटोमेटिकली कुछ क्वेश्चन चलने लगते हैं लाइक हाउ डज दिस हेल्प मी, व्हाट रिजल्ट डज दिस गिव मी, व्हाट प्रॉब्लम डज दिस सॉल्व। एंड इफ यू फेल टू आंसर दीज क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, द क्लाइंट विल जस्ट लीव यू। एंड इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो बंदा इन क्वेश्चंस का आंसर बहुत अच्छे से क्लाइंट को समझा पाता है, दैट पर्सन गेट्स क्लाइंट्स even if he is not better than you in the skill set or any other thing. That's the hard truth. Now think in these terms. I help YouTubers turn raw talking head videos into high retention content that increases AVD by at least 15%. Or I design landing pages for SaaS startups to reduce bounce rates by 40%. Now with these statements, it's clear who you help, what outcome you deliver, and what makes you valuable. And ये मैं theory से उठा के कुछ नहीं कह रहा हूँ. I've practically implemented this particular thing. I never in my sales call say I just edit videos for you or my agency just edits videos for you. We help them grow their business faster. How do we do that? We identify the pain problems and we solve those pain problems of that particular client, and hence it helps increase the things that they want in the business. आगे मैं एक शॉर्ट क्लिप डाल रहा हूँ अपने सेल्स कॉल की, जहाँ पे मैंने एक SaaS फाउंडर को समझाया था कि मैं खाली वीडियो एडिट नहीं करूंगा तुम्हारे लिए. I will craft the ads in a way where it will help you get more customers into your SaaS. And उसका main problem ही ये था that the ads that they were making was shit in his terms. So I was like, we can make it better. But then the objection came when I pitched the price. He was like, it's too expensive. Then I was like, it's not. If I'm making ads for you and you're getting customers out of that, you'll recover the cost, you'll get the ROI. And he eventually got convinced. Similarly, if the client has got the results from the edits that you have done, which in my case, one of my clients got the results, then अगर तुम उसको high ticket price pitch करोगे, the chances are that the client will accept that price because the client got the results. And in my case, I recently charged $400 for a 60-second edit because previously उस client ने जब काम करवाया था, he got almost 10x ROI of that. And now they came to me with the similar style of edit, and I was like, again $400 for that edit. पहले भी मैंने $400 charge किया था, अभी भी. And today only I got the mail again from that client कि आपका जो previous edit था, वो हमें बहुत अच्छा लगा. We want more work from you. Crazy. So of course your work has to speak for yourself, but on the other hand you'll have to position your skill or yourself in a way where you are a growth partner for them, not just a video editor, graphic designer or UI UX wala banda. So you don't have to sell your hours, rather sell the value that you provide to the client. And remember this thing, the more specific you are, the more people trust you can solve their problem. So if you're stuck and you're not able to charge high ticket prices to the client, don't just improve your technical parts. Improve your clarity. Answer these questions to improve your clarity. First, who do you help? Your niche, industry, problem. Second, what results do they want? More leads, better content, time saved, etc. Third, why you? Your process, your results, your approach. Now the answer that you've got, उसको अपने bio में, portfolio में या cold email में डालो. Bad pitches, I do thumbnails for YouTube. Better pitches, I help growing YouTubers design CTR optimized thumbnails that get more clicks and views. And if you can be specific, then say that my thumbnails on an average get 5% CTR. Lastly, don't just become better at the skill. Become better at presenting your skill, aka positioning. And just for your information, marketing industry is multi-trillion dollar industry. And you, my friend, are ignoring this skill. Don't overlook marketing. You'll have to present yourself better to become a great freelancer. And again, if you don't want to waste your time in fluff information, you can go and grab the ebook. Now, see you in another video. Bye-bye. So first thing is offers. And second thing which you guys might not know about is upsell. सेल. और अगर तुमको पता होगी तो भी तुम इसको अच्छे से ऑप्टिमाइज करके यूटिलाइज नहीं कर रहे हो ताकि तुम ज्यादा पैसे कमा पाओ. व्हाट इज दिस थिंग? ब्रीफली, अपसेलिंग मींस यू आर सेलिंग टू द कस्टमर दैट हैज ऑलरेडी बॉट योर सर्विसेज. फॉर एग्जांपल, तुम्हारे पास एक कस्टमर है, तुमने उसको बेचा 5 रुपए का सामान, एंड देन उसी कस्टमर के पास तुम वापस जाके उसको 15 रुपए का सामान बेच रहे हो, तो इसको कहते हैं अपसेलिंग. नाउ ये तुम दो तरीके से कर सकते हो, विच इज, पहला, जब तुम क्लाइंट को पिच कर रहे हो तो तुम कर सकते हो अपसेल,
अपसेल। दूसरा, जब तुम क्लाइंट के साथ वर्क कर चुके हो तब तुम कर सकते हो अपसेल। अब जब तुम पिच करोगे तो तुम अपसेल कैसे करोगे? लेट्स से एक क्लाइंट ने तुमसे कहा है कि यार मुझे ये सर्विसेज चाहिए $1000 में, मुझे 6 शॉर्ट फॉर्म एंड 3 लॉन्ग फॉर्म चाहिए। नाउ उसको ये अपलोड करना है यूट्यूब पर। अब मैथमेटिकली तुम क्या कर सकते हो, तुम उससे कह सकते हो यार आई थिंक you'll better off when you post 4 times long form content on YouTube and 16 short form. And he'll be like, why do you think so? So you'll explain, 4 long form इसलिए क्योंकि 1x a week तुम पोस्ट कर सकते हो, 16 long form इसलिए क्योंकि तुम 4x a week पोस्ट कर सकते हो from single long form. Okay, he'll be like, I understand that maths, but why should I be posting 4 times long form content and 4 times a week short form content? So you can explain, it will give you more visibility, more subscribers, and hence more views. And he'll be like, okay, now I get it. And इस सब का आउटकम फिर तुम बताओगे कि जब तुम्हारे पास more views, more visibility, more subscribers आएंगे, then you'll be able to get more leads and hence you will make more money. Now the client understands why he should be posting 4 long form content and 16 short form content on his YouTube channel. And guys, you have successfully upsold from $1,000 to, let's say you pitched him $1,800 for all of that. And अगर उसने डिस्काउंट मांगा तो तुमने उसको कम करके $1,500 कर दिया. It's $500 per month additional revenue in your pocket, which अगर हम लोग ईयरली से मल्टीप्लाई करें 5 into 12, 12 5 to 60, $6,000. Guys, $6,000. What the fuck is this? What the fuck am I even doing, brother? डॉलर बना ले भाई. तो $6,000 एक्स्ट्रा ईयरली तुम्हारा रेवेन्यू ऐड हो रहा है. क्रेजी. So this is how you can upsell when you are pitching. Now let's talk about when you're working with the client. Now this is exactly what I did. मैंने पिच करते पे जब अपसेल किया था वो मैंने डिफरेंट टाइप का किया था जो कि हम लोग कवर करेंगे ऑफर्स के अंदर, ठीक है? बट उससे पहले हम लोग डायरेक्टली अपसेल की बात कर रहे हैं जो कि हम लोग काम करने के बाद क्लाइंट को करेंगे. तो अब हम क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं. ये चीज मैंने करी थी, मैं क्लाइंट के साथ काम कर रहा था. आई लेफ्ट दैट क्लाइंट एजेंसी बिल्ड करने के लिए एंड देन आफ्टर दैट आई वेंट टू द क्लाइंट एंड उसने मेरे को 1 टाइम प्रोजेक्ट दिया, 2 1 टाइम प्रोजेक्ट्स दिए एंड आई एक्चुअली गॉट द मैसेज फ्रॉम देम कि क्या हमारे लिए तुम रिकरिंग काम कर सकते हो क्या? सो व्हाट हैपेंड वाज मैं पहले उनके लिए $450 अप्रॉक्स एज अ फ्रीलांसर पर मंथ काम करता था, ठीक है? $450. Now when we did one time projects, when we offered a solution to them, ऑफ कोर्स कहा उन्होंने था कि तुम हमारे साथ रिकरिंग प्रोजेक्ट्स पे काम करो, बट उससे पहले हम लोगों ने पिच किया था कि आपको हम ये सर्विस, वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ अभी, बट हम आपको इतने लॉन्ग फॉर्म और इतने शॉर्ट फॉर्म प्रोवाइड करके दे सकते हैं एंड आपका ये पूरा यूट्यूब मैनेज कर सकते हैं. नाउ दे वर लाइक, ओके, वी हैव अ टीम who is already doing that, but will you be able to become our marketing wing instead? And we were like, why not? So what we did was हम लोगों ने $4,500 पे उनको क्लोज किया. Now इसका प्रूफ मैं तुमको नेक्स्ट वीडियोस में, ये मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, काफी अच्छी केस स्टडी है जिससे तुमको हेल्प मिलेगी, तो तुमको समझ में आएगा कौन सा क्लाइंट था, क्या था. मैं उसको नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ऑफर डिस्क्लोज नहीं करूंगा प्योरली, बट यू विल अंडरस्टैंड हाउ वी क्लोज दिस क्लाइंट. सो ऑल इन ऑल $4,500 पे हमने उसको क्लोज किया, which is almost 10x increase on what I used to charge that client on a monthly basis, right? So this thing works. अगर तुम क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, एक बार तुमने उस क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड कर लिया है, उसके बाद you have the chances. We do this thing a lot of times with multiple offers. तुम्हें offers build करना आना चाहिए कि तुम ऑफर क्या प्रोवाइड करोगे जो कि एक्चुअली में उनको हेल्प करेगा. So you'll upsell or offer that thing to the client. Let's say एक क्लाइंट के वीडियो प्रोडक्शन में बहुत दिक्कत आ रही है उसको, तो तुम उसकी अगर वीडियोस एडिट करते हो तो तुम उसको अपसेल कर सकते हो कि यार मैं शूट भी करता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, let's say, and I can come and shoot for you too. These are my charges and let's hop on a call and discuss this thing further. The chances of you closing that client will be almost 10-20 times more than a guy who is completely new and वो cold lead है, समझे? तो तुम ऑलरेडी काम कर चुके हो, तुमने उसको काम दिया है, तुम ट्रस्टेड हो, तो वो तुम्हारे पे ज्यादा भरोसा करेगा. इसलिए जब तुम काम कर रहे हो किसी क्लाइंट के साथ, उसको मल्टीपल सर्विसेज चाहिए होती है, तो तुम उसको वो चीज पिच करके उसको वो ऑफर देकर अपसेल कर सकते हो. बस शर्त ये है कि वो ऑफर अच्छा होना चाहिए, एंटाइसिंग होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक क्लाइंट है जो कि हमसे वीडियो एडिट्स करवाता है, ठीक है, यूट्यूब वीडियो शॉर्ट फॉर्म्स, एंड नाउ वी आर थिंकिंग ऑफ पिचिंग एड्स टू दैट क्लाइंट एज वेल, बिकॉज द रीजन इज सिंपल. जब हम एड्स पिच करेंगे, बिकॉज ही हैज सम इवेंट दैट गोज ऑन
month, some months, तो वो ad चलाता ही है of course. So we'll branch out into that area. हमारे लिए भी एक नई चीज हो जाएगी एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि ओके हमारा एक क्लाइंट है, इसके साथ हम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं. तो अभी तक हम लोग कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी जो है उसमें एड्स रन नहीं करते थे, अब इसके साथ एक्सपेरिमेंट करके हम एड्स भी रन कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि हम किस लेवल पे स्टैंड करते हैं. एंड अगर इसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो एक ऑफर हम बिल्ड कर सकते हैं इसके ऊपर, इसकी केस स्टडी बना के और क्लाइंट्स को पिच कर सकते हैं. सो दैट इज द स्ट्रैटेजी दैट यू कैन यूज इफ यू आर एन एजेंसी ओनर वाचिंग दिस. You have the leverage of hiring people to do this, and if you are a single freelancer you don't have that leverage, but you can learn the skill and pull out these things as well from your stack of offers. So that's the thing. Now work से related मैंने तुमको बता दिया. अब तुम्हें एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि तुमको ये चीज अपसेल कब करनी है जब तुम एक क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो. Pretty simple. I think 3 months is the sweet spot. और अगर तुमने एक महीने के अंदर उसको रिजल्ट बहुत अच्छे ला के दे दिए, लेट्स से तुमने प्रॉमिस किया था कि भाई लेट्स से 2x 3x इंक्रीज हो जाएगा हमारे यूट्यूब व्यूज में या सब्सक्राइबर रेट में, तो तुमने वो चीज दे दी है, उसके बाद तुम उसको पिच कर सकते क्योंकि दैट क्लाइंट नाउ ट्रस्ट यू. सो 3 months इज द स्वीट स्पॉट फॉर दिस, बट कंसिडर दिस, अगर तुमने रिजल्ट दिए हैं तो तुम जल्दी भी पिच कर सकते हो. एंड जस्ट मेक श्योर यू आर गिविंग क्वालिटी वर्क टू द क्लाइंट. दैट्स ऑल दैट मैटर्स. नाउ लेट्स कम टू द ऑफर्स. ऑफर्स का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है. जब तुम प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो एंड प्रोस्पेक्ट अभी भी श्योर नहीं है कि वो सर्विसेज ले तुम्हारी या नहीं ले, तो तुम ये कार्ड प्ले कर सकते हो उसके सामने, विच इज मैं पेड प्रोजेक्ट कर दूंगा बट फॉर अ वेरी मिनिमल फीस. नाउ दिस इज वेयर द गेम चेंजेस. क्लाइंट का साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो यहाँ पर. जब तुम पेड प्रोजेक्ट कह रहे हो या तुम उसको एक ऑफर दे रहे हो कि भाई $1,000 $1,500 का मैं तुमको ऑफर कर रहा हूँ, इतने शॉर्ट फॉर्म इतने लॉन्ग फॉर्म का, द क्लाइंट इज रिस्किंग हिज $1,500 एवरी मंथ. एंड वो लॉन्ग टर्म अगर सोच रहा है तो 1,500 को तुम 12 से मल्टीप्लाई कर लो, जितना भी आ रहा है, मेरी मैथ खराब है, उतना वो रिस्क कर रहा है. चलो मैं मैथ भी कर लेता हूँ यार तुम्हारे सामने. 15 multiplied by 12, $18,000. That client is risking $18,000, and what is holding him back is trust. So you'll have to make him trust you. अब तुम $18,000 को कंपेयर करो let's say just $200 से. तुम कहोगे कि भाई मैं 200 या $150 में तुम्हारा एक प्रोजेक्ट करके देता हूँ. Let's see how I work with you and you see my results, what I provide in terms of video editing, graphic designing, coding, whatever it is. Now $18,000 and $150 is a very big difference. अगर तुम yearly basis पे भी count नहीं कर रहे हो, $1,500 and $150 is like a 10x decrement, if that's a word. मतलब decrease हो रहा है 10x. So it is a very enticing offer for the client कि okay अगर मैं $1,500 नहीं दे पा रहा हूँ, चलो $150 देकर ट्राई करते हैं, रिस्क कम है इसमें. That is the thing that have to operate on. और ये साइकोलॉजी भी होती है जब तुम पहले कोई बड़ा चीज प्ले आउट कर देते हो, which is एक स्टडी हुई थी एंड उसमें एक स्टोरी थी जो कि मैंने कहीं पे पढ़ी थी कि एक बेटे ने कहा कि मैं सारे एग्जाम्स में फेल हो गया हूँ अपने पेरेंट्स से जाके, एंड देन फिर उसने कहा अरे नहीं नहीं सारे एग्जाम्स में नहीं, खाली एक में फेल हुआ. तो वो जो इम्पैक्ट था फेलियर का वो कम हो गया क्योंकि उसने सबसे पहले इतना बड़ा चीज बोल दिया कि भाई सारे एग्जाम्स में फेल हो गया, व्हाट द फक. बट नहीं, उसने कहा मैं सारे में नहीं एक में फेल हुआ, तो उसका इम्पैक्ट डिक्रीज हो गया कंपेयर टू अगर वो बोलता कि मैं फेल हो गया एक एग्जाम में, राइट. सो तुमने पहले $1,500 बोला है, फिर तुम कह रहे हो $150 का मैं एक पेड प्रोजेक्ट कर सकता हूँ. एंड आई एम टेलिंग यू इस ऑफर से ही सिंगल हैंडेडली मैंने मल्टीपल क्लाइंट्स क्लोज करे हैं क्योंकि उनको ट्रस्ट हो गया है मेरे पे. मैंने तुमको बताया था ये जो $4,500 का क्लाइंट है इनके साथ में वन टाइम प्रोजेक्ट कर रहा था. रीजन वाज सिंपल, दे वांटेड टू ट्रस्ट मी. एक मैंने और NRI क्लाइंट क्लोज किया था जिसके साथ मैंने ये पेड प्रोजेक्ट किया है. ऑलमोस्ट जितने भी क्लाइंट्स हैं हमारी एजेंसी में उसमें से बस एक क्लाइंट को छोड़ के जो कि हमारे साथ स्टार्ट से था, बाकी सारे क्लाइंट्स के लिए हम लोगों ने पेड प्रोजेक्ट्स करे हैं. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफर्स दैट यू कैन क्रिएट फॉर योरसेल्फ. नाउ यू विल हैव टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि तुम प्राइस कितना रखोगे और लाइक डिलीवरेबल्स क्या दोगे और थिंग्स लाइक दैट. जो भी तुम्हारे सर्विसेज हैं उसके अकॉर्डिंग तुम ये कर सकते हो. बट दिस इज द बेसिक फ्रेमवर्क दैट यू कैन यूज टू 10x योर रेवेन्यू. लाइक द प्रूफ इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू. $450 में चार्ज करता था, $405,000 में $4,500 में चार्ज करने लगा. इट वॉज अ 10x इंक्रीमेंट. एंड अगर तुम पेड प्रोजेक्ट्स में भी देख रहे हो तो $150 का तुम अगर प्रोजेक्ट कर रहे हो फर्स्ट टाइम and then तुम $1,500 का client close कर रहे हो, so it is also a 10x increment. So like all in all this thing works. I have been doing that and I have got the result. So yeah, I hope you got some real value out of this and this is the real juicy stuff. Now there's also one query that I get and that is कि यार मैं चार्जेस अपने इंक्रीज कैसे करूं, पैसा अपना इंक्रीज कैसे करूं. सिंपल है, इफ यू नो कि तुम्हारे स्किल्स बेटर हुए हैं, सीधा कहो जाके दैट माई प्राइसेस आर दिस राइट नाउ. दैट्स it. There's no rocket science here. There's nothing that I can talk about that will help you at the start. You just have to go tell the client कि भाई
I'm raising my prices of the services, and these are my new revised rates, and I'll be happy to work with you on these rates. And for the first month, I'm happy to give you a discount of 10% on these rates as an offer because you have been working with me. ये सारी चीजें तुम कर सकते हो, and you'll be able to, like, most of the clients, if they are happy with your work and they are not in financial crisis, they'll be ready to pay you. I know they'll be ready to pay you. So this is what you can do, and this is how you can, get higher money. Or what is higher money, क्या होता है? You can get more money for the existing work that you are doing, but the quality will be better because तुम of course better हो चुके हो. And lastly मैं एक चीज़ और एड्रेस करूँगा कि लोग ये कहते हैं कि इंटरनेशनल पेमेंट्स कहाँ से लें. इंटरनेशनल पेमेंट्स तुम ले सकते हो पेयनियर से. वाइज अभी नहीं चल रहा है अच्छा, तो वो नहीं यूज़ करना है. पेपाल हम लोग यूज़ नहीं करते हैं. यू कैन यूज़ स्काइडू, यू कैन यूज़ रेमिटली. दीज आर द ऑप्शंस दैट आई प्रेफर. यू कैन यूज़. आई विल बी हैप्पी कि तुम जाओ खुद एक्सप्लोर करो एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड फॉर योरसेल्फ कौन से पेमेंट मेथड्स बेटर है. बट मोस्ट ऑफ द बिगिनर फ्रीलांसर्स शायद फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम करना इमीडिएटली स्टार्ट नहीं करेंगे, तो उनके लिए यूपीआई बेस्ट है. ठीक है, बट अगर फॉरेन क्लाइंट्स तुमको मिल रहे हैं तो ये 4 ऑप्शंस बेस्ट हैं. अब ये मत पूछना कि इसको सेटअप कैसे करते हैं, वो यूट्यूब पे जाओ देख लो, तुमको सेटअप करना आ जाएगा. इट्स नॉट डिफिकल्ट. कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एंड यू विल बी एबल टू डू इट. एंड आई जस्ट नोटिस वन मोर क्वेश्चन जो कि मैं एड्रेस करूंगा स्पेशली बिगिनर फ्रीलांसर्स के लिए, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि मैं 1 लाख पर मंथ थ्रू फ्रीलांसिंग कमाऊँ. एंड बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं यूट्यूब पे, एंड इवन आई हैव मेड अ वीडियो कि आई मेड 2 lakhs per month and I used to make 3 lakhs per month, 3.5 lakhs per month as a freelancer. Is it actually true or everyone is faking it? और ये भी एक another get rich quick scheme है. तो पहली बात तो मैंने initially तुमको बताया था, this is not a get rich quick scheme. You'll have to understand this thing, and I'm probably sure अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो you are not coming here just for get rich quick scheme वाला thing. So yeah, that is aside. Now the answer is yes, you can make 3 lakhs per month, 5 lakhs, 10 lakhs per month even through freelancing. But कितना टाइम लगता है, कितना मेहनत लगता है, ये तुमको कोई नहीं दिखाता है, और मैंने भी नहीं दिखाया ये. बट अगर तुमने मेरी जर्नी फॉलो करी होगी तो तुमको पता होगा. मेरे वीडियोस अगर तुम देखोगे माय ईयर 2022, 2023, 2024, you'll be able to understand how much I've grinded. अब सारी चीज़ें तो मैं ऑफ कोर्स ऑनलाइन नहीं दिखा सकता, बट there's a lot of grind that goes on behind the scenes. I've worked for 12 hours a day straight for months and months to reach a level where I'm able to communicate my offer to the clients properly, and clients can trust me. I've made content alongside on YouTube to build authority in the niche, to build positioning, to do a lot of things particularly, and all of those things have helped me get that amount of money. Connections build करे हैं, तो connections referrals आए हैं. So I want to just have this set up in your head कि हाँ, this is possible. 1 lakh per month as a freelancer, 3 lakh per month as a freelancer. It's possible. I've closed clients worth $4,000, $2,700, $1,800, $1,500, $1,000. So everything is possible. Only thing that matters is, are you willing to go to that limit to push yourself and get out of that rat race or that those limiting beliefs जो कि out there on the internet है कि भाई 500 ही रुपए देते हैं लोग editing के, ये this and that. You have to get out of that. You have to rise above that and see the market. If I am charging that amount of money, then there's a proof that you can also charge that amount of money. It's just that you'll have to figure out how you can do that. And I have told you how you can do that. And of course, that's not all. इसमें सारी चीजें मैं नहीं बता पाऊंगा. It's not humanly possible for me. But I'll try to condense as much information as possible for you to make sure you charge the right price and you are able to hit that 1 lakh per month mark after watching this masterclass and continuing to implement all of the practical steps that I'll be talking about. Yes, 1 lakh per month is possible. Only thing that you need to hit that 1 lakh per month mark is client that is paying you $1,200, just one client. And trust me, like really trust me, it is actually really easy and possible. I would not say easy, it's simple. It's not easy, it's difficult, but you'll have to dial down the things, and $1,200 per month is like a piece of cake for you. People are ready to throw money at you if you are providing 4 long forms and 16 short forms in $1,200. Like, that is the cheapest rate that you can go in an international market, and people will just throw money at you. I'm telling you. So I hope you got the point. 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh, 5 lakh, 6 lakh, up to 10 lakh you can make. 10 लाख तक जाने में थोड़ा सिस्टमाइज करना पड़ता है, बट उसको मत सोचो अभी, क्योंकि जब तक वहां तक पहुंचोगे तब तक तुम बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाओगे. बट 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक आराम से एज अ फ्रीलांसर विदाउट एनी ग्रेट सिस्टम्स तुम पहुंच सकते हो. थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, बट यू विल बी एबल टू रीच देयर. सो द नेक्स्ट मॉड्यूल इज रियली अबाउट मी टॉकिंग एंड कन्विंसिंग यू ऑन फ्यू थिंग्स and basically removing the limiting beliefs that you might be having in your brain. इस मॉड्यूल को बस ध्यान से सुनना, समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एंड इससे ओवरऑल तुम्हारे लाइफ का जितना भी रेल्म है जहाँ पे तुम अपने करियर से रिलेटेड, या आई थिंक इन एवरी सिनेरियो ऑफ योर लाइफ दिस थिंग विल हेल्प यू.
Okay, the things that I'm going to talk about and the videos that I'll be linking will help you a lot. So this is soft skill जिसके बारे में बात कर चुका हूँ, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा. Soft skills, investing and enjoying life in general. Life, or I should say self-help. See, I know most of the people don't talk about this on the internet and I felt it. I didn't want to include it क्योंकि I was like, यार freelancing की master class है, ये सब क्यों include करूँ? And I didn't even want to shoot the video like this, honestly, like the way I'm shooting it. I'm just coming up in front of the camera and talking to you in a very raw format. I had no plans to do that, honestly, zero plans for that. But I was like, यार, that will be really injustice for my audience to not talk about the self-help stuff, because when I revisited, I was like, यार, ये चीज ने मेरे को तो बहुत ज्यादा हेल्प किया है and I might come out as guru जो कुछ teach कर रहा है, but if this has helped me and if people which is freelancers are not able to charge because of this thing, then probably this is where they are lacking. And I'm telling you, the soft skills part जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी मैं तुमको एक story बताऊंगा. And I was able to charge almost $1,000 more than a guy just because of my soft skills. So there's a story that goes like this, not a story, real life incident. तो एक दोस्त ने, मेरा ही दोस्त था, उसने मेरे को रेफरल दिया था उसी क्लाइंट का, और उस क्लाइंट को 2 एडिटर्स चाहिए थे. उसने उस क्लाइंट को क्लोज किया था $1,800 में, सेम डिलीवरेबल्स, 4 लॉन्ग फॉर्म 16 शॉर्ट फॉर्म्स के लिए. एंड मैंने उस क्लाइंट को क्लोज किया था $2,700 में, और मैंने उसको पिच किए थे $3,100. अब मैंने जब उसको बताया सेम डिलीवरेबल्स हैं, एंड ही वाज लाइक, भाई कैसे? एंड अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट रियली सेंसिबल इनफ कि मैं वो मीटिंग रिकॉर्ड करूं. बट व्हेन आई डिड दैट एंड आई रियलाइज्ड इमीडिएटली कि भाई आई एम सो गुड एट माय कम्युनिकेशन स्किल्स कि आई एम एबल टू मेक द क्लाइंट अंडरस्टैंड माय पर्सपेक्टिव in a way where the client feels that I'm able to give a lot of value, and at the same time I had a personal brand, I had good authority too, जिसकी वजह से I was able to charge more. And वही मैंने तुमको previous module में बताया कि personal brand helps you a lot. It's just your choice if you want to do it or not. And मैं किसी 1-2 guest के साथ sessions भी करूँगा इस master class में, तो तुमको पता चलेगा कि personal brand really helps you a lot and how you can build your personal brand. So that's the thing. And apart from that, so soft skills में I think मैंने उस वीडियो में सब कुछ कवर करके रखा हुआ है जो मैंने तुमको दिखाई थी. एक वीडियो और लिंक करूंगा, ठीक है, उसमें ये दोनों पॉइंट्स कवर अप हो रहे हैं, सॉफ्ट स्किल्स एंड इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ. इन दोनों को अच्छे से सुनो जाके. ये वीडियो मैंने जब मैं लद्दाख जा रहा था तब मैंने शूट करी थी ऑन माय बाइक, तो प्लीज वॉच दैट वीडियो. एंड देन आफ्टर दैट ये भी पॉइंट कवर हो रहा है, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट स्टफ राइट इन फ्रंट ऑफ यू. सो वी आर बैक अगेन फ्रॉम अनदर ब्यूटीफुल लोकेशन. दिस वीडियो इज अनदर यू कैन से हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन. और ये तुम लोगों को बहुत ज्यादा क्लीशे टर्म ना लगने लगे इसलिए मैं यूज नहीं करूंगा. पता चले तुम कहो कमेंट्स में जाके कि भाई हर वीडियो तेरी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन ही होती है, ऐसा थोड़ी होता है. बट लेट्स गेट टू द पॉइंट्स. अब मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन नहीं करे हैं, ठीक है, एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ स्टफ. मेजरली इट विल बी अराउंड हाउ टू लिव इन योर 20s and crush your 20s in a way where you actually achieve the dream life that you wanted to achieve. So first and the major thing that I have noticed is people on the internet and on the hustle culture say a lot about hard work, smart work, and we stay confused. At least I used to stay confused a lot. यार लोग कह रहे हैं कि hard work से तुम्हें सक्सेस मिलती है, and then hard work कर रहा हूँ तो I'm getting burnt out. So what is the actual thing that we'll have to do in order to be successful? And you might be thinking, who am I to tell you all of this? तो मेरे previous YouTube videos देख सकते हो जाके if you want to understand me, why I am qualified to say these things. I've grinded a lot in my 20s. I'm still in my 20s, early 20s to be honest. 22 साल का हूँ basically, teenage में I've grinded a lot unconventional तरीके से, and I've achieved whatever I dreamt of as a guy who used to think कि बाइक हो खुद की बहुत सारी चीजें हो, and I have that. तो यार तुम मेरे videos देख लेना previous जाके. I don't want to name drop everything that I've done. Anyways, what's better, hard work or smart work? I tried कि मैं hard work और smart work को एक category में डाल पाऊँ, but that's not just how that works. पहले तुमको hard work करना पड़ेगा, complete hard work. This is the equation that you can dial down. Everything is dependent on this equation. Firstly, you do hard work. इतना hard work करते हो कि then you understand the pros and cons, the shortcuts of the game that you are in. But suppose you are doing freelancing, तो freelancing में तुम पहले hard work ही करोगे. You don't have any option to do smart work because you don't know about the industry. Then after a point, you'll understand there are a few loopholes that you can take advantage of, and then you do smart work. Once you do that, you understand we can do smart work plus hard work and achieve the things faster. Then you take a kind of leverage. If white label the things,
टाइम्स व्हाइट लेवल बेसिकली क्लाइंट से काम ले रहे हो एंड एडिटर्स को डेलीगेट करो विदाउट हैविंग एन एजेंसी, सो दैट इज मोर ऑफ लाइक कि तुम्हारा रेवेन्यू बढ़ेगा एंड यू आर एसेंशियली डूइंग अ लिटिल स्मार्ट वर्क. इट्स जस्ट एन एग्जांपल, राइट? एंड देन आफ्टर अ पॉइंट you understand the game so deeply, you only do smart work. In my case, I do only sales. So this is more of like leveling up till a point where you understand the game so good that you only do the things that move the lever after a point of time. So that is how you can do the smart work. But there's big nuance in there, and that is I've tried to understand this कि hard work करूँ या smart work करूँ इस particular point of time पे. ऐसा होता नहीं है कि तुम खाली खाली smart work करके successful हो जाओगे या खाली खाली hard work करके successful हो जाओगे. There's one thing called seasons of life, and if you know नवल रविकांत तो तुम जानते होगे कि he also says work like a lion. Initially I thought यार ऐसा नहीं होता है and I got a little skeptical क्योंकि conventionally I used to work a lot and मेरे को भी लगता था कि यार दिन भर काम करूंगा तो I'll be able to do more work. Naturally ऐसा लगता था. I tried to understand this concept कि कहना क्या चाह रहा है work like a lion से उसका मतलब क्या है, and most of the successful people are saying that. What do they mean? So work like a lion is taking breaks to rejuvenate and just cutting off from the work, then coming back and doing the work with full force. So when lion hunts, he just hunts, and when he rests, he rests. So that's what it is. I mean, I am here right now. It was a vacation because vacation पे I did almost everything except one thing जो कि मेरा company का थोड़ा सा काम था. I couldn't do that. I felt a little disappointed, but at the same time, I also thought to myself कि now you have to take a break. Why I'll take a break? Because अब अगर मैं break लूँगा, I'll be completely cut off from the regular work that I'll be doing. और सर्चों में signals नहीं होते हैं. चंद्रताल गया था, वहाँ पे सिग्नल नहीं थे, तो इट्स अ गुड थिंग कि तुम नो नेटवर्क जोन में हो एंड यू आर कटिंग ऑफ. और इस पॉइंट पे मैं आऊंगा बाद में. वंस यू डू दैट, यू टेक ब्रेक्स, यू रिजुविनेट, यू गिव स्पेस टू योर ब्रेन, एंड देन आफ्टर दैट तुमको बस अपने आप से ही प्रॉमिस करना होगा कि अब तुम ब्रेक्स ले रहे हो इतना फुल फ्लेज्ड, यू विल हैव टू वर्क लाइक अ लायन. अब इन जुलाई आई विल हैव टू वर्क विद फुल फोर्स. जो भी मैंने गोल्स सेट करे हैं उसको अचीव करना है बिकॉज आई हैव टेकन द ब्रेक. नाउ वंस दे विल बी अचीव्ड, आई विल टेक अ ब्रेक अगेन. सो दिस इज हाउ दिस होल थिंग वर्क्स. इफ तुम इस चीज को अच्छे से समझ जाओगे, ग्रास्प कर लोगे कि वर्किंग लाइक अ लायन कैसे काम करता है और कैसे तुम उस चीज का एडवांटेज उठा सकते हो, यू विल बी एबल टू वर्क अलॉट प्रोडक्टिवली. थोड़ा सा अनकन्वेंशनल चीज है, तुम लोगों को लग सकता है अगर यू आर इन दैट हसल कल्चर जोन एंड यू आर ब्रेन वॉश्ड इनटू थिंकिंग कि तुमको ज्यादा काम करना पड़ेगा. व्हेन यू आर डूइंग अ वर्क, जस्ट डू द वर्क. दैट इज द अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी हैक. व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग अ वीडियो, जस्ट रिकॉर्ड द वीडियो. व्हेन यू आर एडिटिंग अ वीडियो, यू एडिट द वीडियो. दैट इज द अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी हैक. व्हाई? बिकॉज वी थिंक कि हम 10 घंटे काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में हम वो 4-5 घंटे ही काम कर रहे होते हैं, मे भी 2-3 घंटे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उन 10 घंटों में वी जगल अ लॉट बिटवीन द टास्क और मल्टीटास्किंग इतनी हो जाती है कि हम अच्छे से एक काम पे फोकस नहीं कर पाते. क्वालिटी वर्क के लिए यू विल हैव टू फोकस सो गुड. लिमिटलेस अगर मूवी देखी है, नहीं देखी है तो देखना जाके, उसके एकदम डीप फोकस हो जाता है व्हेन ही टेक्स अ पिल, व्हेन ही डज द वर्क, एवरीथिंग इज जस्ट ब्लैक्ड आउट. तो वैसा फोकस तुमको चाहिए. यू डू द वर्क एंड यू जस्ट डू द वर्क, एंड देन व्हेन यू टेक द ब्रेक, यू टेक द ब्रेक. यू जस्ट से टू एवरीवन दैट आई डोंट केयर, आई एम गोइंग, मैंने काम किया है, आई डिजर्व द ब्रेक. एंड व्हेन यू हैव डन द ब्रेक, उसके बाद 1-2 दिन बैठकर गोल सेट करो कि नेक्स्ट 1 मंथ या 1.5 मंथ में मैं क्या करूंगा. 45 डेज का स्प्रिंट है मेरा. आफ्टर दैट आई विल टेक अ ब्रेक ऑफ 10 डेज अगेन. डू दिस, यू विल सी द बेनिफिट्स ऑफ दिस. और अगर तुम इस चीज को अच्छे से अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, इफ यू कैन जस्ट डू द वर्क फॉर 10 आवर्स स्ट्रेट, लाइक जस्ट डू द वर्क, कि अगर तुम 10 घंटे काम कर रहे हो तो तुम काम कर रहे हो. बिलीव मी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू विल डू टू योरसेल्फ इन योर 20s. दैट्स इट. तो पहले मैं मनी से रिलेटेड बात करता हूँ. व्हेन वी आर इन 20s, we try to save up a lot of fund and we have gained a lot of insights from those financial gurus कि तुम पैसा सेव करके रखो, तुम इन्वेस्टमेंट्स करके रखो, निफ्टी में डालो, ये करो वो करो. भाई अल्टीमेट BS एडवाइसेस, एटलीस्ट आई फील लाइक दैट. करना चाहो कर सकते हो, ठीक है, इट्स ऑल ऑन यू. इफ यू हैव 6 to 12 months of emergency fund saved, just leave all of the saving part. यार क्या करोगे सेव करके? दिस इज यू आर इन योर 20s एंड मैं ट्रैवलिंग का पॉइंट इसी में इंक्लूड करूंगा. जस्ट गो एंड ट्रैवल द वर्ल्ड, you'll just see a lot of things. तुम्हें इतनी सारी स्टोरीज सुनने को मिलेंगी, तुम्हारा चेंज हो जाएगा पर्सपेक्टिव, तुम बहुत मेच्योर हो जाओगे जब you'll travel. You don't just travel for the sake of travel, you travel for the sake of stories. You meet new people, you talk to them, and then maybe in just one conversation your life just flips. You never know. और वो जो धीरे धीरे चीजें कंपाउंड होती हैं in traveling, and when you don't want to just save the money for the sake of saving the money and you invest it in yourself, तो वो तुमको इतना ज्यादा बेनिफिट देगी rather than
सेविंग, उसको तुमको 1000x ROI मिलेगा। स्टॉक मार्केट में ये मिलना बहुत मुश्किल है, अनलेस कोई एक तुमने क्रिप्टो में या कहीं में इन्वेस्ट करके रखा हुआ वो मल्टी बैगर स्टॉक है। एनीवेज, माय पॉइंट इज व्हेन यू आर अर्निंग मनी, इफ योर इमरजेंसी फंड इज लेट्स से 3 lakhs, वो सेव्ड अप है तुम्हारा, यू आर अर्निंग 50,000 रुपीज पर मंथ, तुम उसको सेव करने की कोशिश मत करो। मे बी 5-10 हजार सेव कर सकते हो, दैट इज ऑल ऑन यू, बट बाकी जितना है वो इन्वेस्ट करो अपने आप। बुक्स खरीदो, कोर्सेज लो, ट्रैवल करो, कभी लग्जरी वेकेशंस कर लो 1-2 बार, लग्जरी होटल्स में जाओ, you'll understand the wealth. I also was skeptical, of course यार, मैं बाइक ही ले रहा था तो I was a little skeptical कि मैं लूं या ना लूं, it'll be not worth it कि मैं 4 लाख रुपए अपनी बाइक में डालूंगा एंड देन फिर एक्सेसरीज भी आएंगे, राइडिंग गियर्स भी लेने हैं। I thought यार शायद मेरे लिए अच्छी चीज नहीं है करना, बट देन इतनी सारी स्टोरीज मेरे को खाली बाइक खरीदने के बाद ही पता चली है कि मैं ट्रैवल किया हूँ। I've talked to a lot of people and after that, leave everything aside कि कितनी स्टोरीज, कितना ट्रैवल किया है, there's just something कि जब तुम मेमोरीज बनाते हो एक किसी मशीन या किसी भी चीज के साथ, सपोज यू बाइंग अ बाइक, यू बिल्ड अ लॉट ऑफ मेमोरीज, उसको तुम फाइनेंशियल या मनी के एस्पेक्ट में काउंट नहीं कर सकते, दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। और वो जो मेमोरीज तुम बिल्ड करते हो, दैट इज लाइफ टाइम मेमोरीज, सो इट वाज अ वर्थ इट इन्वेस्टमेंट। अब मे बी फाइनेंशियल गुरुज के हिसाब से दिस वाज अ लायबिलिटी, व्हिच इट इज इन फाइनेंशियल टर्म्स, बट डज इट मीन कि इसने मेरे को ग्रो नहीं किया है? किया है, क्योंकि आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल। अभी मैं इसी ट्रिप पे बहुत सारे लोगों से मिला, आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो व्हाई नॉट जस्ट डू the thing that you want to do instead of holding yourself back for unnecessary reasons, and especially in your 20s। ठीक है, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। जब तक वो नहीं हो रहा तब तक तो रिस्क ले सकते हो ना। अगर तुम्हारे पास 50,000 इनकम आ रही है, 40,000 जस्ट इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, खर्च करो, चिल मारो, कहीं ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे यू एक्सपीरियंस द वेल्थ। बिकॉज ईमान गाजी का जब मैंने कोर्स लिया था तो उसमें उसने बताया था, इफ यू वांट टू थिंक लाइक वेल्दी पीपल, you'll have to be around them, you'll have to think in their perspective, so you'll have to surround yourself in wealthy environments. When you do that, you understand how those people walk, talk and do certain things, and उससे psychologically, subconsciously you get affected a little। अब इस चीज का एग्जांपल अगर तुमको ये वू लग रहा है तो ये है, when you stay in an area जहाँ पर you are constantly dragged down, तुम किसी को look up नहीं कर सकते, you don't have anyone who is crushing it in their life, but instead you have one community in contrast to that, जहाँ पे तुमको crazy entrepreneurs मिल रहे हैं, crazy creators मिल रहे हैं, जो भी तुम्हारे फील्ड के बंदे हैं, क्रेजी फाड़ रहे हैं। तुमको कहाँ पे ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और कहाँ पे ज्यादा ग्रोथ मिलेगी, यू ऑल्सो नो द पॉइंट, यू ऑल्सो नो द आंसर, सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अगर तुम वेल्दी एनवायरमेंट्स में रहोगे, कुछ नहीं यार, 5,000 रुपए खर्च कर सकते हो ना 50,000 रुपए में से, बस 5,000 रुपए असाइड रखो कि मैं कुछ एक्सपेंसिव चीज करूंगा, ठीक है, एक एक्सपेंसिव वॉच लूंगा। I've recently bought one watch for this reason as well कि watch gives you sense of achievement, at least मेरे को, and I love collecting watches as well, and you get access to certain conversations which naturally or normally doesn't happen because you have an expensive watch and then people are like, okay, you are into watches, he thinks that his time is worth something, that's why he has bought the watch। बहुत सारे psychological effects होते हैं, वो लगेगा, I understand it happens at the start, I also used to think like that, watch है, time ही बताएगी, but then once you get into the industry you understand कि कुछ चीजें होती हैं that holds a lot of value and one of them is watches। तुम शॉर्ट्स पहन के जा सकते हो, तुम बनियान पहन के जा सकते हो भाई किसी भी स्टोर में, but when you see a Rolex AP or Richard Mille in the hands of that person, तुम automatically assume करते हो bro he's on to some shit। That is the psychological factor that I'm talking about। I'm going a little off track here and there, but थोड़े बहुत facts आ रहे हैं मेरे दिमाग में, तो I'm just trying to tell you, try to be in that wealthy environment। तुम्हारा perspective बहुत change होगा because in 20s when you not into that environment, हमारा brain उस तरीके से mold नहीं हो पाता है कि हम wealth को अच्छे से देख पाए, but once we mold ourselves into thinking how wealth works, how money works, you understand the game of money and then you play it in a way where it helps you gain a lot of money exponentially, and then you understand the perspective of how you can multiply and keep multiplying your wealth। because अगर तुम पैसे को देखोगे as a source of income, just income, तो वो तुम्हें ज्यादा पैसा बना के नहीं देगा, but you think of money as a tool that multiplies the money, then it will help you make money। it's a little complicated to make you guys understand because I'm also understanding this factor as well, but this is how actually the equation of the money works। you don't think that money is your income, it's your wealth multiplier if you invest it in the right things, that's all। and lastly इसी point से related एक बहुत बढ़िया point मैं तुमको बताने वाला हूँ, which is invest in yourself। now again a cliche point, बहुत सारे लोग तुमको बताते हैं कि भाई investing in yourself, ये करो वो करो, वर्कआउट करो, अपने ऊपर खर्च करो, ठीक है, I get it, तुमने बहुत सारी चीजें ऐसी सुनी होंगी, which is true, तुमको करना चाहिए, but
I also was confused when I heard this term invest in yourself कि यार actual में investment in yourself क्या count होता है? Is it only money? क्योंकि मेरे को जब भी ये term दिखता था या कोई भी बताता था तो मोस्टली लोग मेरे को यही बताते थे कि यार पैसा जो है ना वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ. बट देन आई गॉट टू अंडरस्टैंड इट्स नॉट जस्ट money that you invest in yourself, it's the time and effort in the other things that you invest in yourself. And what do I mean by that? Let's just say you invest money on yourself, which is going to an expensive gym or a good gym, and then having a great diet, traveling a lot, and having a great setup, great ergonomic chair, desk and everything. So it's like investing money in the things to give you a comfortable life. But then what's the other meaning of investing in yourself? So unfortunately my file got corrupted and I'm starting this video again from the point where I left. So what do I mean by investing in yourself? Basically investing in yourself in terms of time and space. Now what do I mean by that again? And by that I mean you have given yourself a set amount of time daily, or set aside a set amount of time daily to think through life, think through the things that you're actually doing. So we have been brainwashed into thinking that only investing with money into yourself is the kind of investment that we all should be looking for, and that is ideal. But it's not. You invest in yourself also through time and space. What do I mean by that? I've explained it to you, but I'll give you an example. When you are writing anything, poetry, scripts, or whatever you want to do, just some creative things. When you are, reading, when you are just sitting in silence, meditating, doing things with yourself without any external stimuli, then you're investing in yourself indirectly. And that is, I should say, you're investing in yourself directly. How? Let's just take this example. We all want to be a millionaire or billionaire. We have all dreamt of this thing. कि भाई बहुत पैसा कमाना है, अंधा पैसा कमाना है. But then we never sit down and think, do we actually want to be a millionaire or billionaire? Have we thought कि कितनी ज़्यादा responsibilities और sacrifices आते हैं when we become a millionaire or billionaire? We have never thought of it. We just want that byproduct, which is money, and that's all. We never, I mean, in 95% of the cases, I can say people just don't want that kind of responsibility and the lifestyle, hectic lifestyle that millionaires or billionaires have. They have a lot of stress that is going on in their heads, but people are not ready for it. They just want the money. So I want you to understand, if you're watching this video, if you want to invest in yourself, do it through money. Of course, that is a kind of investment that you can do, but do it through time and space. Give yourself space, travel, understand yourself that this is actually what you want. If you love traveling, do travel. You get a lot of space. Write the things down daily, that this is what I'm doing these days, this is what my goal is for next 5 years, this is what I want out of my life. When you understand this thing, that you want these things out of your life, this is the trajectory that I want to go on, you achieve things faster instead of just taking the desires from everyone, taking the success metrics from everyone, and then just going nowhere. You'll delay your process. Sit down, understand yourself, invest time and energy and space in yourself, and then you'll be able to understand how fast and easy it is to really be successful. Success metric हर किसी का different होता है. मेरे लिए success metric ये हो सकता है कि I just want to travel, have just enough money जिस पे मैं next 10 years and maybe let's say next 60 years जी सकूं. That's all. That's my success metric. I don't want that millionaire billionaire tag. But for someone who just wants to grind, उसके लिए millionaire billionaire tag एक success metric हो सकता है. क्योंकि जब तुम्हें पता होगा कि yes, this is why I am doing it, you'll be able to do it faster because you have why कि तुम वो क्यों कर रहे हो. Yeah, that is the thing कि अब तुम्हें पता है कि invest in yourself कैसे करना है तुमको. It's not just money. We often think कि हम जब ट्रैवल करेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे, काम करेंगे तो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे. ग्राइंड का मतलब होता है कहीं बाहर नहीं जाना, लॉकिंग योरसेल्फ इन द रूम फॉर 365 days and then just grinding the shit out. No brother, ऐसा नहीं होता है. In real life you'll get fucking exhausted and you'll have nothing to do except just the work. You won't have any hobbies. Go out, explore hobbies, explore yourself. Go and just travel if you want to travel, if you love traveling. If you don't want to travel, if you love hobbies, explore that. But apart from work, embrace your personality and build your personality as well. You're a human meant to experience life, experience it. That's pretty much it. I hope you love this video and I love these mountains. भाई ये मेरे one of the craziest mountains experience में से एक था. मनाली से लेह तक का राइड. अभी ले पहुंचा नहीं हूँ. I'm right now in सरचू और सरचू में जहाँ जहाँ तक देखो भाई सीधा प्लेन ग्राउंड है. भगाओ गाड़ी खूब भगाओ. ऑल्दो भगा नहीं सकते हो क्योंकि ऑफ रोड पे तो बहुत सारे गंदे पैचेस हैं, बट अल्टीमेट व्यू है. तुमको एक बार मनाली से लेह जरूर करना चाहिए. बाइक से करो, बाइक से ही करना, मजा आएगा बाइक से. कार से तो यार
ठीक है क्या यार, कार में बंदे बंदे मजा नहीं आता उसमें, बाइक से आना इतना अल्टीमेट व्यू है ना, मजा आ जाएगा तुम लोगों को, स्पेशली अगर क्लियर होगा स्काई। हम लोगों को तो क्लियर नहीं मिला था, अभी तो बादल वगैरह है, बट जब क्लियर होता है ना स्काई, चुम्मेश्वरी व्यू। और सरचू तक तो जरूर आना यार, ले नहीं जा रहे हो, मजा आ जाएगा। और मेरी तरह ऐसे बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर ले। चलो बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट। तो नाउ दैट यू हैव वॉच्ड द वीडियो, यू must have understood almost all of the points that I've talked about, and I am pretty sure you're convinced कि यार investing in yourself is necessary, and investing in yourself in terms of time is also necessary, and how soft skills can help you, and why enjoying life is also important. अब इस चीज को मैंने ज्यादा कवर नहीं किया है ना, सेल्फ हेल्प को कवर किया है, तो इस चीज को मैं कवर अप करूंगा थोड़ा सा, and that goes like this कि the more you work on yourself, the wider your vision becomes, and hence you believe or start to believe that you will be able to, or you are capable to charge more. You become confident in your life, in your pursuits. You think of a lot of new ways to make money, and I would say with all of this, connections also matters, and I am very grateful to have these connections through my YouTube channel. I'm able to get in the rooms where people have to pay for, right? Self-help helps, discipline helps a lot. I'll tell you how. If you have good time management, if you have good soft skills, and if you're working constantly on yourself with time, even though this guy who doesn't have soft skills, this guy is performing better than you in the shorter time scale, जो कि हो सकता है 6 महीने 1 साल में, ये बंदा खाली ग्राइंड करके बहुत ज्यादा पैसे कमा पा रहा है। उसने क्लोज कर लिया $2,700 $3,000 के क्लाइंट, एंड यू आर स्टिल स्टक एट $1,000 $1,500, बट ऑन द लॉन्गर टाइम हराइजन व्हाट विल हैपन इज ही विल स्टार्ट टू हेट हिज लाइफ, अगर वो बैठा रहेगा चेयर पे दिन से रात भर। एंड दिस इज द स्टोरी दैट इज माइन। आई वर्कड लाइक दिस गाय for 4 to 6 months, and even more than that, and I was just working for others. I was making good money, but I felt miserable. I didn't go to boxing, I didn't go to any gym, I couldn't actually go to any gym, I couldn't enjoy. The constant thought was कि भाई मेरे को डेडलाइन पे काम फिनिश करके देना है, and everything was just taking a toll on my mental health. So on the other hand, when I started to have boundaries and invest the money into some asset allocation, which was hiring one video editor for myself to delegate the work and share the 50% amount with him, 50% काम हो गया, वो 50% काम कर रहा है, मैं 50% काम कर रहा हूँ, and at the same time I put a time block in my calendar कि भाई 5 से 7 रात के या सुबह मेरे को बॉक्सिंग जिम जाना है या जिम जाना है। I was able to feel better, और मैं कंटेंट भी नहीं बना पा रहा था, very thing that I love the most. तो when that was happening I felt like यार खाली पैसा तो important नहीं है, that is for sure. तो क्या चीज important है? Feeling good with yourself, self-help, and actually enjoying life. I went on a lot of trips to get the answer to this question, and I always got the answer कि have a little balance. Yeah, I know, like work-life balance completely तुम नहीं कर सकते हो in your 20s, and that's completely fine, and I'm okay with it. You just have to have some kind of balance, and to tackle that I have built a routine जो कि मैंने वीडियो में भी डॉक्यूमेंट किया है, how to do more in 4 weeks than others do in 365 days. ये डॉक्यूमेंट किया है मैंने, and you can watch this video, मैं लिंक कर दूंगा इधर कहीं। Here you will be able to understand कि मैं कैसे अपने लाइफ में सीजन्स ऐड करता हूँ, where in few months, which is the season that I'm in right now, and by the end of the year I'll be in a chilling mode. Okay, तो मेरा ग्राइंडिंग सीजन होता है जिसमें मैं 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना बस घिस के काम करूंगा। आफ्टर दैट I'll go in the maintenance zone, go in the chilling zone, फिर उसके बाद चिल करके थोड़ा सा रिलैक्स रिजुविनेट करके I'll come back stronger and work again. This thing comes when you sit down, talk to yourself, write a lot of stuff. I have a lot of diaries that I have with me that I've just filled up. उसके साथ साथ मैंने बुक्स बहुत सारे पढ़े हुए हैं, अब सारे तो नहीं पढ़े बट बहुत सारे पढ़े हुए हैं, जिसमें से मेरा पर्सपेक्टिव बहुत वाइड हुआ है, एंड वो खाली तुमको कैरियर में नहीं बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। तो सेल्फ हेल्प इज इंपॉर्टेंट, प्लीज टेक दैट सीरियसली, हैव अ फिजिकल थिंग दैट you do daily or maybe thrice a week. If you feel like you're making money but you're not able to enjoy life, go out on the trips. I'm a big advocate of it. I do a lot of trips. If you want to buy things, buy those. If you really want to buy those, like previous clip में तुमने देखा होगा कि I bought my bike. Well, I wanted to buy that. हाँ, it's a liability but it's an asset for me. It gives me memories. Who the hell hates that? Finance gurus को एकदम blindly follow मत करो, ठीक है? You are here to live a little, okay? So enjoy your life. Self-help is also important alongside your career. Your career is directly proportional to the amount of self-help or self-improvement
that you do in your life, a guy who is constantly improving in his arena will outperform the guy who is not doing any kind of self improvement, because the mindset shifts are completely crazy on the longer time horizon. Be it एनी क्रिएटर ऑन यूट्यूब, किसी भी क्रिएटर को तुम देख लो, किसी भी सक्सेसफुल बंदे को देख लो, कुछ ना कुछ ऐसे सेल्फ इंप्रूवमेंट के हैबिट्स हैं उनके लाइफ में दैट हेल्प्स देम स्टे सेन एंड बिल्ड डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इनटू द रूटीन्स और द कैरियर्स दैट दे हैव. होप यू गॉट सम अंडरस्टैंडिंग कि व्हाई दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट. ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है, एक दो चीजें डेली करो, 3-4 महीने तक करो, वो जब ऑटोमेट हो जाए फिर तुम और चीजें ऐड करो. एक साथ सब ऐड मत कर दो कि भाई अब तो मैं परफेक्ट रूटीन बनाऊंगा. ऐसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि फिर तुम वही जाल में जा रहे हो कि सब परफेक्ट बनाना चाहते हो, सब टाइम ब्लॉक कर दोगे, फिर विल बी लाइक फक, कुछ तो समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं तो बर्नआउट फील कर रहा हूँ. एक चीज ऐड करो ना, मेडिटेशन ऐड करना, बस एक चीज ऐड करो, वही करो. एक चीज से डिसिप्लिन बिल्ड होगा, वो डिसिप्लिन कंपाउंड होकर दूसरी चीजों में भी ऐड होना चालू हो जाएगा. फॉर एग्जांपल फॉर मी व्हाट हैपेंस इज व्हेनेवर आई गो टू द जिम माय डाइट ऑटोमेटिकली बिकम्स गुड. वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है. तो व्हाट आई नीड टू डू इज जस्ट गो टू द जिम, डाइट ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि मेरे को भूख जेन्युइनली ज्यादा लगती है उस पॉइंट ऑफ टाइम तक. सो व्हाट डू आई हैव टू डू, जस्ट गो टू द जिम. सिमिलरली अगर तुम अच्छे से समझना चाहते हो इस चीज को, तो तुम एटॉमिक हैबिट्स पढ़ सकते हो. उसमें हैबिट स्टैकिंग एक प्रिंसिपल है, वो तुम पढ़ लोगे तो तुमको समझ में आएगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ. तो व्हेन यू विल डू दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड why self-help matters and why soft skills matter. उसका भी मैंने तुमको बता दिया है. And why investing in yourself matters and your hardware matters. वो तुमको उस क्लिप में पता चल गया, जिस क्लिप में मैं अपने बाइक के साथ सुंदर नजारों में तुमसे बात कर रहा हूँ. Got it? I know you got it. And lastly, I'll quickly go over few things that I've written down for you guys, and that is have clear set of boundaries कि कितने revisions दोगे. Usually हम लोग unlimited revisions करते हैं, but if you want to do revisions you can do that. किस timeline पे अपना वीडियो दोगे, कितना स्कोप है इस पूरे प्रोजेक्ट का कि भाई 16 deliverables and 4 long forms हैं. That is done. So I've written down few things that can help you to understand this soft skills वाला part better and have some clear boundaries with the clients. So first of all, revisions decide कर लो. हम unlimited revisions करते हैं, तुम कितने भी कर सकते हो. Timelines decide कर लो कि इतनी डेट तक मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट दे दूंगा, and you make sure you deliver that project by that time. And उसके साथ साथ तुम स्कोप बता दो कि भाई इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट का, इस पूरे प्रोजेक्ट का 4 लॉन्ग फॉर्म 16 शॉर्ट फॉर्म डिलीवरेबल्स एंड दैट इज सॉर्टेड, दैट इज द स्कोप ऑफ दिस प्रोजेक्ट. इसके ऊपर जो भी चीजें होंगी दैट विल बी चार्जेबल. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू सी फॉर द रेड फ्लैग्स. इफ द क्लाइंट इज सेइंग कि आई वोंट बी एबल टू पे इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बट विल यू बी एबल टू डू द वर्क, यू विल बी लाइक नो, जस्ट से नो टू दैट क्लाइंट. मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हें वो क्लाइंट मिल भी रहा है, फर्स्ट क्लाइंट है, से नो, जस्ट नो. 3 महीने बाद पेमेंट कोई नहीं देता है. अच्छा क्लाइंट होगा वो तुमको तुरंत पेमेंट देने के लिए भी रेडी होगा. 1 महीने बाद अगर उनकी पेमेंट साइकिल है जैसे हमारी है, तो वो 1 महीने बाद पेमेंट देने के लिए तुमको रेडी होंगे. वो कह देंगे सामने से अपफ्रंट कि भाई हम पेमेंट देंगे इस टाइम से इस टाइम तक. दे विल बी ओपन विद दैट. एंड देयर आर फ्यू क्वेश्चंस दैट आई हैव रिटन एंड दोस आर लाइक दिस. हाउ टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स. ओके ब्रो, अंडरस्टैंड दिस. कम्युनिकेशन स्किल्स जितना तुम बात करोगे उतना ज्यादा बेटर होगा. तो तुम क्या कर सकते हो, शीशे के सामने बात करो जाके. तुमको मैंने बहुत सारे टिप्स भी दिए थे, जो 2.5 years ऑफ फ्रीलांस नॉलेज इन 15 minutes वाला वीडियो था, और जो मैंने लिंक किया था इस वीडियो के अंदर, उसमें बहुत सारे कम्युनिकेशन स्किल्स के तुम्हारे टिप्स हैं जो कि तुम यूज कर सकते हो. एंड यू कैन मेक श्योर दैट योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर बेटर दैट वे. रीड बुक्स, लिसन टू पॉडकास्ट, टॉक टू न्यू पीपल, टॉक इन इंग्लिश इफ यू आर लुकिंग टू इंप्रूव योर इंग्लिश, मीट न्यू पीपल. ट्रैवल कर रहे हो, हॉस्टल्स में रुको, हॉस्टल्स में जाके बात करो लोगों से. ऐसे तुम्हारी झिझक जाएगी एंड यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट with the people around you in a better way. So that's what you can do. And how to deal with fake clients or detect fake क्लाइंट्स. पहली बात तो उनका बजट बहुत कम होगा, या वो ये कहेंगे कि भाई ये बार्टर कोलैबोरेशन है. बार्टर तब भी चलती है, बट अगर वो कहेंगे कि सारे प्रोजेक्ट्स के लिए बार्टर है तो दिक्कत है, कुछ लफड़ा है. या वो कहेंगे कि भाई अपफ्रंट पेमेंट मैं नहीं कर सकता, मेरा जो है 2-3 महीने बाद पेमेंट साइकिल होता है. वो कुछ जगह मैटर करता है, बट वो कंपनीज के लिए मैटर करता है. वो उनका भी मंथली पेमेंट साइकिल होता है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. वो ये कह रहे हैं. या तुम जब पैसों की बात करने चाह रहे हो तो दे आर हेजिटेटिंग, दे आर नॉट रेडी टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट दैट यू हैव सेंट, दे आर नॉट रिप्लाइंग ऑन टाइम, और मे बी ghosting you for a long time after they have signed up for the project. They are expecting a lot of deliverables from you with the minimal budget range. वो additional revisions डाले ही जा रहे हैं फालतू के, तुम्हारी सुन नहीं रहे हैं. What were the red flags? They are not communicating clearly. This is the exact thing that happened to me and I lost 1.5 lakh rupees because of that. So yeah, I mean these are some of the things that I have came up with in my head, जो मेरे साथ हुई हैं, जो कि red flags होते हैं clients के. And don't fall into these traps of the client
clients, and this can really hurt you. So this is how you can detect fake clients. This will be the last module. Okay, so now the module 4 is complete. This was just me lecturing you about a lot of stuff. That's it. Module 5 will be around that area, but it will be pretty short because I'll be talking about that module 5 with a lot of people that I'll be interviewing in this masterclass. So you'll be able to grasp the amount of knowledge that I want to give you through that podcast, through that interview. So yeah, see you in the module 5. So this is module 5, and in this module we'll be covering AI ka threat, personal branding, and long-term growth in this career. So firstly, let's talk about AI. AI will not replace you, if you know how to use AI, but it will definitely replace you if you treat it as enemy. Simple. Like, this is the basic equation. You have to use AI as a tool in your workflow to make the life easier for your client and yourself, जिससे तुम्हारा process का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, डिलीवरेबल्स जल्दी दे पाओगे क्लाइंट को, एंड द क्लाइंट्स विल बी हैप्पी एंड यू विल बी एबल टू टेक ऑन मोर क्लाइंट्स बिकॉज यू विल बी एबल टू डू फास्टर वर्क, और यू विल बी एबल टू डू मोर वॉल्यूम फॉर द सेम क्लाइंट एंड गेट more money for that same amount of deliverable. Got it? And this is basically the AI thing. Okay, I don't want to make it really complicated. It's simple. If you know how to use AI in your workflow, you'll be able to gain more clients, more money. If you treat it as an enemy, you will be vanishing out in the air. Okay, there's one more thing which I'd like to talk about in this AI thing, कि AI को एज अ पिरामिड समझो. यहाँ पे जितने भी बेस लेवल के एडिटर्स होंगे दे विल बी रिप्लेस्ड. इंटरमीडिएट लेवल के होंगे दोज हु नो अ लिटिल बिट ऑफ AI, दे विल स्टिल सर्वाइव. टॉप जो होंगे जो AI को बहुत अच्छे से जानते हैं टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस डिलेज, दे विल बी एबल टू चार्ज मोर एंड दे विल थ्राइव. सिंपल. ओके, सो दिस इज व्हाट यू विल हैव टू कीप इन माइंड. तुम अगर बेसिक एडिटर हो और तुम बस यहीं पे स्टक हो, तुम पैसा नहीं बना सकते इस मार्केट में. यहाँ पर हो तो तुम टॉप लेवल पे नहीं पहुंच सकते. स्टिल यू विल बी एबल टू मेक मनी एंड सर्वाइव, बट इवेंचुअली यू विल कम एट दैट बेसिक लेवल एंड यू विल बी लाइक रिप्लेस्ड. एंड देन आफ्टर दैट टॉप 1% people or 5% people will stay in the game because they will be adapting with the market scenarios and they'll be able to make more money through AI. But now let's talk about some juicy stuff on personal branding, because as you know, I closed my first ever US client through my personal brand, and this is a real story. And I was speaking Hindi in that particular video. तो मैंने कैसे क्लोज किया? Why personal brand is important? Personal, इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि मैंने एक क्रिएटर के साथ ये प्लान करके रखा हुआ है कि मैं बात करूँगा पर्सनल ब्रांड्स के बारे में, जिसमें तुमको और डीप इनसाइट्स कॉन्वर्जेशंस मिलेंगे. बट मैं बेसिक से बता देता हूँ पर्सनल ब्रांड क्यों इंपॉर्टेंट है. इट इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड योर अथॉरिटी, टू हैव अनफेयर एडवांटेज, टू स्टैंड आउट, जो कि भाई अनफेयर एडवांटेज में भी आ सकता है. स्टैंड आउट, इम्प्रूव योर soft skills and make more money, more dollars, because when you'll have a personal brand you'll be able to sell digital products, and if not you can make more money by showing your authority, getting sponsorships, a lot of those things. So unfair advantage तुम्हारा इसलिए है because as I told you in one of the examples कि मेरे पास audience है, distribution है, but एक other freelancer के पास distribution नहीं है. The chances of me getting the client increases because I have a distribution channel built. मेरी authority ज़्यादा होगी client के mind में because I am making content for myself, right? तो वो ज़्यादा समझेगा कि okay ये अपने लिए content बना रहा है तो ठीक है मेरे लिए भी बना लेगा, या educate कर रहा है लोगों को तो he is a good guy in this freelancing niche or website niche, whatever it is. So that is why personal branding is important, and it gives you access to the rooms that you cannot access otherwise, access to people that you cannot access otherwise. I'll give you one example. So इससे तुमको connection build होते हैं. मैं पहले लिख देता हूँ. Connection build होते हैं. मैं अभी ये record कर रहा था master class, and then it suddenly hit me यार इसमें मेरे को इतनी ज़्यादा value add करनी है कि इसके बाद किसी बंदे को कोई चीज़ देखने की जरूरत ना पड़े इंटरनेट पे. Freelancing से related, video editing से related, graphic designing से related, somewhat around those lines, majorly sales, marketing and basic stuff of freelancing. And it hit me कि यार मैं लोगों से बात कर सकता हूँ जो other fellow freelancers हैं. मेरे contact में ही इतने सारे freelancers and agency owners हैं. I just dropped a voice note to them and they said yes. They were like, okay, I'm down to it. If you
are a freelancer who hasn't done anything except for the work only, हाँ तुम्हारा proof of work होगा, but जितना जल्दी मुझे access मिला उतना जल्दी तुम्हें access नहीं मिल पाएगा उन लोगों का, because you're not connected to them. What do you offer to them? I, on the other way, I'm a content creator, have talked to them, and I am connected to them. I am pretty warm for them, and they are pretty warm for me. They know me, so it's very easy for me to convince them and say, आजा भाई पॉडकास्ट करते हैं, या ये फ्रीलांसिंग के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, एक सेगमेंट करते हैं. They are like, I'm down for it. Few meetings are scheduled, few people are still on hold क्योंकि रात के 12 बजे उनको मैसेज किया है मैंने. Of course कल परसों में रिप्लाई करेंगे. But the point that I'm trying to convey here is when you have a personal brand, it gives you the access to a lot of rooms. And ये देखो बहुत बहुत एडवांस चीज बता रहा हूँ मैं तुमको. The reason you see people building personal brands and not getting views is that they are not just doing it for the views. We as normal humans, or normal humans क्या है? Normal people who are not able to understand this industry just see the vanity metrics which is numbers, views, likes, comments, that's all. But I on the other hand know कि तुम्हारे वो views अगर founders और creators से आ रहे हैं, तुम्हारे वो views अगर तुम्हारे ideal prospect से आ रहे हैं, and तुम्हारे उस personal brand से तुम्हारे connections build हो रहे हैं because you are out there on the internet creating crazy content, dude, that is the best thing that you do. People don't do that just to make money from YouTube. They do that to create their authority and build connections on the internet. Similar is the case with podcasting. People don't do podcasts for just the sake of it. People do podcasts to build connections in the industry so that when they need something they can talk to them and they can immediately access their network and build something crazy. Like just imagine I have a network of VCs, venture capitalists, and I start a startup and I'm like, this is the thing that I'm building, I need to raise $1 million. मैं उस VC से बात कर सकता हूँ, and if he's not down for it, he can refer me someone in his network जो इस चीज में interested होगा. So this is the thing that you might not understand right now when you are a beginner, but when you start creating content, when you keep doing that and people notice you in the industry, you'll understand this. So ये बताते हुए मेरे को बहुत हैकर वाली या what do you say to that, एक डार्क, और डार्क भी नहीं, एक सीक्रेट बताने वाली फीलिंग आ रही है कि भाई ये तो मैंने लिटरल एक ऐसा जूसी स्टफ या सॉस बता दिया है या कोई एक सीक्रेट चीज बता दी है तुमको जिससे तुम्हारा लाइफ का पूरा पर्सपेक्टिव और कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है. सो या आई होप यू गॉट सम रियल अंडरस्टैंडिंग. जो समझ गया, जो नहीं समझा वो जब समझना चाहेगा समझ लेगा. खैर, यू बिल्ड अ लॉट ऑफ कनेक्शंस एंड दिस इन टर्न हेल्प्स यू नॉट इन योर करियर बट इन योर एंटायर life. And this is absolutely on top of my list when I'm building any personal brand, because this is extremely crucial. Like connections are the things that helps you gain access to a lot of things. That's it. I hope you got the understanding of why personal branding is important. Now that you're convinced that personal branding important hai, I am not giving you any sauce on how to build YouTube, how to build your Instagram, or how to build your LinkedIn account. But what I'll do is I'll talk to some of the people about this stuff, and if they'll be able to drop some sauce around this topic, they'll do it. If not, वो तो option ही नहीं है यार, दे देंगे कुछ ना कुछ सॉस तो हमें मिलेगा ही मिलेगा to grow on certain platforms. So now let's talk about long-term growth in this career, and long-term growth is pretty solid in this career क्योंकि यार मैं तुमको बस एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ इस कॉन्वर्जेशन से. कुछ स्टैटिस्टिक्स या थ्योरी या कुछ ऐसा कुछ नहीं है इस मॉड्यूल में, सॉरी इस क्वेश्चन में, बहुत छोटा सा मॉड्यूल है. तो बेसिकली लॉन्ग टर्म ग्रोथ में एवरीथिंग इज सॉर्टेड व्हेन यू वांट टू डू फ्रीलांसिंग. पीपल टेंड टू क्रिएट फेक सेंस ऑफ फोमो, और आई वुड से कि बहुत नेगेटिव चीजें हैं आउट देयर ऑन द इंटरनेट अबाउट फ्रीलांसिंग, बट दैट्स नॉट द केस. फ्रीलांसिंग इज अ सेफ करियर ऑप्शन. वीडियो एडिटिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, कोडिंग हो, everything can be done. Only thing is you need to keep iterating with the market, with the tools that are coming, and keep yourself updated. That's all. Videos are still going to be there. You can get assisted with a lot of tools. ठीक है. Graphic design also is going to be there. Marketing का segment रहने वाला है अगर मैं specifically वीडियो की बात करूँ. Coding का I don't know much about it. I'm pretty sure वो भी रहने वाली है, डरो मत. ठीक है. मैं उस इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानता हूँ. That's all I'm saying. तो मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में मैं जानता हूँ, and I know that is going to stay there for the years to come. People will want some videos to be edited. People will want कि उनके videos कोई shoot करे आके. So it's just you to get a piece of that pie, and for you to get that piece of the pie, you'll have to constantly update yourself with the new tools that are coming in the market, and at the same time level up your skills so that you match the level of the market and you're coming
at the top level where you are competing with the top freelancers or something of that sort. So that is basically the long-term game here. And long-term game mein, you can build an agency, you can build a media company, you can do all sorts of things. But उतना आगे का बस मैं विजन देना चाहता हूँ, मैं तुमको कोई रोड मैप नहीं देना चाहता हूँ अभी, क्योंकि दैट विल बी अ लॉट कंफ्यूजिंग. विजन बस ये है कि हाँ, एक $1 million पर ईयर की कंपनी तुम बना सकते हो इस फील्ड में रह के, एंड दैट इज जस्ट वेरी स्मॉल पीस ऑफ द पाई दैट विल टेक. एवरीवन कैन मेक $1 million थ्रू देयर एजेंसीज. ट्रिलियंस, आई लुक इट अप राइट नाउ for you how much the marketing segment is worth. I'll just pull it up, ChatGPT. Hey, how are you? Hey there, I'm doing great. Thanks for asking. Hope you're doing well too. Let me know what's up or how I can help today. So I want to understand what the marketing industry looks like. What is the valuation of the marketing industry, and how many people can make $1 million while being in that industry? Sure. So as of 2024, the global marketing industry is definitely on a strong growth path. For instance, the overall advertising market is valued around $676 billion and is expected to grow significantly over the next decade. The digital marketing segment is also booming and could potentially reach over $1 trillion by 2034. Now, as for how many people in the industry earn over $1 million annually, there's not really a single clear figure. Some niches, like network marketing, do have a small percentage of high earners, but overall, it's a bit hard to pin down exact numbers. Okay, so I would like to get some math done from you. If we account $676 billion as the valuation of the advertising market, I want to understand how many people can do $1 million annually in this industry. Absolutely. Let's break it down a bit. If we have a $676 billion industry and we imagine each person earning $1 million a year, then mathematically, if you just did a simple division, that's like saying the industry could theoretically support 676,000 people, each making $1 million a year, if everything were evenly distributed. Of course, in reality, earnings aren't evenly distributed at all. Only a small fraction of people in the marketing industry would reach that $1 million mark because income tends to be concentrated at the top. But that gives you a rough mathematical ceiling. In other words, if you imagined a perfectly fair world where a big chunk of the industry's value was paid out in those $1 million slices, that's the kind of number you'd be looking at. Appreciate it. Thank you. So now you know 676,000 people, 676,000 people can make $1 million per year each. That's a lot. That's a big number. That's not mathematically accurate, but if just to give you a perspective that this is possible, and I just showed you, okay, and it is expected to reach $1 trillion by 2034, I think 2034. So like almost 1 million people, I think, right? 1 million people can do $1 million each, which is not bad, honestly. Mathematically, it makes sense. So the growth is there. And if I just talk about, let's just talk about freelancing field, okay? Let's just talk about freelancing field and see what she says about that. Hey, so I want to understand what does the market for freelancers look like right now, and how much is it expected to grow in next 10 years, and what are the major changes that will be there when the market will grow, and how can freelancers adapt to that? Right now, the global freelance market is valued around $455 billion and is expected to keep growing steadily over the next decade, possibly even doubling in some segments. We're seeing a shift toward more flexible workforce models, a big demand for specialized digital skills, and a lot more AI integration into how freelancers and companies connect. So for freelancers, adapting means staying on top of these trends, honing in on high-value skills, and being ready for a more tech-driven freelance landscape. Gotcha. Understood. 455 something billion dollars. You can make $10,000 a month easily, right? Yes, you can. Mathematically, it's possible. Possible. You just have to figure out how to do that. That's it. You can even make $1 billion. Like you have $466 billion worth of industry. $1 billion बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं होगा, बट अगेन ये सब मैथमेटिक्स है, ये सब एक पर्सपेक्टिव देने के लिए चीज़ है. ऑफ कोर्स हर फ्रीलांसर $1 बिलियन नहीं बना सकता है, और कोई भी फ्रीलांसर $1 बिलियन नहीं बना सकता है. इट्स नॉट feasible. Like तुमको दिन रात एक कर देनी पड़ेंगे तब भी नहीं बना पाओगे, क्योंकि वो स्केलेबल नहीं है.
Anyways, long-term growth is there. This was the whole conversation that I want to talk about कि ग्राफ ऐसे ही जाने वाला है, steady growth होगी, so you don't have to worry about it being outdated career option. You can still choose it as a career option and it is growing. It will continue to grow because बहुत flexible work models आ रहे हैं, work from home हो रहा है, and you can work from almost anywhere as a freelancer. So that is a big win for you. And lastly, before hopping on to the podcast segment with some crazy boys that I've brought into this masterclass for you guys, I'll tell you one thing. You don't realize how much volume it takes to succeed at one thing. You just don't. When I was a beginner, I was like, okay यार 10 emails daily कर लूँगा, 5 emails daily कर लूँगा, 100 emails daily कर लूँगा, हो जाएगा. I'm still not at that level कि मैं 100 emails daily करूँ. I'll reach that level, but the amount of volume over the years that I've done is like phenomenal. And if you see the people that are out there crushing it on the internet, they are doing a lot and lots of volume to put out the content, to close clients, to build their authorities on the internet. So तुमको ये चीज करते रहना होगा, फेल करना होगा बार बार. Then you will be able to understand कि okay, this thing is not working now. इस चीज में ऐसे iterate करना है, इस चीज में ऐसे करना है. See, it took me 1.5 years to understand all the principles of cold outreach and I was doing it very inactively. Actively मैं करता तो शायद 6 महीने में सीख जाता. But that 1.5 years of failure was important to help me understand कि क्या मुझे नहीं करना है. And don'ts are always important than do's. क्योंकि अगर तुमको पता है कि क्या नहीं करना है, then it's very easy for you to figure out कि अब क्या करना है. ठीक है, तो प्लीज जस्ट फोकस ऑन द डोंट्स. एंड एक चीज जो तुमको नहीं करनी है, जो मैं बता रहा हूँ तुमको, वो ये कि इस चीज को फॉर ग्रांटेड लो और सोचो कि एक एक दो चीज करके हो जाएगा. हाँ ठीक है, स्टार्टिंग में तुम स्लो स्टार्ट कर सकते हो, बट धीरे धीरे उस चीज की वॉल्यूम बढ़ाओ, काम ज्यादा करो, वॉल्यूम दो, 12-12 घंटे काम करो बैठ के, बर्नआउट स्टेट में जाओ. इट इज नेसेसरी. वंस यू अंडरस्टैंड दैट कि बर्नआउट कैसा लगता है, देन यू विल कम आउट ऑफ दैट. यू विल अंडरस्टैंड कि ओके, अ गुड बैलेंस्ड लाइफ हाउ इट लुक्स लाइक. बट देन यू विल रियलाइज बैलेंस्ड लाइफ में मेरा काम नहीं हो रहा है. देन यू विल बी लाइक ओके, वर्क ज्यादा करना है, लाइफ को थोड़ा सा अभी के लिए साइड में रखना है. बहुत सारा केओस होगा, बट अंडरस्टैंड दिस कि इस केओस के बाद ही तुमको धीरे धीरे कंपाउंडिंग रिजल्ट्स मिलेंगे एंड यू विल बी लाइक डैम, इट वाज ऑल वर्थ इट. एंड ट्रस्ट मी, it's all worth it. So this was a good motivational lecture for you. I hope you got some real value out of this whole masterclass that I've done. I'm really proud of what I've done today, and I'll now link the podcast with all of the guys that I have brought onto my channel, not into my channel, and then you can just enjoy the podcast with the boys. See you. Hi Abhay, कैसे हो हाय भाई? मृदुल, बढ़िया बढ़िया. This is our first time collaborating on my channel. मैंने तुम्हारे चैनल पे आके एक पॉडकास्ट किया हुआ है. For my audience who doesn't know about you, maybe नहीं, most of the audience जो वीडियो एडिटिंग में हो तुमको जानती होगी. At this point of time तक तो जान ही गया है सब. जाननी चाहिए. तो जिनको नहीं पता है, give them a little introduction of yourself and what do you do and what is your primary objective कि हाँ अब मेरे को ये सारी चीज़ें करनी है, this is what I'm pursuing and this is what I used to do. ओके, तो जो लोग नहीं जानते, माय नेम इज़ अभय एंड आई रन अ यूट्यूब चैनल अभय PS राजवत, जो कि मोस्टली डायरेक्टेड है टुवर्ड्स वीडियो एडिटिंग एंड कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल्स ऑफ वीडियो एडिटिंग. तो द मेन पर्पस ऑफ द यूट्यूब चैनल itself and like making these videos on my channel was to provide audience with the content or with the knowledge that is not being provided on Indian YouTube, at least उस टाइम तक नहीं था. तो सब लोग ट्यूटोरियल्स बताते थे, सॉफ्टवेयर सिखा देते थे, बट जो एक्चुअल फंडामेंटल्स हैं कॉन्सेप्ट्स वीडियो एडिटिंग के, वो उतना ज़्यादा प्रिवेलेंट नहीं था हमारे इंडियन यूट्यूब पे. तो वो मेन पर्पस था, वही मैं लेके आया था. एंड अभी भी मेरी कोशिश वही रहती है कि वैसे ही कुछ आए. अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब आई यूज़ टू डू अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब, बट अभी नहीं कर रहा हूँ मैं. आई हैव लेफ्ट माई जॉब रिसेंटली एंड बस फ्रीलांसिंग एजेंसी बिल्ड कर रहे हैं धीरे धीरे. तो दैट इज़ ऑल आई एम डूइंग करेंटली. इसके अलावा तो ऐसा कुछ नहीं है लाइफ में. और भाई ये भी बता दो कि टाइम मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है. क्योंकि जब जॉब करता था भाई अभय, इसके साथ साथ अपना यूट्यूब चैनल भी मैनेज किया एंड फ्रीलांसिंग नहीं करी है ना तुमने उस पॉइंट ऑफ टाइम? नहीं, शुरू में मैंने ट्राई किया था, बट बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो रहा था वो, तो फिर मैंने आई क्विट सो फ्रीलांसिंग. यू जस्ट मैनेज, और हर वीक पोस्ट डाला है यूट्यूब पे, एंड देन आफ्टर दैट यू शिफ्टेड टू 3 वीडियोस अ मंथ. हाँ, 10 दिन में एक वीडियो. या एग्जैक्टली. बढ़िया भाई, क्रेजी. डिडंट नो अबाउट इट कि यार तुम इतने टाइम से कंसिस्टेंट हो. जब मैंने तुम्हारा वीडियो देखा था ना कि तुमने कहीं पे मेंशन किया था तुम अपने वीडियो में कि अब 10 दिन में मैं 10 दिन में एक वीडियो डालने वाला हूँ. हाँ.
सो तब मेरे को रियलाइज हुआ, अरे हाँ फक यार, मैंने चैनल पे देखा जाके ये तो यार कंसिस्टेंट है, जॉब के साथ या साथ आई सब गेस डाल रहा है यार। जनवरी तो नहीं बट मार्च 2024 से अभी तक 10 दिन से एंड वी ऊपर कैन सी द कंपाउंडिंग नहीं गए। इफेक्ट या दैट एग्जैक्टली इट हैज डन ऑन योर चैनल। या सो भाई बहुत क्रेजी। फटा कब था चैनल? आई थिंक जून के बाद जून, से ना। हाँ जून जुलाई वाज द बेस्ट मंथ्स। हाँ हाँ, जून आई सॉ, जुलाई आई एम लाइक भाई जून में तो मैं ट्रिप पे गया हूँ, अगस्त में आके देख रहा हूँ है ये क्या हो गया भाई बंदे का, फट गया एकदम से। सडन बहुत ऊपर गया था। बहुत बढ़िया था भाई। तो फिर मैंने कॉल भी करी थी तुमसे एंड हाँ आई वाज लाइक यार कुछ सीक्रेट्स और तो। एनीवेज यार, तो for the audience, I want to talk about few things. I know you might also agree with this. You can have a different perspective on this as well. कि यार बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में आके, आई एम श्योर तुम्हारे कमेंट सेक्शन में भी ऐसा होता होगा, लोग कहते होंगे कि यार मुझे वीडियो एडिटिंग रोड मैप दे दो, एग्जैक्ट जर्नी स्टेप बाय स्टेप बता दो कि मैं कैसे ज़ीरो से लेकर 100 तक पहुंच जाऊं, या एटलीस्ट पैसा बना लूँ, $1 अपना अर्न करूँ वीडियो एडिटिंग से। एंड वी ऑल नो कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो हम लोग डायल इन कर लेंगे, विल बी एबल टू डू दैट। इट्स जस्ट दैट कि वो कुछ चीज़ें रिपीट करनी होती हैं। बट स्टिल इवन इफ वी रिमूव ऑल ऑफ दैट पार्ट कि वही चीज़ें रिपीट करनी है, एंड यू हैव टू टॉक अबाउट इट फ्रॉम अ रियली फ्रेश पर्सपेक्टिव, और उस बंदे को बताना है जिसको कुछ भी नहीं पता है कि कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे अपना $1 अर्न कर सकते हैं। What will be the roadmap for that guy? ओके देखो, जो चीज़ मैं सबको ही बोलता हूँ दैट इज़ कि अगर आप शुरू कर रहे हो तो डोंट थिंक कि आप पहले महीने से, पहले दिन से या पहले हफ्ते से पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे। वो नहीं होता है। अगर कोशिश भी करोगे तो यू विल फील मिजरेबली एंड फिर आप गलती दोगे फील्ड की कि वीडियो अच्छी फील्ड नहीं है या फ्रीलांसिंग अच्छी फील्ड नहीं है। तो इट्स बेटर कि पहले अपनी स्किल्स को उतना ग्रो कर ले, एंड उसमें एटलीस्ट 3 से 4 महीने व्हाट आई सजेस्ट इज कि देने चाहिए टू लर्न जस्ट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ वीडियो एडिटिंग एंड बेसिक्स क्या होते हैं, काम कैसे करती है वीडियो एडिटिंग। आफ्टर दैट एटलीस्ट गिव 2 मंथ्स फॉर प्रैक्टिसिंग, कि बस आप प्रैक्टिस कर रहे हो जो भी आपने सीखा है, मे बी विद पॉडकास्ट क्लिप्स, मे बी रॉ फाइल्स मैं भी देता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, बहुत लोग देते हैं, तो उन रॉ फाइल्स पर प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड आफ्टर 6 मंथ्स जब आप दे चुके होगे वीडियो एडिटिंग को, उसके बाद मे बी यू कैन स्टार्ट गोइंग फॉर क्लाइंट्स। एंड क्लाइंट्स का तो अभी इस टाइम पे व्हाट आई सजेस्ट टू एवरीवन इज़ टू यूज़ लिंक्डइन एंड ट्विटर, और थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम पे रीच आउट करो जिसको करना है। एंड काफ़ी लोगों का शुरू में क्या रहता है ना कि पहले दिन से उन्हें क्लाइंट से उतना पैसा चाहिए व्हाट दे आर, मे बी दे हैव सीन ऑन यूट्यूब दूसरे लोगों को चार्ज करते हुए, मे बी किसी ने उन्हें बोला है ऐसा कुछ, तो वो उनको वही चार्ज करना होता है कि हाँ मैं एक वीडियो का इतना लूँगा, यही मार्केट रेट है। वो चीज़ अवॉइड करना। शुरुआत में आपको कितना भी लगता हो आप कितने भी अच्छे हो, बट यू विल मेक मिस्टेक्स, एंड उस चीज़ के लिए आपको प्राइसिंग कम करनी पड़ेगी इनिशियली। तो थोड़ा कम प्राइस पे इनिशियली काम करो, 2-3 घंटे के साथ काम करो, पोर्टफोलियो बिल्ड करो, एंड देन यू कैन मे बी स्टार्ट मेकिंग इट इनटू अ रियल बिजनेस और रियल करियर। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ, स्टार्टिंग कर रहे हो तो यू हैव टू फर्स्टली फोकस ऑन द स्किल्स, एंड देन इवेंचुअली आफ्टर 6th month जब तुमने घिस लिया है थोड़ा अपने आप को, एंड यू हैव गॉट द होल्ड ऑफ द सॉफ्टवेयर, देन यू कैन थिंक ऑफ गेटिंग द क्लाइंट्स। और वो भी ऐसे नहीं कि तुम डायरेक्टली $2000 के क्लाइंट यूज़ कर लोगे, थोड़ा कम से, ऐसे स्टेप बाय स्टेप तुम प्रोसेस अपना स्टार्ट कर सकते हो। ये मतलब ऐसा होता है ना कि जब हम बात करते हैं बेसिक्स की, तो आप ट्यूटोरियल आपने 2-3 फॉलो कर लिए और आपको ऐसा लगता है कि आ गया मेरे को सॉफ्टवेयर या फिर मेरे को एडिटिंग आ गई है। एंड जब क्लाइंट की वीडियो आती है जो बिल्कुल ही डिफरेंट है, जो आपने कभी देखी नहीं है, आपके पास कोई आइडिया नहीं है कि उसे कैसे एडिट करना है या उसमें क्या क्या चीज़ें करनी है, वहाँ पर स्टक हो जाते हो, डेडलाइंस मिस होती हैं, मे बी क्लाइंट को सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं मिलता, एंड आपकी रेपुटेशन भी जाती है, देन पैसे भी नहीं मिलते, मोटिवेशन भी जाता है, तो वो इवेंचुअली ज़्यादा ख़राब चीज़ है। तो दैट्स वाई सजेस्ट कि आप अगर अपने आप की स्किल उतनी बिल्ड कर लो कि आप एक डिफाइन टाइम के अंदर वीडियो डिलीवर कर सकते हो, और आप कहीं अटकोगे नहीं वो वीडियो बनाते टाइम, मे बी ठीक है कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करोगे, बट कहीं अटकोगे नहीं एटलीस्ट बेसिक एडिटिंग में, तब सोचो क्लाइंट जाने की, क्लाइंट लेने की, उससे पहले तो आई सजेस्ट अवॉइड। So like how do they determine, how do video editors or the beginners can determine कि यार मेरे को अभी 7 दिन लगते हैं, अब मैं 6 दिन में कर सकता हूँ या 5 दिन में कर सकता हूँ ये काम, तो कैसे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं? खुद के लिए डेडलाइन सेट करना इज़ द बेस्ट वे टू गो। कि मान लो आपने कोई रील उठाई है एंड आप खुद के लिए डेडलाइन सेट कर रहे हो कि मैं 4 घंटे बैठ के इस रील को ख़त्म करूँगा,
एंड आर यू एबल टू डू दैट? 4 घंटे तो चलो मैंने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टाइम कर दिया, बट लेट से आप अगर 12 घंटे लेते हो कि 12 घंटे के अंदर मुझे ये रील खत्म करनी है, क्या आप कर पा रहे हो? क्या आप अपने लिए अगर 10 घंटे कर रहे हो उसको तो आप कर पा रहे हो, मतलब आप स्ट्रेच कर पा रहे हो, आप वो फास्ट कर पा रहे हो प्रोसेस को? क्योंकि जब हम विदाउट डेडलाइन काम करते हैं तो कितना भी टाइम ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ कैलकुलेशन नहीं रहता। एंड जब एक्चुअल क्लाइंट का काम आता है तो क्लाइंट के पास हमेशा डेडलाइन होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, तो फिर करेक्ट। आप उस डेडलाइन पे नहीं डिलीवर कर पाते, एंड ये इशू बहुत लोगों को देखा है मैंने फेस करते हुए। तो दैट्स वाई अब मैं सजेस्ट करने लगा हूँ लोगों को कि भाई खुद जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब भी एक डेडलाइन रखो, एंड देखो कि आप अपने आप को पुश कर पा रहे हो उस डेडलाइन को बीट करने के लिए या नहीं। दैट इज़ लाइक मोर अबाउट पुशिंग योर सेल्फ देन वो डिसिप्लिन बिल्ड करना और या लाइक टाइमली काम कैसे होता है, प्रेशर के अंदर काम कैसे कर सकते हो, ऑप्टिमाइज करना अपनी प्रोसेस को कि कैसे आप कर फास्टेस्ट वे में कर सकते हो। तो लाइक इस चीज़ को ऑप्टिमाइज करने के लिए, इस चीज़ को जैसे मैं 12 घंटे में काम कर पा रहा हूँ, ठीक है, एक वीडियो एडिट कर पाया मैं, रील लेट्स से 12 घंटे में एडिट कर पाया, देन व्हाट आर द थिंग्स दैट आई कैन डू टू रिड्यूस द टाइम कि अब इवेंचुअली मेरे को 4 से 5 घंटे ही लगे एक रील एडिट करने में? देखो सबसे पहली प्रोसेस तो सबसे पहली प्लेस जहाँ अटकते हैं लोग वो है कि क्या एडिट करना है उस चीज़ में। तो उसके लिए तो एक ही सॉरी उसके लिए तो एक ही सजेशन रहता है कि कंज्यूम कंटेंट एज मच एज यू कैन। आप ऑब्जर्व करो, इंस्पिरेशन लो अलग अलग जगह से, कीप योर माइंड फुल ऑफ आइडियाज़ कि क्या क्या हो सकता है एडिटिंग में, क्या क्या पॉसिबल है। किसी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन पे आप किस तरीके से उसको डिस्प्ले कर सकते हो, किस तरीके से वहाँ पे ग्राफिक्स लगा सकते हो या फिर एनिमेशन लगा सकते हो। उस चीज़ का डेटा एटलीस्ट आपके पास पहले होना चाहिए, और उसके लिए आपको कंज्यूम करना पड़ेगा बेसिकली, नो अदर वे। देन सेकेंड होता है कि काफ़ी सारे लोग ज़ीरो से क्रिएट करते हैं अपने इफ़ेक्ट्स को, एनिमेशंस को हमेशा। तो प्रीसेट्स इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट बेसिक थिंग जिससे आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। एंड देन आई गेस इट्स मोर अबाउट जो मैं अब फॉलो करता हूँ और काफ़ी लोगों को बताया भी मैंने, एंड इट हेल्प्स कि आप वीडियो को जब एक बार देख रहे हो इन द फर्स्ट वॉच ओनली, राइट डाउन कि आपको क्या क्या लग रहा है कि एडिट होना चाहिए कहाँ कहाँ पर। तो जब आप वो चीज़ें लिख लेते हो तो इट्स लाइक अगर 5 मिनट की वीडियो है एंड आपने 10-12 मिनट में, चलो आपने रील बोला, जैसे रील अगर 1 मिनट की है तो आप 5 मिनट के अंदर उस रील के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ पे क्या चीज़ एडिट होनी चाहिए। तो करेक्ट, अगर आपको एडिट से पहले ही पता है कि आपको कहाँ पर क्या एडिट करना है तो इट्स वेरी ईजी टू गो विद द एडिट कि आपने बस सॉफ्टवेयर खोला है, अब आप सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहे हो, आप वहाँ पे दिमाग नहीं लगा रहे हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। दैट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये कुछ 3-4 चीज़ें हैं, एंड मेन तो प्रैक्टिस ही है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फास्ट होता जाएगा। And additionally from my end there's also one point which you can use which is keyboard shortcuts. उस पर हाथ बिठा लो अपना बहुत अच्छे से, तो वो बहुत स्पीड अप करता है प्रोसेस को, और अपने अकॉर्डिंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स लगा लो इफ़ यू हैव दोस। So now a person or a beginner knows how he can speed up his process, and ideally 4-5 घंटे में करने लगा है काम। एक चीज़ में वो स्ट्रगल करते हैं विच इज़ कि यार पोर्टफोलियो बनाना है, पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। वी नो एक दिन का काम है, अपन कुछ स्पेक एडिट्स लेंगे जो हम लोगों ने एडिट किए हैं वही डाल दें, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर लाइक यार ये काम मैं क्लाइंट को दिखाऊंगा तो क्लाइंट ये तो नहीं कहेगा कि यार ये मैंने किसी और का एडिट किया है, तुम्हारा वर्क कहाँ है, मतलब तुमने किस क्लाइंट के लिए काम किया है। तो हाउ दे कैन नेविगेट, फर्स्टली पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं, एंड सेकेंडली वो चीज़ को नेविगेट कैसे करें अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है। ओके तो देखो पोर्टफोलियो के लिए व्हाट आई सजेस्ट इज़ कि मेरा जो प्रोसेस रहता है, इफ़ आई लाइक आई हैव हेल्प फ्यू एडिटर्स ऑल्सो, तो व्हाट वी ट्राई इज़ कि क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं कि आपका पूरा पोर्टफोलियो देखे, तो उसमें 10-15 वीडियोस डालना डजंट मेक सेंस। आप एक वीडियो डालो बट दैट शुड बी बेस्ट। अब डाउट क्या आता है एडिटर्स को यहाँ पे कि यार एक वीडियो हम डाल रहे हैं बट भैया अगर वो रिक्वायरमेंट से अलग हुआ क्लाइंट के, लाइक क्लाइंट को किसी और स्टाइल की एडिटिंग रिक्वायर्ड है, हमने जो डाल दी वो किसी और स्टाइल में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट आई हैव सीन इज़ कि अगर आपकी एडिटिंग अच्छी होती है, भले ही दैट इज़ डिफरेंट स्टाइल, बट अगर एडिटिंग अच्छी है तो क्लाइंट आपका पोर्टफोलियो और देखेगा। अगर आपकी वीडियो पहली ही ख़राब है तो चाहे आपने एग्जैक्टली उसकी स्टाइल की वीडियो कर रखी हो, कुछ भी कर रखा हो, वो दिखेगा भी नहीं, ये जस्ट स्किप टू द नेक्स्ट पोर्टफोलियो, क्योंकि हज़ारों पोर्टफोलियोज आते हैं व्हेन समवन इज एट दैट स्टेज। तो पहली वीडियो आपकी बहुत बेस्ट होनी चाहिए, और अब आप वेबसाइट बना रहे हो तो आपके पास ऑप्शन है उसको पहले प्लेस करने का। अगर आप गूगल ड्राइव में डाल रहे हो तो नंबरिंग से आप ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो कि आपकी पहली आए बेस्ट वीडियो।
आफ्टर दैट यू कैन ट्राई पुटिंग 2-3 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ वीडियोस जो आप कर रहे हो. एंड जो चीज़ तो मैं पहले दिन से सजेस्ट करते आ रहा हूँ अपने चैनल की, अगर आप किसी को इंडिविजुअली रीच आउट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसको किस स्टाइल की वीडियोस चाहिए और उसको उसी स्टाइल की वीडियोस भेजो. इट शुडेंट बी कि आपको पता है कि उसको क्या चाहिए एंड आप फिर भी अलग ही भेज रहे हो इन होप्स की कि वो कर लेगा एक्सेप्ट. तो ऐसा नहीं होता. अगर आप मास रीच आउट कर रहे हो तो द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज़ कि आप बेस्ट वीडियो पहले रखो एंड देन 2-3 डिफरेंट स्टाइल्स की वीडियोस डाल दो. तो उससे चांसेस बढ़ जाते हैं. आई वोंट से कि 100% होते हैं, वो तो कभी नहीं होता, बट चांसेस बढ़ जाते हैं एटलीस्ट कि क्लाइंट विल मे बी रीच आउट टू यू कि हाँ काम हो सकता है कि नहीं हो सकता. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा था कि लाइक व्हाट इफ क्लाइंट आस्क्स कि आपने खुद किया है कि नहीं किया, राइट? ऐसे कुछ. हाँ करेक्ट. बस उस क्वेश्चन पे आने से पहले मेरे को ये बताना कि वेबसाइट की अभी बात हुई थी, पोर्टफोलियो वेबसाइट पे होस्ट कर सकते हैं. ड्राइव आई थिंक ये आउटडेटेड है. ठीक है, अब बहुत कम लोग ऐसे एफर्ट डाल के ड्राइव लिंक खोलेंगे, फिर फोल्डर खोलेंगे, फिर वीडियो देखेंगे, या अगर वीडियो होगा भी तो प्रोसेसिंग होती है उसमें, थोड़ा इंटुइटिव नहीं है, क्लिक्स ज़्यादा लगते हैं क्लाइंट के लिए भी. वेबसाइट होती है, स्क्रॉल करोगे, ऑटोमेटिक प्ले है तो ऑटोमेटिक चलने लगेगी, नहीं तो क्लिक करोगे, एक क्लिक में तुम्हारा हो जाएगा काम. सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि यार अगर वीडियो एडिटर कोई भी बंदा हो, तुम वेबसाइट बनाओ अपनी, और बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बट उनमें से फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव व्हाट आर सम ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स दैट वीडियो एडिटर्स कैन लुक फॉरवर्ड टू एंड उस पर अपना पोर्टफोलियो होस्ट कर सकते हैं, सम फ्री एंड सम पेड. ज़्यादातर मैंने लोगों को कैनवा पे करते हुए देखा है एंड आई बिलीव कैनवा डिसेंट इनफ कर भी देता है. एडोब सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास है तो उसका खुद का एक पोर्टफोलियो, एडोब पोर्टफोलियो करके है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो. उतना ज़्यादा अच्छा पोर्टफोलियो नहीं बनता उसमें डिज़ाइन वाइज, बट बेसिक काम हो जाता है. इट्स लाइक स्टिल बेटर देन ड्राइव. एंड उसके अलावा ओडू एक प्लेटफॉर्म है जो फ्री प्रोवाइड करता है आपको. वहाँ पे आप काफ़ी अच्छी वेबसाइट बना सकते हो. एंड फ्री में इसके अलावा आई डोंट थिंक आई नो एनी अदर प्लेटफॉर्म. है 2-3 और है, मुझे भी नाम याद नहीं है, बट अगर पेड आप जा सकते हो तो फ्रेमर इज़ वन ऑफ द बेस्ट अभी के टाइम पे. एंड होस्टिंगर भी है विच इज़ ईजियर, थोड़ा बेसिक बट सिमिलर टू अ प्रोफेशनल वेबसाइट. तो ये कुछ ऑप्शंस हैं अकॉर्डिंग टू मी. सो इफ़ दिस क्वेश्चंस कम्स अप कि तुमने एडिट किया है या नहीं, तो वैसे मैंने एक क्वेश्चन कभी फेस किया नहीं है, तो आई डोंट नो एग्जैक्टली सिनेरियो में क्या करना है, बट व्हाट आई सजेस्ट इज़ कि बेटर टू हैव अ टेस्टिमोनियल तुम्हारे प्रीवियस क्लाइंट से जिसके लिए तुमने एडिट करी है. और अगर तुमने सही में नहीं एडिट करी और किसी और की यूज़ कर रहे हो, तो जस्ट गिव अ सैम्पल वीडियो टू देम कि अगर आपको लग रहा है कि मेरी एडिट नहीं है, वी कैन गिव अ सैम्पल वीडियो, मैं एडिट करके आपकी लाइव दिखा देता हूँ एंड यू कैन चेक कि मेरी स्किल्स कैसी हैं, मेरा काम कैसा है. तो वो एक तरीका है. एंड खुद अगर आपने करी है तो आप टेस्टिमोनियल ले सकते हो, या फिर प्रोजेक्ट फाइल्स अगर आप पे हैं प्रोजेक्ट फाइल शो कर सकते हो. बिफोर आफ्टर की वीडियोज़ रखा करो इफ़ पॉसिबल, टू शो टू द क्लाइंट्स की पहली वीडियो कैसी थी और आपने क्या उस पर काम किया है. तो ये 2-3 चीज़ें हैं विच यू कैन डू. Perfect. And I think if the client is saying कि ये एडिट तुम्हारा है या नहीं है, लाइक बिगिनर्स के लिए ये चीज़ प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. वो सैम्पल दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, बट इफ़ यू आर एन इंटरमीडिएट गाय, तो अगर तुमने उनको पोर्टफोलियो दिया है तो उनको तुम ईमेल के थ्रू ही ये बता सकते हो कि यार मैं तुमको पोर्टफोलियो दिया हूँ, उसमें एक एडिट नहीं मल्टीपल एडिट्स हैं. और ऐसा नहीं होगा मैंने मल्टीपल एडिट्स कॉपी करके रखी हुई हैं. एंड अगर तुम एक इंटरमीडिएट लेवल के बंदे हो जिसको करे हुए हैं यार 10-15 वीडियोज़ एडिट, तो तुमको उसको 15 लिंक दे दो कि भाई देखो ये सारे लिंक हैं, ये मैंने करा हुआ एडिट, तो तुमको री एडिट नहीं करना पड़ेगा, सैम्पल वीडियो नहीं देना पड़ेगा, अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी प्रूफ ऑफ वर्क है तो दिस कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शन. मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता नहीं है, बट जस्ट इन केस अगर क्लाइंट ने कह दिया है, मेरे साथ हुआ था व्हेन आई वाज क्लोजिंग अ क्लाइंट फॉर द एजेंसी, तो मैंने सिंपली कह दिया भाई आप मेरी वेबसाइट चेक कर लो, वी आर नॉट स्कैमर्स. यूजुअली उनके दिमाग में ये नहीं होता है कि तुमने एडिट किया है या नहीं किया है, उनके दिमाग में बस ये होता है कि यार तुम स्कैम तो नहीं कर रहे हो उन्हें, या तुम उनको उनका काम दे पाओगे जो भी तुम प्रॉमिस कर रहे हो. अगेन जैसा अभय ने कहा, टेस्टिमोनियल दिखा दो, या तुम उनको 15-20 लिंक भेज दो, या सैम्पल वीडियो से एडिट कर दो. ये कर सकते हो. ओके, सो देखो वीडियो एडिटिंग में एक चीज़ है डाविंची रिजॉल्व वर्सेस प्रीमियर प्रो. ठीक है. एंड मैंने भी वीडियो बनाया, बहुत सारे क्रिएटर्स ने वीडियो बना के रखा हुआ है. यहाँ पर तुम इट्स कंसिडर इट एज अ रैपिड फायर, और रैपिड फायर में तुम एक रीज़न डाविंची रिजॉल्व के लिए, एक रीज़न प्रीमियर प्रो के लिए
जस्टिफाई करके दो किन को डाविंची यूज़ करना चाहिए और किन लोगों को प्रीमियर यूज़ करना चाहिए। प्रीमियर विद प्रीमियर आई मीन प्रीमियर प्लस आफ्टर इफेक्ट्स यूजुअली। ठीक है, तो देखो, एक लाइन में तो मैं नहीं दूंगा, आई टेक मोर लाइन्स, बट मैंने डाविंची ऑनेस्टली नहीं यूज़ किया ज़्यादा, बहुत कम यूज़ किया, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि आई कैन कमेंट ऑन दैट ऑनेस्टली। बट एक मेरे साथ थोड़ा सा बायसनेस भी है भाई प्रीमियर को लेके, क्योंकि मैं उसी से शुरू किया था, बहुत टाइम से वो यूज़ कर रहा हूँ। सेकेंडली, आई बिलीव अभी भी इंडस्ट्री में कुछ क्लाइंट्स हैं जिन्हें नहीं पता है डाविंची के बारे में उतना, क्योंकि प्रीमियर एंड आफ्टर इफेक्ट्स आर लाइक रियली फेमस, सबको पता है। कोई भी अगर वीडियो एडिटिंग इंडस्ट्री में दिनों की नहीं भी है, वीडियो एडिटिंग इंडस्ट्री में इवन पीपल, उनको भी पता है कि प्रीमियर प्रो आफ्टर इफेक्ट्स एग्जिस्ट करता है। तो वो एक चीज़ है। कम्युनिटी एक रीज़न हुआ करता था प्रीमियर के लिए पहले, बट अब दाविंची भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है एंड बहुत लोग वीडियोस डालते हैं, तो दाविंची की कम्युनिटी अच्छी खासी बन रही है। बट इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट, आपको प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करना है, आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, दाविंची ऑफ कोर्स इज़ द ओनली ऑप्शन लेफ्ट कि प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर दाविंची रिजॉल्व आपको फ्री में मिल जाता है। if you can invest, if you are more into graphic designing also, illustrations also and video editing, then go for head of creative cloud। तो वो आपको पूरा एक साथ में बंडल मिलता है बहुत सारे सॉफ्टवेयर का जो साथ में बहुत अच्छे से काम करते हैं। then choose Premiere Pro and After Effects, that's it। मुझे लगता नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस है दोनों सॉफ्टवेयर में, जो आप यहाँ कर सकते हो आप वहाँ भी कर सकते हो, दोनों में सेम चीज़ें पुल ऑफ हो जाती हैं। हाँ, लाइक फ्यूजन में बस ये है थोड़ा सा नॉन इंटुइटिव होता है न्यू लोगों के लिए, क्योंकि नोड बेस्ड है वो। बट उसके बाद जब नोड बेस्ड वर्कफ्लो इंसान को समझ में आ जाता है तो वो बहुत ईजी लगने लगता है लेयर बेस से, क्योंकि उसमें कम नोड्स में ज़्यादा काम हो जाएगा तुम्हारा कंपेयर टू लेयर्स पे। सो दैट मतलब लर्निंग कर्व है थोड़ा सा स्टीप है फ्यूजन का, दैट्स व्हाई पीपल डोंट प्रेफर इट। बट ईदर वे, जैसा अभय ने कहा कि मैं भी कंक्लूड कर देता हूँ इसको कि चूज़ व्हाटएवर सॉफ्टवेयर यू वांट टू। स्टार्टिंग जैसे हम लोगों ने करी थी पॉडकास्ट की कि फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते हैं, अगर तुम्हारे फंडामेंटल्स क्लियर हैं कोई भी सॉफ्टवेयर चूज़ करो, यू विल गेट क्लाइंट्स, यू विल बी एबल टू अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी थ्रू वीडियो एडिटिंग। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अर्निंग, ये बताओ कि वीडियो एडिटिंग से कितना पैसा कमाया जा सकता है? अब देखो मैंने बहुत लोगों से बात करी है, उसमें से एक मृदुल भाई भी हैं, तो कमाया तो बहुत जा सकता है। तो मतलब आई बिलीव अगर आप एक इंडिविजुअल एडिटर हो और आप अगर एजेंसी की तरफ नहीं जा रहे हो, अकेले काम कर रहे हो, तो 2 lakhs आई गेस इज़ द कैप। उससे ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा ही घिसोगे, पूरा पूरा दिन 15-15 घंटे काम करोगे तो शायद आप उससे ऊपर चले जाओ। बट एक अगर नॉर्मल वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करके आप इंडिविजुअली काम कर रहे हो तो 1.5 to 2 lakhs इज़ द कैप। एजेंसी में अगर आप जा रहे हो तो फिर तो नहीं है, फिर तो कोई लिमिट नहीं है। मतलब द मोर यू कैन स्केल, द मोर बिगर टीम यू कैन बिल्ड, द मोर यू कैन ग्रो। तो है पैसा। बस एक चीज़ आई विल ऑल्सो ऐड ऑन दिस इज़, डोंट थिंक जब मैं 1.5-2 लाख बोल रहा हूँ तो इट इज़ लाइक कि ये तो कर ही लोगे, वैसा अमाउंट नहीं है। करेक्ट, 1.5-2 लाख नहीं कर पाएगा ऑफ कोर्स। 1.5-2 लाख करने में बहुत टाइम लगता है एंड बहुत स्किल्स लगती हैं, बहुत एक्सपीरियंस लगता है। मैं इस फील्ड में आई गेस 5-6 साल से हूँ, अगर मैं बिल्कुल एकदम इनिशियली से काउंट करूँ। मृदुल भी आई गेस आपको 5-6 साल तो ही गए होंगे सेम वीडियो एडिटिंग करते करते। तो इतने एक्सपीरियंस के बाद जब हम लोग आते हैं तब वी आर पुटिंग आउट दीज नंबर्स। तो अगर आप पहले दिन आ रहे हो, 1-2 महीने 6 महीने आपने कोशिश कर लिए, तो आई गेस उस टाइम पे 30-40 हज़ार एक बहुत अच्छा अमाउंट होता है अगर आप अर्न कर पा रहे हो तो। एंड एक्जैक्टली, एंड स्पेशली इफ़ यू आर इन योर टीन एज, मैंने ये उसमें भी कवर किया था अपने मास्टर क्लास में, जब मैंने सोलो अपना वो किया हुआ है, सिखाया है। तो लाइक अगर तुम एक टीनेजर हो या इवन 20-21 की एज में हो, जस्ट आउट ऑफ कॉलेज आए हो एंड तुमको फ्रीलांसिंग से 30-40 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, वीडियो एडिटिंग से मिल रहे हैं, तो एक्सेप्ट दैट कि वो पैसा तुम ले लो। ये मत कहो कि यार अरे वो बंदा $1000 कमा रहा है या $1200 कमा रहा है। फिर क्या होता है कि वी विल ट्राई टू कंपेयर, बट जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर तुम जीरो से डायरेक्ट 40,000-30,000 पे जंप करो, दैट इज़ अ 30,000x जंप भाई। ठीक है, तो मैंने भी जब शुरू किया था तो आई गेस पहले महीने में आई अर्नड 5 या 6 हज़ार रुपये थ्रू फ्रीलांसिंग। तो वैसे शुरुआत होती है सबकी भाई। एग्जैक्टली यार, तो ये चीज़ हम इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं कि यार वी वांट टू गिव यू द पर्सपेक्टिव, इट्स नॉट क्विक मनी, it is a stable money, it is a stable job career option that is going to stay. It's just that you have to learn it like any other skill. जैसे तुम कॉलेज की डिग्री कर रहे हो, जैसे तुम प्रॉबेबली कहीं और जाके वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, कहीं मैक स्टूडियोज और ये बहुत सारे वो हैं, मत सीखना एनिमेशन
मैं I'll कहता not नहीं say हूँ वैसे anything. सीखने को। सेम, आई विल ऑल्सो नॉट सजेस्ट, तभी मैंने भी नहीं किया है, खुद सीखा है। यूट्यूब से सीख लो, बट द ओनली थिंग इज व्हेन यू नो द स्किल यू विल बी एबल टू अर्न इट over the period of 3 to 4 years. And then after that, Abhay ने बताया कैप है, but I have seen it personally. Cap depends highly on how you're projecting yourself to the client. Single-handedly, I have close clients for $4,500 के, $4,000 के. So I know that अगर तुम एक ही client close कर रहे हो, $4,000 is good ना, ठीक है. एंड अगर तुम US क्लाइंट्स के साथ एज एक जॉब करते हो लेट्स से, तो वहाँ का स्टैंडर्ड पे है कि तुमको $3,000, $3,500, या इवन इफ तुम $2,500 की जॉब ले रहे हो, तब भी यू आर वेल सेटल्ड इन इंडिया. तो जो अपर लिमिट है, अपर सीलिंग है, आई वुड से कि 10 grand तक तुम इंडिविजुअल नहीं, उसमें 2 लोग ऐड हो जाएंगे. ये चीज़ है कि तुम्हें वाइट लेबलिंग करनी पड़ेगी, बट आई वुड से 4-5 लाख तुम इंडिविजुअली एज अ फ्रीलांसर कमा सकते हो, बिकॉज आई नो पीपल हु आर डूइंग दैट एंड दे आर डूइंग इट सोलो. सो दैट इज़ पॉसिबल. इट्स जस्ट दैट अगेन जो फंडामेंटल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें करनी होगी, वो एक क्लाइंट से भी हो सकता है. तो उसके लिए बस स्किल्स चाहिए, तुम्हें कम्युनिकेट करना आना चाहिए, पोजीशनिंग, अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, जो कि मैंने तुमको वीडियो लिंक करके इस मास्टर क्लास में पूरा समझाया हुआ है. अब ये मेरे को नहीं पता है 6 घंटे की मास्टर क्लास है, 7 या 10, बट जितने भी घंटे की मास्टर क्लास है, अगर तुमने देखी है, यहाँ तक आए हो लास्ट वाले पॉडकास्ट सेक्शन पे, तो यू नो कि ये सारी चीज़ें कवर करी हैं हम लोगों ने. इट्स जस्ट दैट हम उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं फिर से कि तुम समझो इस चीज़ को. सो आई होप आई गिव देम अ गुड लेक्चर कि भाई समझो इस बात को, समझ नहीं रहे हो तुम लोग. तो यार अब देखो, अब हम लोगों ने ये चीज़ तो कंक्लूड कर दिया कि यार इट्स नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम, ठीक है, ये एक स्टेबल करियर ऑप्शन है. यू आर इन दिस नीश, वीडियो एडिटिंग के अराउंड कंटेंट भी बना रहे हो, यू आर सीइंग अ लॉट ऑफ ट्रेंड्स इन द इंडस्ट्री एज वेल. व्हाट डू यू थिंक the future of video editing industry is, and the people who say that the market is saturated, what are your thoughts on that? ठीक है, पहले सैचुरेटेड वाली बात करते हैं. तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ जब मैं ये बात बोलूँगा कि जितने भी क्रिएटर से मैं मिला हूँ या मैंने बात करी है, कभी भी किसी भी एजेंसी ओनर से बात करी है, सबको एडिटर चाहिए. ठीक है, सब ढूंढ रहे हैं कि कोई अच्छा एडिटर मिल नहीं रहा है. मैं खुद बहुत टाइम से एडिटर ढूंढ रहा हूँ, एंड अब फाइनली जाके मुझे इंस्टाग्राम के लिए एक डिसेंट एडिटर मिला है. मैं उसको भी बहुत अच्छा नहीं बोलूँ, बट एक डिसेंट एडिटर मिल गया जिसे मैं ट्रेन कर सकता हूँ. एटलीस्ट लाइक ही हैज़ दैट पोटेंशियल कि मैं उसे सिखा सकता हूँ. तो ये एक चीज़ है भाई कि सैचुरेटेड तो नहीं है मार्केट. अगर आपको लगता है सैचुरेटेड है, दैट्स बिकॉज आप बहुत ज़्यादा मे बी ट्यूटोरियल्स को कंज्यूम करते हो जो वैसा सिखाते हैं कि अली अब्दाल इफेक्ट बना लो भाई 5 मिनट में मोबाइल में. तो वो सब कंटेंट अगर आप कंज्यूम करते हो तो मे बी आपको लगता हो, बट ऐसा नहीं है. जब रियल वर्ल्ड काम की बात आती है, जब एथिक्स की बात आती है, जब टाइमली डिलीवरी की बात आती है, तो बहुत बहुत कमी है भाई वीडियो एडिटर्स की मार्केट में. अगर आप अच्छे टाइम पे डिलीवर कर सकते हो, सही टाइम पे डिलीवर कर सकते हो, अच्छी क्वालिटी में वीडियो डिलीवर कर सकते हो, आप न्यू क्लाइंट ढूंढ सकते हो. एंड हाँ, देन इफ वी कम टू द फ्यूचर, तो AI इज़ समथिंग दैट आई वुड से कि यू हैव टू वरी अबाउट, क्योंकि हो रहा है. मतलब AI इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ एडवांसमेंट्स, और कहीं ना कहीं अभी नहीं तो 1-2 साल में बेसिक वीडियो एडिटिंग विल बी रिप्लेस्ड बाय AI. अगर आपको सिर्फ कट्स आते हैं, अगर आपको सिर्फ थोड़े बहुत ट्रांजिशन, थोड़े बहुत टेक्स्ट इफेक्ट्स लगाना आता है, तो यू आर गोइंग टू बी गेट रिप्लेस्ड. अगर आपको स्टोरी टेलिंग आती है, अगर आपको इमोशनल ड्रिवन वीडियोस बनाना आता है, अगर आपको म्यूज़िक की बहुत अच्छे से समझ है, तो ऑफ कोर्स यू विल नॉट बी रिप्लेस्ड, बिकॉज दैट इज़ समथिंग आई विल नेवर बी एबल टू डू. और तो वही है, अगर आप कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल्स को ज़्यादा समझ रहे हो इंस्टेड ऑफ टूल्स, इंस्टेड ऑफ इफेक्ट्स, तो आप बचे रहोगे. अगर आप सिर्फ टूल सीख रहे हो, अगर आप सिर्फ इफेक्ट सीख रहे हो, तो डूब जाओगे. दैट इज़ समथिंग आई कैन लर्न इन लाइक 1 day. तो दैट इज़ द फ्यूचर. एंड इसी चीज़ के बारे में मैंने ऋषि से भी बात करी थी, एंड ही वाज आल्सो लाइक कि टेस्ट एक एडिटर के अंदर अगर होता है, दैट इज़ व्हाट ही लुक्स फॉरवर्ड टू. बाकी सारी स्किल्स जो है, टेक्निकल स्किल्स, वो सिखाई जा सकती हैं. हाँ, एग्जैक्टली. टेस्ट नहीं सिखाया जा सकता है कि यार टेस्टफुल कैसे बनाए वीडियो, इमोशन कैसे ऐड करें. दैट इज़ लाइक द बिगेस्ट थिंग. अगर मैंने भी पिछले कुछ टाइम में
अभी एजेंसी टाइम साइड में एंटर ही कर रहा हूँ, दिस इज़ लाइक वेरी न्यू प्लेस फॉर मी। तो जब मैं भी किसी एडिटर को हायर करता हूँ, हायर नहीं करता, मतलब बेसिकली मेरी प्रोसेस है कि पहले मैं थोड़ा टाइम काम करूँगा उसके साथ, इफ़ आई फील कि मैं अच्छी बन रही है बॉन्डिंग तो आई गो अहेड। तो मैक्सिमम एडिटर से दिक्कत यही होती है कि उन्हें पता ही नहीं है कि क्यों डालना है टेक्स्ट, कहाँ डालना है टेक्स्ट, कहीं पे म्यूज़िक डालना है नहीं डालना है, कुछ भी रैंडम म्यूज़िक डाल दिया। तो ऐसी चीज़ है कि अगर तुमको मे बी, अब जैसे मेरा एडिटर अभी है, ही डिडंट न्यू कि मैनुअल कैप्शंस नहीं करने होते, ऑटोमेटिक भी हो जाते हैं, बट एटलीस्ट ही वॉज डूइंग कैप्शंस और उसका कलर सही थे, फॉन्ट सही था, सब कुछ सही था। तो ऑटोमेटिक कैप्शंस मैंने उसे सिखा दिए, 1 घंटा भी नहीं लगा, आधा घंटा भी नहीं लगा, 10-15 मिनट में उसको पता चल गया कि कैसे करना है, ठीक है, प्रोसेस बिकम वेरी फास्ट। तो ये सब चीज़ तो आप सिखा सकते हो ना इंस्टेंटली, लाइक क्योंकि हमें आता है, मैंने सिखाया है, मुझे खुद आता है, तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कहीं भी तुम अटक रहे हो, मैं तुम्हें 1 घंटे में सिखा सकता हूँ वो चीज़। बट अगर वही सेम, अगर टेस्ट नहीं है, अगर तुम्हें कलर्स ही कुछ लाल पीले पसंद आ रहे हैं तो लाइक दैट एलेक्स उसका कुछ कर नहीं का जो सकते। हाँ, प्रीवियस वाला स्टाइल था वो कर रहे हो तुम अभी। वो मतलब वैसा हो जाता है ना कि उसको चेंज करने में बहुत टाइम लगेगा, एंड किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको इतना कुछ सिखाने बैठे। तो वो चीज़ तो आप और वो खुद हम लोगों को रिफाइन करनी पड़ेगी एज एडिटर्स। वही। या सो बिफोर मूविंग टू पर्सनल ब्रांडिंग वाला सेक्शन, एक लास्ट क्वेश्चन है कि 0 से 1 लाख तक का, नॉट स्टेप बाय स्टेप तो बहुत लंबा हो जाएगा, एक ओवरव्यू में रोड मैप या एक ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है? पहली बात तो उसमें टेक्निकल स्किल्स इंक्लूड होनी चाहिए, एंड सेकेंडली उसमें फंडामेंटल स्किल्स की जो हम लोग बात कर रहे हैं वो भी इंक्लूड होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बात किया कि फंडामेंटल्स अच्छे हों, तुम्हारे ये हों वो हों, बताया भी हम लोगों ने, स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, तुम्हारा कलर चॉइस अच्छा होना चाहिए, डिज़ाइन सेंस अच्छा होना चाहिए, बट एग्जैक्टली एक वर्ड देकर कि ये इस स्टेप पे सीखना है तुम्हें, एंड देन इवेंचुअली जो तुम्हें 1 लाख का क्लाइंट चाहिए या 1 लाख रुपीज़ अर्न करने हैं वो तुम कर पाओगे। ओके, वो स्टेजेस क्या क्या हो सकते हैं वो सब देखो, एक्सप्लेन। आई विल स्टार्ट विद, अगर अब तुम वीडियो एडिटिंग शुरू कर रहे हो तो 4-5 महीने में बेसिक्स तो तुम्हें आ जाएंगे, लाइक यू नो कि वीडियो कट कैसे करनी है, थोड़ा बहुत म्यूजिक लगा लिया, थोड़ा बहुत टेक्स्ट ट्रांजिशंस लगा दिए, तो दैट इज़ द प्लेस जहाँ पे आप शायद 15-20-30 हज़ार रुपये तक कमा सकते हो मंथली। ठीक है, इससे ऊपर जाना विल बी डिफ़िकल्ट, इट इज़ पॉसिबल, वो मैं बताऊँगा कैसे, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट उससे ऊपर जाना। जब तुम्हारे पास उतना एक्सपीरियंस आ जाता है, थोड़ा बहुत तुम्हारा पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाता है, देन यू स्टार्ट लर्निंग अबाउट स्टोरी टेलिंग। और स्टोरी टेलिंग एक ऐसी चीज़ है जो मतलब इट कैन नॉट बी टॉट, वो आपको ऑब्जर्व करके सीखनी पड़ेगी। आप मूवीज़ देखो, आप दूसरे लोगों की एडिटिंग देखो, यू स्टार्ट डूइंग इंटेंशनल एडिटिंग एट दैट पॉइंट कि तुम कोई साउंड इफेक्ट लगा रहे हो तो सिर्फ इसलिए नहीं लगा रहे हो क्योंकि तुमने किसी को देखा लगाते हुए तुम इसलिए लगा रहे हो बिकॉज देयर इज़ अ रीज़न, कुछ भी रीज़न हो बट रीज़न होना चाहिए कुछ काम करने का। कोई कलर चूज़ कर रहे हो तो वाई यू आर चूजिंग दैट स्पेसिफिक कलर, कोई कहीं पे टेक्स्ट डाल रहे हो तो क्यों डाल रहे हो, तो वो एक इंटेंशनल अगर चीज़ें आ जाती हैं आपकी एडिटिंग में तो उस स्टेज पे आप थोड़ा सा और एडवांस एडिटिंग की तरफ बढ़ते हो। देन मे बी मोशन ग्राफिक्स इज समथिंग जो गोइंग अहेड आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट एडवांस्ड एडिटिंग तो मोशन ग्राफिक्स ही एक ऐसी चीज़ आती है जो विजिबल एडिटिंग होती है। मतलब अगर आप स्मूथ कर रहे हो, फ्लो बना रहे हो वीडियो का, अगर आप म्यूज़िक अच्छा चूज़ कर ले रहे हो तो ये सब फील देने वाली चीज़ें, बट जब एक्चुअल में आपको दिखाना हो कि आपकी एडिटिंग अच्छी है तो मोशन ग्राफिक्स ही दिखा सकते हो आप। तो वो एक पॉइंट आ जाता है जहाँ आप विजिबल एडिटिंग कर पाते हो, एंड मे बी उस पॉइंट पे जाके आप 60-70 के तक मंथली अर्न कर सकते हो। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 60-70 के, तो मैं अभी एक ही क्लाइंट को लेके चल रहा हूँ कि एक ही क्लाइंट से आप इतना अर्न कर सकते हो, नॉट अ लॉट ऑफ क्लाइंट। और अगर मैं क्वांटिटी की बात करूँ तो मे बी 4 to 5 लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ और कुछ शॉर्ट्स भी ऑफकोर्स विल बी इंक्लूडेड। वेन एवर यू गो टुवर्ड्स पिचिंग अ क्लाइंट तो ऑलवेज पिच अ पैकेज कि आप 4-5 लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ करोगे और इतनी शॉर्ट फॉर्म वीडियोज़ करोगे। डोंट गो विथ कि मैं एक वीडियो का इतना पैसा लूँगा, बिकॉज दैट यूजुअली मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि वो उतना अच्छा प्ले आउट नहीं होता एट द एंड। इट्स बेटर इफ़ यू गो फॉर अ पैकेज। तो ये सब चीज़ें जो आप सीख जाते हो ना, तो उसके बाद द ओनली थिंग दैट इज़ लेफ्ट इज़ मेरे हिसाब से इज़ रिकमेंडेशंस टू क्लाइंट्स, कि आप अगर बता पा रहे हो एक पॉइंट पे जाके कि मे बी वाई और इंट्रो इज़ नॉट गुड, मे व्हाट कैन यू चेंज इन योर स्क्रिप्ट्स। इन वन वर्ड अगर मैं बोलना चाहूँ इस चीज़ को, तो कंटेंट क्रिएशन आपको खुद भी सीखना पड़ेगा इन शॉर्ट, कि इट्स नॉट जस्ट कि फॉर एडिटर यू हैव टू बी लिमिटेड टू एडिटिंग। नहीं, अगर आपको एक ही क्लाइंट से
यू वांट टू रीच मोर देन 1 लाख, तो कंटेंट क्रिएशन का एटलीस्ट आपको थोड़ी और समझ होनी चाहिए, बिकॉज एज अ एडिटर आपका काम है कि वीडियो पर टेंशन आए, एज ए एडिटर आपका काम है कि वीडियो इंगेजिंग रहे, लोगों को मज़ा आए, लोगों को जो फील क्रिएटर देना चाहता है वो फील मिले वीडियो से। तो उसके लिए आपको कंटेंट क्रिएशन समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको पेसिंग समझनी पड़ेगी, वीडियो में कैसे हम मेंटेन करते हैं। म्यूज़िक इज़ समथिंग विच आई कैन नॉट एक शब्द में बताना बहुत मुश्किल है म्यूज़िक के बारे में, बट म्यूज़िक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है इन वीडियो एडिटिंग, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन वीडियो एडिटिंग, मुझे ऐसा लगता है। आफ्टर पेसिंग म्यूज़िक ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पेसिंग और म्यूज़िक एक बार सेट हो जाता है तो कुछ भी एडिट मत करो वीडियो में, वीडियो स्टिल लुक्स गुड। तो म्यूज़िक कहाँ कौन सा जाना चाहिए, ये चीज़ आप एक्सपीरियंस से ही सीखोगे, प्रैक्टिस से ही सीखोगे। कोई वीडियो देख के नहीं समझ में आएगा, कोई एक कोर्स देख के नहीं समझ में आएगा। और जितना कंज्यूम करोगे कंटेंट, हाँ, और जितना क्रिएटिव मूवीज़ देखोगे या मूवीज़ जितना देखो, आप वेब सीरीज़ देखो, उसमें कैसे यूज़ होता है। रियलिटी शोज़ में बहुत अच्छे म्यूज़िक यूज़ होते हैं, रियलिटी शोज़ देख सकते हो टू फाइंड आउट कि इमोशन के हिसाब से कैसे म्यूज़िक चूज़ करना है। तो वो जब आप एक बार सीख जाते हो ना कि आप इमोशन पुल ऑफ कर पा रहे हो वीडियो से, आप इम्पैक्ट दे पा रहे हो वीडियो से, दैट विल बी द पॉइंट आई गेस व्हेन you can reach 1 lakh. And additionally you start to use AI moving forward. हाँ, अब अब तो AI भी बहुत आ गया, मैं भूल जाता हूँ AI को बहुत बार हमारे टाइम पे था नहीं भाई, मेरी आदत ही नहीं है यूज़ करने की। बट अगर आप अब स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट लर्निंग AI एज वेल भाई, क्योंकि बहुत टाइम बचाता है। अगर ऑटोकट टूल्स की बात करें, नॉर्मल पॉडकास्ट एडिटिंग की बात करें, इन सब में AI टूल्स आर रियली गुड, तो उसको भी यूज़ करो, यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। और उसके बाद जब आपके पास मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वंस यू क्रॉस 80-85 के विथ फ्रीलांसिंग, आपको उतनी चीज़ें आ जाती हैं कि फिर शायद आपका टाइम ही आपको रोकेगा कि आप पे टाइम नहीं बच रहा है, बाकी तो कुछ ऐसा दिक्कत आएगी नहीं आपको आगे बढ़ने में। यू समराइज इट वेरी वेल ब्रो। हर स्टेज पे क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। आई एम जस्ट थिंकिंग कि कुछ अगर बचा हो तो मैं बताऊं, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड। ओनली थिंग दैट आई वुड प्रॉबेबली ऐड इज़ कि अगर तुम फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो लर्न अबाउट सेल्स, साइकोलॉजी एंड मार्केटिंग टू, बिकॉज वो भी नेसेसरी हो जाएगा। अब तुम अगर सेल्स और मार्केटिंग में अच्छे नहीं हो तो यू प्रॉबेबली वोंट बी एबल टू टेल द क्लाइंट वेरी क्लियरली कि क्या वैल्यू तुम प्रोवाइड कर रहे हो, क्या दे रहे हो, वीडियो एडिटिंग इतना क्यों ले रहे हो पैसा। तो हाँ, करेक्ट। बट ऐसा नहीं है कि 1 लाख चार्ज नहीं करते, 2 लाख 3 लाख आराम से चार्ज कर सकते, आराम से नहीं चार्ज कर सकते हो तुम। इट्स जस्ट दैट कि तुमको अपने आप को पोजीशन करना होता है, अथॉरिटी बिल्ड करनी होती है। एंड I mean that was pretty much it for this video editing section that we had. We'll move on to personal branding, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली हम लोग वीडियो एडिटर्स के बारे में बात करेंगे। इट विल बी वेरी शॉर्ट एंड कंसाइज। एंड आई वांट टू आस्क कि स्टार्टिंग में वीडियो एडिटर्स जब जब अपना स्किल सीख रहे होते हैं, पोर्टफोलियो बिल्ड करने के टाइम पे अपना जा रहे होते हैं, तो दे ऑल्सो टेंड टू मूव टूवर्ड्स कि इंस्टाग्राम पे हम लोग पोस्ट कर दे कंटेंट और उसको एज अ पोर्टफोलियो ट्रीट कर ले हम लोग। नाउ आई थिंक दिस इज अ गुड अप्रोच, बट टेल मी व्हाट मोर दे कैन डू टू मेक श्योर कि वो कंटेंट से इनबाउंड लीड्स ले, एंड apart from just inbound leads, what are the benefits of content creation? Okay, तो देखो, अगर तुम पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो तो बहुत सारे एडिटर्स ये करते हैं कि बिल्डिंग पोर्टफोलियो वो लोग एडिट्स अपने अपलोड करते हैं, बट दोज एडिट्स आर लाइक एनीमे की कोई एडिट डाल दी या फिर कोई रैंडम एडिटिंग डाल दी। तो वो सब अगर आप बिल्ड कर रहे हो तो उससे पर्सनल ब्रांड बिल्ड नहीं होगा। अगर आप क्लाइंट की वीडियो का बिफोर आफ्टर डाल दे रहे हो उससे पर्सनल ब्रांड बिल्ड नहीं होगा। इफ़ यू वांट टू बिल्ड पर्सनल ब्रांड तो आप वीडियोस अपने काम के अराउंड बनाओ कि मे बी मेरा ये क्लाइंट था, मुझे एक दिन में वीडियो डिलीवर करनी थी एंड दिस इज़ हाउ आई डिड इट। तो इस टाइप की वीडियोस अगर आप बनाते हो तो दैट विल रीच टू मोर क्लाइंट्स, पॉसिबल क्लाइंट्स, पोटेंशियल क्लाइंट्स, एंड उससे आपको इनबाउंड लीड्स ज़्यादा आएंगी। दैट इज़ वन थिंग। तो जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इन शॉर्ट अगर मैं कंसाइज करूँ, कि आपको रैंडम नहीं जाना है कंटेंट को लेके व्हेन यू आर ट्राइंग टू बिल्ड योर प्लेटफॉर्म और योर पर्सनल ब्रांड। कुछ भी मत डालो रैंडमली, स्टे फोकस्ड कि आप क्या एम कर रहे हो। आपको अगर क्लाइंट्स चाहिए अपने पर्सनल ब्रांड से, अगर वो एक रीज़न है तो मेक वीडियोज़ अकॉर्डिंग टू दैट ओनली, कि आप क्या सर्विसेज देते हो उसके बारे में आप बता रहे हो अपनी वीडियोज़ में, आप किस तरीके से प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हो, आप वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हो। तो आई वुड से मृदुल इज़ अ गुड एग्जाम्पल कि किस तरीके से ये चीज़ करनी चाहिए।
लाइक इफ़ यू ट्राई टू शो कि आप कैसे काम करते हो एंड आपकी कंपनी में कैसे काम कर होता है, या मे बी आपका वे क्या है काम करने का, दैट ब्रिंग्स यू मोर क्लाइंट्स. अगर आप एंटरटेनमेंट कंटेंट बना रहे हो एडिटर होके, दैट विल नॉट ब्रिंग क्लाइंट्स. तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि व्हाट स्पेसिफिकली यू आर एमिंग. अगर आप ग्रोथ एम कर रहे हो तो ब्रॉड जाओ कंटेंट को लेके, एंटरटेनमेंट में जाओ, कुछ रैंडम डाल सकते हो. अगर आप बहुत स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हो कि आपको क्लाइंट्स ही चाहिए अपने कंटेंट से, पर्सनल ब्रांड से, देन यू हैव टू मेक दैट टारगेटेड कंटेंट एज वेल. एंड इनबाउंड के अलावा और क्या क्या अच्छा होता है वो तो मतलब देयर इज़ लाइक एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट आर गुड इफ़ यू क्रिएट कंटेंट. पहले तो ऑफकोर्स आपकी सेल्स, कम्युनिकेशन, ये सब तो इम्प्रूव हो गई अगर आप इसे कंटेंट बनाते हो. तो स्पॉन्सरशिप्स इज़ अ रियली गुड सोर्स ऑफ मनी. अगर आप उतना अच्छा पर्सनल ब्रांड अपना बिल्ड कर लेते हो, यू कैन मेक प्रोडक्ट्स. अगर आप की उतनी खुद की स्किल सेट है कि आप सिखा सकते हो लोगों को, आप प्रोडक्ट्स बना सकते हो. सिखा भी नहीं सकते हो, अगर आपको अच्छी एडिटिंग आती है तो प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिक कि आप प्रीसेट्स डाल दे रहे हो, आप लेट्स बना दे रहे हो, ये सब चीज़ें सेल कर रहे हो. तो ये कुछ और सोर्सेज हैं ऑफ इनकम. एफिलेट एक अच्छा सोर्स हो जाता है. प्रोडक्ट से ध्यान आया, हाउ वाज द बूट कैंप ब्रो? बढ़िया भाई, मज़ा आया मेरे को तो बहुत. मेरे को हर बार मज़ा आता है जब भी करता हूँ तो. क्रेजी भाई. एंड ऑल्सो क्या बोलने वाला था, नेक्स्ट इज़ कि एफिलेट हो गया. एंड आफ्टर दैट अगर आप टीम अपनी बिल्ड करते हो, एट वन पॉइंट आप डिसाइड करते हो कि हाँ मेरे पास इनफ क्लाइंट्स हैं, नाउ आई वांट टू बिल्ड टीम. अगर आपका एक पर्सनल ब्रांड सेटअप है तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है वो टीम बिल्ड करना, कंपेयर टू अगर आपका कोई पर्सनल ब्रांड नहीं है मार्केट में. अगर आप रैंडमली ऐसे जॉब लिस्टिंग्स डाल रहे हो तो पहले तो आप कैसे ही लोगों को रीच आउट करोगे, आप कैसे ही ऑडियंस ढूंढोगे कि किसको चाहिए काम, कौन करना चाहता है वो स्पेसिफिक काम. सेकेंडली, अगर आपका खुद का पर्सनल ब्रांड होता है तो पीपल आर मोर इंटरेस्टेड टू वर्क फॉर यू, क्योंकि उन्होंने आपको देखा है, वो आपसे कनेक्टेड फील करते हैं. तो उनका रहता है कि ठीक है मेरे को करना है इनके साथ काम, चाहे कम पैसों में पर करना है. तो वो ये कुछ बेनिफिट्स हैं हाँ इफ़ यू आर बिल्डिंग पर्सनल ब्रांड. और इनबाउंड तो है ही भाई सबसे बढ़िया बेनिफिट, तो पहले डिस्कस कर लिया हमने. And if they want to go on that route to build a personal brand, what is the best platform to choose? Written platforms are X or LinkedIn. फिर visual platforms are like YouTube and Instagram. What should they choose for the start? देखो सबसे ईजीएस्ट इंस्टाग्राम है, तो स्टार्टिंग तो इंस्टाग्राम से करनी चाहिए. बिकॉज अगर आपने कभी कंटेंट क्रिएट नहीं किया है तो बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, बट इंस्टाग्राम इज लाइक यूट्यूब पे ज़्यादा होगी. यूट्यूब तो बहुत लाइक आई वुड सजेस्ट सबसे लास्ट में करो स्टार्ट. बट यूट्यूब इज़ द बेस्ट मेरे अकॉर्डिंग, बट इट्स द हार्डेस्ट. सेम. तो इंस्टाग्राम से स्टार्ट करो, क्योंकि आप चलाते हो नॉर्मली तो आपको आदत भी होती है, बहुत ईजी, बहुत ही एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म है, वहाँ से स्टार्ट करो. देन यू कैन मे बी गो फॉर लिंक्डइन. अगर आपको क्लाइंट्स का फोकस ज़्यादा है तो लिंक्डइन और ट्विटर पे आप जा सकते हो. एंड एट द एंड अगर आपको ऑडियंस चाहिए, अगर आपको कम्युनिटी बिल्ड करनी है, अगर आपको प्रोडक्ट्स बनाने हैं इन फ्यूचर, दैन यूट्यूब यू शुड चूज़. तो ये 3 वेज हैं. इफ़ यू want easier path, go for Instagram. If you want client specific, go for LinkedIn or Twitter. If you want audience specific, go for YouTube. And again, last question for this section. Yeah. And that is कि भाई पर्सनल ब्रांड से अब हम पैसा कितना कमा सकते हैं. देखो ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स तुमने बताया, ठीक है, और यूट्यूब से ही होगा जो एडसेंस का रेवेन्यू मिलेगा. बट इंस्टाग्राम पे हम लोगों को ऐसा रेवेन्यू नहीं मिलता है. इट्स जस्ट ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स, है ना. So if we are creating content on both of the video platforms, yeah, either of the video platforms, so how much money a person can expect? Let's say उसके 100,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं यूट्यूब पे और probably 50K इंस्टाग्राम पे हो गए या ज़्यादा. ओके, इंस्टाग्राम का मुझे भी ज़्यादा फाइनेंशियल आइडिया नहीं है, बट जितना मैंने लोगों से बात करी है, आई गेस इट्स लेस देन यूट्यूब. नंबर ऑफ, अगर आपके सेम नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, तो यूट्यूब पे आप ज़्यादा अर्न कर पाते हो. आई टॉक अबाउट यूट्यूब बिकॉज मुझे वही पता है. करेक्ट. तो 100K सब्सक्राइबर्स अगर आपके यूट्यूब पे हो जाते हैं, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट अगर एड रेवेन्यू, तो वो बहुत गंदा है यूट्यूब इंडिया पे. बट अगर आप डिसेंट एवरेज व्यूज़ पुल ऑफ कर रहे हो तो 30 to 40,000 इज़ वॉट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यूट्यूब एडसेंस अकेला. देन ऑफकोर्स मल्टीपल वेज होते हैं पर्सनल ब्रांड पे पैसा कमाने के. आपको बहुत ऑफर्स आते हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा दो, हमारे प्लेटफॉर्म पे टीच कर दो, या फिर हमारे लिए स्पेसिफिकली कोई प्रोडक्ट बना दो. सेल वो लोग करेंगे, मार्केटिंग वो लोग करेंगे. दिस इज़ वन सोर्स ऑल्सो.
देन एफिलिएट सोर्स है, देन ब्रांड स्पॉन्सरशिप है जैसे हमने बात करी. तो एग्जैक्ट नंबर तो कोई है नहीं, एवरेज रेंज क्योंकि एनीथिंग? एवरेज रेंज में दूंगा, बट उससे पहले इसलिए स्पेसिफिक नंबर नहीं है बिकॉज 100 के सब्सक्राइबर्स इज़ नॉट द करेक्ट मेट्रिक मेरे अकॉर्डिंग. इट्स मोर अबाउट एवरेज व्यूज़ जो आप पुल ऑफ कर रहे हो पर वीडियो. उस पर आपको उसी पे स्पॉन्सरशिप आती है, उसी पे रीच आती है, उसी पे सब कुछ आता है. तो लेट्स से एक एवरेज 100 के का चैनल है तो इट विल बी गेटिंग अराउंड 25 to 40 50 के व्यूज़ पर वीडियो. तो एक एवरेज रेंज मेरे हिसाब से 1 से 2 लाख रुपए है जो आप अर्न कर सकते हो थ्रू जस्ट योर यूट्यूब चैनल. इंस्टाग्राम पे यही नंबर सेम 100 के फॉलोअर्स पे आई गेस अराउंड 50 60 के होगा मेरे हिसाब से होना चाहिए. आई एम नॉट श्योर, मत लेना मेरी बात को सीरियसली, बट करेक्ट. यूट्यूब पे आई नो कि यूट्यूब पे आप 1 से 2 लाख कमा सकते हो इफ़ यू हैव 100 के सब्सक्राइबर्स. एंड इंस्टाग्राम का किसी को पता हो तो उससे पूछ लेना. हाँ, आई थिंक ऋषि को पता था, ऋषि से मैं पूछना भूल गया था. बट ही डज इंस्टाग्राम अ लॉट, और वो अभी आई थिंक 2000 फॉलोअर्स से ही वेंट टू 40K समथिंग इन जस्ट काफ़ी फ्यू मंथ्स. 1.5 मंथ लगातार डाली है. सो या लाइक यूट्यूब हैज़ द पोटेंशियल, ओनली थिंग इज उसमें टाइम लगता है. एंड यूट्यूब का एक बड़ा बेनिफिट ये है, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है तो वहाँ पे अथॉरिटी जल्दी बिल्ड हो जाती है कंपेयर टू इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम पे अब जब इजी प्लेटफॉर्म है तो बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं वहाँ पे जो कि रैंडम कुछ भी कंटेंट डाल रहे हैं. और यूट्यूब पे तुम एक ऑडियंस के साथ, एक कस्टमर के साथ और एक पोटेंशियल क्लाइंट के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो. वही इंस्टाग्राम पे उसको देखने पड़ेंगे लेट्स से 8 से 10 रील्स, वो 8 मिनट, अगर मैं काउंट कर रहा हूँ कि 45 सेकंड के रील्स हैं, पूरी रील देख रहा है, ठीक है. पूरा रील देख रहा है तो वो उतना टाइम स्पेंड कर रहा है. एंड यूट्यूब पे ही वहीं एक वीडियो देखेगा तुम्हारा एंड इट्स मोर ऑफ लाइक कि 8 से 10 मिनट उसने गुजार लिए हैं. एंड वो तुम्हारे इकोसिस्टम में तुम्हारे पे ट्रस्ट ज़्यादा कर पाएगा जब वो यूट्यूब पे होगा. सो आई से कि हाँ स्टार्ट इंस्टाग्राम से करो, बट इफ़ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर लॉन्ग टर्म फ्यूचर एज in any career, doesn't matter if you're a video editor, graphic designer, or even in sales marketing, कुछ भी हो, एक बार ट्राई करो. नहीं चल रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है भाई, ट्राई करने में क्या जा रहा है. So yeah, I mean that was pretty much it. If you have anything else to add जो कि वीडियो एडिटर्स को या फ्रीलांसर्स को हेल्प कर सकती है, you can think about it and add it to the last note of this podcast. मतलब मोस्टली हमने कवर कर ही लिया है, बट अगर मेरे को मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने हो तो दैट विल बी लाइक, ये एक ऐसी, मैं इसलिए दोबारा बोल रहा हूँ, मुझे पता है रिपीट होगी ये सेम चीज़, बट ये चीज़ बहुत बार बोल चुका हूँ मैं अपने चैनल पे, मृदुल बहुत बार बोल चुका है अपने चैनल पे, ऑलमोस्ट सब लोग बोलते हैं, बट स्टिल पीपल डोंट फॉलो इज कि टेक वीडियो एडिटिंग एज अ रियल करियर, टेक वीडियो एडिटिंग एज अ रियल जॉब. आप अगर इंजीनियरिंग करते हो तो आप 4 साल डिग्री लेते हो, उसकी 4 साल स्पेंड करते हो, पैसा खर्च करते हो उस पर सीखने के लिए, एंड देन यू गेट मे बी 50-60K की जॉब पर मंथ. तो वीडियो एडिटिंग से कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप 2-3 महीने 4 महीने लगा के आप 1 लाख रुपए कमा लोगे, 2 लाख रुपए कमा लोगे? ऐसा होता तो फिर मतलब एग्जिस्ट नहीं करते, और कोई करियर एग्जिस्ट नहीं करते ना, सिर्फ वीडियो एडिटर्स ही होते दुनिया में. तो वैसा नहीं होता है, इट इज़ ऑल्सो रियल जॉब. आपको 102 साल 3 साल देने पड़ेंगे यहाँ पे भी उस स्किल लेवल पे पहुँचने के लिए, और फिर जाके आप एक कॉम्पिटिटिव इनकम यहाँ पे भी जनरेट कर सकते हो. तो वही है, दैट इज़ ऑल आई हैड टू से. क्रेजी ब्रो, आई मीन आई लव द पॉडकास्ट, मेरे को मज़ा आया भाई. बहुत सारे जो जिस स्ट्रक्चर के साथ तुमने एक्सप्लेन किया ना, स्पेशली द सेक्शन वेयर इट वाज लाइक 0 से 1 लाख तक अपन को रीच करना है. आई एम प्रीटी श्योर अगर तुम लोगों ने वो चीज़ें इंप्लीमेंट कर ली एंड यू हैव नोटेड दैट डाउन ओवरव्यू, उसके बाद तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा फिगर आउट करना कि अच्छा मेरे को क्या क्या करना है जर्नी में टू मेक एक्स अमाउंट ऑफ मनी टिल 1 लाख रुपीज़ पर मंथ. सो या दैट वाज सेक्सी ब्रो. आई मीन I've got all of the answers that I had to for this particular masterclass. So thanks a lot, Abhay, for joining with us and sharing your insights. It was lovely hosting you. Lovely being here. Subscribe कर लो guys. Subscribe कर लो. चलो, bye guys. Take care. Bye. Hi Aasil, welcome again to the channel. एंड फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, अगर तुमने मेरे पहले पॉडकास्ट देखे होंगे आसिल के साथ, वी टॉक्ड अबाउट हाउ यू कैन गो फ्रॉम $0 to $1,000. वी कवर्ड द रोड मैप एंड हम लोगों ने लीड्स के बारे में बात करी थी. बट दिस टाइम वी आर स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन फाइवर. एंड आसिल, from you, I want to get your introduction and introduce yourself to my audience and tell them what do you do,
and how did you come into this Fiverr thing when people are For doing sure. cold outreach and everything? For sure. Thanks a lot for having me again. It's always good to see you, bro. Yeah. So, regarding Fiverr, I started freelancing on Fiverr in 2020. Uh-huh. So this is before the COVID boom. Like, Uh-huh. and after that, people say that, Fiverr got very saturated. Too many people are there. So for people who don't know what Fiverr is, it's just a freelance platform where you list your gig. Mhm. Just as simple as that. A gig is something which defines your service. तो कुछ भी हो सकता है. I'll do video editing, I'll do graphic design and things like that. Now, once you're listed, it's a search-based platform, which means client will come and वो search करेंगे वहाँ पे, and then you have to basically rank your gig, and once your gig is ranking, they'll click on it and they can directly purchase, and the Fiverr will take care of all the messaging system, delivery time, and just in case something goes wrong, they have a customer support too. Okay. So Okay. in Sabka, they also of course charge a fee, which is 20% on each order. So Okay. roughly that is Fiverr. Now, the problem most people have is ki they are not able to get started on Fiverr only. Like it's very Correct. tricky for beginners to get started. But I have seen majority of people who can get clients anywhere, like for example domestically or maybe cold outreach, they are also able to get it on Fiverr. लाइक ऐसा नहीं होता कि तुम्हें बाहर बहुत क्लाइंट्स मिल रहे हैं, बहुत ऐसे लोग लाइन लगी हुई है और तुम फाइवर पे आओगे और तुम्हें काम ही मिलेगा, राइट? इफ योर वर्क इज रियली गुड यू विल गेट क्लाइंट्स एवरीवेयर, राइट? विच इज अ प्रॉब्लम. नाउ बिगनर्स के लिए प्रॉब्लम होता है कि देयर वर्क इज नॉट गुड. Yeah. ठीक है, दे डोंट नो हाउ टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ, क्या लिखना है, क्या बोलेंगे. उसके बाद दे डोंट अंडरस्टैंड कि ऐसा क्या लगा है जिससे क्लिक करेंगे लोग, ऐसा क्या करें कि लोग परचेज करेंगे, बिजनेस करेंगे हमारे साथ. तो दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम. दिस इज लाइक आई वुड से 98% ऑफ द प्रोफाइल्स जो वहाँ जाती हैं हु आर लाइक जस्ट नॉट रेडी फॉर द मार्केट, राइट? कि उनको पता ही नहीं कि क्या करना है, Okay. राइट? सो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम. बट आई थिंक इफ यू आर अ बिगनर, Fiverr or Upwork, these are really good to get consistent volume of new client. So, for example, right now I wake up and I know I haven't checked my phone yet, but I saw in the morning that there were like 5 to 10 new clients. Subtle flex. So, correct. So they were like already lined up. I just have to reply to them and just guide them to the new package, right package. So right now I'm running a volume-based agency, which means we don't do as many retainers. हम कम retainers करते हैं, but majority we focus on new volume of clients. One off edits And ज़्यादा रहते हैं. one of edits, correct, yeah. For example, अभी majority projects is Christmas. They need Christmas के आसपास एक video for their brand, maybe for their personal thing. तो ऐसे projects बहुत चल रहे हैं अभी. तो वही we have like very seasonal projects, very like one time projects. And of course उसके बाद भी Fiverr पे भी we have 50% of recurring revenue. Okay. कि repeat clients हैं जो आते हैं, जिनके YouTube channels हैं वो आते हैं. And the thing is, it's a trade-off. तो for example, कुछ YouTube अब I make content, right? तो कुछ clients आते हैं and I still send them to Fiverr. Why? उससे क्या होता है कि it boosts my profile even more because I'm sending them new clients, right? And they keep working on for me. The thing is, outside I have to create the entire system again. For example, Fiverr पे we have the management set. We know कि क्या कब क्या करना है. अगर कोई client बाहर से आते हैं तो I would have to set a separate Trello setup for them. Correct. एक manager होना चाहिए. Separate feedback loop चल रहा है. इसलिए I prefer everything over Fiverr. But yeah, we are trying to do both, but I still prefer Fiverr over anything else. Yeah. That was a very, very crisp answer, dude. Beginners अब नहीं समझ रहे हैं Fiverr का importance, तो I don't know. And for those of you who don't know, like Aasil also has a Fiverr course. मैंने भी खरीदा हुआ है, मैंने भी देखा है उसको. But of course we are not on Fiverr, we are not primarily on that platform. हम cold outreach वगैरह से clients close करते हैं. But if you want that, you can check that out too. मैं link कर दूंगा, एक बार link भेज देना. Udemy पे है, किस पे है? I forgot. Udemy पे, Udemy पे, correct. yeah. Udemy पे, yeah. So yeah, okay. Now you talked about one thing while you were telling about Fiverr कि beginners को rank करना नहीं आता है कि rank कैसे करें. So how can beginners go about that route कि first of all, let's skip that question. First of all,
who are the good market fit? You said 98% of the people तो ready ही नहीं होते market के लिए. How can the freelancers understand कि वो अब market में एक अच्छे fit है, 98% से ऊपर आ चुके हैं, and if they are ready to sell the services on Fiverr or not? Correct. I think I would not suggest any complete beginner to just directly go on Fiverr. Okay. So, for example, when I also went, matlab I had little experience of internships with couple of companies. Mm-hmm. तो roughly you should know कि क्या बोलना होता है, क्या करना होता है, और ये सब किसी भी absolute beginner को obviously नहीं पता Of होगा, right? course, yeah. So ideally I would suggest you do some internship, you Yeah. just work for someone, mentor under someone for some time, Uh-huh. or I think between beginner and intermediate is the right time when you can start. A good few signs would be you have some clients coming in, like you're Okay. able to close clients through cold email or Instagram outreach, or maybe just walk in domestically जहाँ भी आप रह रहे हो, and just ask couple of people if they're happy to work with you and they like suggest your work to other people, Mm-hmm. and then you would know कि हाँ people are happy with the work. With the work, okay. Then I think when you go and create a profile, you'll be able to reflect what you are actually able to do, Mm-hmm. and I think that would be the best time. Okay. So again इसमें भी थोड़ा सा एक in depth problem है, which is कि see this is more of a personal problem for everyone, ठीक है? But let's talk about it क्योंकि practically not everyone video editors are mostly introverts with what I've seen, and Yeah. if they are, and even the freelancers जो जाना चाहते हैं, and अगर मैं generalize ना करूँ तो they don't want to go and walk into a cafe, let's say, or restaurant and sell their services. They just have some kind of belief system कि यार वो नहीं कर सकते हैं या वो ऐसा है सीन. Cold email outreach में it takes time to really hone in the skill of doing the cold email. Although they have the framework with this masterclass, they can implement that and get good replies. But if we go really really technical and we talk about कि हमारे पास feedback loops कम है, what they can do in the limited area of just them and a laptop. Let's say वो बंदा जाना ही नहीं चाहता है बाहर and एक लैपटॉप पर बैठकर उसको feedback चाहिए कि yes I'm a good market fit. How they can go about it? Correct. So the major problem with this is इसलिए मैंने बोला था क्योंकि there's a knowledge gap. कि for example you might have seen in your comments, I have seen in my comments कि people think they know a lot. Yeah. कि मैं तो सब कुछ कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, but reality is very different from that, right? Uh-huh. And with this loop I was trying to do is कि उनको वो knowledge gap थोड़ा कम हो. Correct. अगर वो correct. stranger के पास जाएंगे they'll provide a very good feedback, right? तो let's say अगर बस एक लैपटॉप है तो I would still suggest अपने दोस्तों के लिए कुछ बना के देख लो. They'll also be very honest. But what I'm trying to do is कि वो एक feedback loop बने of course हाँ, कि हाँ, हाँ. तुम्हें पता चले तुम्हारा काम कितना अच्छा है, कितना बुरा है, क्या तुम सही कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो. Like absolute beginner can't go and work for a client. Like Correct. they'll I agree. even the client will have a very bad experience and इन लोगों को भी काफी बुरा लगेगा. Like it won't be good for their own self image, right? Mm-hmm. So I think चलो अगर बाहर किसी stranger से जाके नहीं बोल पा रहे तो you can talk to your relatives or your family, just create something for them. That's how I started. I created a reel for my sister. Oh. And she was like, she very like happily posted it, and her friends were like कि वो किसने बनाया ये वो करके, and she was like make one more for me. So this is a good feedback loop कि हाँ काम पसंद आ रहा है किसी को, like कि I can do this for more people. Okay. So this feedback loop I'm trying to create कि once they know कि क्या सही है क्या नहीं है, am I able to create something good, people like it or not, will they able to like post the work I create on their social media, क्योंकि social media is basically जो videos अपन बनाते हैं usually client के लिए is to like कि वो अच्छे light में represent कर पाए खुद को, right? Correct. Correct. That's kind of roughly the idea. तो Okay. what I wanted to do is कि ये knowledge gap कम हो उसमें, and उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. Strangers would be best because they'll be very direct, you will get a really good feedback. But Yeah. अगर उससे भी नहीं हो पा रहा, then I think next would be to just ask your friends, family, create work for them and get And the maybe feedback. social media पे post कर सकते हो तुम एक spec edits बनाकर. That is Correct, also that also also an works. option. Yeah. Yeah. Okay. So now coming to the next question, which is how do they rank? Now ठीक है, feedback loop है, सब कुछ है, काम भी
ठीक ठाक है, Yeah, बिगिनर से बेटर है काफ़ी ज़्यादा, बट एकदम प्रोफेशनल लेवल का नहीं है. हाउ दे correct. कैन, Intermediate है. या हाउ दे कैन रैंक देयर गिग एट द स्टार्ट. Correct. तो शुरू में ranking won't happen as मतलब at all. It won't happen. मतलब you'll get few hundred impressions even if you have a really good gig, which Okay. doesn't convert to anything. Okay. Mm-hmm. So you make a gig. Yeah. Making a gig is just doing market research, seeing who is ranking where, and initially Fiverr pay you can create up to 4 gigs. Okay. Mm-hmm. You make couple of high volume keyword gigs. जो for example कोई भी उस platform पे जाएगा तो they'll search that. ठीक है. तो अगर वीडियो एडिटर हो तो जस्ट वीडियो एडिटिंग, प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब, थिंग्स लाइक दैट. एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन हैव 2 more gigs which are niche. Mm-hmm. तो ये 4 gigs बन गए आपके. gigs में टाइटल, कीवर्ड और thumbnail और वीडियो आर लाइक एक्सट्रीमली important. You see what's working with the competitors and you create a list, and उनसे इंस्पायर होके you create everything. Okay, like your own touch. Just Yeah. don't copy it, just create something. Okay. Now this is ready. Now it's just about iteration and solving problems. Okay. After 1 week of going live, you'll have some feedback कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा. Let's say gigs पे impressions आने लगे हैं. Mm-hmm. Let's say you get like 100 impressions. Now ideally उन 100 में से you should make at least 1 click. ठीक है. Okay. अगर वो भी नहीं हो रहा then we have to think कि यार मेरा thumbnail stand out कर रहा है कि नहीं, कि 100 लोग आए, 100 लोगों ने देखा but एक भी ने click नहीं किया. Right? That's the click problem will solve. Click is basically उनको thumbnail दिखता है, उनको price दिखती है, उनको delivery date दिखता है और उनको reviews दिखते हैं. Mm-hmm. Complete beginner के पास कुछ भी नहीं होगा, like reviews नहीं होंगे, right? Price कम होगा, तो you have to make a really good thumbnail which like really stands out. I would suggest hire a thumbnail designer. Mm-hmm. उससे बनवाओ, क्योंकि अगर you just post something तो वो click नहीं आएगा. ठीक है. Now we solve the click problem by a really good thumbnail or a promo video. वहाँ पे वीडियो भी शो होती है, like if you hover over the thumbnail थोड़ी देर तो वीडियो प्ले होती है, and I think that's what's working for me. I have like a very animated first 10 seconds of something when the someone hovers it, so that increases the click. ठीक है. अब उन्हें क्लिक कर लिया. नाउ इट्स अबाउट कन्वर्जन. यहाँ पे इट्स लाइक कि आप उनको कन्विंस करो कि वो परचेज दबाएं, विच इज लाइक अ वेरी बिग स्किल टू हैव, एंड आई डोंट अज्यूम कि किसी के पास वो होगा, राइट, इनिशियली. बट हेयर यू हैव टू शो सच गुड वर्क कि पीपल बी लाइक कि ओ इतने सारे लोग मैंने देखे बट इसमें से आई लाइक दिस द बेस्ट, राइट. तो विच इज स्लाइटली ट्रिकी. इधर योर वर्क इज रियली गुड या फिर योर प्राइस इज वेरी स्टैंड्स आउट टू देम, योर डिलीवरी टाइम इज वेरी लो, समथिंग लाइक दैट. क्योंकि रिव्यूज अगर नहीं है देन दिस बिकम्स वेरी ट्रिकी, राइट. This is why I said कि you work with clients outside and you will have some reviews there, which will also help us with the conversion here, right? ओके, तो बाहर क्लाइंट्स के साथ अगर हमने काम किया है तो हम फाइवर पे रिव्यू कैसे दिखा सकते हैं? नहीं, you do some projects with them on Fiverr. ऑन फाइवर, ओके ओके, मेक सेंस, करेक्ट. Correct. Once you do couple of projects with them, तो यहाँ पर रिव्यू होगा. एंड रिव्यू का बस ये है कि जैसे कोई और आया तो ये कन्वर्जन प्रोसेस जो अपन बात कर रहे हैं इसमें हेल्प होगी, बेटर हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा. करेक्ट. या ओके. नाउ ये कन्वर्जन पेज पे यूजुअली what makes a sale is your USP, which is unique selling proposition, right? What are you offering that other hundreds of thousands of profiles don't have? So when I personally started, my USP was my show reel was decent उस टाइम के हिसाब से, 2020 के हिसाब से. The thumbnail was good. उसके अलावा I was offering money back guarantee. I was working for $5-10 and I was doing a 1-day delivery. All this, so anyone who wanted a rush work, I was like the ideal profile उस पे. Correct. That's how I got the first few reviews. And once you have like good reviews and you're standing out, then you can increase the price. Okay. So And it's just about solving very small problems, which is click, conversion, and then repeat business. okay. Yeah. So when like we have got how many reviews are necessary to rank the gig, or is it not actually a metric to look at? मतलब to be honest, not a metric which like really defines it. It's just about the conversion thing. People have got, मतलब I got my first review ऐसे ही. I didn't get clients from outside.
but it's Mm-hmm. just something which helps. It will help you get clients faster. And this And in turn will help the gig rank better when we have the reviews and when we are optimizing the profile. not really rank, but it will help convert them better. And once the conversion increases, it will eventually rank. Okay, so when we'll have more orders, more quality work is given to the clients, and Yeah, 5 स्टार रेटिंग 4.5 स्टार रेटिंग हमारे पास कंसिस्टेंटली आ रही है, तो फाइवर उसको ऑटोमेटिकली पुश करेगा सर्च रैंकिंग्स पर. correct. Correct, because you are eventually giving more business to Fiverr. And करेक्ट. ओके. Fiverr is seeing कि yeah, clients are coming and they are like doing business again with this buyer, तो कुछ Yeah. होगा. It will then in turn show it to more people. Okay. Yeah, makes sense. Correct. So, like, okay, we have talked about some positives of Fiverr. What are the downsides of Fiverr? Like, you're running an agency right now, volume based agency, and you're getting Correct. one off gigs. First thing that I know for sure is retainers. Recurring revenue is a thing that you can expect, but it comes from one off gigs Correct. mostly. So, what are some of the downsides of Fiverr that a person should have in mind before coming to Fiverr? It's not easy. Like it's definitely not easy. If you have, it has way too many rules and regulations going on that it becomes very tricky for you. Hmm. Especially beginners, में beginners have a habit of कि email ले लो, हमसे बाहर बात कर लो. It like your, Yeah. let's say if you have been working for 2 years and you did a mistake, your account will go directly. It's very risky. Hmm. Just yesterday, I got a message that my profile was deranked. Yeah, It's it happened to you a week or two before as well, right? Some. that was that was a glitch, and yesterday was also a Okay. glitch. Acha. Yesterday, all sellers got that they are re-ranking or their level is going off, and like it was whole panic in the Indian Fiverr community, वगैरह. But Acha. yeah, it was a glitch. So something like this can happen where you are like very scared. So it's like 100% not a thing where you are like 100% dependent on the platform. Hmm. So I would suggest even like once you start Fiverr, I would suggest you eventually like diversify. So for Okay. example, even I have agency clients right now, and then I eventually started YouTube because I was unsure about how it will work. Yeah, correct, correct. And so I think downsides में for sure कि it's not predictable. Especially with अभी जो AI वाला shift आया ना, उससे क्या हुआ है, video editors are seeing a very high fluctuation. मतलब even top rated sellers who used to be packed, उन पे बहुत कम projects आ रहे हैं. And for example, next downside is, let's say you have couple of cancellation or couple of bad reviews, it will de-rank your gig. But you Oh. won't get orders for some time. That is it. And उसके अलावा, let's say customer support is very buyer favorite. Acha. So they will rarely support you. Like कुछ हो Okay. जाए तो they will prefer कि उनका buyer ना जाए. Like Because वो repeated things. का उनको Correct. conversion business Yeah. देगा. Which I understand, but yeah, this is also a downside which sellers don't like. And उसके अलावा, I think just like anything, उसके अलावा it's not a downside, but I think it compounds really well, but it takes a lot of time. It took me how many So for years to reach here? For 5 years. took me, yeah, 5 years now. 5 years. So, Yeah. and Yeah. when you saw your first big money, what was that year through Fiverr? It was next year that I started. 2021, I was full time on Fiverr. Okay, like, are you open to sharing that big number that you achieved in Correct. So, 2020, I made around. I started around June, July. July I started, and that year I made 2.5 lakhs. The through entire Fiverr year, yearly? the six months, yeah. उसके बाद 2021, I made close to 20 lakhs, which is like something really big for me. I was like well sustained because I was also in MP. I think 20 lakhs I can live in Hyderabad also. But yeah, this is in 2021. Yeah, okay. Till 2022, I reached close to 40-50 lakhs And on Fiverr. yeah, go on. Yeah, Shami. No, I was just getting the understanding of the GST thing because after 20 lakhs, you have to get a GST. Although that's not the scope of this video, but it just clicked me. He 20 lakhs hit हुआ है. Then after that, Yeah. when you're in a service business, you'll have to get a GST number.
and then Correct. file for the GST. Is it Yeah, something that you right did? on cue. 2023, I started one for edits because I needed Okay. GST number. Sole proprietorship Yeah, में करा है. correct. Yeah, Makes correct. sense. Makes And sense. then 2023, it hit close to 50 lakhs. Mhm. 2024, 7. No, 2024 was oh, 2024 was good 84 lakhs if you take out the 10%. And this year Okay. we have crossed 1 crore something. Oh, crazy, bhai. Crazy. Nice. The year is ending with a boom. Yeah. Nice. So, like, now that you guys have seen the numbers, uh, understand this thing that this is possible, and it is not something that probably 99% of the people will be able to do. That is also a prerequisite, because it took him 5 years to reach here. 5 साल तुम वेट अगर कर सकते हो तो यहाँ पे पहुँच सकते हो, बट the reality is most of the people are not ready to give those 5 years to this particular thing. Apart from that, okay, like we talked about this, you talked कि मैंने internship पहले करी थी, I had some proof of work, and then after that I got into this Fiverr thing. uh, how did you get those internships, and how can a person get an internship? So I did my bachelor's in multimedia and animation, right? So I Mhm. had some knowledge of the industry. Okay. Like, for example, even to get industry, you should have some skills, like some basic surface level skills you need to have. So Hmm. if you want to get a internship as a video editor, you Hmm. should be able to compile reels at this point, because people can do that with like simple mobiles now, right? Like Correct. any app Correct. can do it. And you doing it in Premiere Pro is a skill. We can just start there. Hmm. Okay. So I think basic skills in Premiere Pro or After Effects and basic conversational skills. Yeah. And uske baad, I think you can start. So once you have basic technical skills, plus you have a basic communication skill, and then you can apply it on LinkedIn. Of course, network comes in handy. If you know the right people, you can work for agencies. Personally, how I did it, first one was in my college only. I did internship for one of the clubs in the college. Mm-hmm. So this is something you can do. Uske baad, second one, I got referral from one of my friend who was working in a e-learning studio. Mm-hmm. And Yeah. then that's where I did my second. Uske baad I started Fiverr, and I did my third internship with a US based studio, along with one working with like Fiverr. Okay. So I did total 3 internships. But yeah, it's about just knowing the right people or reaching out to the right people. Okay, so that's where you can start if you're in college. Like you can get some internships out of there. Yeah, for sure. Clubs में तो easily मिल जाएगा भाई. You can just go ask for clubs. सारे clubs को videos, photos तो चाहिए ही होता है आजकल. Mm-hmm. Like that's a very easy way to start. I don't have much experience of that. Never. I am dropped out of college. So don't know Yeah, about so that. clubs वगैरह में, or even like, for example, let's say if you're in a metro city, यहाँ run clubs होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं. You can just Correct. ask and work for them. That's like very easy way to do it. That's good. Yeah, that's cool. Never thought of this. मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है. Correct. For example, Delhi में तो, for example, Delhi में there are so many events, things happening, and Yeah. इसके लिए तो तुम्हें बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है. You just see कहाँ क्या event हो रहा है, and then you reach out to the team. Just do some stalking. You just need some stalking skills Yeah. इसमें तो. And And then just email you कर just सकते read हो. out to the team. Yeah. Correct. Can I like create some videos for you? So, walk us through how a typical day in your life looks like. See, you are running probably, not probably, I'm sure, 10 lakhs plus a month agency, and that is purely through Fiverr. I want to understand how your time is managed, because as far as I know, you're doing rock climbing, you're doing gym, you do badminton, you do all sorts of things, bro. Even Yeah. I'm curious कि कैसे manage करते हैं इतना सब. And apart from that, Yeah. how many hours do the person who is starting out Fiverr and getting at an intermediate level, जहाँ पे उसको 3-4 ऑर्डर क्यू में पड़े हुए हैं, 5-6 ऑर्डर क्यू में पड़े हो, कितना टाइम देना पड़ेगा उसको डेली का इस चीज़ को? Yeah. Right now my day is मतलब it fluctuates a lot अभी तो YouTube की वजह से, because everything goes around the shoot. So the Fiverr thing usually takes around 2-3 hours in the morning of management work, because I am doing it abhi. So management communication and assigning tasks to the team.
It's like Alright. 2-3 hours of work in the morning. So typically I'll do that from 9 a.m. to 12 Okay. ish. Mm-hmm. 12 बजे ये खत्म होके फिर I'll have a YouTube agency और ऐसा कुछ काम हो तो mostly around YouTube personal brand I'll work and then रात तक वही सब चलता रहेगा. Okay. So Apart from that, YouTube, I have like separate. Yeah. so YouTube takes most of your time. Right Is now, that? personal brand and like digital products development takes majority of time. Okay, okay. And उसके अलावा I think उसके अलावा I have like शाम को free if I wanna play badminton, if I wanna go whatever rock climbing or Yeah. gym or कुछ भी. So I have like उसके लिए जगह and weekends I have entire time free. I won't work much. A Mm-hmm. couple of hours on 5-1, rest is just activities, go around, have fun. And then like Mostly. majorly you delegate all of the tasks in those 2-3 hours, and then after in the next day, how do you receive the files? Like, doesn't it get very messy that you're having 10 to 15 orders and you're assigning those edits to editors, and then they're giving back, you're giving the changes? So usually the change loop is not happening up because the team is like very trained for like few years Okay. now. Mm-hmm. And so all editors that I have worked around 1-2 years for now. All of them are work from So home, remote employees. work from home, correct. Okay. And we have a proper timeline and everything set in Trello. So when I assign projects, they'll know when to submit, what to submit. Mm-hmm. And the revision wala ab nahi hota. Like rarely if the project is tricky, we'll do. One I can directly send the link directly to the client. So that I can do on mobile only, no? Like मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो I'll just take the link and just copy paste it on Fiverr. So I think that is a good thing जिसमें time नहीं लगता. And everyone sends their projects on time मतलब वो सब नहीं होता. That's good. That's So for good. That's example, a really good yeah. advantage of a good team. करेक्ट और ऐसा भी नहीं फॉर एग्जांपल अभी आई हैड दिस कॉल आई डिडंट इन्फॉर्म माय टीम आल्सो एंड दे आर नॉट अवेयर दैट आई एम ऑन दिस कॉल बट एवरीवन इज वर्किंग लाइक Okay. तो फॉर एग्जांपल व्हेनेवर आई गेट बैक आई विल हैव अपडेट्स फ्रॉम ईच वन ऑफ देम कि उन्होंने क्या किया Okay, एंड okay. या इट विल So बी how many बिजनेस people एज do you यूजुअल have in a team? अभी इज 10 people 10, all of them are video editors. all generations. Crazy, bhai. So the last question for you will be, I've talked about a lot of blueprints and roadmaps to multiple guests throughout this masterclass. I want to get it from you as well. You can give an overview, you can give an in-depth explanation, whatever you prefer. At every step from 0 to 10 lakhs, sorry, 1 lakh a month for a freelancer, uh, what it will take for him to do, and what are the things at every step that he can account for. Let's say 20,000 तक तुमको ये करना पड़ेगा, 50,000 तक तुमको ये करना पड़ेगा, 80,000 तक ये स्किल्स तुम्हारे अंदर होने ही चाहिए, एंड 1 लाख बियॉन्ड ये सारे चीज़ें होने चाहिए, एंड this is how much time possibly it can take to reach till 1 lakh a month. So 1 lakh how a does month. Okay. how does that roadmap look like? Let's say your work is good, so in 2 months you should get your first order. Okay. Like 2 months is a good time frame. A lot of people get it in 1 week, 2 week, but yeah, realistically, we two will say months. 2 months. Yeah, 2 months you got your first client. You completed it and you got what's working, what's not, Mhm. and ideally you start getting more clients after that. So Okay. ऐसा होता है कि फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ती जाती है given you're doing good work. तो उसके बाद next week you'll get one more time. उसके बाद you'll get multiple queries. ऐसे करके we need to scale it to 10-20 orders per month. Like Okay. once you do that, given that let's say you're doing $10 per edit in the starting, just like hypothetically. Mhm. तो उसके बाद let's say 20 orders हो गए, 30 orders हो गए. Now you start increasing the price because demand is also increasing. You have like more projects lined up, so you can start increasing the price. Okay. Now here, after you have a set profile, you can decide if you want to do high volume or you want to do high value. Like you can also Okay. increase the price and charge a premium Okay. and do less orders, or you can do high volume and do a lot of orders. So this is a choice that you have. Hmm. Now let's say you select one of those, you set goals
कि next 3 months में I want to do this much. I want to do this much. I think 6 months में you can aim to get close to 1 lakh per month. Like that 6 is very months में. possible. Yeah, 6 months में. Yeah. क्योंकि you can, let's say you charge 5,000 rupees per reel. So according to that, you can understand how many reels I would have to do to reach like 1 lakh per month. 20 Yeah, reels. Somewhat. correct. Yeah, 20 reels is doable in a month. Yeah, Yeah, absolutely. correct. So I think initially you can aim for that, and then once you have like a set profile, you can increase the prices. Like I did, I started $5 there, but abhi we charge around $100 for a 1 minute video. That makes sense. And to those, let's say, who are sticking with cold outreach, who are doing cold DMs and everything, their work's good, but they're not able to get some clients out of that. How can they transition to Fiverr? I know it is technically very simple that you just have to Yeah. post a gig, get an intro video if you're a video editor, and everything is sorted. You just have to set up a profile. But there's just something in their head that यार Fiverr 20% ले लेगा, Fiverr पे कुछ डाउनसाइड्स हैं, एंड फाइवर पे जाऊँ, अपवर्क पे जाऊँ, या कोल्ड ईमेल से जो मैं क्लाइंट्स लूँगा वो स्टेबल क्लाइंट्स होंगे, रिकरिंग क्लाइंट्स होंगे. सो हाउ डू दे नेविगेट दीज काइंड ऑफ थॉट्स? दिस इज समवट more of an internal thing that they have. Correct. I think biggest lesson would be to learn that nothing out of all of these is easy. Let's say Fiverr, Upwork, cold emailing, or even reaching out to people in person. Uh, all of this will take a lot of iteration, a lot of failing, a lot of, learning ki, oh, I'm not good enough right now. Maybe that's why I'm not getting clients, Yeah. which is a lesson you need to eventually learn. And I also learned it very hard way on Upwork, where I was like not able to get anything, and I thought the platform did not work, but I didn't have the balls to say to myself that you're not good enough right now. Correct. Right? So that's something you need to understand, that these platforms are not against you. They are just for people who are more skilled than you. Okay. And eventually when you are on that level, you will find clients. What else? I forgot what I was saying. No worries, but I think I can sum it up in just one sentence, which is choose your hard. Correct. Everything is hard. It's just that whatever like resonates with your goals, choose that Yeah. thing. If Fiverr works best for you, do that. If cold email is something that you're looking forward to, Correct. do that. For us, Yeah. for example, like you're doing Fiverr, I'm doing cold emails. Both works. We know both Correct. works. Yeah. It's just that I'm choosing it because I have a different ICP. I'm targeting different Correct. type of clients, and you Yeah. have built that. You're targeting different type of clients. So whatever work, like everything works. It's just that you have to be competent enough to be in that niche and just keep iterating and doubling down on that. Exactly. And I think it will, like, at some point I've also tried cold emailing. At some point you have also tried Fiverr. So it's always Yeah. good to like try different things, see what's working for you, and then you can, filter out what's not working. But in best case scenario, you should have multiple ways to get clients. For And example, eventually you Mradul can, also, diversify. Yeah, go on. yeah, yeah, correct. For example, you also right now have YouTube, which can bring you more leads. You also post on LinkedIn. Yeah, So I very do. different approach than mine. Because I have Fiverr and I post on Instagram and YouTube instead of LinkedIn, right? So all of this works. It's just about what you're doing, and you have to stay consistent. Uh, I remember when brother and we started, we were doing that few years ago also, the same things, and we are still doing it now. So I think Yeah, the yeah. biggest thing is consistency. You have to like keep trying irrespective of what results you're seeing. Absolutely. Like that is the real cheat code, man. You just have to Yeah, stick to it, and then you'll eventually see the results. Most of the people have stuck to the game. That's why they are where they are, actually. correct. Yeah, yeah. I mean, that's what I have. All of the questions are answered, and I hope you got some real value out of it. You have everything that you need to know in this masterclass. It's just that if you're still not acting, then do it. The problem is you. I've given you everything. So yeah, thanks a lot, Aasil, for sharing the insights. And if you have any last bit of piece of advice for the audience that they should really have in their head before starting freelancing,
please feel free to tell that. I think just starting freelancing, I would highly suggest to learn sales psychology, read a lot, because initially, I think when I started, the major thing was I didn't know how to scale after a point. So Mm-hmm. let's say you even get some clients initially, but you'll run into some problems, and only way to go ahead of that is to read, to understand, and to learn more things. Because as a freelancer, it's a very lonely journey, especially the first few years, because you Yeah. won't have many people who will understand what problems you're facing through. So I Mm-hmm. think you have to become self-reliant, and I think reading books is one of the hacks which I got, which like I can did see wonders पीछे for इतने me. सारे किताब रखे हुए हैं. Yeah, which did wonders for me. So I think that's just one thing I would highly suggest anyone who's starting. Read a lot. Yeah. Yeah. Then just last thing, most of the people know Aasil as a guy who talks about Fiverr and teaches video editing. Bro, he's like the guy who does all of the things. You just don't know him yet. भाई गिटार भी रखा हुआ है, माउंटेन क्लाइंबिंग भी करता है भाई, जिम भी जा रहा है भाई. मैं जब स्टोरी देखता हूँ तो भाई हर दिन नई चीज उठा के सारी चीजें Yeah. करनी है भाई आसिल भाई को. Yeah, I think a lot of new experiences slows, मतलब the thing which was happening in Hyderabad कि यार बहुत जल्दी टाइम निकल रहा था, and I was like not able to understand same routine में. So Yeah. I was like कि I'll try multiple different things which like slows down time and increases, the quality of life. But that's That's good. the rough idea. Like you have a really Yeah. good physique as well because of all of the physical things that you're doing. Correct. Yeah, I don't miss workout. I was just eating protein or forcing myself to eat in the morning. Yeah. Crazy man, crazy. That is one other thing that Crazy. you can take apart from all of the freelancing thing from Asil too. So yeah, Let's thanks a go. lot Asil for Welcome. coming to the podcast and sharing your insights about Fiverr. Welcome. Thanks a lot for having me. Yep, bye bye, take care. So this is Shakti in our masterclass, and if you don't know, I'll give you a little intro of him. He has been working with Tech Burner. What is the name of him यार, मैं उसका name भूल जाता हूँ. श्लोक श्रीवास्तव. His full श्लोक name is Shlok श्रीवास्तव, Srivastava. उसके साथ काम करा है शक्ति ने, एंड ही इज करंटली वर्किंग एज अ फ्रीलांस वीडियो एडिटर. आई फर्स्ट इंटरेक्टेड विद हिम थ्रू इंस्टाग्राम, राइट? हम लोग इंस्टाग्राम पे मिले थे. Yes. एंड देन वी हैड अ फ्यू कॉल्स, उसमें हम लोगों ने थोड़े बहुत इंसाइट्स शेयर करे थे. एंड देन आफ्टर प्रॉबेबली आई थिंक 7-8 months वी आर राइट नाउ सिटिंग इन अ कॉल. मैंने पहली बार देखा शक्ति को, so it is new for me as well. I'll get some real insights from him for you, and you'll get some industry specific knowledge that you need to have as a video editor so that you can start a journey, and some freelancing tips in general that can help you grow faster in the freelancing career and how it helped him. And feel free to feel free to skip the questions if you don't want to answer that. Sure. There are few Sure. questions related to probably the numbers. I don't want to reveal numbers of any creators because I personally don't do that as well. मेरे को वो चीज़ दिखाने में खुद भी personally इस साल मज़ा नहीं आया और मैं करना नहीं चाहता हूँ. तो if you're comfortable with that, then only give me a ballpark figure or an expected Ballpark figure. range कि freelancers कितना Sure. कमा सकते हैं freelance video editor. Sure. So I'll do that. yeah, so for the detailed introduction, what I'll do is I'll let Shakti speak for himself, and yeah, please introduce yourself to my audience. Hi everyone, my name is Shakti and I've been a video editor for over like a decade now because I started in 2016. I left it all in 2021 because I was pursuing my CA exams, and I was working remotely earlier in my life phase when I was 19 or 20 years old, just like you, or you may not be you. But at that time, I was working with a lot of music video artists. So I got a lot of clients, and even I got some international clients. So things were running smooth, but then COVID happened, and I thought, let's go and study for a while. For like 2 to 3 years, I was studying and I was studying hard. So make sure you're also studying apart from doing video editing and doing anything else. And in 2023, a great opportunity came to my place where I got an opportunity to work with Tech Burner as his video editor. So I just made a cool, a very sick, what do you say, the trial video, and they just loved it. They just loved it. They just told me, asked me to just onboard me in the Noida team. I went there. The team was amazing. For like 2.5 years, I worked there. Like 2.5 years, I started as a video editor. Then I quickly moved up to a creative director, making all these videos and having a lot of fun creating them, directing them, and even editing a lot of cool videos you can see in my portfolio.
And in 2025, I just thought that let's just move into a freelance space and just see what all other creators I can work with. Because when you are working at a job, you are not supposed to do that. And please don't do that, because not only that will be more hassling, but also it is not like it is not right. You shouldn't do that. So whatever, I just started my freelance journey in March 2025 this year, and I searched a lot of videos about it in YouTube, and fortunately, Mradul was making amazing videos, and I took a lot of inspirations from him and a lot of guidance from him. And that's the time only when I called Madhul, like he said, and I started my journey from there. And now currently I'm working with all the creators worldwide. Most of my clients are from US and Europe. One of them from Australia, and I just have fun working with them because the projects are amazing, and it just makes me push much more harder as compared to what I used to do earlier. That's great, man. I mean, I didn't expect the communication skills to be too fluent. So, by the way, you told me that you started way back in 2016, right? Yes. What was your age back then, and what it is now? I'm born in 2000, so that time my age was 16, I guess. Very early, Yeah, dude. 16. Very early. Very early. I was into this game very early, and I just got. Most of you must be motivated with the people like Sam Colder, Casey Neistat. For me, Tomorrowland's after movie 2014 was something which I was amazed to see, and I wanted to make some kind of visual like that. So that made me. And one of my friends was in music video production. That pushed me into, okay, let's do something with my laptop. Although we all know we all start with a very shit laptop, Yeah. and I started making them, but somehow I landed my first gig as a freelance editor when I was 18 or 19 years old was from Z Music. So that is where it started kicked off, where it kicked off. And then I got a lot of international clients. International rappers connected me so that I can work for them. I do have a lot of portfolio of them. That's sick, man. And by that time, if anyone wants to go into this music industry, or let's say they are like looking forward to work with the brands, तो उनको कितना expect करना चाहिए कि they can earn this much amount of money by still being uh, a very niched video editor, which in your case was a music video editor. Back then, I'm talking about 2019 pre-COVID era. What I was being paid was 200 or $300. It was very minuscule as compared to what I was supposed to get, but it was amazing for me क्योंकि इंडिया में जो मुझे एडिट करने को 5 to 10K मिल रहा था, वो मुझे यूएस के क्लाइंट से 25-30K मिल रहा था at in 2019. And I do have all the receipts, and I do have all the projects uploaded. And उनका काम करने में बहुत मजा आ रहा था, to be very fair. Also, India ke projects were good, but the projects which they sent, because they used to send FX2, FX1 ki Cinelog footage. That was something which was challenging for me, even for my laptop also. Okay, so like that was per project pricing, not recurring. Yeah, no, that was never recurring because in music video, आज एक rapper shoot करेगा, कल भेजेगा. So it is not a So recurring do you contract. use did you used to hunt clients, or did you get leads from your portfolio or something? What was the process? See, when back in that day, only word of mouth was the only game. Okay, So the way I got into Z Music is because my friend was a music video producer. He got it. asked me, why can't you help us on the edit? So that's the way I got my first client from Z Music. Then after the clients from Z Music, they liked my work, and they had a producer outside in US, the one who produces the music. He liked my work. He reached out to his rapper. Like, we have this guy over in India who can do your videos, because at that point in time, editing videos in there was like lot of money cost surrounded to it, because it was a very niche skill Mm-hmm. at that time, 2019, 2018. So they sourced me out like, okay, we can send you some footages, just play around and just show us what you can do. I did a great edit, so they just made me okay. Then they had a word of mouth in the LA. They were based in LA. Mm-hmm. They were three rappers. They asked my help out. Although they were not big names, they were small, pretty small artists, but they used to pay me sufficient, I must say, because I was 18, 19, I was in college. And that's the way where it all started, where I thought, like, maybe video editing is the thing for me. But that's a bad story when 2021 came in, because lockdown came in and everything just shut down. So that was the point where I left video editing. So I started once, then I left once in 2019, and then I started in 2023 after 4 years of gap. Okay. Okay, but yeah, as you said, $200 to $300 per project for a guy who's 18 is really good. I mean, It was really good. exactly. And people try to look down on the amount of money that they're making at that age, and they think, यार मैं तो
10,000 20,000 30,000 ही कमा रहा हूँ. But yeah, actually think about it. You are making decent amount of cash to sustain your life and probably give some funds to your family as well. And if you don't want to, probably your parents won't ask if they are not in need. But you're self-sufficient. That is a very good taste of money that you get in your early age, and then after that, it just motivates you to go further in a life. Go for that. Absolutely. That really motivated me, to be very frank about it. That really motivated me. Okay, if I can do this, if I can reach to LA, then I can reach to Hollywood. If matlab, I can reach to the rappers, I may get in some kind of short film or something. Because that time I was not into content. That was a very different era. 2019, 2018, it was a very different era. Video editing was a niche at that point of time. Not as like what's happening today in today's era. अब तो It's फट गया है great. भाई मार्केट. Yeah, it is great because it is great to be very fair. It is awesome to see people from India and all those good creatives from India. They are pushing out the boundaries from India. And I have a lot of connections who they really say कि नहीं, people working from India, they do a really great stuff. Because freelance market में you need to make sure which country you belong to and the quality of work you are delivering. एक बंदे ने खराब करेगा सबका खराब होगा. So I am glad कि बहुत लोगों ने खराब नहीं किया. So that is very good. That is insane amount of feedback which I used to get. And mostly when people are working with international clients, not everyone can reach at that level. So basically we can treat it as a pyramid. So जो immatures होते हैं, जो intermediate level पे freelancers होते हैं, तो वो इतना जल्दी इंटरनेशनल मार्केट को टैप इन नहीं कर पाते हैं. एंड दैट्स वाई इंटरनेशनल प्लेयर्स या क्रिएटर्स एजेंसीज जो भी इंटरनेशनल है, वो ए प्लेयर्स या बी प्लेयर्स, कुछ इंटरमीडिएट लेवल पे प्लेयर्स को टारगेट कर पाते हैं, एंड तभी उनको भी काम अच्छा मिलता है. एंड हेंस ए you're right. प्लेयर्स को फिर ए प्लेयर अमाउंट ऑफ मनी भी मिलता है वहाँ पे. एंड दैट्स वाई लाइक, और उनको एजेंसीज को भी फ़ायदा होता है जो इंटरनेशनल एजेंसीज है, क्योंकि यहाँ पे परचेस पावर पैरिटी का भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है. रुपी वीक बहुत है. इफेक्ट पड़ता है. Yeah. So one thing hit me, yaar. You said कि you started with music production. You got a referral from one of your friends. Uh, Yes. how did your first freelance client's journey looked like? Was it like this कि हाँ भाई आजा वीडियो एडिट करना है जी म्यूजिक का तो करते हैं? What was it It like? was kind of that only. It was like a bye-bye situation over there because the producers were super chill. It was from my hometown and they used to like, Shakti है तू कर देगा, तू बना दे, कुछ भी बना दे अपने हिसाब से. The first video to be very fair, I can show you. I will be giving you the links. It was shot on a Samsung S21 Ultra. तो उसके लिए मेरे को शेड करने दिया था. They asked me to make a Coldplay वाला color grade. I did अच्छा something. I अच्छा. made the highlights bloom like yellowish and some kind of tone to it. And that was a very nascent skill. मतलब बहुत ही initial phase में था. Because at that point in time, what was happening with producers also, उनको भी अगर video production बना था, they had to invest a lot of money for like 50-60K for a music video. Instead of that, they wanted to shoot in a style which they wanted, and थोड़ा बहुत they can implement with their editors. So because that time editors were not like this कि तुम I can help you out. They were mostly या तो वो एजेंसी के साथ थे या फिर वो खुद का कुछ और या फिर वो कोई प्रोडक्शन बड़े एजेंसी के साथ थे. ऐसा फ्रीलांसिंग बहुत कम ही लोग कर रहे थे. What I used to know. अभी तो it is like it, everyone you can help, anybody can help anyone. Music videos and now the music videos are short भाई. अब तो वो लेवल It is मैच like करने a के लिए भी मेहनत लगेगा. मेहनत लगे. And I craved that kind of thing, but somehow in 2021, as I said, I was totally focusing on international clients. As 2020 में start हुआ था COVID. That time I wasn't hit because थोड़ा बहुत project था मेरे पास. 2021 में when the second wave came into India and across the world, it was a full mayhem for me. No projects, nothing. So I had to shut my मतलब, professional journey down. I just think a second thought about it. And you क्योंकि started मेरा CA. niche was music video. Yeah, I started for CA. I was already studying. So boys and girls, just make sure you are not leaving your primary education. I am a big mentor of this. Please, if you're studying, do study. And I'm a like great example of it. मतलब पढ़ाई के साथ साथ ये भी हो सकता है, दोनों चीज हो सकता है. थोड़ा गैप लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा. See, the hard work which I did in 2019, 2020, I left my career. But in 2023, I landed at Tech Burner. And now you must be saying, you must be lucky. To be very honest, I was not lucky because there was a parameter कि आपको एक edit करके देना पड़ेगा. तो वो जो edit है, that was totally they were counting on my skills. It is not कि I have to make sure क्या. तो music भी खोजना था because I was a music video editor, mind you. I didn't know how to find the music from Epidemic or anywhere else. So that was a really new skill जो मुझे 3 दिन में सीखना था. तो बहुत कुछ नया नया सीखना था that I had to implement in that case study so that they can select me. Fortunately, that was a great case study and they loved it.
So इसीलिए they selected me. Otherwise, they wouldn't have selected me. To be honest, when I was in Tech Burner, I was also made sure that I was also making hirings for them. जब मैं आपको इस केस स्टडी भेज रहा था, I was not getting that kind of quality, and that is a reality. People they don't understand the style of a creator or understand the style of the video they are wanting. उसमें मैं म्यूजिक वीडियो ऐसा इफेक्ट नहीं डाल सकता हूँ, उसमें म्यूजिक वीडियो ऐसा बहुत सारा फास्ट कट नहीं कर सकता. आई हैव टू थिंक अबाउट इट कि कंटेंट कैसे बोल रहा है वो बंदे का, जो बोल रहा है, हाउ मेनी गैप्स आर देयर, हाउ मेनी कट्स आर देयर, व्हाट इज ही शोइंग. In content you have to show what you are ready. In music video it is a very different game, it is a very different game, it is almost visuals. In content it is like story, तो story को narrate उसमें pacing होगा, slow होगा, fast होगा, बहुत सारे match cuts हो गए. So वो भी है मेरे पास. I can show you what I made in the for the tech burner case study. I have saved it for mine. Yeah, कि भाई इसमें selection हुआ था. I'll do one thing. I'll link your portfolio in the description. People can see that portfolio of yours. The portfolio I have never updated. The only concern is that I have never कोई worked बात on नहीं, a 2-3 portfolio वीडियो दे that is देना. very bad. नहीं मैं 2-3 videos, but I have a decent portfolio which I just send. But mostly I used to send the videos which I have made with TechBurner or with my all the freelance clients which I have made it, so that they can give a gist of it. Because portfolio में you are making sure ये but बहुत सारे client को बहुत different videos चाहिए होता है, और सबके लिए मैं अलग पोर्टफोलियो बनाऊंगा तो बहुत पोर्टफोलियो बन जाएगा, क्योंकि मेरे पास म्यूजिक वीडियो भी है, क्रिएटर्स भी है, रियल एस्टेट भी है, फाइनेंस भी है, शॉर्ट फॉर्म, इतना पोर्टफोलियो. हाउ कैन यू मेक श्योर दैट ऑल ऑफ दिस इज क्रैम्प्ड इनटू वन. एक बेसिक पोर्टफोलियो है, बट मैं जैसा सा आई टू बी, हाँ ये एक प्लस पॉइंट मैं बाद में बताता हूँ. तो ये मैं करता हूँ, मैं आपको आई विल टेल दिस इन द समवेयर एल्स व्हाट आई यूज्ड टू डू फॉर एवरी क्लाइंट. Okay, एक आई यूज्ड टू मेक अ प्रोजेक्ट. सो मैं आपको वो बाद में बताता हूँ, सो दैट इज अ मच मोर वैल्यूएबल पॉइंट Okay. इन समवेयर लेटर इन द वीडियो. Correct. So like first client was mostly I would say कि भाई you had connections and you got the first client, and for most of the people it's really hard to get their first It is hard. To get their first client. Apart from that, when I'm saying this, it doesn't mean that Shakti got lucky and he had connections and he just landed clients. See, there's certain amount of depth to this statement, and that is when he landed that, he capitalized on that opportunity and he refined his skills, and then eventually in 2023 landed Tech Burner, which he talked about. He had 3 days in which he had to learn few things and implement that. And Tech Burner, a guy who has right now, I don't know how many followers he has. 12.5 million followers. 12.5, and उस time पे I think 1-2 million 10 था. 10 था. नहीं 10 था. 10 भाई 10 million. 9.9 या 8 था. 9 या 8 था. I'm just not remembering the number. Okay, but still bro, 9 million भी अगर followers हैं, and if he has put up a post कि मैं video editors hire कर रहा हूँ, it's still a big deal you landed that job. Because you had to edit and compete with other. पहली बात तो जिसने देखा होगा इस 1000 में से 100 बंदों ने ही वो सबमिट किया होगा टाइम पे. Absolutely. एंड उन 100 बंदों में से 10 लोगों का उन्होंने क्वालिफाई किया होगा, एंड देन 1-2 बंदे पसंद आए होंगे, फिर शक्ति सेलेक्ट हुआ. बट इस प्रोसेस को भी होने में it takes a lot of skill set, it takes a lot of a big selection process where a creator has to see multiple videos and then finally come up with something that resonates with his style and the taste, right? So don't think anyone got lucky. अगर कोई भी बंदा यहाँ तक देख रहा है, so please never think about this thing कि कोई भी बंदे को तुम इंटरनेट पे देख रहे हो and just saying oh भाई ये तो लकी हो गया. You just don't know the story yet, and if you'll know the story you'll understand कि अरे यार इसने तो शायद like पक्का ही मेहनत करी, शायद भी नहीं. So यार you told me. Just think about it. Just think about it, people. मैं 2020 में 21 में left my editing journey. 2023 3 या 4 साल के बाद I started afresh with again a decent laptop. So it was not at all easy. To be very fair, it was क्योंकि 2020 से 2024 में there is a huge difference in editing. I was using After Effects very little. 2024 में it was massive use of After Effects. So मुझे वो भी नहीं करना था. So let me just put it out straight. It was very tough. Even to be very fair, let me just tell you one more thing. I had my CAT exams, so I had a decent percentile. So I was getting into a college, but then I chose not to because I always wanted to do this. I had one chance, and I just had to make sure either I'm going to Game Institute of Management Goa or I'm going for a new job. And I chose to do a new job, and I'm thankful that I did it because that is what satisfies my soul. And maybe MBA कर लेंगे, बाहर सब करेंगे अब, maybe करेंगे नहीं, I don't know.
But yes, it was a very tough choice and it was a very very tough decision for me. आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई तुम्हारे पास जी म्यूजिक का पोर्टफोलियो था, उसका फॉरेन क्रिएटर्स रैपर्स का एडिट्स था, दैट दे डजंट केयर, दे डोंट केयर, क्योंकि नीश अलग है. बट यू हैव दे टेस्ट यू ऑन देयर ओन प्लेट्स कि भाई तुम हमारा काम कैसे कर सकते हो. इट इज नॉट लाइक दैट व्हाट यू आर थिंकिंग कि भाई उसके पास पोर्टफोलियो था तो आ गया. पोर्टफोलियो डजंट मेक श्योर मेक्स यू लैंड अ प्लेस. योर वर्क और योर ट्रायल वर्क मेक श्योर कि यू आर ऑन द सेम प्लेस, you are landing in the same in a great place. Mm-hmm. Correct. And I agree with a part of it. Also, I want to clarify this thing. It doesn't mean that he's saying कि पोर्टफोलियो में अगर तुम्हारे कंपनीज नहीं होंगे या क्लाइंट्स नहीं होंगे अच्छे तो वो मैटर नहीं करेगा. इट मैटर्स. बट व्हाट इज सेइंग इज कि नीश इज डिफरेंट. व्हेन ही वर्कड एज अ म्यूजिक वीडियो एडिटर, म्यूजिक इंडस्ट्री में वीडियो एडिटर की तरह, तो अगर अब ये कंटेंट क्रिएटर्स के साथ काम करने जाएगा, कोई भी बंदा जाएगा, तो पॉसिबली हाँ वो देखकर इम्प्रेस हो जाएगा कि ओके ही हैज़ वर्क विद जी म्यूजिक, but what can he bring to my table? And if he can bring something to my table, then well and good, I can hire him. But if not, then क्या फ़ायदा म्यूजिक के साथ भी काम करने का, है ना? So that is what he wants to like emphasize on. Now, Shakti, tell me one thing. People these days, mostly freelancers struggle with learning the skills. They constantly ask me in the comments कि भाई रोड मैप बता दो, ठीक है? एंड आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट इट ऑन अ कॉल. कल हम लोगों ने बात करी थी कि हम कितना भी रोड मैप बना दें, बट वो करना फिगर आउट तुमको ही पड़ेगा इवेंचुअली. Absolutely. एंड And for the entire roadmap, Mradul is there. His channel is there. His channel is a gold mine. मैंने पहले ही बोला था. I started my freelance journey in 2025 this year, seeing all his content. I'm to be मतलब एकदम सच बोल रहा हूँ. It is not like I'm a layman. भाई सच मैं सच बोल रहा हूँ. I saw all of his video. मैं रट गया. मुझे मालूम है किस वीडियो में कहाँ बैठा है. I can say you this. आई एम इतना ग्लैड मुझे भाई. रटता है. सो यू हैव टू बी लाइक, तुम्हारी चाहत इंटेंट इतनी होनी चाहिए ना कि भाई तुम उसको ग्रास्प कर लो. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज सेइंग, व्हाट ही इज टेलिंग, व्हाट ही वांट्स यू टू अंडरस्टैंड. मतलब वो सब कुछ नहीं बता पाएगा, बट व्हाट ही इज मेकिंग यू श्योर कि इतना इतना समझा रहा है. ही इज मेकिंग सो मच एफर्ट इनटू दिस एंटायर, ही इज प्रोवाइडिंग सो मच वैल्यू टू अस. वी हैव टू ग्रास्प इट. एंड आई नो if 10k people are watching or 20,000 people are watching, only 10 or 20 people are really implementing it, and with intentfully 2 or 5 people. I don't know भाई, अगर आप उस एक या टॉप 0.1% पे हो, then you are not, then you are in the camera, I know for sure. Yeah. So yeah, I'll add to that question that I was asking. How did you start your learning process? What does your learning process look like? कि मैंने यहाँ से start किया था, then I eventually shifted to these platforms. And what do you think an editor or a freelancer should focus on? You can specifically talk about video editors because you are a video editor. So these are two Absolutely. set of questions. How did you learn? What is your process? And secondly, the way that the video editors can maximize their learning process. Sure, I wrote it down the questions. So first, I'm answering the first question. How did I learn? So basically, I was doing all the client works and I was seeing a lot of things which I couldn't do, but I needed to do. And that point of time, there was not a decent kind of portfolio, not a decent kind of YouTube tutorials available out there. तो मैं ऐसे ही अपने में एक्सपेरिमेंट करता था. दैट आप प्रीमियर यूज करते हो, यू मस्ट बी नोइंग दिस ट्रांसफॉर्म की. तो मैंने ट्रांसफॉर्म को लेके थोड़ा बहुत खेलना चालू किया. somehow I saw a video जिसमें अपना वो शटर बंद करोगे तो वैसा ब्लरीनेस आएगा. I made an entire music video, इंडियन गाय का म्यूजिक वीडियो था. वो मैंने जूम इन जूम आउट करके पूरा वीडियो में वाई भी आ गया कि आई वाज मेकिंग जूम इन जूम आउट, एंड इट वाज वेरी रैंडम. टू बी वेरी फेयर, वेरी रैंडम. So you have to be proactively learning a new kind of skill set, watching Insta, YouTube, but actively you have to implement them also. थोड़ा थोड़ा implement करो. जैसे मैं अभी तो आप रील देखते होंगे भाई 50 आ जाता है. What I will consider is कि भाई जो रील में आप देख के सीख रहे हो ना, या तो उसको आप फटाक से एडिटिंग सॉफ्टवेयर में बैठ के कुछ कर लो, या फिर उसको देखो ही मत, क्योंकि इट मेक्स नो सेंस. आप भूल जाओगे और याद नहीं रहेगा. रील तो किसी को याद होता नहीं है. That time I used to consume long form, तो थोड़ा बहुत मैं implement कर लेता था, like the sky replacement thing. And उस समय वही था भाई 2019-20 में, 2019-18 में, that was like sky replace कर दिया, roto कर दिया. It was a big thing. Now it's very easy to do. And the roadmap which I will suggest you to do is you just need to see what people are doing. And today's era, people मतलब जो सिखा रहे, they are great. I know a lot of creators, Indian creators, छोटे छोटे creators है, वो इतना अच्छा से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने म्यूजिक क्यों स्टॉप किया था. आई नो दिस गाय रोहित प्रजापति हु यूज्ड टू शो अ लॉट ऑफ लाइक ब्रेकडाउन्स ऑफ टीजर्स एंड ट्रेलर्स.
एक्सीलेंट रोड मैप है, एक्सीलेंट गोल्ड माइन ऑफ अ चैनल ही इज, कि वो म्यूजिक को कैसे यूज कर सकते हैं, उसमें कैसे आप बेस डाल सकते हो, कैसे आप उसमें राइजर डाल के यू कैन मेक अ कॉन्ट्रास्ट एडिट. देयर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू कैन डू, बट द ओनली कोर फंडामेंटल व्हिच आई विल आस्क यू टू डू इज, आप लॉन्ग फॉर्म वीडियो पहले तो कंज्यूम करो एडिट सीखने के लिए. अगर आप सीख रहे हो तो शॉर्ट फॉर्म में आपको आप यू वोंट रिमेंबर. आई रेयरली नो समवन हु जिसको प्लगइन्स वगैरह छोड़ के कुछ किसी को याद आता है. और लॉन्ग फॉर्म जब आप देख रहे हो, ट्राई टू इम्प्लीमेंट एटलीस्ट 10% ऑफ इट. अगर आपने 10% भी कर लिया, दैट विल बी अ लाइक रिमाइंडर ऑफ यू कि अच्छा ये वाला किया था, नेक्स्ट आई थिंक उस वीडियो में ये था, लेट्स ट्राई दिस इन माय क्लाइंट्स वीडियो और इन माय ओन वीडियो. So in that process, I also did it in the same way in 2018, 2019, 2020. Even now, what I used to do is to watch a lot of content, a good content. मतलब अगर आप जितना अच्छा कंटेंट देखोगे, फॉर एग्जांपल वॉच अ लॉट ऑफ केसी नेस्टेड वीडियोस, वॉच अ लॉट ऑफ आई मस्ट से कॉलिंग फर्स्ट वीडियो, वॉच अ लॉट ऑफ गॉक्स वीडियो, यू कैन टेक अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम देम. यू डोंट नीड टू इम्प्लीमेंट ऑल ऑफ देम, बट आपका ना टेस्ट इवॉल्व होगा. एंड योर टेस्ट मैटर्स मच एज कम्पेयर टू योर एंटायर स्किल सेट. क्योंकि अगर आपके पास टेस्ट है ना, यू विल बी यूजिंग अ रेड फॉन्ट विद अ मोशन ब्लर, विद थोड़ा सा आप गॉशन डाल दोगे तो दैट विल लुक सिनेमैटिक, बिकॉज आपका टेस्ट वैसा इवॉल्व हो चुका है. आपका टेस्ट इवॉल्व नहीं हुआ, आपने बस कॉपी पेस्ट किया, तो बस आप सिंपल टेक्स्ट ऐड कर दोगे, दैट टू अ बेसिक वंस, नॉट अ sans serif or a different style which you want to implement. So I will say कि consume a lot of good content, and when you're consuming a tutorial, please consume a tutorial which is long form, क्योंकि आप तब थोड़ा implement करोगे, क्योंकि you're wasted, like wasted with VST, wasted around 20-30 minutes. आपको लगेगा यार थोड़ा बहुत implement कर लेते हैं. शॉर्ट्स में यू जस्ट नेवर रिमेंबर व्हाट्स द शॉर्ट यू हैव, क्योंकि अभी तो बहुत सारे अब तो ट्यूटोरियल डाल देते हैं. बट I must say you must consume long form. And please, if you're also editing, make sure you're editing long form content. That will change your entire perspective in editing. आप जो शॉर्ट फॉर्म में करते हो इट इज ग्रेट, बट जो आप लॉन्ग फॉर्म में करोगे ना, दैट टेस्ट रियल, मतलब इट इज लाइक टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई ऑफ लाइक एडिटिंग. आप T20 में तो सब छक्का छक्का मार सकता है, but T50 is a real test of game. You have to be patient. You have to learn a lot of skills. You have to learn a lot of skills. पहले वाला काट देना भाई. तो you have to learn a lot of skills, and उसके लिए म्यूजिक, पेसिंग, स्टोरी टेलिंग, नॉट आई एम सेइंग नॉट अबाउट मोशन ग्राफिक्स. मोशन ग्राफिक्स तो बहुत बाद में आता है. अगर आपका बेसिक स्ट्रक्चर भी आपने बनाना सीख लिया ना, कि इस वर्ड के बाद ये बोलूंगा तो बहुत इंपैक्टफुल रहेगा, कि यहाँ पे म्यूजिक रोक दूंगा तो बहुत इंपैक्टफुल रहेगा, that you need to practice, and for that you have to watch a lot of long form content. I will emphasize on that because I just love editing long form content. Although abhi ke generation mein I used to get a lot of short form edits, but I technically edit a lot of long form content because I just absolutely love them, love editing. That's crazy breakdown, bro. I loved it. So you talked about consuming long form content and creating long form content. So if someone is a video editor and he's not getting long form content from their clients, usually हमारे agency में भी there are few clients that just sends us short form videos or ads, doesn't necessarily want us for long form content. What do they do? How can they develop taste? That's a good question. Consumption can evolve your taste, but unless until you're editing it, you are not making it. तो भाई कैमरा तुम्हारे पास है, कोई भी छोटा मोटा भाई वीडियो बना दो प्लीज. इफ यू आर a day in my life as a video editor, a lot of videos over there. A day in my life in my college, if you're in college, please try to put emphasis on long form content. And if not, then try to make some memories with your friends. आप अपने दोस्त के साथ कहीं भी ट्रिप पे गए हो, थोड़ा सा वीडियो बना के ना उसको स्टोरी टेलिंग के हिसाब से एक बार बस वीडियो बना के देखो. एक तो आपका दोस्त भी आपको अप्रिशिएट करेगा कि भाई क्या ही वीडियो बना दिया, दे विल बी लाइक फॉरएवर ग्रेटफुल टू यू. And in a way you will understand क्योंकि it takes a lot of effort to bring a complete story. Random clips is something different, but a story is a way different. Like there's a lot of great guys who are doing it. There's a guy whose name is Rohit underscore CB. He made an undoubtedly like the gold mine of video when he went to Ladakh. भाई क्या ही वीडियो था. I was like shocked कि भाई इंडियन क्रिएटर्स भी इतना डेप्थ में आ सकते हैं. And he made an amazing long form video. There's another guy who made a home for his mother. Abhi just was recently he just glued up. If you know his Home name, for his mother, for Indian client, Indian creator. Indian creator. Abhi just blew up किया उसने. Just 2 or 3 months back. I don't know. I रोहित don't. सीबी का तो मैंने देखा है, but उसका मैं नहीं जानता. Maybe just give me some reference. I think maybe I Like would have. he was struggling with his house,
देन ही मेड श्योर कि बहुत काम किया उसने, अपनी मम्मी के लिए घर गिफ्ट किया, खुद का घर का एक कुछ अच्छा वीडियो बनाया था उसने, व्हाइट घर का. No, I don't know. I will share you the link, but that is a, like people they are just making documenting their life and just they're making an amazing video. Even one of Madhu's friend Ravindra Mitunjay, amazing guy, and Crazy see guy. the see where he's coming from man. भाई कहाँ से आ रहा है वो, उसने क्या करेक्टर दिखाया. I have a huge respect for him as well because if you can see his journey, आप 3-4 वीडियोस पहले से देखना. He's got the only benefit is he also documenting it. At the same time he also elevating his content और अपना skill set भी improve कर रहा है. And that is what makes you a complacent video editor. Like आपको सीख देख जरूरी नहीं है कि जो आपने मोशन ग्राफिक्स सीखा या फिर जो आपने स्किल सेट सीखा उसको क्लाइंट के वीडियो में अप्लाई करो. अपने खुद के वीडियो में अप्लाई करोगे ना भाई अलग ही मजा आएगा. I used to implement a lot of them in my videos, but currently I'm not pushing any content. But yes, if you having no clients, make sure you're documenting your own life. In a way, fruitful होगा दोनों पर्पस से. आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेटर होगा एंड सेकेंडली आपका आपका स्किल सेट और इनहेंस होते रहेगा क्योंकि यू नो यार यहाँ पे ना टाइम लैप्स होता तो भाई टाइम लैप्स से शूट कर लेते और टाइम लैप्स को आप एडिट भी करते हैं मस्त तरीके से. वो मैच कट लगा देते हैं हिक्सफील्ड एआई से आप दिन का शाम कर देते हैं. So you can get my context what I'm trying to say over here. That's it. And like you said that you can create content, but at उसमें दो benefits है, communication skills and skill sets का. At the same time, if you have a knack of, you know, the love for creating content, you can also blow up. Like that is an additional benefit, and you can keep editing videos for your clients. There's no harm in that, and be a content creator as well. No worries. I was creating content for video editing since till 2024 start, I think. And after that, I shifted to freelancing. So I was a video editor for other people, and I was creating my videos as well. Win-win for me. I built an audience, and you never know where you can reach with the content game. You just never know. You never know. Yeah. Content plays a massive scale. If you're a video editor, only your known connections know you. But if you are a creator and a video editor, I think you have the world to explore. And for the audience, for the new freelancers, I want to ask you this question. You landed a job. First of all, how did you land a job? Did you get the form and you applied to it? Was it that, or did you cold out? I think it was a form, right? Yeah, I got it from LinkedIn. Okay, you got it from LinkedIn. So if people, any people are looking for the jobs, they can go to LinkedIn, search for the jobs, and they can apply there. But if Apply there. You like video editors, graphic designers, coders are doing freelance thing and want to land their own clients, what is your usual process? What do you do to land clients for yourself? Because you are now shifted to being a freelance video editor. You have now shifted. So since March, and it has been, I think, 9 odd months. 6 months. 6 months. 6 or 9 months. Yeah, it's December, bro. So no man over. You forgot. Yo, because freelancing game is such a like it's a nightmare. To be very honest, it's a nightmare. Because you are not able to take rest. You are constantly working. I can feel you. Anyways, yeah. So it's already 8-9 months. So how do you land clients right now? If you had to give a framework, if you had to give any approach or the mistakes that people do, what would it look like? So first of all, guys, अगर मेरे पास टेक बना का टैग है, तो let me just be very honest with you. It gave no benefit to me. No benefit. कोई benefit नहीं मिला. Zero benefit. What benefit I had was I can make good videos. That is the only benefit which I can sell. And to be very fair and to be very honest, I got my first client. Just I made a cold outreach. मतलब मैंने किया तो बहुत cold outreach, लगभग 50, 100, 200, 1000 mails किए होंगे. After seeing a lot of videos, a lot of tutorials, I got a client. He asked me, "See, I don't want to see your portfolio or anything. I'm sending you data, and also I'm paying you some kind of a test amount of money, like a trial के लिए पैसे देते हैं. Are you able to make sure that you are able to make a content which I make?" And I was like, "Yeah, I can." But that was a huge, मतलब उसमें बहुत ही advanced 3D motion graphics था. I started working on it, but I was not able to complete it. Then मैंने उनको बोला कि sir, I'm so sorry about it. I'm a good storyteller, but I do a lot of motion graphics, but this is like at advanced level of motion graphics which I was unable to do within the 2 days of time frame. He just asked me, since you made the entire cut so good, because the cuts भी होता है, cuts में भी बहुत depend करता है, music selection भी बहुत depend करता है, बहुत सारा जो basic narratives था, that was great for the video. And what happened is it was like 5 minute odd video, और उसने मुझे बोलता 1 minute बनाने के लिए, and that I missed out. I thought it was the entire video he was asking.
तो मैंने 5 की वीडियो बना दिया, लाइक बट 10-15 मिनट का लॉन्ग फॉर्म था, तो 5 मिनट बना दिया. एंड आई यूज अ लॉट ऑफ टेक्निक्स. इट आई वाज यूजिंग अ टेक्निक्स फ्रॉम मैक्स जोसेफ, फ्रॉम केसी नेस्टेड. ऐसा थोड़ा मिक्स मीडिया टाइप बना दिया था. तो he just liked the style of it. He just asked me, do you have you this is this your primary skill set, like you, मतलब ये तुम क्या पहले किसी को अप्लाई किए हो कि this is you? I was like, I am applying to you, and this is the style which I made during the edit. It is not something I have done before. He was just impressed of it, like भाई ये तो कुछ अलग ही चीज मैंने देखा. उसने बोला, I don't care about the 3D motion graphics anymore. Can you just deliver on this? I said, yes, I can deliver on this. And instantly he sent me, I must say, $400 for that film. He said like मैं इसके लिए $400-500 दे सकता हूँ. I'm gonna send you this. He was charging like उसने 1 मिनट का वीडियो के लिए he was paying $50 as a trial. Somehow मैं गलत समझा, तो that was also concern कि मैं सोच, मेरे को लगा कि भाई पूरा वीडियो बना के देना है, और उसने पहले मेंशन नहीं किया था कितना पैसे दे रहे हैं. You are saying you are going to make your 60 second of video. मैंने वो मिस आउट कर दिया था. But somehow I made the entire video, 5.5 minutes का, and he was impressed with the entire style of it. It was not the motion graphics or the heaviness of it. It was the entire video style of it. So then he asked me, now if you are asking me कि भाई आप कैसे reach out करोगे client को, and how do you get much more clients? So the process which has worked me was cold emailing. I got my first client, like I said. Maybe his expectation must be different, and your deliverables must be different. Like in my case, बहुत बार होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको client मिला उसको पूरा convert कर लिया and then you are matching at the same time. But I must say कि cold email hits better as compared to any kind of other format, any kind of other things. क्योंकि बाकी आप करोगे, हाँ ना में चांस फंस जाएगा, बट कोल्ड ईमेल में either if he's interested or not, you can make it out, and even he can also make out from it, क्योंकि वो आपको पे ट्रायल एडिट भेजेगा. आपने अगर डिलीवर कर दिया, then it's well and good. That worked for me, but yeah, it was a very different case for me. But like मेरे जिंदगी में हमेशा यही हुआ. So like to be very honest, it is like करना कुछ और होता है, होता कुछ और है, but in a way it makes way for me. But yeah, the edit which I made, that was a super sick one. I just made sure कि like मेरे पास 2 दिन में जो कर सकता हूँ, the kind of amazing जो magazine का मैं कट आउट निकाल के उसके, I can't explain it in a way. I just did it in a way. You just have to think about Max Joseph का style या फिर Casey Neistat का style. More of a Max Joseph, where a lot of magazine का cut out and a lot of posture mixed media has been used in the creating and editing the entire story. I just made the entire story look much more appealing as compared to the motion graphics part which he was asking me to do it, because I was not great at it. और मेरे को आता भी नहीं था. वो कौन जाएगा वो डबिंग उसको ब्लेंडर खोलेगा, और मेरे मैक में ब्लेंडर में कौन इंस्टॉल करेगा, लेट इट बी. Okay. So you said email works, and that's absolutely true. Works for us as well. LinkedIn works as well. I've been testing LinkedIn. So for those of you who wants to test a platform for cold DMs, LinkedIn is your way to go for now, and take the advantage of it as much as you can while it's working, because when it will not, you'll be only left with cold emails. So that's another thing. Also यार मेरे को या और other freelancers को, just tell me about a little bit of your framework of cold emails. How do you write? What is the process of it? Can you give us a reference of your email? Yeah, I have learned a lot of, I would like, मतलब अभी तो मैंने बहुत सारा implement कर लिया है. Firstly, I just make sure the client, the prospect which I'm finding, they do really help of me or not. क्योंकि बहुत सारे जो I can't mail Mr. Beast, makes no sense. ना दिखेगा ना कोई बतेगा. So I have to make sure कि certain amount of creators, they need your help. For example, creators under 250K. This is like a first benchmark, क्योंकि उनके नीचे ही लोग जो है उनके पास टीम नहीं होगा. उसके ऊपर जितना भी है 500 के 600 के या 1 million, they do have their own team, and they really don't want a lot of like deliverables to be given outside. Two of my creators are there whom I working as a like a creative director and as an editor, but that is a different scenario क्योंकि that they reach out me from the perspective of tech burner, कि उनको मालूम था कि मैं टेक बर्नर में काम किया तो उन्होंने मुझे रीच आउट किया था. So that's a different case. But अगर आप खुद से रीच आउट करोगे, maybe you can land to a very high client like जिनका 1 million 2 million 3 million हो, but chances are mostly if you want to land it like you आपको चाहिए try out all the creators under 500K, you will be hitting someone कि भाई हाँ मुझे तुम्हारा need है. That's the first point. And second, how to draft your like email. Just see कि उसमें क्या कमी है. Just see कि क्या कमी है. Even a smallest of mistake, मतलब mistake मत निकालो. Even like भाई यहाँ पे जो आपने म्यूजिक डाला ना, it's way off as compared to what it should have been used. या फिर the motion graphics which you made it could have been better.
या फिर द इंट्रो विच यू मेड ना इट इज नॉट कंपेलिंग मी टू सी, मतलब मेरे को उतना मजा नहीं है देख के. इट इज लाइक, आप अगर इफ यू आर इन द नीश यू मस्ट बी नोइंग हिडन हिलर स्मिथ. हेदन हिलर स्मिथ, ही मेक्स एन अमेजिंग स्टोरी टेलिंग. कैसे इंट्रो, कैसे द एंटायर वीडियो शुड लुक लाइक. When I was working with TechBana, I used inspired a lot and made an amazing videos for TechBana also. But in that way that I evolved my taste. जब मेरा टेस्ट इवॉल्व हुआ, देन आई कैन नाउ सी कि उस क्रिएटर में ना, अगर इंट्रो में अगर इसको इस तरीके से बताते, या फिर ये बहुत सारा बीरोल यहाँ डाल देते हैं, बहुत सारा साउंड इफेक्ट के साथ उसको इंट्रो में बहुत इंफोसिस डाल देते हैं ना कि दिस इज गोइंग टू हैपन लेटर इन द वीडियो, मे बी द वीडियो वुड हैव परफॉर्म मच मोर बेटर, एंड I would have been amazed to see the entire video as compared to like a normal intro. So बहुत सारा फैक्टर्स होता है जो आपको समझना पड़ता है कि इस वीडियो में क्या क्या बेटर हो सकता है. आप पहला लाइन वही डालना कि हे मिस्टर स्मिथ, आई सॉ योर वीडियो एंड आई जस्ट लव द फ्लो ऑफ इट, या फिर आई बीन फॉलोइंग फॉर सो मेनी इयर्स, बट योर रिसेंट वीडियो is sick, but if this would have been done, that would have been much more better for me to consume or something like that. Then you tell about yourself that I have been working with this creators and I would like to extend my services of video editing to you on my creative direction or anything else. Like I would like to have a short form edit for you. I would like to do anything for you. Anything मत बोलना, कुछ भी ऐसा बता देना कि like I would like to extend my services for you and thank you. And a small portfolio or a great work link. My best work and my portfolio. भाई दो लिंक ही भेजना बस. वो बेस्ट वर्क का लिंक भेजना, और बेस्ट वर्क शुड बी रिलेटेबल टू हिज कंटेंट, दैट यू हैव टू मेक श्योर. या फिर 50% रिलेटेबल, अदरवाइज दैट वोंट वर्क. क्योंकि मोस्टली व्हाट आई हैव सीन, वो जो क्लिक करते हैं वो पहले वो देखते हैं कि तुम्हारा वो क्या है, रिलेटेबल वर्क क्या है, देन यूज टू चेक देयर पोर्टफोलियो. तो अगर रिलेटेबल वर्क उनको पसंद आ गया ना, तो पोर्टफोलियो देख के देन दे यूज टू रिप्लाई, ओके आई वांट टू कनेक्ट विद यू, दिस इज द टाइम. So that is it. The framework is understand what is missing from the videos. Yeah, what can be done better in these videos. You just have to, the first line should be only that. नहीं एकदम स्टार्टिंग में बोल देना कि भाई तुम्हारे वीडियो में ये improve हो सकता है. Start with a good humble note. I love your videos, something like of that sort. Then in the second line you just need to mention कि भाई ये fundamentals could have been better. In the second para you introduce about yourself. In the third para, the CTS, which is your good best work link and your portfolio. Simple. कुछ नहीं करना, ये तीन ही पैरा होता है. उससे ज्यादा तुम 50 ईमेल भेजोगे नहीं दिखेगा, छोटा भेजोगे नहीं दिखेगा. तीन भेजो, स्ट्रेट फॉरवर्ड भेजो, काम करने का करेगा, नहीं करने का नहीं करेगा. सिंपल बात है. Correct. That is work for me. It will work for most of the people. People just don't understand that simple things scale. And I've repeatedly talked about this in the masterclass as well. कि भाई simple चीज़ें करो but multiple time करो. Over the year अगर तुम वही 10 15 20 emails भेजते रहोगे daily, you'll eventually be there. And this is the thing that is coming from me who has learned it the hard way this year as well. So please, simple things scale a lot. By the way, just if you have any reference of the email, you can blur out the emails, name and everything of the prospects. You can send over the reference to me so that I can show to the audience. Sure, I will make sure that once the email wherever is super simple that really worked for me, I will send the same email, because that was the conversion email, because the client really converted on that email. Yeah, for sure. Please do. Again, there's one thing that I would like to correct, and I'd like to ask you as well. So while we were chatting and we were talking about cold emails, you were like, यार टेक बर्नर का नाम really मेरे को help नहीं किया है. But he didn't mean कि वो completely invisible है name. When he talks about tech burner, कुछ credibility build होती है. I know it because when I name drop someone whom I've worked with and has more than 1 million followers usually, and शक्ति के केस में 9 million से ऊपर followers हैं, it builds a certain level of credibility. हो सकता है 100 में से 99 लोग नहीं चेक करे जाके कि टेक बर्नर कौन है और नहीं जानते हो, और इंटरनेशनल ऑडियंस तो वैसे भी नहीं जानते होगी. नहीं जानते. अगर शक्ति इंडियन क्लाइंट्स को ईमेल करेगा तो इसके कन्वर्जन के चांसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएंगे. रीज़न इज सिंपल, इंडियन ऑडियंस को टेक बर्नर के बारे में पता है, इंडियन क्रिएटर्स को पता है, एजेंसी ओनर्स को भी पता है. तो ही कैन लैंड रियली गुड क्लाइंट्स और मे बी गेट अ गुड जॉब इन अ गुड एजेंसी. बट इंटरनेशनल क्लाइंट्स पे शक्ति का कहने का मतलब है कि ये चीज़ वैलिड नहीं है बिकॉज हिंदी का कंटेंट है टेक बर्नर का, एंड इंटरनेशनल क्रिएटर्स उसको नहीं देखते हैं. सो दैट्स वाई ही सेड कि जो उसका अप्रोच ऑफ कोल्ड ईमेल्स है दैट वोंट वर्क. द नेम ऑफ टेक बर्नर डजंट वर्क इन हिज कोल्ड ईमेल अप्रोच. बट he also told one thing during the call, and that is
he got, I think, two referrals. Two referrals. While he was That was a warm lead, which means they contacted me. It's not me exactly. contacting you. So when you're working with big creators, when you're working with some big names in the industry, you get a lot of referrals. And ऋषि के तुमने पॉडकास्ट अगर देखा होगा, मैंने पहले डाला होगा या मैं बाद में डालूंगा, उसके साथ भी पॉडकास्ट है, तो उसने भी बताया रेफरल्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट thing that you can have if you're doing or delivering great work. So that is something that you'll have to keep in mind कि yes, that name helps, but in a different ICP and in a different niche. But for him internationally, अगर ये international client को close करता है जो कि बहुत crazy client है, let's say Mr. Beast, तो इसका नाम भाई जहाँ पे भी ये ड्रॉप करेगा वो ईमेल चलेगा. So ये चीज़ भी समझने वाली है. And I'm coming off as a noob here. ठीक है, अब तुमने मेरे को ईमेल का फ्रेमवर्क बता दिया, मैंने रेफरेंस चिपका दिया वीडियो के अंदर. अब मेरे को ये समझना है यार शक्ति कि मैं एक नया एडिटर हूँ. ठीक है, मैंने एडिटिंग सीख ली है. अब यार मुझे क्लाइंट्स मिल भी जाएंगे, चलो मेरा वर्क अच्छा है, बट मैं क्लाइंट्स ढूंढूँ या प्रॉस्पेक्ट्स ढूंढूँ कहाँ से, क्या करूँ? एक तो यार लिंक्डइन तुमने बता दिया कि लिंक्डइन पे जॉब अप्लाई करो, ठीक है, दैट मेक सेंस, आई कैन डू दैट. बट यार शक्ति मैं नहीं करना चाहता हूँ जॉब, मेरे को फ्रीलांसिंग से ही स्टार्ट करना है. अब मेरे को ये बताओ कि मैं कहाँ से ढूंढूँ वो लीड्स, सम प्रोसेस, समथिंग दैट यू हैव इन योर हेड. First, let me just correct you, Mradul. You need to do that job. अगर Okay. आपने जॉब कर लिया एडिटिंग का, if you are in a good company, like I was in a great company, so I can really count on that. अगर आप एक अच्छी एजेंसी में काम करोगे, you get to know the entire framework of it. कैसे Correct. क्लाइंट को डिलीवर करते हैं, कितने टाइम में डिलीवर करते हैं, एंड जॉब मेक्स यू वर्क्स फास्टर. माइंड यू, आप फ्रीलांस में काम कर रहे हो, आप 2 या 3 दिन में काम करोगे. जॉब में यू गॉट ओनली 6 hours to deliver the same. वरना आपका जो मैनेजर है, he will be asking you out कि where is the work. So job makes you faster and it also makes you competitive क्योंकि सामने भी एडिटर है. You have to compete because वो सामने बैठे. It is like in a classroom. तुम्हें 90 आ रहा है 100 में, उसको 95 आ रहा है भाई, 5 मार्क्स आ रहा है. You have to make sure you are reaching to at least 94 or even 100 out of 100. So that is the one case. Secondly, अगर आपको क्लाइंट खोजना है तो I must say in today's world it is easier also, it is hard also. Easier क्योंकि बहुत सारे content creators बन चुके हैं. अगर आपको content creators के साथ काम करना है, you can easily have a DM to him कि भाई I'm a editor, I can render my services. Also the only concern is कि वो बहुत बार वो मिस आउट हो जाता है क्योंकि वो उसमें उनके रिक्वेस्ट में आ जाता है. बट आपको नहीं करना चाहिए, इट्स नॉट अ क्वेश्चन, यू हैव टू डू इट. ऑल्सो अ लॉट ऑफ स्मॉल क्रिएटर्स ओवर इंस्टा और ओवर फेसबुक, ओवर इंस्टाग्राम, यू कैन मैसेज अ लॉट ऑफ देम. दे मे नॉट बी रिप्लाइंग टू यू, बट चांसेस आर कि वो रिप्लाई कर ले. आई एम टॉकिंग अबाउट यूट्यूब के क्रिएटर्स. आई डोंट थिंक यू शुड बी अप्रोचिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड क्योंकि उसके लिए आपको उनका ईमेल निकालना पड़ेगा. देन यू हैव टू मार्केट इट. इट इज अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर. ईमेल मार्केटिंग इज अ डिफरेंट थिंग. इंस्टा मार्केटिंग, इंस्टाग्राम में आपको डीएम करना इज कंपैरेटिवली इजी. सिंपल, आप चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट लिख दो. अगर आपको से भी नहीं हो पा रहा है, एक पोर्टफोलियो बना लो एंड आस्क द चैट जीपीटी मेक अ शॉर्ट नोट दैट आई एम अ वीडियो एडिटर, आई वांट टू रेंडर सर्विसेज एंड दिस इज माय क्लाइंट हु इज वर्किंग इन फाइनेंस या फिर हु इज वर्किंग इन ब्यूटी निश. आप मेरे को छोटा सा ड्राफ्ट कर दो और अ कोल्ड पिच. चैट जीपीटी वाला जो वर्ड होगा थोड़ा सा आप अपने हिसाब से उसको फंडामेंटली चेंज कर लेना, और आप कम से कम दिन का 5 से 10 आप डीएम करते रहो. This is not, I have an idea, I have not done it, but I think this might work for getting a first client. And once you get your one client, एक client आपका freelance में मिल गया, it's easy for you to get another क्योंकि उसके reference से आप दूसरा काम निकालोगे, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा. But that is a loop. The only first client is a really tassel, is a very big thing. Even when I started my freelance journey in 2025 this year, it was a very big thing for me क्योंकि it was not easy. I can get you, I have been in your shoes. आपको लग रहा होगा नहीं, but I have been in your shoes. यू हैव टू ट्रस्ट मी. बट हाँ, आप अगर मैसेज करते रहोगे, क्या पता किसी ने देख लिया, और अगर नहीं मिल रहा है, गेट योर जॉब. क्योंकि आप जॉब करोगे, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा. और आपका हो सकता है कि दे में साइन योर एनडीए कि भाई यू कैन ऐड दिस टू योर प्रोफाइल और यू कैन शो दिस क्लाइंट. आप पोच नहीं कर सकते क्लाइंट्स, बट आपको समझ में आएगी कि ये वीडियो कैसे एडिट होती है. फॉर एग्जाम्पल, एक टेक क्रिएटर की वीडियो कैसे एडिट होती है वर्सेस एक फाइनेंस क्रिएटर की वीडियो कैसे एडिट होती है वर्सेस एक पॉडकास्ट का क्लिप्स कैसे कट होता है. अगर वो आपने सीख लिया ना, देन यू कैन पिच मच मोर कॉन्फिडेंटली कि भाई तुम्हारे पॉडकास्ट में ना ये दिक्कत है, आई कैन सॉल्व इट एंड आई हैव मेड इट. अगर तुमने एक बना के भी भेज दिया ना फ्री में, थोड़ा मेहनत ज्यादा लगेगा, बट अगर तुमने बना के भेज दिया, बट यू हैव टू वेरी श्योर कि उस बंदे का वीडियो खराब है एंड यू हैव टू श्योर कि वो बंदा देखेगा. क्योंकि यू हैव टू मेक, otherwise your मेहनत will be wasted. That I don't want. इसलिए द बेटर वे इज टू, पहले आप एक जॉब करो अगर आपको जॉब मिल रहा है तो.
नहीं मिल रहा, then the Insta DM is the only option which I think will be very much credible to you. क्योंकि LinkedIn में भी I think I have been on LinkedIn, I have a great profile क्योंकि मैंने 3-4 पोस्ट अच्छे किए थे तो मेरे भी अच्छे कनेक्शन बन गए थे. But then I didn't use it for getting my clients because LinkedIn में there's a different kind of clients. For example, they are VC venture capitalists है, बहुत सारे आपके real estate के people है, बहुत सारे है creative directors भी है, बहुत सारे एजेंसी वाले भी है. बट आई विल से कि अगर आपको क्रिएटर के साथ काम करना है देन इंस्टा इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आता है, हो सकता है वो देख ले, हो सकता है, आई डोंट नो. बट इन लिंक्डइन यू कैन ट्राई, बट वो आपको रिक्वेस्ट आपको 5 ही मिलता है शायद से महीने का. If you have So that premium, you can just send as many connection requests as possible, and in mails 50 मिलते हैं per month. So you can do 50 emails a month, but everything can be high quality in there. हाँ, if 50 of your leads are great, भाई एक तो कन्वर्ट हो सकता है, इट्स देयर अ स्मॉल चांस ऑफ इट. बट यस, अगर आपने 2 महीना किया, 100 ईमेल्स किया, लिंक्डइन प्रोस्पेक्ट्स को आपने मैसेज किया, हो सकता है यू मे लैंड अप इन वन ऑफ देम. एंड माइंड यू, योर फर्स्ट क्लाइंट इज टफ बट योर सेकंड क्लाइंट विल बी द इजीएस्ट, क्योंकि पहला क्लाइंट आपको बस क्रैक करना पड़ता है. देन यू आर गेटिंग द इंटायर, तब यू आर गेटिंग इनटू दैट माइंड, अच्छा ये करना था, ये करना था, ये करना था, ये करना था. यू आर इनटू दिस गेम एंड यू विल बी इन दिस podcast, in this you will be in this masterclass. Again, I'll reinforce that question ki how do you find leads right now if you're open to sharing that process? Yeah, so currently I found out this great platform called YT Jobs, and I made sure that all my profile is updated and all my work which I have done is now accredited. So that is something which is great, and that has helped me to like blow me up and instantaneously getting much more clients as compared to what I used to get. मेरे को मालूम ही नहीं था कि YT Jobs करके एक प्लेटफॉर्म है और उसमें you can upload these videos क्योंकि you have worked with the creators and you can get their accreditation and you can work with other creators too. So that was a very different thing for me. I just got to know about it like 2 or 3 months back. Now when I'm accredited with this creators and I have all those बाकी भी creators से मेरे को बस वो अप्रूव करवाना पड़ता है. You get this badge. जैसे मान लो आपका 100K के creators का आपने काम कर लिया, you get this silver badge. You have worked with a creator who has 1 to 9 million followers, you will get a golden badge. And if you work with creators who has above 10 million followers or 10 million followers subscribers in YouTube, you will get a diamond badge, which is very rare. बहुत कम लोग के पास ही होता है. So that has helped me out a lot. So I really don't want you to compare on that front, क्योंकि आपको पहले 12 मिनट का चैनल खोलना पड़े, मतलब में काम करना पड़ेगा, क्योंकि people who are at 10 million, they are not looking for freelancers. I must say this. Even if they are looking for a very different set of like problems. For example, कुछ 3D या कुछ एक्सट्रीम मोशन ग्राफिक्स करवाना या फिर कुछ एक कोर्स का मॉड्यूल बनवाना, they will going to reach out to them. But उनका खुद का क्रिएटिव वीडियोस के लिए they have their own team. I was with Ekbana. I led the team of seven creatives. 5 of them were in-house video editors. 2 of them were freelance motion graphics designer. क्योंकि as a video editor, your job is to edit the video. Motion graphics designer का काम होता है motion graphics design करना. At Technical speed comes at fast. एक long form video एक दिन में edit होता है. That might sound very vague to you, but yes, that's the speed which also I have. एक long form video 12 से 15 मिनट के video with a lot of B-roll, lot of graphics एक दिन में मैं edit कर सकता हूँ. I have a lot of videos I've done it. So that is the space which I'm saying कि इसलिए अगर आप एक जॉब ज्वाइन करोगे, आपकी स्पीड बढ़ेगी तो आपको समझ में आया कि मैं ज्यादा काम भी कर सकता हूँ और कैसे उसको और प्रोसेस में बना सकते हैं. एंड दैट इज हाउ. तो मैं बोलूंगा कि जो ईमेल वाला जो मेरा अभी जो मैं फाइंड करता हूँ क्लाइंट्स, इज अ वे टू इट्स अ डिफरेंट गेम ओनली, क्योंकि अभी नाउ आई एम competing with international people. I will fair about it. There are a lot of international editors, which one is from Philippines, one is from Tehran. So मैं उनके साथ compete कर रहा हूँ so that I can land at a good position. तो अभी that's a different game. I'm not representing my nation. That's a real game. क्योंकि that's a very different game. To be very honest, उसमें आपको अलग ही चीज फंडामेंटल लगता है कि भाई how are we serving, what is the client servicing, and how are we delivering the projects, and उनके टाइम के हिसाब से मैच भी करना पड़ता है. That's a different game altogether. And what are the services which we are providing apart from editing? Like how we are managing the projects using Notion, using Slack, using Trello, using Monday.com, using all those database management. Like I've put out a NAS in my home ताकि उनका database management कर पाए, वहां से यहाँ पे transfer कर पाए. That's a different game altogether. So it is the way of. तो अभी उसके लिए उतना सोचो मत भाई. पहले एक अच्छा decent client खोजो that can help you grow and जो आपको salary भी grow करे. It's fair on that side also. एंड आपका मेंटल मॉडल को डेवलप करे कि भाई एडिट में और भी कुछ कर सकते हैं. इट इज नॉट द ओनली नीश, इट इज नॉट द ओनली थिंग. एंड आई एम फॉर्चुनेट इनफ दैट आई वर्क विद टेकबर्नर, क्योंकि
If you have noticed, Shlok doesn't make tech videos, he makes a lot of variety of videos. So if you must have the latest launch video, that's the entire creative direction was me with me. And a lot of great videos, a lot of supercar videos, a lot of amazing videos. मैं आप कोई भी श्लोक भाई कभी कोई भी आप वीडियोस देख लो, अभी टेस्ला साइबर ट्रक बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाई है. देयर वाज आल्सो लॉट ऑफ गैजेट वीडियोस, उसमें बहुत सारा म्यूजिक का काम होता है. डिफरेंट नीश जॉनर ऑफ वीडियोस. तो जितना आप जॉनर में काम करोगे ना, उतना आपका ना माइंडसेट खुलेगा. सो इट इज नॉट लाइक कि यू हैव टू डू दिस ओनली. तो आप जितना जॉनर में भी काम करोगे, दैट आल्सो हेल्प्स यू टू इन गेटिंग लॉट ऑफ बीइंग अ ग्रेट एडिटर. That's sick, man. Lastly, I want to end this thing with top three mistakes that you think video editors and slash or freelancers make that they really, really should avoid to land high ticket clients or grow in their careers. So, firstly, you're asking in the process of making it out, or in the process of you've already made it and then you have messed out with your client? मतलब पहले एक्विजिशन के पहले कि एक्विजिशन के बाद आपने मैसेज किया? Client Good acquisition. question. I would say I was asking for some generalized tips after acquisition and before acquisition. So let's do one thing. Drop 3 for after client acquisition and drop 3 for before client acquisition. That will be good. So for the first part of it, like before you acquisition of the client acquisition, I must say, before you just email the prospects, like I said, you have to make sure the related work which you are sending is almost in the same niche. आप कुछ भी अलग करोगे, he won't be able to understand your skill set of it. You can't sell a finance guy या tech video को finance में beauty वाले को आप blog, मतलब it makes no sense. आपको at least you have that kind of videos in your profile. Or I must say, give you a hack. Ask your friend about it. But this is a very very bad hack. अगर आपने उस पे काम नहीं किया, then you are going to be ruined for your life. So you can ask your friend who must be in that niche, ki, bro, I'm using one of your videos for this project, for my client acquisition, and the client may be impressed with you. Then he will be sending the footage, but you have to make sure you are going to make the same kind of effort in that video. A whole video जो आपने reference दिया almost similar. So that's a very negative of it. But yes, never steal anybody's work. Always ask for your friends or everyone, ki, is it okay for me, because I have a lot of I can edit great videos, but इस niche का ना मेरे पास है नहीं. For example, real estate का मेरे पास है नहीं क्योंकि मैंने कभी काम किया नहीं है. क्या मैं तेरे से ले लूं? Even I have done it, but with the utmost like respect of it. Ask them first कि भाई मैं कर सकता हूँ कि नहीं. But I am make sure कि अगर मैं client को वो चीज भेज रहा हूँ, the moment he sends me, I will learn the entire process of it, and I will make sure that वो जो मैंने reference भेजा उसके साथ वो match करे. So that is the hack of it. But what you're sending, the first thing has to match like what the client, what the creator or whatever the niche is, उसके साथ match होना चाहिए जो आप अपने document में भेज दो. That is before the acquisition. पहला. दूसरा, your communication should be great. Like आपने जो बोला, like जो first line, that is my cold email का pitch. Your first line should be impactful. It is like, हाँ भाई, this is the real problem. Like इस वीडियो में pacing की दिक्कत है तो दिक्कत है. That even the client will understand, हाँ भाई सच बोल रहा है, मतलब हाँ भाई सही बोल रहा है. The third thing I must say, finding a right client, right niche for you. You have been working in finance niche. Maybe अगर आप उस niche को explore करोगे तो you might get a greater client and greater synergy as compared to what you can do in a different niche. अभी दूसरा niche काम कर रहा है, कल काम नहीं किया. But अगर आप अपने niche को explore करोगे ना, for example vlogs. I know a great editor who works with an international client and he's from India. He edits for him. I don't remember the guy's name, but yeah, he is there. And मतलब जरूरी नहीं कि वो इस podcast में कहीं पे भी हो. But when I met with him in Delhi, he was like कि भाई I was making vlogs for this Indian creator, but I wanted to expand my horizon. So I landed up niching down in my own niche only. That was the vlogs. But आप बोलोगे vlogs के लिए कौन edit करने बोलता है? But बोलते बहुत लोग बोलते हैं. That guy used to visit all around the world. तो उसके लिए that was making him जो पड़ा कि भाई मेरे को shoot भी करना है, edit भी करना है. He was wanting someone who can make amazing cinematic videos. अब he was making a simple iPhone का वीडियो का कट बना रहा था इंडिया में. But when he got that prospect, he was asking a much more from him, क्योंकि उसमें ड्रोन का फुटेज था, उसमें Insta360 का फुटेज था, उसमें बहुत सारे एंगल्स थे, उसमें बहुत सारा स्टोरी टेलिंग था. Then he has to also upgrade. But yes, you can niche down on your own niche, जिस niche में आप काम कर रहे हो. So that was the three fundamentals. First one is
जो आप communicate, जो आप presentation दे रहे हो, the video which link which you are sending has to be almost in the same niche. Second, you have the question which you have arised in his video कि भाई इस वीडियो में ना ये दिक्कत है, that has to be a real issue, not कि थोड़ा बहुत वो मोशन ब्लर ये दिक्कत हो रहा है, ये दिक्कत, that makes no sense. It has to be of great impact और वो 3-4 वीडियोस में रिपीट होने चाहिए. ऐसा नहीं कि एक ही वीडियो में दिक्कत आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि उस वीडियो में बहुत ही कम टाइम हो या फिर उस वीडियो में रेंडर में कोई इशू हो, यू नो द सॉफ्टवेयर इन टुडेज डे, तो वो भी हो सकता है. बट या यू कैन स्टिल इन दैट केस यू कैन ईमेल देम. बट अगर 2-3 वीडियोस में अगर वो फंडामेंटली रिपीट हो रहा है ना, देन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड कि भाई ये देखो तुम्हारे 3-4 वीडियोस में प्रॉब्लम हो रही है. तो फॉर एग्जाम्पल, इट इज फॉर एग्जाम्पल, आपका ना म्यूजिक मैच नहीं कर रहा जो आप वीडियो में डाल दो. इट मेक्स नो सेंस आप इतना अपबीट म्यूजिक डाल रहे हो जबकि यू आर अ एजुकेशनल चैनल. इट मेक्स नो सेंस. यू हैव टू बी वेरी स्मूथ क्योंकि पीपल आर लर्निंग. तो बहुत धीरे म्यूजिक होना चाहिए, सटल होना चाहिए, सो दैट द लर्निंग इज हैपनिंग. द रिदम मेक्स यू जस्ट ट्यून इन टू द कंटेंट. इट इज नॉट कि मिस्टेक की जगह आप धूम 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 वीडियो नहीं डालोगे, ऑडियो नहीं डालोगे. So if that's a fundamental mistake which they are doing, there you can help them out. And the third one, as I have said, Okay, got it. And after client acquisition? after client acquisition, I can really help you on this. After client acquisition, the first thing which I will say, वहां पे भी कम्युनिकेशन था, एंड यहाँ पे पहला चीज है कम्युनिकेशन. भाई इफ यू आर नॉट एबल टू डिलीवर, से देम. इफ यू आर एबल टू डिलीवर, से देम. इफ यू आर एबल टू से कि भाई इसमें ज्यादा काम है, यू कैन ऑल्सो आस्क देम टू इंक्रीज द प्राइसेस. दिस इज द रियली न्यू गेम, क्योंकि इसमें आप यू आर पोर्ट्रेइंग एज एन इंडिविजुअल हु हैज सेट अमाउंट ऑफ टाइम टू डिलीवर द वीडियोस. अगर आपको उससे ज्यादा लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको मोशन ग्राफिक्स करने में 8 घंटा लगने को था, it took you more than 8 hours or 16 hours, it took you 16 hours, you can ask them ki the amount of hard work or amount of time which I thought this certain amount of motion graphics would have taken, it took me double of it. I would like to increase the pay. अब वो भी वो allow करता है because they can see your efforts putting in their content. And the first thing is communication. You have to communicate it. Like अगर if you are not able to deliver today, if you are sick today, they will understand and the deadlines will shift. That's not a hassle. But अगर आप if you have built your trust on the basis की, since you are staying in India, they are staying in anywhere across world, they don't know about you. उनको मालूम नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम्हारे घर में लाइट है कि नहीं, तुम्हारा लैपटॉप मेल फंक्शन कर गया कि नहीं, सॉफ्टवेयर है, 50 दिक्कतें होती है, यू नो इट. So please communicate about it because that's the first fundamental rule after client acquisition. Second is client servicing. Now I have a great thing in client servicing which I will, this is like hack for everyone which I have saved for you. आप जब भी क्लाइंट को पहला आपने वीडियो बनाया, देन यू जस्ट मेक अ डॉसियर ऑफ इट. डॉसियर मतलब कि ये इंट्रो था, मैंने ऐसा ऐसा म्यूजिक बनाया, ये इसका मिड, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग फॉर्म वीडियोस, तो ये मिड था, इसमें मैंने ऐसा ऐसा म्यूजिक किया, स्क्रीनशॉट ले लो, उसमें म्यूजिक म्यूजिक आप बता दो कि इस तरह का म्यूजिक मैंने डाला है. I do have a मतलब template of it which I make in Canva. It's a very random thing, but it's a very looks very cool. And आप उसमें बोलो कि now tell me, or you can have a Google Meet with them. Tell me what better could have been done. Now that's what sells you as a freelancer or as an editor. That sells you that you are a storyteller or you're a creative director. क्योंकि यू हैव टू अपलिफ्ट योरसेल्फ, यू हैव टू अप योर गेम. आप ये नहीं बोल सकते मैं बस एडिट करूँ, आप बोल सकते हैं मैं स्टोरी में डालना चाहता हूँ या फिर मैं आपके कंटेंट में घुसना चाहता हूँ. तो मैंने ये तो किया, बट अकॉर्डिंग टू यू, बिकॉज ट्रस्ट मी, क्रिएटर नोस इज बेटर. आई हैव वर्क विद श्लोक. बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत बड़े बढ़िया मोशन ग्राफिक्स मैंने बनाया, श्लोक वाज लाइक आई डोंट नीड इट, आई डोंट नीड इट, गेट मी अ बी रोल ओवर देयर. क्योंकि ऑडियंस विल रिलेट मच मोर टू अ बी रोल और अ विजुअल थिंग एज कंपेयर टू अ मोशन ग्राफिक्स. दे वोंट relate to it. And I मतलब आपको लग रहा हो कि भाई you must be fluffing because everybody needs motion graphics. No man, real impact has been delivered with videos. आप ये वीडियो मोशन ग्राफिक्स में नहीं कंज्यूम करोगे, आपको कोई भी मंकी मैजिक की वीडियो याद होगी एज कम्पेयर टू एनी ऑफ द मैग्नेस मीडिया की वीडियो. इट्स सिंपल एज दैट. आपको याद होगा, इट इज एज सिंपल. आपको मृदुल की भी बहुत सारी वीडियोस याद होगी, मतलब याद होगी, यू कैन रिकॉल, अच्छा यहाँ पे गया था मृदुल, ऐसा था वो सिनेरियो. बिकॉज वीडियोस, वी आर ह्यूमन बीइंग, वी love seeing scenarios as compared to we love see designs. Designs are there to elevate the story, not to make the story. Stories are made with real visuals and those has to be captured by camera like mine and yours. So that is it. You have to. And the third one is a great thing is जब भी आपसे क्लाइंट पूछे कि भाई इस वीडियो में ये क्यों नहीं काम किया, like why didn't the video looks great but the performance is not like that great, then you have this only simple answer कि sir, I tried my best, but I think I could have done it better. Can you help me out in figuring out the same with you? अगर आप दो शब्द ऐड करोगे ना, with you, that will change the entire game because a lot of people may not able to
retain a client for a longer time, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं मैं काम करूंगा, वो हाँ हाँ अप्रूव करते हैं हो जाएगा. But you have to add a fundamental twist to it कि सर हो सकता है कि मेरा काम अच्छा ना हो, या फिर हो सकता है मैंने काम किया उस अमाउंट ऑफ लेवरेज पे मैंने काम, जैसे मान लो 100 के व्यूज आ रहा था, 50 के 60 क्या है, कैन यू हेल्प मी आउट विथ यू कि हाउ कुड वी हैव डन इट टुगेदर एज कम, क्योंकि बहुत बार हुआ, क्योंकि हो सकता है कि आपका वीडियो हो सकता है दैट टॉपिक इज नॉट ग्रेट, आप उनको ये मुंह में बोल सकते हो इफ यू आर वेरी क्लोज टू हिम, और इफ यू हैव वर्क लाइक अराउंड लाइक 1.5 years, आप 3 महीने में आप ये नहीं बोल सकते कि भाई आपका ना कंटेंट में आपका टाइटल थंबनेल बेकार था. You can suggest them कि we can have put emphasis on title thumbnail. Also, I think we could have done it somewhat better in the videos. Can you help me out with you? क्योंकि अगर वो आप बोल दोगे ना, that puts the ball in his court. कि भाई हाँ चलो देखते हैं कि इसके साथ इसको समझाता हूँ मैं कि मेरे को क्या चाहिए. बहुत बार क्या होता है कि आपने जो बनाया वो क्रिएटर को थोड़ा उससे कम चाहिए था, कुछ और डिफरेंट चाहिए होता है, बट somehow he approves it क्योंकि उनको वीडियो जाना था. But sometimes if you ask him कि भाई you can help me out with you, they are going to support you because they nurture you, because एक बार आपने उनके साथ रिलेशनशिप बना लिया, they really nurture you कि भाई नहीं ये वाला कर, hopefully this will make the video much more elevate, this will elevate the videos. These are the three things. Firstly is communication, second is client servicing, how do you, मतलब पहला या तीसरा या चौथा प्रोजेक्ट के बाद, इवन आई मेक अ प्रोजेक्ट ऑल्सो फॉर द ईयर एंड कि हमने 10 प्रोजेक्ट किया, उसमें से ये प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आया, इस प्रोजेक्ट में सबसे लीस्ट आया, और इस प्रोजेक्ट में सबसे मॉडरेट आया. Now tell me what's your basis of it. This is what I do. This is my like personal thing because I have to make sure कि the relationship with the client goes on for a longer duration of time. That is it. First is communication, second is communication skills, and third is if you have made some kind of mistake or if your work is not putting out the value to it, just add a with you wala word and ask him if you can fix together instead of just saying कि भाई ये हो गया वो हो गया. That makes no sense. गलती को रेक्टिफाई करने का बहुत आसान तरीका है, साथ में रेक्टिफाई करो, रेक्टिफाई भी होगा, काम भी होगा, मजा भी आएगा इनफैक्ट. Perfect, bro. That was a really, really sick session with you. I hope the audience, like you, really got some good insights out of this. And if you have not, that is your mistake, not ours. We have tried to give everything that we can to make sure this masterclass is one of its kind and you're getting as much value as possible through these videos, through this particular video itself. And Shakti has given some real juicy stuff for you. You don't have to implement everything all in one go. Pick up 2 to 3 things that you can immediately go and implement, and then see how you can improvise that thing, and then come again, watch this podcast again, and then consume more of it. So yeah, thank you Shakti for giving us some real secrets about the industry and just some juicy stuff that you have in your head. Thank you, Madhu. Thank you for hosting me as well. And I will be putting out all those things which you have asked me, like my first video with and the second video, Sure. email templates and everything which you have asked me. I will, for the audience of it, ki, like nothing is fake, everything is real, and every struggle, every hustle will come to an end, and you will be a great editor or a great storyteller, I must say. Yeah, man. I mean, thank you. Appreciate your time. And it was nice talking to you, bro. Thank you, Mradul, for hosting me as well. And it was nice chatting with you in person as compared to on a telephone. Yeah, man. Thank you. Done. I got a question. So I'll tell you, I've been doing this agency work for almost 5.5 years now. But I always say content as my primary thing because I started my agency or I started freelancing with this sole purpose of like accumulating enough money so that I can buy a camera, I can buy the lights to start my content journey. So whenever I recently made a video on this, that I hate when I have to introduce people as I am a founder of an agency and stuff. Because very honestly, that does not highlight the creative part within me. So the dream has always been to create content, but along the way, the journey took me to a certain space where freelancing grew to multiple clients to gaining their trust enough to offer them, can I do the entire mandate? One client's mandate lead to 10, 10 to 50, and today we're doing an agency now for 5 years. But the impact an agency can make is very much monetary in my life, at least. I can take a decision from me, but impact that content makes for me, like it transcends a little bit boundaries. Like I grew up watching Casey Neistat, and what he's impacted on me, I wish to do the same, because India, we're still trying to figure out the space between quality and cringe.
So I'm a little bit trying to fix that gap, do my part in it, and do the best content people have seen. So that's why, like, whenever you ask me, I'm like, agency to ho jayega, content main hai. Okay. So as far as I understand, and for the audience, he's just doing the content because he loves that art. Agency is the main business because he started as a freelancer and it just snowballed into something big. Correct. And now he's running it. But to have some creative outlet, you are doing that content creation, and it doesn't really relate to freelancing in any way. You're not aiming for clients. You're not aiming for some monetary. I mean, monetary benefits are good. Part of it, but not the primary reason. Yeah. Yeah, it's not the primary reason. Yeah, got it. So to those of you who don't like, I've seen your videos, so I know the story. So my audience doesn't know your story as much. We have seen your agency side, founder side, most of the videos on the internet. I want to understand, like, really in detail, what was your freelancing phase? कि उस टाइम पे कैसा फील हुआ? अभी तो ठीक है, people see your success, people are like, okay भाई बंदा करोड़ों में छाप रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है. But जो starting होती है, what's that thing? Or how does that feel like? So Journey to first client. it's a very fun story. Like, COVID was happening. I was in my final year of engineering, and हमारे college में ऐसा, I guess सभी engineering college में, where last 6 months you have to submit a project or do an internship. There are no exams the last semester. So what that does is, I got free 6 months. It was anyway COVID year. I got a fake internship certificate, and I started like sitting for my placements, which were companies coming to our college. I got placed into Oracle, and after I got placed into Oracle, my mood swings were like, I don't want to go to that company. I don't want to do any job. And that was something that started basically the kida in my head, which is what else can I do? But also, what else can I do which is easier for me to convince my parents without them feeling like, hey, ये job क्यों छोड़ रहा है, या अब हाथ में बच्चा engineering करने के बाद नलायकी क्यों कर रहा है? So that is when the last 6 months I started filming in my house my mother's recipe videos. My mother's a pastry chef. So she used to create desserts every weekend, and I used to shoot like around 3-4 dishes every weekend with her. I started uploading on YouTube, and what happened was we created almost 50 to 53 videos in that span. Now in those 53 videos, there are so many videos. Usme, even in one video, if you have one good shot, two good shot, you can compile a reel around it, like, you know, crazy showcase reel show work. So I compiled that, and I started like, what if I start sending this to restaurants and stuff, and what if maybe they are interested in doing something like this? I don't know what I was thinking, and I just started DMing 1-2 restaurants out of curiosity, like, what do they think about this? And I shall have my exact message. I guess it's in one of my videos, if you want to put like what I used to DM them. So, hey, this is me. I do this is my work. Would love to do something for you. And in a day, I'd send 2-3 messages. Next day, I'd send like 4-5 more messages. And that snowballed into Instagram started showing me ads of restaurant. Because Instagram thought कि इसको restaurant में बहुत interest है, जा के page ढूंढ रहा है, तो it started showing me ads of restaurant. Now whenever ads were coming, I used to go on that ad, click on that restaurant, start DMing them. Shortcut save कर दिया था मैंने. Same copy paste message. So that turned to almost 700 message in a week. That 700 message led to first client getting back to me, which was, hey, we would like to do this with you, cool stuff. What's your commercials? And my exact logic was, एक लाइट 15,000 रुपए की आती है, ठीक है, 2 लाइटें लगेंगी, एक रिफ्लेक्टर लगेगा, तो 30 + 5 बोल दे 35,000. That client was like 8,000. 35 नहीं दे पाएंगे, 8 देंगे. I'm like, ठीक है, done. ठीक है. Only condition was, can you pay me that the day of shoot, like shoot खत्म हुआ, पैसे दे देना मुझे. That happened. That first client, the scenario was, I took 7,500 rupees from my friend, put that 8,000 rupees in, got the light and stuff. With one light, we did that shoot, but we did like, we put in our heart and soul in it. And I was copying Daniel Schiffer at that time. So if you don't know who that is, Daniel Schiffer is a great food photographer, great food videographer. He does this amazing transition clips around food videos. Like, you'll see cool shots that you open a Nutella jar and something else will transition into it, and all that crazy stuff he used to do. So I started copying that, which no one else was doing in India. And luckily, one of that videos like hit like decent 15-20,000 views
which was not the time of Reels. So that hit 15, 30, 20,000 views in the horizontal format, right? Then one of the clients saw that video. One of the person saw that video. Then they approached me, hey, you create this. How much do you charge and everything? And then I was like, last में 8 लिया था, इसमें 10 बोल देते तो 10 ये तो अपने को पता market rate इतना तो है बाबा. The 10 client got in and she was like, I want 5 videos. So total billing was around 2022. And her fiance was the marketing director of Starbucks at that time. Okay. I created, and he didn't take me seriously at all. He saw me in her house, I was filming and stuff, but he's like, हाँ कोई तो भी freelancer है, कुछ तो भी कर रहा है, Starbucks थोड़ी करता है इन लोग के साथ काम. ठीक है, he clearly gave me that. You know, I'm like, हाँ ठीक है, fair. But what happened was one of her reels went to 7.5 million, which I created for her. That snowballed into him connecting with me, doing stuff for me. So his agency, Starbucks, that is her fiance's agency, Starbucks जो manage कर रहा था, they came to me that we got your number from this. We have a pitch, we have a mandate. Can you come and give you ideas? I gave my ideas. They were a little hesitant before कि ऐसे तो नहीं होता है, because that was again very traditional way of doing. तब चल रहा था. So they were like, ऐसे ये तो नहीं. You do this what we are saying. You just shoot. So they assumed like, okay, my concepts are very far-fetched. वो practically doable नहीं है, which I was very sure कि वो हो सकता है. But initially 3 videos I did according to them. I did those videos. Again, all those videos were doing decent, way above their expectations. And slowly they started giving me recurring month. That's when I understood the concept of a retainer. So that's when they started, me, Rishi, a freelancer, was put on a retainer with Starbucks, who was shooting every month for them, and they were paying me around 80,000-90,000 rupees every month for 2 days of shoot. Which for me at that time was crazy. I'm like, 80,000 rupees sorted. I have matched my Oracle salary. Now I don't need to tell my parents that, hey, मैं job क्यों नहीं ले रहा हूँ. I am doing a better job. That solved my first thing, that engineering में अब job तो नहीं लेनी है. That's when the confidence came in. Worked with them, worked with more such 4-5 retainers along the way. जो client काम दिखा के clients मिल रहे थे. And when I had 6 retainers whom I was just shooting for, that's the time I decided I didn't want to work for any other agency, because I could see their scripts were limiting me. Their briefs were very copy pasted from XYZ reel. खुद का कुछ बना नहीं रहे थे, and वो बनाने में मजा नहीं आ रहा था. So I decided, out of these 5-7 clients that I have, कि let's approach 2-3 who will be like, can I do your entire thing? From creating graphics for you, creating your stories, briefs, videos, scripts, everything. Can you give me that mandate and I'll do it very KPI driven. Like if I reach this views, if I reach this, only then you pay me. So 2 of these clients put their trust in me, and just a heads up, both of them are still my clients till date. One of them is Irish House and one of them is Indigo Hospitality. Both of them are still my clients. And we started the retainer at around 75,000 per client. So imagine I took a back step. I took from 80,000 rupees just for shoot to doing the entire months of retainer at 75,000 rupees. Yeah. Today, those same clients pay me upwards of 10x of that fees, because that's the trust you gain them. So the advantage of retainer, you do great service, you get great recommendations. So that was the transition from freelancer to agency. Yeah, is there anything I've missed or something you want me to cover more? No, it's good. I'll just keep on asking the questions. Haan, Yeah, done. we'll get into it. Yeah. So, like Rishi, you said one thing, कि when you were making 80-90K, okay, and it was through just one client. Now you wanted to approach more clients, and उसमें जो जितने भी clients हैं उसमें से 2-3 clients को कहना था कि यार KPI driven मैं तुमको performance दूंगा, basically तुम उसके basis पे मुझको पैसे देना. Now this is where most of the freelancers struggle. They constantly think about कि यार मैं results उनको कैसे दे सकता हूँ. How can I promise something? How did you get the confidence first of all? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा mental चीज़ होती है कि वो कह नहीं पाते हैं. And secondly, how? Like, why did you think about that, and how were you able to do that? See, very honestly, it was also a lot of young energy, overconfidence inside you. At 21, 20, you are very young and stuff. And also, I'd seen results, right? I'd seen like last 4-5 videos are hitting great numbers. Ki worst video is hitting like 50-60K on that Instagram IGTV era, which no one was doing. And because it was very shareable, like those videos at that time were like, people are not used to so professional quality based, they're not used to such like transition based editing and stuff. So it was that, but very honestly, it was also more than that. Was, trust me, like from day one I was very clear,
uh, we are like, it's a service industry, like we are in the service business, and the only way I can get more work is by giving great service. So that was very much in my hand, that I am going to over deliver every single shoot of mine. We still do that, and the entire reason of that is, when the experience of the client is great, there are two things: either he'll call you back for another shoot, even if you miss your KPIs little bit here and there, if you give a great experience, वो रुक जाते हैं. ऐसा नहीं है कि हर महीने आपने जितना रील प्रॉमिस किया है, कहीं ना कहीं 19-20 होता है. It happens with them, correct? But the reason that it does great service compensates for that, or great experience compensates for that, because पहला या तो वो आपको वापस काम देगा, they'll give you recurring work, or they'll give you good recommendations when someone asks about कि where did you get this done from, who is doing this for you? Because more often than not, if one client, say in my case hotels and restaurants, if one restaurant owner knows at least 5 other restaurant owners, correct? So they are in that circle. It's the same for businesses, it's the same for any group of circle, where if you do good work, the other people in that group is going to be like, mine is not that great, who are you getting it done from? So the idea was, I'm going to do everything that's like to the T. And trust me, bro, that's all I was doing for last 6 months in the COVID. And before that, all I was doing was learning camera and bits. So that I was very sure that India में ये match तो कोई नहीं कर पाएगा. Okay. Now that might sound little like, how do we achieve this level in today's thing, because everyone's so much into cameras and everyone's refining their craft. Yeah. Not true again, very honestly. Not everyone's refined their craft. India still needs to work a lot on their taste, because people think like moody lighting and stuff is what does the job. It's very much on your taste. Like the story you narrate, the visuals you create, if your tastes are very well developed, competition is very low, and you still can get pods. Like we still do it. Like we still get into a newer. I'll give a very nice example. Recently, we hopped into a category which was baby care products. We were not doing any baby care products before this. We were majorly hospitality and FMCG. We got into that baby care product. We took them on board when they were doing 3.5 lakh rupees of revenue a month. Today, they are doing 6.5 crores of revenue a month. That is in 2 years. In that 2 years, I didn't take any baby care brand. मैं वो 2 साल से उसी baby care brand पे focus कर रहा था, except last 3 months. क्योंकि last 3 months में results मेरे पास पूरा data था. In last 3 months, I have closed 14 brands in the similar sector. Wouldn't be exactly baby care, but pharmaceuticals, baby, nutraceuticals and stuff. The entire reason is, if you focus on giving great work, great case study, that case study gets you work. Because किसके पास और है वो case study, right? Then you're competing with people who have that case study of 2 years result oriented. In the freelancing way, it's like you have the case study of 40 videos that have done very well. Who has that case study? So when they compare you, if they're going to compare you to इसके पास 5 edits है and इसके पास 5 edits है, that race is very big. But if they compare you to, he has 100 proven videos versus he has 5 proven videos, 5 videos, the choice is very easy. You're not playing in the same race at all. So that is what they want. In my case, 100 में से 50 तो मेरे मम्मी के रेसिपी वीडियोस थे जो मैं बना रहा था. अब उसमें there was no monetary expectation, उसमें there was no result that was coming in, videos में views भी नहीं आ रहे थे YouTube पे, very honestly. So it's that, like if you're looking for clients, number one, give great service. Great service gives great recommendation. Great recommendation gives great business. Always the mantra for any service industry. And if you want to make sure that you don't want to continuously find good new clients, make sure you over deliver to your current one, because more often than not, as long as they keep coming back, the pressure of you finding new clients is lower. Yeah. So just to sum up, you did the outreach for first week, जिसमें 700 messages हो गए थे. Then after that, you haven't done much of an outreach or zero outreach रही है. Everything is referrals. Everything is referrals. And for the audience, this is mainly because of the work, as Rishi has talked about. If you can give the quality work, you can expect recurring work and at the same time referrals of the existing clients. So that is like a no-brainer if you're in the service industry. Apart from that, Rishi, like you are an agency owner, okay? You hire a lot of people. What are the few things that you look for in a guy, or let's say we can go specific. What do you specifically look for in a video editor?
that okay, if this is not there, I'm not going to hire him. So I'm very clear with video editors. I don't have editors who don't. पहली बात ना, I ask them definition of editing because very few people in India know definition of editing. Please understand, editing and stitching is very different. Like I asked them this question, like, what do you mean by editing? 90% of our country knows stitch 10 clips together, color graded, it's editing. Editing has nothing to do with actually the tech part of it, the software part of it. Editing is everything, like how can you get out the story that was shot or fix the fuck up that was done on the shoot, correct, to build a story that audience connects with. So I look at the depth, like, okay, do you understand storytelling? Do you understand the conclusion and the establishment bits of editing? Can you establish, be it stakes, be it results that you're looking for, be it issues, and can you conclude it in a nice way? And even in a simple video, which is such as if you want to make a strawberry dessert, I look for an editor project that we give to them is make a start and a conclusion to this. There needs to be a reward at the end of it. And that's when an editor does that. I'm very okay with if they don't know fancy edit. I don't look at if they know After Effects 100% or trust me, majority of the clients as well don't. Except the Alex Hermosi of the world, जिनको सिर्फ है ना retention editing करना है, suddenly tick, 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 which is also dying. Very honestly, like that's not what I look at. I look at very people. Have they developed their taste to do storytelling? Do they understand the difference between editing and stitching? Don't give me stitched work. That's for interns. Give me completed work that tells a story. That's the only thing I look at them. I am okay if I have to then sit with them, develop them, in terms of technicalities, little bit. Correct. Because those can be fixed. Those are rote learning things. किसी को भी सिखा सकते हो. किसी को भी सिखा सकते हो technicalities. Can't teach them. I've tried. Can't teach them taste. I can't teach them the storytelling bits. Can't teach them because कई बार the editors that we have, they do it better than I do. Correct. Now I can't teach it to them because they're already doing it. They're applying their brains to it. They're applying their storytelling narrative to it. Correct. And there's something which is editors don't understand. There's something such as finesse. जो दिख जाता है if you editors sometimes start applying with very surface level knowledge. And then you can see when they submit their portfolio that there's no finesse in it. As simple as harsh corners, as simple as if they have 4 footages from different location, not matching the color temperatures of each, because they don't understand the color temperature is not technicality. It's like my moods are changing in 4 different situations, but the 4 different situations combined is telling me a story. You can't change my mood in every situation, outdoor to indoor. That's why you will see in my videos, when I shoot a lot of outdoor, I shoot a lot in studio, I'll make sure it looks a Rishi video. You remove Rishi from it, you'll see the visuals, you remove the face, and it'll be like a Rishi ka video. So that consistency is something that I look at a lot. I look at that taste if they've developed. Technicalities ठीक है, समझ जाएगा. And if I conclude it, so majorly soft skills, they can come under that umbrella, if I'm not wrong. Soft skills as in speaking and stuff? I'm okay with it. Yeah. Editors, the biggest advantage of editors is they don't have to be client facing. When you are working in an agency, because agencies have people which are dealing with the clients, getting the briefs for you. Correct. Yeah, so even if you're okay, even if you're introvert, even if you don't speak much, all good. As long as you think story. Yeah, okay. And most of the people who want to do freelancing, this doesn't apply to them. They might have to talk to the clients, they might have to go out there, present themselves in a better way. Yeah, or talk to the clients or create a portfolio that speaks for yourself. Editors again can be okay with not talking much if you're just editor, not an agency. If you're, because we're talking just about editors and how we go about hiring editors, or if editors want to do freelancing, you can get away with if you don't speak very well, if you're an introvert, as long as your portfolio of work is crazy. Because you write a great message, okay, I'll still check the link that you sent for your body of work. You write a shitty message, I'll still check the link that you have shared. Correct. Now if a great message, the link is shitty, उसके अंदर कुछ काम ही नहीं है ढंग का, तो मैं नहीं हायर करूंगा. But if a shitty message has a great portfolio of work, I'll be the first person like come in, like let's start working. And in my mind I'm like, चलो ठीक है. He's also a simple guy, hasn't thought about doing a chat GPT and stuff, which I don't want from an editor to be manipulative, right?
good unfair advantage. I'm very much okay with if the soft skills are bad. When we are talking about the agency, so most of the people नहीं editors starting में जब start करते हैं तो I've seen in my comment section कि वो hate करते हैं कि भाई job नहीं करनी है और किसी agency में काम नहीं करना है, Indian agencies pay नहीं करते हैं, this and that. So I want to understand from you, who is already running a good stable agency, कि यार how much of a range can a freelancer expect if he's working at a good stabilized agency जहाँ पर randomly कुछ भी नहीं हो रहा है, systems in place हैं. So see, I'll tell you, I have few editors in my agency that are with me for 4 years now. Very honestly, I'll tell you, when they joined in, they were at around 35K. That's 4 years back. Some of these editors today are earning more than 2 lakh rupees a month. And again, the thing becomes, what can they expect depends entirely on how their work is, very honestly. But if you're asking me, I can't comment for other agencies. Answering your first question that they hate doing jobs, I understand that why a lot of editors hate doing jobs. So try finding yourself an agency which is number one, very professional at their approach, has the system set as you rightly said. Because for example, see, we are a creative studio. We don't even call ourselves an agency. We have no punch in times, वो punch out times. We don't record कौन कितने बजे आया, कौन कितने बजे जा रहा है. All we record is what the deliverables are being submitted at the end of the day, right? And we have editors who leave at 3:30, who come at sometimes 11, 12, because they're that fast at their work. So it's a creative process, we're okay. They get paid well at the same time. A range, if you tell me, from a fresher editor would be around 55K today, that is 4 years later, 55K to 65K max. And upwards of 2 lakhs if the Yeah, if you have an experience of say 4 years, and by 4 years I mean good work 4 years, you can demand whatever you want. That then it's not a game of 2 lakh, 3 lakh, then it's a game of agencies will be fighting for you. कि मुझे ये चाहिए, because because I know editors who have also worked, who will also be offered only 20,000, 30,000, because again those are not editors, those are stitching guys. वो दिमाग नहीं लगाएंगे, they won't do what the work demands. They'll just stitch 5 clips together and put some visual effects to it and yeah, call it a day. But then there are editors, 50,000 I'm saying, for people who know the work but who don't have a lot of portfolio. Those are the people who join at 50,000. They create their portfolio, work in an agency. Agency is the best place to work to start with. Reason, you get good agencies have great brands. For example, today at Adco, you have a Marriott, you have a Google. We keep creating work for them. Having a Google, Marriott, and Radisson and all these bigger top multinationals as your portfolio gives you that leeway to then demand a lakh rupees, right? You can't go and demand a lakh rupees or 80,000 or 70,000 by, I don't know, but I'm a great editor. So that's not going to happen. And very practically, once you have that portfolio, and even my agency, like the reason the 30K guy today earns 2 lakh is, it's not that I might be able to get the same skill set guy for lakh rupees. But the thing is, more than the monetary value hit today, he is an asset for me. He saves what for me? Not the editing time. He saves me explaining time. He knows what Rishi wants so well कि मैं उसको call करूँगा, मैं उसको 20 सेकंड बात करूँगा, उसको पूरा edit समझ जाएगा. Which to a new guy, I'm like, oh, now I'll have to hire, then teach him for 6 months how I operate, and then that lakh rupee is not any value for me. So because why I'm saying this is because a lot of people today also have agencies. I see the iteration rates are very high. They jump very fast. Tuck, 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 tuck. Luckily, Adco we have very stable. Like as I said, that's the reason we don't have punch in punch out times. We do very creative stuff. That was the same reason. Like I want to retain my talent. I want to work with them. If I and again, there's no friend relation. There's no like, hey, I'm not promoting a family culture and ऐसा कुछ भी नहीं है. It's just that since they are very professional, they finish their task. I don't have to explain them much. That extra lakh rupees a month is a comfort value. So you also need to see that, okay, 1-2 years you're building portfolio, but 3-4 years, 5 years, you need to be someone's comfort value. It's either your agency में your employer or it's either your freelancing में your clients. Clients का भी same है. Clients won't switch an agency so fast if their agencies understands their requirement very, very clean. Like the reason Irish House is with me for 4 years or Radisson is with me for 4 years is not because उनको agency नहीं मिलेगा. There are multiple hundreds of agencies.
is that they know once Adco understands what they want, and Adco को समझाना नहीं पड़ेगा. They're working with us for so long. We can't afford to now get a new guy, make them do errors and mistakes जो starting में होती है, because it's a big brand. So it's the same process across. Be that comfort person, be an asset for the company. You're an asset, you earn more. And don't expect more than 50, 55K without a good body of work. Yeah, that's what I'm telling in Mumbai. I'm telling in a tier 1 city. It's very honest. People say Indian clients don't pay. Bro, I'm telling you, if you know your work, there are so many agencies who are looking for editors जिनका pay scale 2 लाख 3 लाख के ऊपर है. बट हर एजेंसी में वैसे एडिटर के 3 या 4 ही स्पॉट होते हैं. Correct? An agency won't have 3 lakh, 2 lakh rupees के 50 editors. They'll have 50,000 के 50 editors and they'll have 3 lakh, 4 lakh के 1 to 3 editors. So to be that 1, 2, 3, make sure your body of work is good. And if you keep... That's why like the market is not saturated. Yeah. People say market is saturated. It's not. Market is saturated with freshers who are not working on their portfolio enough and who want immediate money. Yeah, but again, अगर fresher भी हो, you know your art, you have the taste that you talked about, stitching नहीं आती, then you still can land some good jobs. Bro, my editor, my YouTube editor. So I used to, for the longest time, 2 years, I've edited myself. I told you I can't outsource. I don't understand. I can't give my editing to someone else. Correct. 4 months ago, I hired an editor. You know what's the age of that guy? Guess. I think you told me. I think 1920. 18-year-old guy, bro. 18. You know how much he earns? 1.5 lakh rupees a month. 18-year-old guy earns 1.5 lakh rupees. Because, bro, his taste matches mine. I don't need to explain him. The first video he created, which was the Bangalore agent. I'll tell you which video. You guys can go and see that video. It was the Bangalore agency's first vlog. We were in IKEA setting up our first Bangalore office. That was done by the that edit has 0 inputs from me. That edit had Sanko Tarun go, what the fuck is this guy? Because it's not the edit is crazy, it's the storytelling is crazy. Exactly. He understood that. And I was like, yes, ये मेरे को नहीं पता चला था कि you have not edited that. I haven't edited that. जब कॉल पे अपन ने बात करी थी तब बताया था कि यार एडिटर हायर करके रखा है वो फर्स्ट एवर वीडियो है. I was like, really? And look at his takes also. He joined in. He said, you give me 28,000 rupees, which was his exact cost of stay and food because he was from Pune. Oh, okay. He said this to me. He was homeschooled. He didn't attend his 12th. He was so sure इसको editing करना है. But he said, if every video you hit more than 10K, because that time my average was 6,000-7,000. That time my average was very low. Today my average is 30,000-25,000 minimum. But the change you see is like every video you hit 10K, you promise me you'll double it. I'm like done, yaar. And you know I'm possessive about content. I'm like done. Every video since then has hit more than 10K. My highest performing video, that is right now like almost around 3.5 lakh, edited by him. You understand? Asset. Agency वाला जो video था. Yeah. That's sick. It's asset. Ultimately, it's asset creation, right? Yeah. He becomes. And he's going to stick with you if this continues. Oh yeah. So right? I have clearly. So right now we have a deal going in that 2026 we have a YouTube plan that we need to by March we need to crack 100K. We already have a series that's already planned that we are very much sure. Thanks. Because so Instagram he doesn't edit. Instagram I still edit myself. Because Instagram for me is like 20 minutes I have to shoot and edit, so that's a very tight timeline. But we have the series and the plan is there's a lot of sponsors that are coming in. So we split. He gets a percentage of those sponsors in 2026. That will be great for him as well. So because then he feels part of the game, right? He feels it's his as well. So it's and he'll put in his efforts to make the videos thing. And he still does. I'm a good guy. Actually, that's what people want. What he's doing exactly what I said. Great service. Correct. So that it's easy to work with him. He's over-delivering, which he didn't have to when he started. Yeah. Correct. Simple. Expected less, gave more. Automatically, the person who's employing is like, please take more.
Now you're an asset. I'm not even thinking about replacing. You understand? I'm dependent. Yeah. Because running an agency and editing takes time. He edits it well. He edits very close to what I like. Our tastes are very similar. You take that money. And that is the thing that I've talked about in some of my videos कि client retention अगर तुमको करना है, we have also a client that has been working for us. I think April में हमारे 24 months हो जाएंगे, 2 years हो जाएंगे, and this is just one thing with something I don't know if it happens with you or not, but वो हम लोगों को ज़्यादा communicate करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. Project आता है, हम लोग ही basically सब कुछ manage कर रहे हैं उसका, except shoots because foreign client है. So we do all of the things and then उसको एक बार उसने shoot कर दिया और हमें दे दिया, फिर उसको एक बार पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई ये वीडियो कब जा रहा है. We just send it कि भाई मंडे को वीडियो जाएगा, वेडनेसडे को तुम्हारा पॉडकास्ट जाएगा, एंड उससे पहले संडे को उसको वीडियो मिल जाता है और ट्यूसडे को वीडियो मिल जाता है. स्लैक पे उसका लिंक होता है, नोशन पे सब कुछ अपडेटेड होता है. सो आई हैव सीन दिस माई सेल्फ एज वेल कि टू ऑफ द क्लाइंट्स जो कि हाईएस्ट टिकट क्लाइंट्स हैं अभी हमारे एजेंसी के अंदर, दे हैव बीन स्टिकिंग विद अस बिकॉज ऑफ द वर्क एंड एट द सेम टाइम द प्रोसेस दैट वी हैव मेड फॉर देम, बेसिकली विच इज वेरी easier for them to navigate. So that is like an additional note for you, or like उसी के साथ का ये point है कि yes, this is another case study that this thing is the thing that actually works. You'll have to deliver, you have to over deliver and make sure कि you're making the process easier for the client, and hence the client will stick with you. Correct. Yeah. It has to be as frictionless as possible. Exactly, yeah. And just it is a rapid fire. People tend to hate on jobs, as I told you before. तो jobs versus freelancing ये बहुत चलता है कि यार जॉब करना चाहिए या डायरेक्टली फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहिए. मेरा टेक है, I'll start first कि take the job, learn from it, and then start freelancing if you want to. Okay. What's your take on? I can't say anything about except freelancing because see, I never did a job. So if me saying job will be very hypocritical. So I would choose freelancing if I was doing it all over again. But for majority of the world, it should be job. Might sound a little odd, but majority of the world should be job to build your portfolio because again, if you want to do freelancing, then a lot of other skills come into the picture. You need to be great at speaking. You need to be very, very, very good at presenting your work to other people. Then the soft skills and XYZ other barriers come into the picture. And if you don't have those ready and you don't want to get into the hassle of it, or you don't have the business mind working for you, go for a job. Another thing, you don't plan to have a sales team in your agency right now or in near future because you are getting most of the clients from referrals. Correct. We don't have a BD, we don't have a outreach team. Everything that happens with us is even today. I can show you my inbox has almost 70 to 80 inquiries a day of clients coming in, which we can't cater to because we don't have the bandwidth. Okay. So to like it hasn't happened because of content. Those are inbound leads. All are inbound leads. So that has happened because you have given the great work. But how did that shift happen? Ki I'm doing the great work, I'm getting the referrals, पहले word of mouth से हुआ. Then you started getting DMs and all sorts of things. Did you build any social presence because of that? Because of that it happened, or was it some other factor that was playing into the picture? कि word of mouth इतना फैल गया कि emails are out there and you're getting bombarded in the inbox. See, the email bombardment happened after the content. Especially after Instagram content. No, my personal page. And in my personal page, I don't even speak about agency, or my personal page is not at all for, like, I don't even say what I do for clients. It's not at all for me getting work. But what happens is, on my personal page, they discover, and then they go and check Adco's page. And then when they go and see Adco's page and I always say, Adco website is probably one of the best agency websites in the country, in the world. We've literally put our efforts to make the Adco website. That is very much, we don't do bullshit, we don't write, hey, this is what we do. We show our work. आप agency हो ना, आप काम दिखाओ. And I say this to every agency founder as well. There are so many agency founders that I'm very annoyed with. So this is a controversial take.
who speaks so big about this is, I have done 7 figures, 6 figures, 8 figures. Great, show the work. Don't bullshit about it. Because we are service industry, we need to show the work what we've done. So whenever, like for example, when I created a video about we did a shoot with Google, my responsibility is to I literally showed that entire shoot, that entire process, and that entire thing that what we did for Google. That's what my website's also focused upon. The reason I get a lot of work is, see, a lot of people might see my content, but it's not that they'll translate to a funnel that is emails unless and until they see the work. It's the same freelancing link, yeah, you understand? हर चीज बस स्केल बड़ी हो रही है. आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, आप कितना ही खराब बोल दो काम मिलेगा. आपका पोर्टफोलियो घटे, आप कितना ही अच्छा बोल दो काम नहीं मिलेगा. So same thing, my website speaks for us. Adco's pages, we've recently done a campaign for Low Meridian, which is a hotel that launched in the first Low Meridian in India, Marriott Group. That's the best hotel launch campaign ever in India. That's not us saying it. That's the Marriott Group coming and saying us, flying us down to Singapore to please inform their team about how the strategy went so that they can replicate it. So the referral works strong when you dedicate yourself to a project. And what if the client has NDAs? Like they say that we don't want to show that. And you can't show that in the portfolio. Very few clients have that NDA. And that too is limited to, okay, you can't use their video to your monetary factors. But you can always show what you as an agency did. For example, the loophole is, hey, I'm working with this baby care brands. We grew them from this to this. These are the visuals we created for them. Don't say the brand name. Yeah. Legally, no one can stop you. Entire legal system in India is very good in terms of protecting your rights, although we are going down in the democracy bit, but it's still okay in terms of protecting your rights, where you are always open to showcase your work unless it's done inside an intellectually protected property space and stuff, which you don't have the permission for. But for example, I am creating something that I am shooting, which Rishi, like Google Office. And bro, agar Google does not have NDAs, no one has. Google is the most protected entity in the world, right? They'll do everything to not show. We showcase the entire office. They were like, listen, as long as you don't show the final video, because that's for them to monitor and them to decide when it goes out, we are okay with you showing your journey. And most of the clients, listen, my clients today tell me, क्या ऋषि तू ये अपने पेज पे भी डाल सकता है क्या? Because they get free publicity out of it. Every business wants business. Yeah. So today, like the channel that has helped me is it's also helped me monitor that I can monetize the Adco page or Rishi page if I wanted to showcase, yeah, this is what we did. Go check them out. I did that for the first Love Meridian post. I get around 20,000 views on my story. They got 20,000 views in the first hour because of that. Win for them, got the boost, win for us. So I don't think that's the problem. Again, there will be some 1-2 clients you have to, okay, they will be finicky. You don't want to legally fight them. Okay. Absolutely. Like we have one client that we have signed NDA with and we can't show their name or the work yet. So that's why I asked you about that. That might be that. But that's international client, right? International client, No, yeah. but there's the system is because you have not shot it. For international clients, we can't shoot it. So there is a patent infringement that unka data hai wo. Okay, that makes sense. In an agency, you still have an advantage that when you shoot it. Editing clients, yeah, there's a little bit left, right, center. If you're working with international clients, because you don't have all the permits for the requirements. It's someone else's footage. Yeah. अगर इंटरनेशनल क्लाइंट्स है तो हाँ, उसमें भी आप एक बड़ा अच्छा क्लॉज डाल सकते हो कि प्लीज पुट अ एक्सपायरी डेट फॉर द एनडीए. I can't use this for how long? Because it cannot be perpetual. Because if it's perpetual, then I'll charge you extra for exclusivity. Correct, okay. Because then because that's very simple. You take ownership agreement from me. You take the raws as well from me. Then it is your property. You want exclusive raws from me, you take exclusive raws from me. It is your property. You pay me extra for that. I'm okay. I won't show it. Yeah.
ओके सो लास्ट क्वेश्चन आई थिंक जितने भी मेरे क्वेश्चन थे जो मैंने जॉट डाउन करे थे कि भाई ये सब आंसर हो पूछूंगा, गए। वो सब आंसर हो गए। लास्ट क्वेश्चन जो कि विल हेल्प a lot of freelancers. If you were 21 today, how would you do the things differently? वो दो जो pillars हैं, that will stay the same. कि over delivery होगा, great work देना, handle with the referrals. How would you start again from zero without the knowledge that you have right now? I would probably do the same thing. The only thing that I would change would be I would improve my risk-taking appetite a little early in the game. I'll tell you why I say that. See, coming from a little middle-class family, like my father shifted to Mumbai when he was like in his 40s with 2 kids, and not so like matchbox little house and everything, and that made me a little frugal with money because I knew that money is not abundant in a household. And that made me a little conservative about money. Even so, when I started earning, when I got my first few paychecks and when I got first few money, after buying my equipment, I was like, हाँ इसको बचाते हैं, इसको business expand करने में नहीं डालते हैं. Okay. Which slows the growth a little bit. For example, if I would have taken my office on rent a little earlier, I would have probably been at this stage 1 year earlier where I am today. And again, the reason I say that very strongly is people think saving is what builds you money, right? People think today saving is what helps you in the longer term and this and that. The problem is what they don't understand is there are few people outside our environment which have the innate advantage that if they have 5 lakh rupees ना, वो 20 lakh का risk ले लेंगे. As compared to us, if we have 5 lakh rupees ना, we'll spend 1 lakh rupees in growing the business, keep 4 lakh rupees in a savings account. कि ये तो मेरे को पैसा बचाना है. Which is the most harmful when you are starting a business. The starting the business entire thing has to be in your own pocket. Basically, जैसे ही business हो रहा है, every money that you're putting in needs to go back into the business. Give the business anything and everything that you can to basically grow faster. Get your better resources, hire a better team, hire better editors, hire better spokespersons, social media analysts in my case and everything. Because what that helps is you take that journey which will eventually take you 2 years, you can do that in 6 months. If you reinvest in the business. Rather than जो Indian mentality होती है कि पैसे बचा के रख दो, है ना? And then आप ऑफिस नहीं लेते, आप remote working चालू कर देते हो, which also helped me. Like working at Starbucks was the cheapest method in Mumbai. I've explained in my video. People think Starbucks महंगा है. I've literally made a video about why Starbucks is the cheapest place. Yeah. I'm audible? Yeah. Okay. So that's the one thing I would change. I would change the risk-taking appetite. And yeah, rest is This is the same. Yeah, the same rest is principles the that we're same. working on. Because that innocence Okay. helps, yeah. That innocence helps. Not knowing a lot of things helps in that time. That overconfidence in the younger age helps in that time. So changing that wouldn't make sense. Okay. And branch out कर रहा हूँ मैं इस चीज से कि you talked about risk appetite and we somehow in teenage, late teens and early 20s, we try to glorify hustle culture. There's a lot of bad advice out there. I know you have to work for sometimes 12 hours a day. I do work 12 hours a day. I still take breaks. I do all sort of things. Why is that the case? कि जो actual hustle culture की advice है जो हम लोगों को follow करनी चाहिए. For example, कि instead of going and doing random productivity routines, starting with तुमने morning routine किया है, night routine कर लो, just doing the work. Why it's not out there and what do you think about it? What is your typical day looks like right now? I know you work Right now. You talk about it. Yeah, right now. Right now, it's a very messed up routine, very honestly. Like, as I told you in the beginning, I'm going to shoot now 5 videos after this conversation. So I sleep at around 4:30 a.m. I wake up at 9:30. I don't wake up early. There's nothing about me doing. Because my brain works at night, so I have to utilize that. I wake up at 9:30. I am at the office at 10:30, 11. And
So basically, the system is this is my studio, upstairs is my office. From 11:30 to around 7:30, I'm in the office, finishing the agency stuff, finishing the client requirements, sitting with the team, setting up the culture and everything. Post 7:30 maximum, I'm in my studio where the brain switches from agency mode to creator mode, and then I'm doing the creative bits of it. And the take on the hustle culture, but like I know you work a lot, but still you're not exhausted, you're not burnt out. Bro, I am burned out. I am burned out. Okay, then I am. I can't. People can see it in my face if I lie. I am. I have been burnt out for the last 2 years. Very honestly, that's the reason I take this creative breaks. I have a very strong belief that वो जो बोलते हैं ना, do what you love and you'll never work a day in your life, वो bullshit है थोड़ा सा. You work, जो आप काम कर रहे हो ना, वो आप करो पैसे के लिए, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करो अपने मॉनेटरी रिक्वायरमेंट्स के लिए. But along with that, find something that you love, which you're not doing for monetary. Like, for example, content, when I create for myself, I don't do for monetary. Monetary comes is a byproduct. Yeah. That's what helps me cope with the burnout, because I'm like, I look up to like finishing the work and doing something. Okay, so that is your like a break. Yeah, that is my break. That is my clear break, and that is what I am very much inclined towards. Ki hustle is everyone for themselves. See, there are few people here who can do the same amount of work in 4 hours, which other people will do in 8 hours, 12 hours, right? So hustle is, you need to decide. If you know in your mind that you're not the most talented person in the room, you need to be the most hardworking person in the room. It's very simple. It's the seesaw effect. अगर आप इतने हार्ड वर्किंग हो और आप इतने ही टैलेंटेड हो, तो आप तो हो गया, आपका काम तो जीत गए आप. बट आप अगर इतने टैलेंटेड हो और आप इतने हार्ड वर्किंग हो, तो लग गई आपकी. So to compensate that, you need to level this up, right? Get the hard working barrier high, so that you can still compensate, because if you're this talented and you're not hard working, तो लगनी है. So you at least get away from 3/4 of the population of the world. And that is a good advice. I didn't think of it that way. It's a seesaw effect. You'll have to balance it out. Oh, you have to. So I'll take in my life as well. I am very much that. Like I'm telling you, I in my mind, I'm like, वो जब भी में जो गीत है ना, I don't know how much Bollywood you watch, but I'm a very big Bollywood fanatic. So जब the गीत डालोगे, मैं अपनी favorite हूँ. So I'm also like that. मैं अपना favorite हूँ. I consider myself, you know, कि whatever task I approach, I'll try to do it to like best. But I'm also very realistic. I know sometimes I'm not the best at certain things. So now I have to be the most hardworking to do it best. Because I am a little bit like कि भाई सेकंड थर्ड नहीं आना है. किस में? लाइफ में तो स्कूल में लास्ट ही आए हैं सब में. वो नॉट इन दैट. द थिंग इज, जो काम आपको पसंद है उसमें आप लास्ट नहीं आ सकते, क्योंकि एक ही चीज तो दिल से कर रहे हो ना. जैसे कंटेंट है, व्हाई आई से आई वांट टू डू कंटेंट सो सीरियसली. You put in that soul and effort कि इसमें लास्ट नहीं आया, तो you'll be, even if I know कि oh someone else is little bit more talented ऐसा लग रहा है, then I'll be the most hardworking till the time I don't beat him. It's that game. You have to compensate, and then how much ever you're talented, आपसे ज़्यादा कोई talented बंदा मिलेगा आपको, फिर वो अपना hard working का booster चालू करना पड़ेगा, फिर आप उससे थोड़ा आगे निकलोगे, फिर वो आपको देखेगा, and then one day you grow wiser. Some cases I start straight somewhere in the future from you. I hope. Case. Great content, man. ये तो मैंने like first ever email में भेजा था. Color rating is so dope. And then from the start as well. So I mean that was pretty much it, Rishi, from my end. I mean at the end, I just want to understand from you, how was the podcast? How was the session? Lovely, I'm glad you found me worthy enough to invite, talk to your folks. No, bro. I'm glad to be connected to you too. Lovely. I've got a lot of insights. Like on a side note, when I didn't even start my agency, I met with Rishi, and the advisors that we have talked on a call for 2 hours plus sometimes, and he didn't give me any direct advice, but most of the things, Rishi, I think I have not talked about this to you as well. I didn't get the time and the space, but bro, it has helped me a lot. In the agency business as well. The one thing that we talked about recently on building an office space and getting a culture in, and काम करो वहाँ से productive काम होगा. So I'm considering that as well. But I'm a little bit confused there how to manage that talent कहाँ से लाना, but I'll figure it out. But I can see I've sat with my founders और उनके साथ ही जब काम किया,
online से offline, like crazy boost of productivity. So yeah, that is just from my end that you have helped me a lot in Sweden. I'm glad, bro, it has helped a little bit. Because sometimes I yap for 2 hours. So But I'm it's glad kuch so helped. valuable for me because I'm starting from the same phase that you started probably 3 years back. So it's been almost a year that we've met. So it helps to see where I can reach and what are the things that I'm missing out in my journey, which I can just plug and play immediately. Yeah, man, and I know majority of the help that people can also find if they don't have networking and they're starting their journey, watch good content. Consume good content because आप दिन भर रील पे तो बैठे ही हो. So do the same thing, but just do it with like I'm telling you, the impact that I wouldn't have this impact in my life if I didn't consume Casey and Peter at the right time. I hope I do the same impact, but my only advice to conclude it would be देखो अच्छा content. You're just बहुत indirectly important saying, है. watch me. No, I'm still very new in this space, so I don't know if it want. That's their decision to make. But they should watch Casey Neistat even today when he just hasn't uploaded in a long time. Yeah, They should still watch him. I have bad days and I go back and watch his content. I have bad days. I'll go back and watch Peter McKinnon. I have bad days. I'll go back and um, like one of my favorite channels to go back to is there's this video of Colt Kirwan saying how I achieved my dreams at the age of 22 and stuff. Very motivating video to watch. 17-18 minute video, great video to watch. So there are these then Sam Colders hate him being one of the always inspiring story because that's his life story. So watch good content when I say this because that you won't realize uh, consuming good content has the biggest chances of not only building your taste but changing your entire life trajectory. Yeah, I agree with that. Plus one. बाकी मुझे तो देख ही सकते हो एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं. Big Always problem to you. always Why that? 100K guys करना है फटाफट. Yeah, by the next year, next April, right? Yeah, hoping next March we do. See, Instagram, I'll do it for sure very soon. Like Instagram, we did 50K in 2 months. Yeah. Instagram, I'll do it. Instagram's not my favorite platform to create content, but because Instagram very consistent. YouTube, I'm being able to upload only one video a month maximum. So I want to change that. And you also like said to me कि भाई तू भी Instagram पे आ जा तो. Considering that as Instagram is like a practice. It's a practice match. correct. Like I can practice every day. I can practice and then I can do like a hook shot when I'm ready at the YouTube. Yeah. Great. I mean, I love the like conversation as well. Perfect. Apart from all of the freelancing talks, the ending was perfect for everyone, I think. So yeah, that's pretty much it, Rishi. Thank you for being here and talking to my audience. And I hope people love his content. You can go out. You will love it. Go out and check him out. Links are in description. See you then. See you, Rishi. See you. Yeah.